icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome.
पश्चात पहली बल्लेबाजी करने के लिए योगदान मिले हैं। आरंभिक बल्लेबाज के रूप में 2 बल्लेबाजों को भेजा भी गए हैं। एक तो अक्षय पैवलिका, दूसरे हैं रियाज येनम। रियाज येनम और अक्षय के बीच में इस जोड़ी मैदान पर आए हुए हैं। अक्षय जानते हैं अंडरआर्म क्रिकेट में कई साल के अनुभवी खिलाड़ी हैं कासरगोड जिला के, और रियाज येनम अंडरआर्म क्रिकेट जानने वाले निश्चित रूप में जानना ही होगा रियाज येनम क्या है। बहुत बड़े ऑलराउंडर के रूप में जाना जाती है दक्षिण कन्नड़ा जिला की येनम मैंगलोर। सबसे ज्यादा सपोर्टर्स और फैंस एक क्रिकेट टीम के लिए होते हैं, तभी येनम के लिए ज्यादा होते हैं। येनम क्रिकेटर्स, येनम मैंगलोर बहुत बड़े नाम है। उसके सदस्य कहीं महीना सऊदी अरबिया में रहने के बाद रियाज अंडरआर्म क्रिकेट में वापस पहुंचे हैं। कलील, प्लीज रिपोर्ट हियर। कलील, पीएम कलील, वेट सर, सर वेट, ओके। अक्षय और रियाज के बीच में आरंभिक जोड़ी मैदान पर मौजूद है। आरंभिक गेंदबाज नौफल गोरी और रियाज, पहली मुकाबला और रक्षात्मक तरीके के साथ इस गेंद को खेला गया है। मिड ऑफ सर्कल के अंदर फील्डर थे, उसी के हाथ पर गेंद दिए। तब तक आरंभिक गेंद फेंक चुके हैं। आरंभिक गेंद में पहली गेंद पर अपनी खाता खोल चुके हैं। खूबसूरत 2 खिलाड़ी के बीच में लड़ाई हुए हैं कुछ क्षण पहले। अब दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार है, तब अक्षय स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अक्षय पैवलिका, उन्होंने भी कहीं साल के बाद जो बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रही है अंडरआर्म क्रिकेट, और बिल्कुल अंदर की तरफ घुस गई थी गेंद। अंतिम क्षण पर बल्ले को नीचे की तरफ खींच लिए, तब बल्ले की बारिश सा लगे हैं, बाल बाल बच गई है। रनों की संख्या बढ़ते हुए 2 रन। नौफल गोरी अंडरआर्म क्रिकेट के लाजवाब टीम, सबसे पुराने टीम दक्षिण कन्नड़ा जिला के गोरी एम्बॉयज पांडेश्वर की खिलाड़ी है, और इस गेंद को खेला गया है। बहुत खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑन की तरफ, कोई मौका नहीं फील्डर को, टन चौका। रियाज ने चौके की खाते को आज के दिन खोल दिया गया है। चौकों के अकाउंट ओपन कर चुके हैं इन्होंने। रनों की संख्या बढ़ते हुए 6 रन, 5 रन बनाकर रियाज। पावर प्ले जारी, फिर एक बार तैयार। नौफल गोरी, रियाज इस गेंद को फिर एक बार, अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो, मिड विकेट पर फील्डर थे। 1 रन और इस 1 रन के मध्य से रनों की संख्या बढ़ते हुए 7 रन। 4 गेंदें फेंक चुके हैं। अक्षय के लिए फिर एक बार दूर वाली 400 मध्य विकेट, और अक्षय इस गेंद को ड्राइव किए हैं लॉन्ग ऑफ इलाके पर। 1 रन तो तेजी के साथ, दूसरे के लिए कोई मौका नहीं। फील्डर देखिए जो परिंदा की तरह गेंद के ऊपर आए थे, गेंद को तेजी के साथ उठाए, तुरंत वापस दिए, कोई मौका नहीं दिए। 1 रन तो मुश्किल से दौड़कर पूरा किए। 8 रन 5 गेंद पर। फिर एक बार दूर वाले 400 मध्य विकेट। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और इसी के साथ अच्छी ओवर की समाप्ति हुई है। रियाज येनम देख रही है गौर गौर करके, क्योंकि कुछ संदेह थे इनको, क्योंकि बाहर चले जाएंगे, लेकिन नहीं, अच्छी ऑप्शन की है। 8 रन पहली ओवर की समाप्ति पर फाल्कन के खाते, सीएससी के खाते पर फाल्कन को सामना करते हुए। फाल्कन स्ट्राइकर्स फाइटर्स कड़बार पहली टॉस जीते हैं। फील्डिंग करने के लिए फैसला सुनाए, सारे खिलाड़ियों मैदान पर मौजूद है। ವಾಹನ ಉಡಮಸ್ಥಳ ಸದಕ್ಕೆ KL-46 9010 എന്ന വാഹനം ആരുടേതാണോ ആ നിർത്തിയിട്ട ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടിയന്തരമായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
श्रवण के आगमन दिख रही है फाल्कन के लिए। श्रवण गेंदबाजी में 2-3 साल से उनको दिख रहा हूं, शानदार गेंदबाज के रूप में जाना चाहते हैं इनको, बिल्कुल युवा खिलाड़ी। उनके सामने अक्षय उनकी पहली गेंद को सामना करने के लिए आज के दिन में बायर एकम्बर रोडन से पहली बार गेंदबाजी करने वाली गेंदबाज है। और इस गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, उठाकर करने के प्रयास में बल्ला और पैड के बीच में गेंद गुजर गई थी, तब बल्ले के बारिश आ लगे हैं। तब तक 1 रन अक्षय के खाते पर, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 9 रन। फिर एक बात, तैयार है और इस गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑफ इलाके पर, बहुत खूबसूरती के साथ जगह बनाए। फील्डर तो पीछे जरूर है, 2 रन को दौड़कर पूरा भी किए। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 11 ऑन द बोर्ड 11 पर पहुंच दिया गया है। पावर प्ले को पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं रियाज। तो पहली ओवर के रूप में नौफल गोरी ने गेंदबाजी किए थे, तब उसी इलाके पर चौके लगाए थे। अब श्रवण के सामने भी इन्होंने शॉट तो बहुत अच्छे थे, लेकिन तेज हवा की विरुद्ध इन्होंने इस शॉट लगाए थे। अब अगली गेंद बदल गया और इस गेंद को खेला गया है। देखिए शानदार शॉट, फिर एक बार, इस बार कोई मौका नहीं मिलेंगी। गेंद तो गई सीमा रेखा के बाहर, टन चौका। चौकी की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 15 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार श्रवण टू रियाज, अपील देखिए कितनी बड़े आत्मविश्वास के साथ, लेकिन अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं अब तक का। रियाज हिलने से पहले ही कार्तिक कुंबला पे विकेट कीपर इन्होंने तुरंत जो स्टंप को गिराए थे, और अंपायर की तरफ गुर गुर के देख रही है सारे खिलाड़ी। कोई खतरा नहीं, कोई रन नहीं, अब तक कोई इशारा नहीं दिए हैं। नोट आउट है मेरे ख्याल में। बहुत अच्छी गेंद भी थी। अब तैयार श्रवण 4 गेंदें फेंकने के बाद, चौके लगाने के बाद कब से बहुत अच्छे ऑफ से आए, बहुत अच्छे कमबैक। श्रवण की रनों की संख्या अभी भी 15 ऑन द बोर्ड, 15 रन पर खेल रही है। अब तैयार है श्रवण टू रियाज इनम, मैदान के कोने कोने में नजर लगाते हुए रियाज ने खेल रही है बिना किसी नुकसान के साथ 15 रन। अब अगली गेंद बदल गई, अच्छी गेंद, फिर एक बार जबरदस्त अपील, तीसरी अंपायर की मदद मांग चुके हैं। श्रवण की जो सेलिब्रेशन देखिए, देखने में कुछ ना कुछ करीबी मामला जरूर है। और इस प्रकार अंपायर ने तीसरी अंपायर की मदद मांगे है, टीवी अंपायर की मदद मांगे है। अच्छी ऑफ से की है श्रवण ने। चौका लगाने के बाद देखिए कितनी शानदार थे। अक्षय और रियाज मना किए थे, लेकिन अक्षय नॉस्ट्रेकन से तेजी के साथ जुड़े थे। अब तो बिल्कुल करीबी मामला यहां पर देखना होगा। चांस रही है तीसरी अंपायर ने, बिल्कुल आज के दिन बहुत बड़े बड़े मैच यहां पर होने वाले हैं।
के साथ आउट के इशारा दिए हैं। अक्षय को अब जाना ही होगा। 15 लॉस ऑफ ऑन विकेट, 15 रन। आखिरी 2 गेंद में कोई रन नहीं है। अक्षय चंद्राज के साथ वापस डेकोड की तरफ बढ़ते हुए नए खिलाड़ी की आगमन दिख रही है। न्यूमैन चम्मू अरिमला। चम्मू अरिमला उन्होंने भी कई महीनों के बाद एक प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट यहां पर खेला जा रही है। इस प्रतियोगिता के लिए इन्होंने मस्कट से सीधे गांव में आए हैं, क्योंकि अंडराम क्रिकेट के लिए कासरगोड जिला के फेस्टिवल जा रही है, एमपीएल सीजन 10। कई लोग इस टूर्नामेंट के लिए बाहर गांव से 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए गांव में आए हैं। अब श्रवण देखिए कितनी शानदार ऑप्सी आए हैं, बहुत खूबसूरत बड़े ऑप्सी आए। विकेट के उछलता है, आरंभिक के बल्लेबाज को पास भेज दिया गया। श्रवण आखिरी गेंद, यहां पर फील्डिंग देखिए जिससे भी जबरदस्ती विकेट कीपर की तरफ गेंद तुरंत दिए थे, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाए। चम्मू को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा मौका मिले थे, दबा दिया गया। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या बढ़ते हुए 16 रन, 8 के प्रतिशत यहां पर रन बने हैं। अच्छी कमबैक की है श्रवण ने चौके लगाने के बाद। देखिए आखिरी 3 गेंद में सिर्फ 1 रन, बिल्कुल अच्छी नजारा है यहां पर। सीएससी पब्लिका का के ऊपर दबाव डालते जा रही है। 2 गेंद, ओवर में 2 चौका, मात्र 2 चौका मिले हैं यहाँ पर। पावर प्ले को इस्तेमाल कर रहे थे तब बड़े शॉट तो कोशिश नहीं की, गैप में खेलना चाहते थे रियाज। अब चम्मू आए हैं, अब देखना होगा क्या कर पाते हैं चम्मू और रियाज है स्ट्राइक पर। चम्मू अरिमला, एनएफसी अरिमला की योगदान है। उनके पड़ोसी टीम के सामने खेलने के लिए मौका भी मिले। अब कदम्बार उनके पड़ोसी टीम, इनके गांव है अरिमला, और सामने वाले कुछ ही 1 किलोमीटर के अंदर की टीम है, 500 मीटर के अंदर की टीम है कदम्बार। उस कदम्बार टीम के विरुद्ध, फाल्कन फाइटर्स कदम्बार के विरुद्ध खेलने के लिए मौका भी मिले हैं चम्मू अरिमला को, जो भी हो तीसरी ओवर के लिए जा रही है। तीसरी ओवर के रूप में बॉलिंग नंबर 3 तौसीफ बाकर बैल, जी हाँ, उनको मौका मिले हैं। तो वो स्ट्राइक पर रियाज सनम, शानदार बल्लेबाज है। अंडराम क्रिकेट के प्रमुख टीम एनम मैंगलोर और उस टीम के प्रमुख खिलाड़ी, बहुत बड़े योगदान है अंडराम क्रिकेट के लिए। बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट कहीं भी हो वहां पर अपने नाम दर्जा करते हैं। उनको आइकॉन के रूप में, कप्तान के रूप में लाया जाती है। जो फर्स्ट कैटेगरी में उनको चूज करते हैं। पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार है तौसीफ रियाज मैदान के कोने कोने में नजर लगाते हुए। तीसरी ओवर पावर प्ले हटा दिया गया है। अब तो 5 खिलाड़ी बाहर है, 6 खिलाड़ी तेज तारके के अंदर। अब तैयार है दूर वाली चोट से अराउंड द विकेट, और इस गेंद को सिप किए हैं, हल्के बल्ले से मुंह खाला है। तब तक 1 रन। कार्तिक कुंबला तेजी के साथ दौड़कर गेंद तक पहुंचे हैं, तब तक 1 रन। चम्मू अरिमला स्ट्राइक पर आ चुके हैं। सीएससी पब्लिका के लिए पहले विकेट पतन हुए थे। अक्षय के जगह भरने के लिए यहाँ पर चम्मू अरिमला को भेजा गया। हार्ड हिटर ऑफ अंडराम क्रिकेट, स्फोटक बल्लेबाज है अंडराम क्रिकेट के। जानते हैं अंडराम क्रिकेट जानने वाले चम्मू अरिमला को जानना ही होगा। फिर एक बार तौसीफ अराउंड द विकेट। चम्मू खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। यहाँ पर देखिए 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किए। तब तक का रनों की संख्या बढ़ते हुए 18 रन, 18 ऑन द बोर्ड। അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുക. റോയൽ ഫ്രണ്ട്സ് പച്ചിനമ്പാറ ഹൈ ഫ്ലൈസ് ദുബായ് തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. റോയൽ ഫ്രണ്ട്സ് പച്ചിനമ്പാറ ഹൈ ഫ്ലൈസ് ദുബായ്.
2.2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 18 ഓൺ ദ ബോർഡ്, ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ CSC പൈപ്പള്ളിക്ക മൂന്നാമത്തെ ഓവറിന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. दोस्तों, आप देख रहे हैं 10वीं सीजन MPL अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। तब पहली मैच दूसरे दिन देखने वाले सभी दोस्तों को स्वागत करना चाहता हूं। अब तैयार है तौसीफ तीसरे गेंद लेकर, और इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ सिप की है। शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद थे, यहां पर खतरा हो सकते थे, लेकिन फील्डिंग में उतनी तेजी नहीं थी जो गेंद के ऊपर आने में देर लगी और उठाने में देर लगी, और थ्रो भी धीमी गति के साथ पहुंचे। तब तक 2 रन रनिंग बिटवीन द विकेट, देखिए कितनी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट है। रियाज, इन्नम, चम्मू, और इस बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द विकेट, चम्मू आउट हो चुके हैं। रियाज और चम्मू के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उस वजह से बहुत बड़े विकेट के पतन हुए हैं। चम्मू अरिमला, उनको जल्दी प्रमोट किया गया था क्योंकि हवा के सहारा उनको मिल सके, तब बहुत बड़े शॉट खेल सकते हैं, उस वजह से उनको भेजा गया था। तब देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट, इससे मौके में ऐसे रनिंग बिटवीन द विकेट और मिसअंडरस्टैंडिंग होते ही तो बड़े बल्लेबाज के नुकसान हो जाएंगी। तब यहां पर बिल्कुल लॉस मेरे ख्याल में CSC पब्लिका के लिए बहुत बढ़िया झटका है। अब रियाज 2 हैं मैदान पर, एक तो एनएम रियाज आरंभिक बल्लेबाज है, अभी अभी आए हैं कप्तान रियाज, न्यू स्टार कुंजतूर की, अंडरआर्म क्रिकेट के कासरगोड जिला की शान और मान कहते हैं इनको, क्योंकि उतने अनुभव, उतनी बड़े बड़े टीमों में खेले हुए अनुभव और ज्यादा से ज्यादा कप्तान बनने वाली एक व्यक्ति भी है रियाज कुंजतूर। पहली गेंद वाइड थे उनके सामने, अब अगली गेंद अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, ब्यूटीफुल कमबैक, तौसीफ बाकरबाइल शानदार कमबैक किए हैं। तीसरी ओवर में, पहली ओवर में 8 थे, दूसरी ओवर में 8, 1 विकेट। अब तीसरी ओवर यहां पर खेला जा रही है, आखिरी गेंदे बचे हैं, और इस गेंद वाइड। फिर एक बार हिंदुस्तानी स्कूल एंड से गेंदबाजी कर रही है तौसीफ बाकरबाइल, तब 2 वाइड फेंके हैं। तब एक देखिए रनआउट, बहुत बड़े विकेट, मछली तो बहुत बड़े मिले अपनी चाल में। अगली गेंद अराउंड द विकेट, व्हाट अ कमबैक, व्हाट अ डिलीवरी, देखिए कितनी शानदार गेंद थे। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 23 ऑन द बोर्ड, 23 रन खाते पर जोड़ा गया है, और 23 के साथ 2 विकेट भी पतन हुए हैं। आखिरी ओवर 7 रन के बहुत अच्छे ओवर है तौसीफ बाकरबाइल के। इस ओवर फाल्कन फाइटर्स के लिए शानदार कमबैक किए इन्होंने। नए ओवर की शुरुआत ही करना चाहते हैं नौफल गोरी, आरंभिक गेंदबाज के रूप में उन्होंने शुरुआत किए थे, 8 रन खर्च किए थे, कोई सफलता तो हासिल नहीं किए। अब तो 2 विकेट पतन होने के बाद चौथी ओवर के रूप में बायर कैकम्बा रोडेंसी, यानी कि सबसे खतरनाक जोन है अंडरआर्म क्रिकेट के लिए। शाम तक इस जोन, इस इलाका बिल्कुल गेंदबाजों के लिए कोई आसान काम तो नहीं है। अब नौफल गोरी को लाए गए, तब रियाज एनएम स्ट्राइक पर मौजूद है। दोनों दक्षिण कन्नड़ा जिला की प्रमुख टीमों की 2 बड़े खिलाड़ी है। रियाज बिल्कुल यंगेस्ट खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी है नौफल गोरी। यहां पर 2 खिलाड़ियों के बीच में लड़ाई जा रही है। तब गोरी यंग बॉयज पांडेश्वर एनएम मैंगलोर के 2 प्रमुख खिलाड़ियों के बीच में। नौफल तैयार है चौथी ओवर के पहले गेंद लेकर बायर कैकम्बा रोडेंस से। अच्छी गेंद खेला गया है, मिड विकेट पर गेंद जा रही है। तब तक 1-2 चकमा खाए, देखिए उतनी तेजी की जरूरत क्या थी।
यहाँ पे आसान के साथ 2 रन तो चुरा लिया गया, छोटे से गलती यहां पर 1 रन तो ज्यादा मिले हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर 25 ऑन द बोर्ड। रियाज जांच रही है मैदान के कोने कोने में नजर लगाकर, किस तरफ गैप है उस तरफ खेलने की बहुत बड़ी हिम्मत है, माहिर है इस खिलाड़ी। अब अगली गेंद दूर वाली चोट से वो विकेट और उठाकर खेला है हवा पर गेंद, और इसी के साथ गेंद के नीचे फील्डर टेक द कैच। रियाज ये नाम बैक टू द पवेलियन। बहुत जबरदस्त झटका मिले यहां पर। नए बल्लेबाज के आगमन दिख रही है, जफर मैकलम। पुराने घोड़े को भेजा गया है यहां पर, बिल्कुल जबरदस्त खिलाड़ी है। ऐसे स्फोटक खिलाड़ी बहुत कम रहते थे 5-6 साल पहले, क्योंकि उतने बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं। उनको भेजा गया तब नौफल गोरी को सामना करने के लिए, क्योंकि इस ओवर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हवा के सहारा बिल्कुल ध्याना हाथ के बल्लेबाजों को मिलते हैं, स्फोटक खिलाड़ियों के लिए मदद मिलती है, उस वजह से इनको भेजा गया है। यहां पर देखिए 1 रन के लिए दौड़ा जा रही है, 1 रन तो निश्चित रूप में दौड़कर पूरा किया, तब अंपायर का इशारा है बाय बाय। विकेट कीपर के गलती से रन मिले हैं तो भैया, कार्तिक कुंबला के गलती से ऐसे रन मिले हैं, ये दिखा रही है पंजा उठाकर अंपायर हरीश पटेल। फिर एक बार तैयार है, लंबे कदमों के इस्तेमाल करते हुए नौफल गोरी टू रियाज को जतून ओवर द विकेट। अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके के साथ खेले हैं, डीप पर गेंद गई, गली पर गई, पॉइंट पर गेंद गई, तब तक फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए, तब तक 1 ही रन, दूसरे के लिए कोई मौका नहीं। और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 27 ऑन द बोर्ड, 27 रन। नौफल गोरी फिर एक बार जाफर मैकलम के लिए गेंद फेंकना चाहते हैं, दूर वाली चोट से वध विकेट, और इस गेंद को उठाकर खेला जरूर है, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर। तो उसी बाकरवेल ने फील्ड किए, थ्रो किए तब तक, लेकिन हवा के विरुद्ध उतनी आसान तो नहीं है थ्रो करना। 2 रन तो निश्चित रूप में दौड़कर पूरा किए, रनों की संख्या बढ़ते हुए 29 ऑन द बोर्ड, 29 रन 34 ओवर के मुकम्मिल जा रही है। फोर्थ ओवर प्रोग्रेस। अब अगली गेंद बायर के कैमरोडे से नौफल जाफर उठाकर खेल रही है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ गेंद गई, तब तक 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे के लिए कोई मौका नहीं, और इसके साथ ओवर के संपन्न हो चुके हैं 30 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर, 40 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। शेष पबलिका की शुरुआत तो 8 के प्रतिशत थे, अब तो 8 से भी नीचे उतर गई है 4 ओवर की समाप्ति पर, सिर्फ 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाजी कर रही है रियाज और जफर मैकलम, अब तो 2 और बचे हैं, एक और तो निश्चित रूप में हिंदुस्तान स्कूल एंड से, एक और तो बायर कैकम बरोडन से 2 गेंदबाज आना बाकी है। 12 गेंदे बचे हैं, तब कितने रन बटोर सकते हैं देखना बाकी है। इस पहली सेशन पर मेरे ख्याल में आफ्टरनून जो 3 बजने के बाद मैच शुरू होते हैं 3 बजे, तब यहाँ पर मेरे ख्याल में 55-60 रन यहाँ पर निश्चित रूप में बनाना ही है, जो एक संघर्ष भरी हुई संघर्ष डालने के लिए सामने वाली टीम के ऊपर। यहाँ पर तो 30 रन अब तक के 4 ओवर के समाप्त हुए हैं, अब 2 ओवर बचे हैं, अब 2 ओवर में कितना रन बटोर सकते हैं देखना बाकी है। नए गेंदबाज बोलो इजाज के आगमन हुए हैं, इजाज पातुर उनके आगमन हुए हैं, तब स्ट्राइक पर जाफर मैकलम है, जाफर और नो स्ट्राइकन पर रियाज, कप्तान नो स्ट्राइकन पर है जाफर। 2-3 विकेट पतन होने के बाद जो स्ट्राइक पर पहुंचने के वाले बल्लेबाज है। पहली
गेंद और लेग स्टंप पर गेंद थी, रफ्तार तो ज्यादा थी इस गेंद में। हो अगर डायरेक्ट हिट हो जाती तो रियाज को यहां पर करीबी मामला हो सकती थी। वाइड +1, 2 रन, रनों की संख्या बढ़ते हुए 32 रन। लेग स्टंप के बाहर थी इस गेंद, वाइड गई, तब विकेट कीपर भी छोड़ दिए, तब तक 1 रन बाई में मिले हैं। वाइड +1, रनों की संख्या 32। अब अगली गेंद ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल ड्राइव, गेंद तक पहुंचे थे लेकिन हाथ पर नहीं रुके हैं, तब मेरे ख्याल में 3 रन बचा लिया गया। अगर उनके हाथ के ऊपर से गेंद आते तब निश्चित रूप में चौका मिल जाते थे, क्योंकि तेज हवा भी जा रही थी। अब अगली गेंद दूर वाली 400 विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए लंबे कदमों के साथ इजाज तैयार है, उनके सामने जफर में कलम और तरीके के साथ खेला है, रनआउट के लिए खतरा, लेकिन आपने क्या किए, अपील तो की है लेकिन नो स्ट्राइक पर आसान मौका थे, यहां पर करीबी मामला थे लेकिन पहुंच चुके थे रियाज ने, इस वजह से अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 34 ऑन द बोर्ड। अब अगली गेंद इजाज तैयार है, दूर वाले चोट से तीसरी अंपायर की मदद मांगे हैं थर्ड अंपायर रनआउट के लिए। तीसरी अंपायर ने कहा कि नॉट आउट है, कोई खतरा नहीं, रियाज रह जाएंगे मैदान पर। अब अगली गेंद इजाज, दूर वाली चोट से इजाज के लिए रियाज के लिए इजाज, अच्छी गेंद उठा करके ले है, गेंद गई है मिड विकेट पर, तब तक चकमा खाए थे दूसरे रन के लिए, लेकिन कोई मौका नहीं और एक ही रन, और इस एक रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 35 फिफ्थ ओवर प्रोग्रेस। अब अगली गेंद इजाज रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, फील्डर मौजूद थे लेकिन हल्के चकमा खाए, एक के जगह पर 2 रन तो निश्चित रूप में दौड़कर पूरा भी किए। देखिए 2 सीनियर खिलाड़ी, एक तो अबो 40 के खिलाड़ी हैं, 42 ईयर्स है रियाज के, मक्कलम भी 40 के करीब है मेरे ख्याल में। 2 खिलाड़ी देखिए विकेटों के बीच में दौड़ने के लिए कितने बड़े प्रयास करते हैं, अच्छे दौड़ते हैं विकेटों के बीच में। अब अगली गेंद विकेट लंबे कदमों के साथ, बढ़िया गेंद, कमबैक तो बहुत अच्छे किए लेकिन कार्तिक के हाथ पर गेंद नहीं रुके, वरना यहां पर जाफर मैकलम को वापस लौटना पड़ती थी क्योंकि पूरी तरह बाहर निकले थे स्ट्राइक से। अब अगली गेंद दूर वाली 400 विकेट इजाज जाफर, इस बार देखिए उनके कमाल के प्रदर्शन, विकेट कीपिंग की लाजवाब। तीसरी अंपायर के मदद मांगे हैं, मांगना ही होगा क्योंकि उतने टाइमिंग परफेक्ट है। जो कार्तिक कुंबला के एक माइक्रो सेकंड भी मेरे ख्याल में नहीं थी, टाइमिंग नहीं थी उसको, उतने तेजी के साथ बहुत बड़े खिलाड़ी हैं कार्तिक कुंबला। अब तैयार है, ओवर तो समाप्त हुए हैं लेकिन अब देखना है कि विकेट कीपर के इस प्रयास क्या होंगे, अपील तो क्या होंगे। जफर मैकलम तो नॉट आउट कहा है लेकिन कोई खतरा नहीं, कोई रन नहीं, आखिरी ओवर बचे हैं, लास्ट ओवर टू गो। बायर के कंबर रोडन से गेंदबाज आना ही होगा डेथ ओवर के लिए। बायर के कंबर रोडन की तरफ से गेंदबाज को यहां पर गेंदबाजी करना होगा, खतरनाक जोन से गेंदबाजी करने के लिए यहां पर मौका मिले। बॉलर सहद कदमबार, उनको मौका मिले हैं, सहद कदमबार को अपने गांव के टीम में खेलने के लिए मौका मिले हैं। सहद कुछ कम मैचों में बहुत अच्छे योगदान दिए इन्होंने, बहुत अच्छे नामदार बन गई है, मदर इंडिया कदमबार के योगदान है।
उनको मौका मिले हैं गेंदबाजी के लिए। तो स्ट्राइक पर रियाज सबसे सीनियर खिलाड़ी, कल के दिन सबसे सीनियर खिलाड़ी बहुत कुछ खेले थे। जो उन्नी कृष्णन कुंबला सबसे अनुभवी खिलाड़ी कल के दिन मैदान पर कप्तान के रूप में एचबी पापिला के लिए खेला गए थे। आज के दिन कप्तान के रूप में रियाज कुंजतुर खेल रही है। 7 के बाद पहली गेंद, अच्छी गेंद यहां पर ड्राइव की है, फील्डर मौजूद है। तब तक 1 रन के इजाफा और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 38 ऑन द बोर्ड, 38 रन। फिर एक बार तैयार है 7 का बाद, उनके सामने जाफर मैकलम को जल्दी प्रमोट किया गया थे। जो हवा के सहारा बहुत बड़े मिलते हैं दैनात के बल्लेबाजों को, उस वजह से इनको भेजा गया था। अच्छी गेंद थी, उठाकर खेला है मिड विकेट पर गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग, खतरा हो सकते हैं लेकिन नहीं। टाइम आउट, एक खिलाड़ी निश्चित रूप में अंदर आना चाहिए। जो 30 दायरे के बाहर 6 खिलाड़ी रहते हैं, तब 5 बन रहते हैं, 4 बन जाएंगे। अब जो भी हो, लॉन्ग ऑफ से अंदर की तरफ खींचा गया है। फिर एक बार तैयार है और विकेट सहार, अच्छी गेंद उठाकर खेला है उसी जगह पर, लॉन्ग ऑफ इलाके पर इन्होंने लक्ष्य बना है लेकिन 1 ही रन मिले हैं रियाज के खाते पर। वापस आ गई है स्ट्राइक पर जाफर मैकलम। छक्के चौका लगाना उनके शौक है, इनकी आदत है, लेकिन अब तक बड़े शॉट तो नहीं देखे हैं। कुछ ही क्षण से इन्होंने बल्लेबाजी कर रही है। 7 कदम बार दूर वाली चोट से लंबे कदमों के साथ बाहर कई कम रन से ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, व्हाट ए कमबैक, देखिए कितनी शानदार कमबैक कर रही है गेंदबाजों ने। फल्कन कदमबार के लिए अच्छी गेंदबाजी की मुजाहरा कर रही है। पहली 2 ओवर में 16 रन थे, उसके बाद बिल्कुल दबते जा रही है रणनीति। अब अगली गेंद ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, अपील और इसी के साथ जाफर मैकलम आउट। बैक टू द पवेलियन जाफर मैकलम। चौथे विकेट के पतन यहां पर सीएससी पैबलिका के लिए बिल्कुल निराश की बात है कि जो पिछले 2 ओवर से रणनीति तो दबते जा रही है, तब विकेटों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। गेंदे फेंक चुके हैं, रनों की संख्या अभी भी 40 ऑन द बोर्ड। जो भी हो, कहना चाहता हूं कि जितने भी तारीफ करो उतना कम होगा 7 कदम बार, क्योंकि 2 गेंद बचे हैं, फिर भी 4 गेंद में इतनी जो सिर्फ 2 रन कर चुकी है, वो भी खतरनाक जोन से। भाई यार कई कम रनों से कोई भी चाहता नहीं गेंद फेंकने के लिए। और अच्छी गेंद, देखिए कितनी शानदार गेंदबाजी, वाह पाए वाह, लड़का ने कमाल किए हैं। आप देखिए कितनी शानदार गेंदबाजी की है। अभी रियाज जाफर मैकलम जैसे बल्लेबाजों के सामने 1 गेंदे बचे हैं। रियाज भैया 1 गेंदे बचे हैं और क्षमा कीजिए, ओवर की समाप्त है। जो भी हो, जो 7 कदम बाद तारीफ करना ही होगा, सबके मनपसंद गेंदबाज बन गई है। वो भी जो खतरनाक जोन से गेंद फेंकने के लिए उनको मौका दिए। कोई भी जल्द से जल्द तैयारी नहीं होते हैं उस इलाके से गेंद फेंकने के लिए, मजबूरी में गेंद फेंकते हैं कोई खिलाड़ी। लेकिन 7 कदम बाद देखिए जो खतरनाक जोन से गेंद फेंके, 1 ओवर 9 मेडन 3 रन 1 विकेट, 4 रन 1 विकेट, क्षमा कीजिए 1 ओवर 9 मेडन 4 रन 1 विकेट। लाजवाब गेंदबाजी की है। जो भी हो, पहली इनिंग्स समाप्त हो चुके हैं। दूसरी इनिंग्स के लिए यहां पर स्वागत करना चाहता हूं, उन्हें आकर हस्ताक्षर पूरा कीजिए। आपके सामने आवाज में बदलाव आ रही है। डार्विन माइकल आपके सामने आज के दिन पहली बार, मेरी मनपसंद आवाज भी है इनकी। स्वागत डार्विन माइकल, थैंक यू। Thank you very much, Abdurrahman Bekul. What a beautiful innings we have seen
Especially we have seen a fantastic bowling performance from the first innings. Just restricted with 41 runs in the first 6 overs. For Team CSC Paivaligam, we have seen 19 runs from Riya Sannam in the top of the order. But all other batters just scored a single digit. Riya's new star, the captain, was stayed there in the middle in long time, but not produced a lot of for the Team CSC Paivaligam. 42 runs of chasing targets for the team Falcon Fighters Kadambar in the second innings. You are watching the match number 1 from B Group, the first match from the day number 2 of Mega Cricket Festival, the Festival of Underarm Cricket, Mannamkuzhi Premier League MPL Season 10. What an initiative by selected Mannamkuzhi and Hanif Umanga, the one-man army who gives all the thrilling actions, comes and true here in Mannamkuzhi ground to the cricket lovers of Kasaragod and Dakshina Karnataka. Chami the man, the captain on striker's end. On the other side, the icon player Naufal Gori is standing on the non-striker's end. A very big duty and responsibility upon the shoulder of the team Falcon Fighters Kadambar in the second innings. A decent scorecard in the hand for CSC Paivaligam to defend. Riya Sannam, always a front line choice to start the bowling operation for any major team in any major tournament coming into the attack. What a delivery, what an exceptional one, and Shafi the wicket keeper, he was appealed with a strong confidence. It was right on the legs. Leg by signal received from the centre. Riaz is just showcasing his disappointment. Slowly going back. What a beauty of a delivery to start the proceedings. Absolutely a majestic rolling delivery that hits on the pads of the batter. Magnificent start. He is ready to give a visual treat here with exceptional bowling display that is world familiar. Such a star, such a serious talented star, a staggering genius from NM Mangalore. Riaz comes and announcing his arrival. Here is Naufal Gori on strike. Making a little bit changes in the field for Naufal Gori. Both the batters have played tons of match against. Comes with the ball. Another beauty from Riaz. This is top class delivery that executing right on the track by the very well known all-rounder cricketer. Straight away won the battle in couple of time in front of the opening batters of Falcon Fighters Kadambar. Bat on it through the onside region, takes it that one and works it for a single by the batter. Naufal Gori straight away off the mark on this occasion. That brings second run on card and first from the bat. Previous one came in form of leg by. Now Chami Periodica, the captain on strike for the team. Safe shot over there, straight to the field. A protection that perfectly set over there by the team CSC Paivaligam. But it was a control shot from Chami Periodica, who just alert and gives a way to travel between the wicket. Intelligent cricket and smart move by the openers of Falcon Fighters Kadambar, setting a tune in the front stage. And singles that will help a lot while chasing these kind of targets, especially in the dangerous over.
Yes, we can say that is a dangerous over, and this time, oh, the successful or what? Yes, it is that given out. Absolutely a dangerous way the man has started the proceedings. Riaz Enam is ready to conquer against the batters, bringing the big wicket. Naufal the man is going back. Absolutely a phenomenal start. What a delivery, what a priceless wicket he received in the front line by a phenomenal bowler. Riaz Enam starts in style. 42 റൺസ് എന്ന ടാർഗറ്റ് മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിശക്തമായ ബോളിംഗ് പ്രവാഹവുമായി റിയാസിന്റെ മാസ്മരിക പ്രകടനം കാസർഗോഡിന്റെ കായിക മേഖലയെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി റിയാസിന്റെ അരങ്ങേറ്റം. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി മണ്ണംകുഴി മൈതാനത്ത് ബാറ്റ് കൊണ്ട് a decent way start by Riaz, and Pandugonda, he was absolutely a gem of a start that gives for the team CSC Paivalige, making a lot of changes in the field, seriously involving by Riaz Enam to set the right fielders in the right position. 3 for the loss of 1. Bachi Balur, the new man, joins in the middle, a left-hander joins. Riaz once again comes in front of the left-hander for the first time. It's in the air. That's another beauty. റോയൽ ഫ്രണ്ട്സ് പച്ചിലമ്പാറയുടെ ടീം ഓണറെയും ക്യാപ്റ്റനെയും പ്രധാന വേദിക്കരികിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. MPLന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ ഓണർ ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് റോയൽ ഫ്രണ്ട്സ് പച്ചിലമ്പാറ പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട്. ആദ്യ ഓവർ അതിഗംഭീരമായി അവസാനിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് 4 runs came from the first over and he grabs a wicket of Naufal. What a tremendous over that bowled by Riaz Enam. 4 for the loss of 1. Here comes Nasaf Pachilambara, the killer of underarm cricket. We have heard a lot from the noise of Abdurrahman Bekur about his quality, and we have witnessed plenty of tournaments successfully as a strike bowler by Nasaf Pachilambara. Coming into the attack in front of the left hand, left and right in combo, right in the middle for the team Falcon Fighters Kadambar in a precious time of power play. Oh, he's done well. That's a beauty, right in the hands of the wicket keeper. He was delighted when received that delivery. It was a furiously faster delivery from Nasaf Pachilambara, bringing no chance to react for the batter. Another beauty, a cracker of a delivery right on the carpet, not giving any kind of clue for the left-hander. Bachi Balur is absolutely blocking right in the middle. Nasaf Pachilambara just arrives his arrival and announcing that one in style with a back-to-back 2-dot ball, that giving a lot of pressure. Absolutely a pressure maintaining time for the team Falcon Fighters Kadambar. That's a lofted shot and straight to the field. Gone. That's a scud missile from Nasaf Pachilambara and gets a wicket of Bachi Balur, the strongest left-hander, going back to the pavilion. Absolute visual treat of a 3 deliveries to start by Nasaf. Incredible bowling talent with an outstanding stellar quality that showcased by Nasaf that produced the breakthrough. Wicket number 2 down.
It is the time for the toss for the match number 2 from B Group. I welcome Royal Friends Pachilambara and High Flyers Dubai team captain for the toss. Tossinayi High Flyers Dubai, Royal Friends Pachilambara team captains ne സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. For the loss of 2, a trouble start on the other side by the chasing side. A Falcon fighters ready to fly high, but CSC have just making a Chinese big wall. Two frontline bowlers, they were setting an agenda, and the plan, that proper agenda that will executing by Riyaz Ennam and Nasaf. Is done well. Is done well. That's an absolute majestic. Requesting Jackie, the icon player from High Flyers Dubai, please report. Through the answer region finds a gap, and there will be plenty of time and space there to cover for the batters. And first runs in this over that came from the fifth ball of Nasaf Pachilambara's over. What a staggering genius. What a phenomenal way the man controlling the things and gripping on the track of Mannamkuzhi, and he just taking the rewards of dot balls and wicket. Here comes the last ball. Just 6 on card. Through the onside and just over bounce in front of the field. And that produced an easy travel between the wicket for the batters. An outstanding over from Nasaf Pachilambara comes to an end. My goodness, 3 runs came from the over, and he grabs 1 wicket. End of 2. Power play done and dust by the bowlers. 7 for the loss of 2. Falcon fighters Kadambar. Tossinu vendi swagatham cheyunnu. Second call for the captains of Royal Friends Pachilambara, High Flyers Dubai. രണ്ട് ഓവറുകൾ അതിഗംഭീരമായി ബോളേഴ്സ് തങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി വിളിച്ചോതുന്ന പന്തുകളുമായി റിയാസ് എന്നം തുടക്കി വെച്ച് വിക്കറ്റ് വേട്ടയിലേക്ക്. നസാഫ് പച്ചിലമ്പാറ കാസർഗോഡ് അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബോളിംഗ് വൈവിധ്യം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി വിളിച്ചോതി. ഒരു ഓവർ എറിഞ്ഞു നീങ്ങുമ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിന്റെ മുൾമുനയിലേക്ക് ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് കടമ്പാറിനെ തള്ളിയിട്ട പവർ പ്ലേയുമായി ബോളേഴ്സ് അരങ്ങുവാഴുകയാണ്. We are moving to the over number 3. Riyaz Ennam who just back into the attack. Ready to conquer in the front line by the strike bowlers. That's a very good strategy and plan from the captain Riyaz Kunjatur. Another big weapon is waiting for his opportunity, and he's shuffling the bowlers really well in the front stage, and the experienced Riyaz is waiting for the turn. What a depth of bowling line of having by CSC Paivaliga, and it is an important partnership. Karthik and Chemmi, both are very well known each other, played together and against lot of matches. Nicely takes it through the onside region by Karthik. Kumbla is so quick between the wicket. Chemmi just decided to go with a single on this occasion. Very good decision taken by the batter on this occasion. Takes a single in the first ball of Riyaz Ennam. Need to play some watchful cricket in this over. Riyaz have a lot of quality to pick up the wicket. Lovely speedy one. Absolutely a furiously fast of delivery from Riyaz Ennam, right on the track with lot of perfection. That dot gives any kind of chance to freeze the arm for Chemmi Periodika. The captain was just blocked, but we are in the over number 3. Through the onside, smart batting performance by Chemmi. Swept it towards the onside region, but protection that set by the captain of CSC in everywhere. And for the fields, the bowler who just generating the deliveries, that's what they were taking the reward. Here comes again. Changes the length really well, and it goes comfortably, looks to be, yes it is.
perfectly or no? It will be a wide check. Umpire's call for checking that one. Looks to be a very tighty. ഒരു നിർണായക നിമിഷമായതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസ്ക് എടുക്കാതെ നേരെ ആ ഒരു തീരുമാനം third umpire വിടുകയാണ്. Maybe the bowler will cover the vision of the umpire. I believe that's why he just gives it to the third umpire. Perfect call from the on field. It's a fair delivery is the call. Dot ball. What a beauty once again by Riyasanam. Just bringing some exquisite deliveries right on the track in an exclusive way. 9 runs on card. We are moving with the over number 3 in the second innings. 2 more balls to go. Appeal straight away, but and is slightly going away. That signs from the centre justice. Leg by signal received over there. What a way this spell is turning from this man Riyas, having all the controls. 11 പന്തുകൾ എറിയുന്നു, 5 റൺസ് മാത്രം. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിൽ റിയാസന്നമിന്റെ ക്വാളിറ്റി വിളിച്ചോതുന്ന പന്തുകളുമായി മണ്ണൻകുഴി. മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾക്ക് CSCയുടെ പക്കലേക്ക് മത്സരം റാഞ്ചിയെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട് ലൈനിന് മൂർച്ച കൂട്ടി ബ്ലേഡ് ഷാർപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിയാസിന്റെ മാസ്മരികമായ ബോളിംഗ്. Here comes the last ball. Sweeps it towards the onset region. Looks to be a fielder there. Nicely works over there. Just a single. What a spell. A mesmerizing spell of Riyasanam comes to an end. 2 overs of spell that only allowed 6 runs, and he grabs 1 wicket in the front line. It's a wicket of the icon player. End of 3, 11 runs on card, and they need 31 from next 18 balls. ആദ്യ 3 ഓവറുകളിൽ 11 റൺസുകൾ മാത്രം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ആധികാരികമായ ബോളിംഗ് പ്രകടനവുമായി CSC പൈവളികയുടെ ബോളേഴ്സ് കളിക്കളം അടക്കി വാഴുന്ന കാഴ്ചയുമായി മണ്ണൻകുഴിയിൽ ബി ഗ്രൂപ്പിന്റെ മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ 18 പന്തുകളിൽ നിന്ന് ടാർഗറ്റായി മുൻപിൽ. Three overs completed and Akshay coming into the attack with the over number 4, moving to the last part of the first match, moving to the last quarter of this game. Very important time there for the team. Falcon fighters Kadamba to set a decent way. They were looking to coming back. Chami is very well settled right on the middle. Akshay coming with over the wickets. Shafi, the wicket keeper, is seriously involving to set the right fielders. Lovely delivery. That's a beauty from Akshay. Just directed nicely by Chami. The man who just decided to go with a long innings, but they need a prolific innings to set the tune for the team Falcon to fly high. Karthik Kumbala, very well experienced player, and Chami Periodic as well. This time attempting for a reverse stroke, but goes straight to the field.
Nice connection from Karthik, but not getting the elevation on this occasion. Straightly that beats a field. Perfectly placed fielders that giving no chances for the batters. It will all restricting so far. No boundaries, no sixes. Things are all controlling. Lovely little delivery from Akshay Paivalige. The man is just bringing some excitement of energy for the camp of CSC Paivalige with an outstanding delivery. What a fabulous trio of bowling that working. Riaz Ennam and the man Nasaf Pachilambara. This time Akshay Paivalige. Gone away from the guideline. That brings a wide in form of extra. Batters moving between the wicket as well. There will be moving with 15 runs. They need 27 from 14. Not getting the right connection once again. It was all tightening the screws and balls right in the middle by the bowlers of CSC Paivalige. They were showcasing an .16 on card and moving to the last ball of the over number 4. That's high and handsome, and there will be the fielder. No! Wow! What a fantastic effort in the deep by the fielder Nasaf. Oh, it's shape. Such a standard of fielding and saving something from... Sure as saving some runs for the team.
Only gives one between the wickets. Outstanding piece of bowling performance that rewarded with a fantastic fielding effort and supporting everything. Oh, it's up to the upstairs. We are checking the boundary line. You have seen a fabulous effort from Shoaib. The fielder was weighted in the deep, and how well the man blocked it over there. Tossing time. Third call for the captains. Royal Friends Pachilambara, High Flyers Dubai. അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്മയകരമായ ഒരു ടൂർണമെന്റിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് മണ്ണംകുഴി മൈതാനം 22 ലക്ഷം രൂപ പ്രൈസ് മണി ഫൈനലിസ്റ്റുകൾക്ക്. That is fantastic fielding. It was saved by Shoaib in an absolute railway. What an over comes to an end. 17 on card after 4 overs. പന്ത്രണ്ട് പന്തുകൾ 25 റൺസുകൾ. 25 required from 12 balls of cricket to win this match for the team. Falcon Fighters Kadambar against CSC having all the domination, but this time Chemmi Periadka, who is a dangerous customer, who was standing there on the striker's end along with Karthik Kumbala. Riyas have a truckload of experience in Andhra cricket and split the fielders into two by Chemmi Periadika. Works for a boundary for 4. Much needed boundary this for the team Falcon Fighters Kadambar. Absolutely a wonderful shot of authority, and who has placed it there to the widest long on region to get a boundary. That will gives a lot of confidence of boost. Complete confusion right in the middle we have seen in the bowling side. 21 required from 11 bowls. 11 പന്തുകൾ 21 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. ആദ്യ പന്തിൽ ബൗണ്ടറി അടിച്ചുകൊണ്ട് the experienced Riyas Kunjatho, the captain, comes on the other side. Captain sealed the deal to give a warm welcome in this evening. Lovely. That is absolutely masterful from the masterful striker Riyas, who just keeps his over towards the tail end to make the game is eventful for the team CSC Paivalige. Absolute thriller of a game. Lovely way lofted over to the fielder, over the infield. Ball rises away towards the fence, and what an effort by the fielder in the deep. It was absolutely phenomenal way the man saved some things. Magnificent scenes you are witnessing here in Mannamkuzhi. The stage is ready to set the fire of a game. 23 on card, 19 required. 24 runs. Well, they were completed 3 runs. Please players, ഗ്രൗണ്ടിനകത്തേക്ക് കയറി നിൽക്കരുത്. ദയവായി പുറകോട്ട് മാറുക. ബൗണ്ടറി ലൈനിനരികിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും പ്ലേയേഴ്സ് കാണികൾ ആരും നിൽക്കരുതെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. 18 required from 9 balls. Absolute entertainment of Andhra cricket in the opening match from B group. Coming down the track and nicely gives a space there by Karthik Kumbala, and Chambu the fielder comes and grabs it nicely, not giving anything more than one, just settle with a single. That will gives time out
allocated time is over. The signal says from the umpire. It will help a lot for the batting side to chase the dream, because one more fielder comes inside the ring. That will help a lot for the team. Falcon Fighters Kadambar. Watchfully left. It was going way outside from the gate line. Riaz bowls a wide of a delivery. The man who was just planning it away from Chammi's arc, but going outside. Lovely delivery and nicely directed over there, and Chammu the fielder comes quickly, not giving a chance for coming back. It was outstanding piece of fielding. Restricted with another single. 27 runs on card by the team. What a match it was turning out to be here in Mannamkuzhi. 7 balls of cricket, 15 required. 7 പന്തുകളിൽ 15 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. Here comes the last ball of the takes it through the onside region. First run complete. They were working for second throw to the cycle and Shafi, but no. Karthikis comes and comfortably completed a double without any trouble. That's the end of the over number 5. 29 for 2. 13 required in the final 6 balls of this thrilling encounter between Falcon Fighters Kadambar versus CSC Paivalige. 13 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. അവസാന 6 പന്തുകൾ അവശേഷിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ മത്സരം തന്നെ രണ്ടാം ദിവസത്തിൽ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്നു. മണ്ണൻകുഴിയുടെ മൈതാനത്തിന്റെ വൻതരികളെ കോരിത്തരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടുത്ത ചൂടിനെ വകവയ്ക്കാതെ ഇരു ടീമുകളും തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം ആവേശം കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നു സിരകളിൽ. 13 required. Who will bowl the last over? Gafur Koppala. Very good choice on the other side for the team CSC Paivalige to bring the last over. On the other side, Chammi Periyadika, the man, the captain, who is on strikers end. Gafur Koppala have a lot of experience here in this ground of Mannamkuzhi. Played lot of major tournaments in day-night cricket and day cricket. And Chammi Periyadika is such a star. Chammi Periyadika is just running his pinnacles of his career, having some stellar performance in Kasaragod and Karnataka. Comes it around the wicket by Gafur Koppala. Oh, that was a quick delivery from the man Gafur. Oh, it ups to the upstairs. Wide checkinu vendi third umpire lekku vidunu. Looks to be tighty just away from the leg stump. Looks to be, but it's all ups to third umpire. Very important time. The crucial decisions that giving in to the TV umpires to clarify. What a game of thriller. Riaz Ennam, who has started the fireworks with bowling. Nasaf Pachilambara, who just brings his one over in stupendous way. On the other side, we have seen some stroke from Chammi Periyadika, who just lifting the innings. റൈറ്റ് ചെക്കിന് വേണ്ടി വിടുമ്പോൾ കാർത്തിക് കുമ്പളയുടെ വിക്കറ്റ് റൺ ഔട്ടിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ന്യൂ ബാറ്റേഴ്സ്. No wide is the signal. It's a fire delivery. Important delivery for the bowling side of CSC Paivalige. Vishwa joins as a new batter. Chammi there, connection is good and just over the infield, he's looking for second, and there will be the man, he's that one fantastic way, blocked it superbly. Well, coming back for third between the wicket by the batters of Falcon Fighters Kadambar. They were fighting, they were bringing the fight. Chammi the leader, who just encouraging it.
grabs 3 runs in an important time. Moving on 31. 11 required from 4. 32 on card. Well, 10 required, beg your pardon. 4 balls remaining. 10 runs required. It's in the air. Gets some outside edge and it was landed safely. Just takes a single by the newcomer. Vishwa gives it all pressure to Chammi. The man is very well settled. Scored 14 runs by 16 runs from 14 balls by Chammi Periodica. Now 3 balls of cricket. 9 runs required. What a thriller of a game. Oh man, that's a cracker jacker and bounder out of the ground for a sixer by Chammi Periodica. Such a scud missile it was. Unbelievably well past that one over the widest long off region. കളി കണ്ട കാണികളുടെ കിളിപാറിയ ഷോട്ടുമായി ചെമ്മി പെരിയഡിക്ക മത്സരത്തിലേക്ക് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു. Time out is the call for the second time. Oh, need to stand another fielder inside the ring. Only 3 can stand outside or 3 required to win this game. It's an anchor. What an encounter of a shot that was. Absolutely a quality revealing from Chammi Periodica. 2 balls of cricket, my dears. 3 runs required for Falcon. Takes it that one nicely through the onside region. Chammi will trying for second. It will be a run out in the non-strikers end and there will be Vishwa is going back. 1 run taken, 1 wicket gone and there is 2 required in the final ball of cricket. What a thriller. What a goosebumps of cricket action you are witnessing here in a mega cricket carnival of MPL 2026. Avasana Bandham. New battery just comes but 1 mind. All goes to Chammi Periodica. All eyes on Chammi and all eyes on the other side by Gafur Koppala. Who will won the battle? 22 ലക്ഷം രൂപ പ്രൈസ് മണി ഫൈനലിസ്റ്റുകൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ ഓരോ മത്സരത്തിലെ വിജയം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു വിജയം നിർണ്ണയിക്കുന്ന വിജയ പരാജയം നിർണ്ണയിക്കുന്ന അവസാന പന്തിലേക്ക് 1 ball 2 runs. Here comes a ball from Gafur Koppala. Chammi Periodica on strike. Nicely watched it through the onside region. First one completed and looking for second throw to the non-strikers and it will be out and the game is tight. Scores are level. What a way to conclude this match. ഒരു ഭാഗത്തേക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്ന് ശക്തമായി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മത്സരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് CSE പൈവളികയും ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് കടമ്പാറും. What a fight by Chammi Periodica. What a visual treat of batting he just showcased. Incredible fighting ability that brings a game with 1 point for both teams. Congratulations. Yes, we have Irshad Manjeshwar as a guest for this evening and I welcome Irshad to the presentation podium to give away the Player of the Match award. And a thrilling game of cricket we have witnessed between Falcon Fighters versus CSE Paiwaliga. And now the time to announce the Player of the Match. It goes to Chammi Periodica.
അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടീമുകൾ ടീം മീറ്റിംഗിലാണ്. സോ we reduce a little bit sound when announcing the player of the match award. ആവേശകരമായ മത്സരത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ രണ്ട് ടീമുകളും പോയിന്റ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് വിടുമ്പോൾ മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് കടമ്പാറിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ചെമ്മി പെരിയഡക്ക. Come and receive the player of the match award. What a performance by Chemmi. We have witnessed a thrilling, thundering and towering sixer from Chemmi Periodica. That gives a match for the team. From nowhere, from everywhere, the man created a history here in Mannamkuzhi, receiving the player of the match award for Falcon Fighters Kadambar. Congratulations CSC Paivalige and congratulations Falcon Fighters Kadambar. And many congratulations Chemmi Periodica, the man of the match award winner, and thank you very much Irshad Mancheshwar. That's it from the match number 1 of the day number 2. And moving to the match number 2, it's a time to change in the voice. Welcome for the day number 2 Pritham Kumbala. അതിനിടെ ഒരു ATM കാർഡ് കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയെങ്കിലും ATM കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമന്ററി ബോക്സിൽ എത്തുക. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്, മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാന വേദിക്ക് മുൻപിലായി പ്ലേയേഴ്സിന്റെ ഡഗൌട്ടിന് മുൻപിലായി യാതൊരു കാരണവശാലും കാണികളോ കളിക്കാരോ വന്നു നിൽക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അത് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് റൂൾസ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പാലിച്ച് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് നല്ല നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കണമെന്ന് സവിനയം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. Yes, a very good evening, all of you gathered here in this particular tournament of 2026, that is MPL Season 10. Thank you, Mr. Tommy Michael, as well as thank you, Mr. Abdurrahman Jibikur. We have enjoyed a lot in this first match between those teams. What a tremendous match comes to the end in front of us. We definitely enjoyed the particular match number 1 of day number 2. This is what a beautiful match comes to the end over here. CSC PYK versus Falcon Fighters Kadambar have fighted very perfectly throughout the match, and the match got a tie and equal point, which will be sharing by each team over here in this particular match number 1 here. What a good start, what a good start by the MPL Season 2 Season 10's second day match over here. First match we completed, moving towards the second match of day number 2. That is match between Royal Fence Prachampara. He was the first over the hands of the bowler Mr. Jackie, all the way from Mangalore. The trump card icon player from the side of High Flyers Dubai. The fight match between those teams, the second high voltage match we are going to witness in this particular MPL Season 10 over here in this particular mini stadium of Mannamkuzhi. The crowd are gathering in this particular tournament to watch and enjoy. Very nicely delivered over here. Our first delivery itself straight away to the pads of the bat over here. There is no chance of running between the wicket for the batter here. Meanwhile, dotted delivery from the hands. What a start from the hands of Jackie here once again for the batter here. Nicely driven towards this fine leg reach and taken. There is a chance for boundary force from the hands of Musa here. Nizam. What a good start, what a thrilling start from the hands of Nizam for Team Black, Team Friends Patslampara in this second match of Season 10. A beautiful start from the hands of Nizam. Nicely flicked the delivery to the fine leg region, having taken comfortable full boundary here. 4 more addition to the scorecard. Slightly moving towards
4 on the board right now. To delivery for Nizam, nicely driven to the onside region, deep region fielder. Will Fox fix it perfectly and gone for a couple of runs. This time completed couple of runs. Very good running between the wickets. We can see from both batter, that is Musa as well as Nizam. Very good running between the wickets. That's what needing this perfection, needing such a situation like over number 1, because they have to score very good score in the initial over. Jackie once again for Nizam, nicely driven to the deeper square like region. Meanwhile, fielder rushing towards the ball. There we can see there is a chance, one more chance for the bowlers, and meanwhile very good running between the wicket. We can see from the batter here. Once again, a couple of runs adding to the scorecard. 2 more addition to the scorecard. Scorecard slightly moving towards 8 on the board. Second match is on progress between those teams. What a good start! What a good start from the both ends, bowler as well as batsman. And once again nicely driven to the final leg region. Fielders a very good footwork over there in the middle, and meanwhile one more couple of runs adding to the scorecard. That is what very good understanding between the batter over here, that is Nizam as well as Musa, doing perfect job in this particular over number 1 for the side of Friends Patslampara. Definitely they have to score very good total for the against him. This time lofted nicely and up in the air. Rushing towards the ball, and this time one bounce. I guess we have to check for the decision here. 1 bounce bound. Yes, what a hit! What a magnificent hit from the hands of. Yes, call is 6 here. The first 6 from the blade of Nizam here for Friends Patslampara. Have a look at the connection. Have a look at the connection towards the deeper onside region over the fence for the maximum. Beautiful flick from the bat by Nizam here for the side of Royal Friends Patslampara. Score is jumping through 16 on the board after completion of over number 1. Yes, completed over number 1. 15 on the board after completion of over number 1. This is what very good start, tremendous start from the side of Nizam for team Royal Friends Patslampara. Definitely the wind is moving towards the Lakshya region, that which helped for the batter to go for big shots and get a very good scorecard in the particular match between those teams. Yes, a very good start have been seen in the second match of this particular day number 2 here, and definitely we enjoyed the stroke we have been placed toward the deep onside region from the side of Nizam for Royal Friends Patslampara. This time captain brings the new man Tatsi Musori in the bowling marker, taking the guard of right and over the stumps for Musa Patan. Yes, the first time Musa facing Tatsi Musori, the one of the top class batting batter from the side of Royal Friends Patslampara. That is Musa. This time full toss. It is away from the leg stump, and first extra in the form of wide from the side of Tatsi Musori. That definitely is going to help in this particular condition of situation like 16 on the board. Just completed 1 over and 5 more overs are left in this particular to wind up this particular innings number 1. Definitely very good start we can see from the side of batting mark, that is Royal Friends Patslampara. Those batters definitely having very good talent, very good experience in the particular untramped cricket over here. That is what they are doing in this particular second over number 2. Yes, Tatsi once again taking the guard of right and over the stamps for Musa Padana, pitching to delivery to the earth and facing to Musa Padana this time. Very good stroke from the hands of Musa. Slightly driven towards the deep fine right region, and the fielder rushing over there. Meanwhile, cross couple of runs. Call for 3rd run and satisfied with couple of runs. Very good running between the wickets. We can see from the both the batsmen, and meanwhile very good collection in the deep fine leg region have been collected comfortably and given right towards the wicket keeper. There is only left for the batter to go for couple of runs and collected 2 couple of runs over here. Once again touchy to Musa Padan. This time a very good delivery. Meanwhile hit it nicely towards the fine leg, but the field strikes over there and cross the signal more addition to the scorecard. A very good start from the side of the team Musori. We can see in the particular over number 2nd of this particular innings number 1. Definitely Musa Patana, Nizam are doing well for the batting side like Friends Patslampara. They have to go for a big shot to reach a good total target of a very good number of target to the against team like team
high flyers here. Very good stroke. Very nicely played by the batter here. Nizam just rotating the strikes and giving the strike for Musa Patani, because both are having that very good caliber. Both are having that very good experience and very good power in themselves. They can blast. They can go any time of the fraction of seconds, go for big shots over here. Tachi Musodi once again for Musa Patani. Nicely demand. There is no soft caller. And meanwhile, very good stop in the fine like a fielder. Meanwhile, with single more addition to the scorecard here. One more addition, scorecard 22 on the board. We are in the second over. Second over is in progress. Tachi Musodi have come back very goodly, very perfectly for their team, like team High Flyers Dubai here. Once again, Tachi Musodi taking the guard of riding over the stamps for Nizam. This time going for big shot. There is no connection at all with the bat and ball from the end of Nizam here. Completely dotted one, completely beaten by the batter here. That is what very good comeback from the bowler. Tachi Musodi is doing very perfect job in the second over for a team like High Flyers Dubai. What a good start from the hands of Tachi Musodi. We can see a very good start in the beginning of a second over. Once again, Tachi to Nizam. Look at the drive. Look at the cover drive towards the covers region, and here one more boundary from the hands of Nizam. Have a look at the pickup. Of that short particular drive towards the covers region and collected 4 runs in the form of boundary. That is what a very classical touch from the hands of Nizam for the team like team Friends Pachalampara. After completion of over number second, the scorecard is 26 on the board. There is no damage at all from the side of Royal Friends Pachalampara. Very good start from the hands of Nizam as well as Musa Patan. The openers from the side of Friends Pachalampara doing very perfect job in the first initial 2 overs have been completed, and they have gained 26 runs of scorecard over here. Very good perfection in the batting mark. We can see from both the batters who is working for their team, who is working hard for their team to get a very good total target of nice numbers of score here. Yes, I have a good with the third over here. New man introducing in the bowling mark. The captain brings back same man, the Jackie. Once again, comes into the attack for over number 3 here, because the icon man from the side of High Flyers, the captain knows that icon man, the Jackie, can do very perfection with the bowling marker. So once again, the captain brings back Jackie over here to spell over number 3, and second over from the Jackie side over here. Once again, looking for the big shot. Nicely driven to the deeper onside region and taken a comfortable single run. Very good collection from the deep region. Fielder fixed perfectly, just left one single run to move across the wickets over here in this particular delivery. Yes, Jackie once again for Nizam. Nizam is on fire right now in the side of Friends Pachalampara, going for the big shot, slightly edge to the bat, meanwhile crossing single. There is an answer for a couple of runs, and this time is understanding between the wickets here, and suicidal one. This is one called as suicidal of Royal Friends Pachalampara. We have seen the Nizam lofted nicely over the fence for the maximum as well as boundaries for his team in this initial 2 overs, but meanwhile there is quite misunderstanding between each other. That is Musa as well as Nizam, and Nizam gave wicket for Jackie here. That is what I have been mentioning in the beginning of second, third over. Captains bring back Jackie over here, because captain's having that confidence on Jackie. He can do some good spell in the over number 3. That is what he have proved in this particular over number 3 here. Once again, a big wicket, a big loss for the team like team Friends Pachalampara. The big man walks back to the dugout here. A very good breakthrough we can see from both the batsmen here. Nicely played towards the onside region, and very good collection from the deep region fielder. Very perfect throw towards the bowlers, and meanwhile a single more addition to the score. A very good start from the
the side of Friends Pachalampara. Meanwhile, we have lost one wicket. That is a big man walks back to the big out. That is Nizam from the side of Friends Pachalampara. This is a big appeal this time. And once again, finger raising, finger across from the main umpire. Saifuddin is doing a clear job over there as main umpiring. Have a look at the fraction of seconds. Decision making is very important for the main umpire in such a condition of the sunny day. It is quite difficult for the umpire to take a particular decision in such a situation like this type of match. This is an high voltage match between those teams. One more big man walking back to the dugout. That was Sangari walking back to the dugout. What a disappointment for Friends Pachalampara. They have started very perfectly in this particular second over when completed 26 on the board. Right now just 3 runs have been came in this particular over number 3 and have been collected 2 valuable wickets of big mans. Now 2 big fish on the net right now sitting in the dugout, and definitely that is what Jackie is doing over here in this particular over number 3. As I mentioned in the beginning of this third over, definitely that confidence which is the captain from Jackie, he is doing perfectly his job over here in this particular over number 3. Once again, Jackie to the newcomer Firoz introduced, and first once again one more extra added to the scorecard here. Scorecard is 30 on the board. The third over is in progress. Nicely flick the delivery to the fine leg region and taken comfortable single, going for the couple of runs. There is a chance for the couple, and meanwhile satisfied with single here. Very good collection by the deep fine leg fielder. Just left one single run. 31 on the board. Last one more delivery left in this particular third over. Yes, a very good fine delivery from the hands of Jackie here. This fine over comes to an end over here. Over number 3 we are going to complete. Scorecard is 31 on the board. Loss of 2 wickets. One and a over comes to an end here. Third over, tremendous one, brilliant one. What an sticks, what a line lands towards the sticks was perfectly placed by the bowler. Mr. Jackie here completed 2 overs and have taken valuable 2 wickets in this particular third over. That is what a change in bowling mark. We have seen the performance of informed player Jackie Shakira did perfect job for his team, like team High Flyers Dubai. Definitely the owners as well as managers are definitely appreciating Jackie for his valuable bowling performance in this particular third over, that which they have tackled all the batters, that is the main batters from the side of Friends Pachalampara. That was Sangari as well as Nizam walking back to the dugout, and they are right now in the sitting mode of dugout. That is what the big damage for the side of Friends Pachalampara. They have started very perfectly, and they have scored 26 runs when after completion of a second over here. The new man Isham into the marker with the bowling over here for Fighters, taking the guard of right and round the wicket for Fighters. What an artillery from the hangman. Have a look at that. Direct towards the wooden sticks. Wooden sticks are fallen right now. Oh, what a magnificent man. You are beauty, naughty boy. Small guy, you are doing fabulous work over here in this particular biggest tournament of Antram cricket. That is what MPL season 10. You have definitely a great future. First delivery, fourth wicket. Have a look at the power delivery, rocketing speed, lightning speed of that delivery, straight away hitting to the wooden sticks. Wooden sticks have been floated like anything. That is what a brilliant bowling performance we can see from Isham. First wicket of over number 4 here for Isham, the small guy, all the way from the side of High Flyers Dubai. That is what the captain, he's making some strategical work over here, putting right bowlers in such kind of situation, making tight for the batter here,
tackling completely for the batters. There is here we can see the wickets have been falling in the regular intervals. That is what the bowling performance we can see from high flyers Dubai. What is the start of fourth over from the side of Isham here. The scorecard just stacked towards 31 on the board. Once again taking the guard of right and round the wicket. Isham to the new man here. Abi Bantiora, BC Road, yes, slightly flick the delivery to the final region and taken a comfortable single. Yes, one more side we have Musa Patan, the dangerous man from the side of Friends Pachalampara, the dangerous man behind of Friends Pachalampara, that is the big name Musa Patana. Yes, facing young man Isham have been praised two beautiful deliveries and have taken one wicket as well as one single run left by within his two deliveries here. Facing a big man Isham, the short guy towards the big man. We are in the fourth over. Fourth over is in progress. പുതിയൊരു ബലനോ കുറച്ചുകൂടി സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പുതിയ ബലനോ കുറച്ചുകൂടി സൈഡിലോട്ടായി പാർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Yes, a nice delivery, nice delivery. Have a look at the line and land towards the six was perfectly placed by the bowler Isham, the young man. What a beautiful consistency with that delivery towards the wicket keeper's hand. Beautiful placement of that delivery from the hands of Isham here. Musa Patan, the trump card, the tall man. Yes, the strongest person of Friends Pachalampara and batsman failed in front of Isham right now. Yes, once again spelling fourth delivery of fourth over. Isham taking the guard of right and round the wicket for Musa Patan. Very nicely played. There is a chance of that. And meanwhile, crossing the head of fielder and go for the square leg region. Meanwhile, taken completed a couple of runs here. Two more addition to the scorecard here. Two more addition to the scorecard. 34 on the board. We are in the fourth over. What a comeback from the bat bowling side. That is high flyers Dubai. Beautiful comeback. Beautiful comeback. Isham is doing perfect job in this over number 4 for his team. It's working perfectly in the bowling mark here. Once again for Musa Padana from Isham. Nicely done. There is a fielder fixed very well in the point region. And there is no chance of running between the wicket. We can see from the batters. Nicely delivered towards the mid-wicket region. Fielder fixed perfectly. What a collection. What a throw towards the bowler. That is what tactics. That is what strategy. That is what mind work. Unity between the fielders. What here mixed in this particular tournament. In this particular match between those teams. So once again, very nice delivery. Very nice delivery. Kamston and Isham. You beauty, man. Definitely you beauty. Naughty boy. What now? Innings. What now? Over comes to the end of over number 4 comes to the end after closing over number 4. The scorecard is 34 on the board. Loss of 3 wicket. Very good comeback. Very good comeback from the bowlers Marco here. High flyers definitely enjoying this particular match between those teams. Have a look at the scorecard. Have a look at the scorecard. After completion of second over, the scorecard was 26 on the board. Now have a look at the scorecard. After completion of fourth over, the scorecard is 34 on the board. Just 8 runs have been came from 2 overs here. What a comeback. What a comeback from the bowlers and from the side of high flyers Dubai here. Very good job. Bowlers are doing for their team. The new man, the captain brings the new man into the attack. Over number 5, Rafi with the bowling mark here. Definitely bowler have to restrict the batsman to go for big shots and boundaries over here. Then only the fielding side having that ability and advantages to get the victory against such team here. Rafi with the bowling marker taking the guard off right and round the wicket from umpires, and nicely flick, nicely delivery, nicely flicks from the hands of a batter here. Abi BC Road flick the delivery, taken comfortable single here. One more addition to the scorecard. Yes, definitely wind is flowing towards square leg region, definitely having that advantages for the batter to go for big shot in the region of leg side, because definitely wind will take ball away
out of the ground over here. Now once again, Musa Patan facing Rafi. The second delivery of fifth over to Musa here, looking for the big shot. A powerful shot towards the deep onside region. What a good terrifying stroke from the hands of Musa Patan. Meanwhile, the terrifying fielding in the deeper region. Very perfection with ball, and bat is working better and better. That is what we are watching in this particular match between those teams. As I told in the beginning of this particular innings, this is a high voltage match between those teams. Once again, Rafi taking the guard off right and round the wicket for Musa Patan here. Yes, Abhi this time a very good delivery. There is no connection at all. Meanwhile, slightly mistake from wicket keeper here, and directly hit towards the pad of the batsman and went for the single region. One more in the form of leg by here. One more addition. 37 on the board of fifth over is in progress. 3 deliveries we have completed. 3 more delivery left in this particular over number 5. Very good bowling performance we can see from High Flyers Dubai. This is what a very good comeback from the bowling market. The bowling department works perfectly for a team like High Flyers Dubai here. Once again, Rafi to Musa Patan. This time taking the guard for right and round the wicket for Musa Patan. Musa Patan is on aggressive mode right now. Have a look at the position of Musa. This time lofted over the fence for the maximum. Have a look at the connection from Musa Patan. Have mentioned that. Have a look at the aggressiveness. Have a look at the position. Is fixed in the batting mark. That is Musa Patan, dangerous man behind Royal Friends Pachalampare. That is what mentioning all about Musa Patan here. Nicely lofted over the fence for the maximum. 6 more run addition to the scorecard. What a brilliant hit, Musa Patan. You are beauty, man. Dangerous man behind our friends Pachalampara, Musa Patan. Have a look at the terrifying stroke from the hands of Musa here. Once again, Rafi to Musa this time. Rafi to Musa, right in front of the wicket. Very good delivery, straight away drive to the long off-side region and taken comfortable single here. That is what a very good, phenomenal batting performance we can see from Musa Patan after hitting a one maximum towards the deep onside region and taking soon after that taking single and rotating the strike. That is what a very good classical touch of batting here we can see from Musa Patan for French Pachalampara. The scorecard is jumping towards 44 on the board. Much needed maximum from the hands of Musa here for Royal French Pachalampara. Once again, Rafi spelling the last delivery of 5th over here, taking the guard right over the right and round the stamps for Abi BC Road. Yes, whether we'll see whether Abi will go for maximum here. Going for big shot. There is no chance of getting a wicket and goes for Abstays. Yes, have a look at the umpire is showing that going for Abstays for the better decision over here in this last delivery of final for 5th over. Very good batting performance from Musa Patan we have seen in this particular over number C. As I mentioned, definitely dangerous man behind the French Pachalampara. That is one and only Musa Patan. In the last MPL season 9 have seen his batting performance. Last 1 to go, 6 to get. That was the equation in the last MPL season 9. He have lofted over the fence for the maximum, and that match was won by Musa Patan's team. Definitely he is that aggressive man in the batting mark. That is what he is showing in this particular MPL season 10. Definitely we are enjoying a lot. We have seen first match of day number 2. What a terrifying match comes to the end with the tie, and this is another one high voltage match between those teams. That is French Pachalampara takes High Flyers Dubai. Waiting for the umpire decision here. Third umpire is working on that particular decision, and they have to check each and every angles, and we have to appreciate the live telecast team, live telecast crew. That is Shine Sports. Have a look at the crew members working in the top edge of the
block over there. They are giving right telecast in the live media over here. We have to appreciate for them. It is not at all easy thing to sit under the hot sun, and they are doing their best job. Yes, call is not out call from third umpire. Very good decision was made by third umpire over here. That definitely makes a very good change in the Royal Friends Patslampara here. The final over comes to the fifth over comes to, and over number 5 completed. The scorecard is 44 on the board. Loss of 3 wickets. Nasser, the new man. Captain brings Nasser into the attack in the bowling mark, going for big shot this time. There is no perfection with bat from Musa Patan here, stacking the batter very comfortably by the bowler here. Last over is in progress. Nasser over the bowling mark, taking the guard of riding over the stumps for Musa Patan. This time nicely, abs in the air, and fielder rushing towards a ball, and first wicket have been fallen now from the side of Musa Patan. Have going back to the dugout right now. The big man walking back to the dugout. What a beautiful batting performance have been showed by Musa Patan so far here. Yes, there is a time of indication from the center here. One fielder has to be come inside the 30-yard circle. Musa Patan, you can see the claps from the dugout for Musa Patan for his valuable performance for team Friends Patslampara here. That is what we have seen as maximum boundaries in this last particular previous over. This time the new man introduced from the side of Friends Patslampara, Moino with the batting mark here. Another one side we have Abhi BC Roda, Nasa with the bowling mark here. The final over is in progress. 4 more deliveries are left in this particular over number 6. The scorecard is still checked in 44. Yes, a nicely reverse sweep. Very good, nice play from ABC Road here. What a good sweep from the hands of the new man. Mono did perfect job. One more boundary for the addition here. 4 runs have been collected in the form of boundary. 44 on the board. The final over is in progress. Mono faced the first delivery, nicely stripped towards the fine leg region and taken a boundary over here. That is what a good start from the batter from the side of Friends Patslampara. Just 3 more deliveries left here. Nasser with the bowling mark, taking the guard of right and round the wicket for more here. Changing actions and nicely flicked. There is a bit of fixed well and bit of humble. Meanwhile, that Punbal makes a single more addition to the batting side over here. Nicely freaks to overdate but couldn't able to collect perfectly that delivery. Meanwhile, batters crossed single more run. 1 more addition to this scorecard here. 49 on the board after completion of 4 delivery. 2 more deliveries are left in this particular over number 6 here. Definitely it is a chance for the batting mark here. The timeout indication already we have got, and one fielder into the 30-yard cycle. That definitely makes a big change for the batting mark here. There is no connection, and meanwhile rushed for the run here. 1 more addition and in the form of like by the 1 more addition and the scorecard slightly moving towards 50 on the board. Last delivery of final over. Nasser with the bowling marker to Mono here. Nasser to Mono. Mono already lofted 1 boundary for his team. And nice late one this time. Same thing happening. Meanwhile, a very good collection going for the couple of runs completed. There is a call for an out, and fingerized from Mr. Saif here. 1 more blow. Mono whacks back to the dugout. What a tremendous innings comes in, and brilliant batting as well as brilliant bowling, brilliant fielding performance we have witnessed in this particular match between Friends Patslampara versus High Flyers Dubai. Definitely the second day of MPL.
जो बिच्छू बॉयज ने पेश किए गए थे प्रतियोगिता में, जो विनर्स बने थे इसी मैदान में, सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट थे, मैं भी शामिल थे उस टीम में, या शामिल होने में मौका मिले थे। धन्यवाद देना चाहता हूँ हाई फ्लैश के उस टीम के मालकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखिए हाई फ्लैश को यहाँ पर, हाई फ्लैश के सामने 52 रन के दरकार रखे हैं, 52 इज द विक्ट्री टारगेट, 52 रन के लक्ष्य रखे हैं रॉयल फ्रेंड्स पचलंबारा। पिछले साल के हीरो हैं रॉयल फ्रेंड्स पचलंबारा, एमपीएल सीजन 10वीं की विनर्स बने थे रॉयल फ्रेंड्स। यहाँ पर 52 पहली मैच खेल रही है दोनों टीमों ने। അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു, ശ്രദ്ധിക്കുക। YFC കണ്ണൂർ ഗുഡ് ലക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ്. That's a white ball. अजान के ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत करना चाहता हूं। देखिए पहली 3 गेंद में 13 रन बने थे और उसके बाद से कितने शानदार ऑप्शन आए हैं। विकी आखिरी गेंदे बचे हैं, तब स्ट्राइक पर तच्ची मुसोरी सबसे खतरनाक खिलाड़ियों से एक है। जाकिर नाम के जाकिर ने शुरुआती किए थे, छक्के चौके लगाकर शुरुआती तो बहुत महत्वपूर्ण शुरुआती दिए यहाँ पर। अब आखिरी गेंद लेकर बायर कई कम बरोडेंसी नौजवान खिलाड़ी आज गेंद अबील और इसी के साथ तच्ची मुसोरी आउट। हाई फ्लैश के लिए पहली झटका, बहुत बड़े मछली अपनी जाल में फंस गई हैं। 3 गेंदे सामना किए, 0 पर आउट होकर पब्लिक को पास जा रही है। देखिए कितनी बड़े विकेट, 13 रन पर पहली विकेट के पतन हुए हैं। 39 रिकॉर्ड आउट ऑफ 30 डिलीवरी। 30 गेंदे बचे हैं
39 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। शानदार एमपीएल 10वें सीजन आप देख रही हैं यूट्यूब के जरिए शाइन स्पोर्ट्स पुत्तूर के नाम पर देखने वाले सभी दर्शकों को स्वागत करना चाहता हूं। और इस यूट्यूब के जरिए देखने वाले सभी लोगों से विनती है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस चैनल को। बहुत बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता में योगदान दे रहे हैं। कल के दिन शुरुआत हुई है एमपीएल सीजन 10वीं सेलेक्टेड मन्नमकुझी शानदार क्रिकेट प्रतियोगिता है। अंडरआर्म क्रिकेट के हिस्ट्री में पहली बार 15 लाख और 7 लाख विनर्स और रनर्स को दिया जा रही है और 2 स्कूटी और एलईडी टीवी और होम थिएटर सोने के सारे पुरस्कार यहां पर दिया जा रहे हैं। बहुत बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता खड़े किए हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं हनीफ उमंगा को। अब दूसरी ओवर के रूप में गेंदबाज में बदलावन लाए हैं मोइनू पछलंबारा। उनको योगदान मिले हैं। हर बड़े बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता में इनके हस्ताक्षर होती है लंबे खिलाड़ी रोहित पछलंबारा की। पहली गेंद रक्षात्मक तरीके के साथ व्हाट ए शॉट, देखिए कितनी शानदार कॉपीराइट बैटिंग यहां पर क्लासिकल कितनी शानदार खेलते हैं जाकी, शानदार बल्लेबाजी करते हुए। रनों की संख्या बढ़ते हुए 15। आने वाली मैच के लिए तैयारी हो चुके हैं YFC कन्नूर गुड लक फ्रेंड्स क्लब। 2 टीम तो तैयारी हो चुके हैं। लाजवाब मैच है आज के दिन में, दर्शकों के लिए इंतजार कर रही हैं। ओवर द विकेट अच्छी गेंद, देखिए कितनी शानदार शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बिल्कुल खाली जगह पर अंतिम में एक फील्डर ने आकर गेंद को रोक दिया गया है। तीसरी रन के लिए दौड़ा जा रही है। ओहो रॉबर्ट ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट, व्हाट ए रनिंग बिटवीन द विकेट। अंडरआर्म क्रिकेट में रॉबर्ट कहती है जैकी को। तीसरी रन कितने तुरंत दौड़े हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए 18 ऑन द बोर्ड, 18 रन। 52 इज द विक्ट्री टारगेट। 26 रन तो पहली इनिंग्स के 2 ओवर में बनाए थे और उसके बाद 2 ओवर में सिर्फ 8 रन। आखिरी 2 ओवर में 18 रन, कुल मिलाकर 18 नहीं जो 16 रन आखिरी 2 ओवर में। शानदार कमबैक किए थे टीम हाई फ्लैश दुबई ने गेंदबाजों ने। अब मोइनो अब अगली गेंद लेकर तैयार है। ओवर द विकेट और इस गेंद को उठा करके ला है, बिल्कुल खाली जगह, गेंद जा रही है अंतिम बाउंड्री लाइन के करीब। इस गेंद को रोक दिया गया है। तब तक रनों की संख्या बढ़ते हुए 20 रन, 2 रन पूरा कर चुके हैं। बाउंड्री चेक करना चाहते हैं अंपायर ने। तीसरी अंपायर के डिजिटल संविधान हमारे पास मौजूद हैं। तब यहां पर अंपायर ने कहा कि चेक कीजिए रनों की संख्या कुल मिलाकर। इस गेंद के जो फैसला नहीं आए कितने रन है ये तो देखना ही होगा। बिल्कुल अच्छी नजारा है। आई फ्लैश और रॉयल फ्रेंड्स पछलंबारा 2 टीम के बीच में मुकाबला हो रही है। दोनों एक से बढ़कर एक टीम है और सिर्फ 2 रन मिल जाएंगी। बहुत अच्छी फील्डिंग, तारीफ करना होगा, तालियों से सपोर्ट कीजिए उनको, क्योंकि चौके को 2 रन बचा लिया गया है, 2 रन बना दिया गया है। बिल्कुल अच्छी नजारा थे उस शानदार प्रदर्शन फील्डर की। 20 रन 3 गेंदें फेंक चुके हैं मोइनू पछलंबारा। 3 गेंदों में 7 रन कर चुकी है। फिर एक बार तैयार मोइनू पछलंबारा दुर्बाली चोट से ओवर द विकेट हिंदुस्तानी स्कूल एंड से नासर के लिए। और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेलना चाहते थे, अंतिम क्षण में छोड़ दिए। तो अंपायर ने कहा कि वाइड है और इस वाइड की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर 21, 31 रिक्वायर्ड। सिर्फ 3 गेंदें फेंक चुके हैं, 27 गेंद उसी तरह बचे हैं।
अब अगली गेंद मोइनो पच्ची लंबारा जमीन पर टपकाने के बाद लंबे कदमों के इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तानी स्कूलन से ओवर द विकेट, और इस गेंद को उठा करके ला बिल्कुल खाली जगह पर फिर एक बार, लेकिन फील्डर मौजूद थी वहां पर, और इसी के साथ विकेट पतन हुए हैं। दूसरी विकेट नासिर के रूप में यहां पर दूसरी विकेट पतन होते ही, शुरुआत तो बहुत अच्छे दिए हैं, लाजवाब शुरुआती दिए यहां पर जाकी ने। आने वाली मैच भी जबरदस्त मैच, गुड लक पुसूट और YFC कन्नूर लोग इंतजार कर रही है उस मैच के भी, हाई फ्लैश के और रॉयल फ्रेंड्स के बीच में मैच के लिए इंतजार कर रही थी। उस मैच पहली इनिंग्स दूसरी इनिंग्स के दूसरी ओवर जारी है, और भी मैच आने वाली मैच, सभी मैच चकाचक मैच यहां पर। फहद मच्छम्बाड़ी नए योगदान है, जाकी जाकर उनके साथ जाकर कुछ निर्देश दिए, वापस अपनी अपनी जगह पर जाते हुए 4 गेंदे फेंक चुके हैं, 10 गेंदे फेंक चुके हैं कुल मिलाकर। टोटल स्कोर इज 21 ऑन द बोर्ड, 21 रन। बिल्कुल अच्छी शुरुआतें मिली हैं। पहली इनिंग्स में 26 थे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर, 26 रन थे। अब तो 2 गेंदे बचे हैं, 21। अब अगली गेंद मोइनो ओवर द विकेट, उल्टा बल्ले में खेला गया है, गेंद तो जा रही है थर्डमैन इलाके पर, फील्डर मौजूद है, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाया, तब तक 1 रन, और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 22 ऑन द बोर्ड। और स्ट्राइक पर आ चुके हैं जाकी। जाकी तो काफी फॉर्म पर बल्लेबाजी कर रही हैं, दूर वाली छो से लंबे कदमों के सहारा लेकर। मोइनो अच्छी गेंद उठा करके ला है, लॉन्ग ऑन की तरफ जगह बनाए, गेंद तो तेज रफ्तारी से गए, लेकिन फील्डिंग लाजवाब फील्डिंग, वाह भाई वाह, व्हाट ए स्टॉप। तौसीफ पच्ची लंबारा, हमेशा इस खिलाड़ी के नाम सुनते रहते हैं क्योंकि उतनी चालाक है मैदान पर, बिजी खिलाड़ी कहते हैं इनको, तौसीफ को। 2 रन, और इस 2 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 24 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर, 28 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 24 डिलीवरी। 24 गेंदों पर 28 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। जो पिछले मैच आपने देखे हैं, पहली मैच से आज के दिन के 42 सिर्फ लो स्कोरिंग मैच थे, फिर भी जो उस मैच टाई पर समाप्त हुए थे, एक एक अंक बांट लिया गए थे। CSC पैबली का और फाल्कन फाइटर्स केडम्बार के बीच में मैच हुए थे, दोनों टीम एक एक अंक बांटकर बी पूल को चमत्कारी बनाए। अब तो तैयार है तीसरी ओवर के रूप में, नए गेंदबाज के योगदान दिख रही है। विकी के आगमन हुए हैं, अपनी खोटे की दूसरी ओवर कंटिन्यू जारी रखने के लिए मौका मिले हैं। मात्र एक खिलाड़ी को मौका मिलती है 6 ओवर की इनिंग्स में 2 ओवर फेंकने के लिए, मात्र एक खिलाड़ी को मौका मिलती है। इस मौका बिल्कुल छोटे खिलाड़ी को दिया गया है कप्तान ने। कप्तान मालक उनके विश्वास के ऊपर खड़े होकर दूसरी ओवर, और इस गेंद को खेला गया है वाइड मिड विकेट पर गेंद गई, मिड विकेट पर गेंद गई। तब तक फैरूज थे वहां पर, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाए, औपा दिए, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए क्वार्टर सेंचुरी पर पहुंच चुके हैं 25 रन, 25। फिर एक बार तैयार है, लंबे कदमों के साथ जमीन पर टपकाने के बाद हल्के हल्के टपका रही है बायर के कमर ओडेन से। लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट, हवा पर गेंद है, लेकिन फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि काफी लंबे खड़े हुए थे। दूसरे विकेट दौड़ा जा रही है, ओहो रॉबर्ट, फिर एक बार देखिए कितनी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। फहद मच्छम्बाड़ी के साथ मिलकर इन्होंने आसानी के साथ इस 2 रन पूरा किए। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर 27 ऑन द बोर्ड, 27 रन, 25 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 22 डिलीवरी। 22 गेंदों पर 25 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। विकी सुरम्बाल लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट, दूरवाली छो से तैयार है अपनी ओवर की तीसरी गेंद, और अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, व्हाट ए कमबैक। देखिए कितने छोटे लड़के हैं, बिल्कुल अच्छी योगदान देते हुए रॉयल फ्रेंड्स पश्चिम लंबारा के लिए शानदार गेंदबाजी की मजारा करते हुए। विकी जाकी अब तक मौजूद हैं, अभी भी मौजूद है, तीसरी ओवर को सामना कर रही है। जाकिर नाम के जाकी सामना करने के लिए तैयार है चौथी बार।
उल्टा बल्ले में खेलने के प्रयास, फिर एक बार उछाल के साथ इस गेंद अंतिम क्षण पर उछाल के साथ विकेट कीपर की तरफ गए थे। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, अच्छी गेंदबाजी की मजारा की है। आखिरी 2 गेंद में देखिए कोई रन नहीं है। कुल मिलाकर इस ओवर में 3 रन कर चुके हैं, 4 गेंदें फेंक चुके हैं। फिर एक बार तैयार है। लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट, विकी टू जैकी, छोटे कदमों के साथ बायर कई कंबर ओडन से अच्छी गेंद, बल्ले की पारी सा लगे हैं विकेट कीपर से, मेरे ख्याल में बाल बच गई है। विकी कह रहे कि भैया कैच थे, वो भी बड़े मछली, अगर मिल जाए तब आज के दिन काफी है, क्योंकि इस मछली की इंतजार कर रही थी। विकेट कीपर के हाथ से बॉल तो जरूर हुए हैं मेरे ख्याल में। 5 गेंदें फेंक चुके हैं, 5 गेंद में सिर्फ 3 रन अपनी खोटे की दूसरी ओवर देखी है। चमत्कारी गेंदबाजी करते हुए विकी दूर वाली चौक से लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, जैकी के लिए आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार है। जैकी भी तैयार है, लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी। अपील तो जा रही है, लेकिन अंपायर ने जिस अपील को इंकार की है, गेंदबाज तो कोई ज्यादा आत्मविश्वास नहीं दिखाए थे, लेकिन फील्डर्स और विकेट कीपर ने अपील के पीछे गए थे। तब तक 1 रन, बहुत खूबसूरत ओवर, 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 3 रन और कोई विकेट नहीं। लाजवाब पारी है, लाजवाब कोटे हैं। कुल मिलाकर 2 ओवर 16 रन 1 विकेट। विकी तो बहुत अच्छी शुरुआती दिया गया है। पहली 3 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या अभी भी टोटल स्कोर इस 24 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 18 डिलीवरी। विकी के ओवर की शुरुआती हो रही थी तब 3 के अंतर थे, डिस्टेंस तो गेंद और अंक के बीच में 3 थे, अब तो 5 बन गए, 6 बन गई है, क्षमा कीजिए। 24 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 18 डिलीवरी। अब नए गेंदबाज की योगदान दिख रही है, नए योगदान तो कप्तान की योगदान दिख रही है, दाऊद वसंगाड़ी। पिछले साल में भी सीजन 9 में विनर्स बने थे, तब विनर्स बन गई थी तब भी जो दाऊद वसंगाड़ी कप्तान थे। फैरूज पचलंबारा शामिल थे टीम में, लेकिन इस साल में आइकॉन ज्यादा आए हैं। इरफान मंजीशर विकेट कीपर के रूप में खड़े हैं, दाऊद वसंगाड़ी गेंदबाज है, स्ट्राइक पर जाकी है, नॉट टेकन पर फाद मचंबारी। 18 टू गो, 24 टू गेट। 18 गेंद में 24 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। हिंदुस्तानी स्कूल से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए दाऊद वसंगाड़ी तैयार है, स्ट्राइक पर जाकी रानी जाकी तैयार है। दाऊद अपनी शैली में हिंदुस्तानी स्कूल से और रक्षात्मक तरीके के साथ इस गेंद को खेला गया है। मिड ऑफ सर्कल में फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को खेदार किए, तब तक वापस दिए 1 ही रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 23 रिकॉर्ड आउट ऑफ 17 डिलीवरी। बस एक शॉट दुनिया बदल सकते हैं, बड़े एक शॉट आ जाए तब यहां पर 1 ओवर और भी बायर के कंबर ओडन से गेंदबाज आने वाले हैं, उसी की इंतजार सचमुच करते ही होंगे मेरे ख्याल में। अब अगली गेंद दाऊद, अच्छी गेंद, सिप शॉट के लिए है, 1 रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन और 2 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 31 ऑन द बोर्ड, 21 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 16 डिलीवरी। 16 गेंदे बचे हैं, 21 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। शानदार नजारा है, शाम होते जा रही है, आज के दिन के दूसरी मैच ठीक समय पर आज के दिन मैच शुरुआत हुए हैं। मेरे बगल में बैठे हैं मैनुअल स्कोरिंग बोर्ड पर बाती अच्चन फ्रेंड्स हिदायत नगर के काफी अच्छे ऑलराउंडर, इस एमपीएल सीजन 10वीं में नहीं खेल रही है, ऑफिशियल बने हैं। और इसी तरह महरूफ डिजिटल स्कोरिंग संविधान पर हमारे साथ मौजूद हैं, और कलील पीएम डिजिटल स्कोरिंग संविधान पर मौजूद है। शाइन स्पोर्ट्स पुत्तूर के 8 सदस्यों ने हमारे साथ मौजूद हैं, और हरीश पटेल, सैफुद्दीन पटेल, और इसी तरह हमारे साथ मौजूद है इमरान। अब अगली गेंद नौबत विकेट, उल्टा बल्ले में खेला गया है, फील्डर मौजूद है, फैरूज हल्के से चकमा का है, तब तक दूसरी रन। बड़े शॉट की तो जरूरत थी, लेकिन बल्लेबाजों ने यह इरादा है कि बड़े शॉट की रिस्की शॉट नहीं चाहते हैं, झाड़ू शॉट तो ज्यादा उपयोग करेंगे, तब सिंगल के जगह में डबल मिल जाएंगे, 3-4 बार मिल जाएंगे तो यहां पर 7 में पहुंच जाएंगे। दाऊद वसंगाड़ी
फील्डरों के ऊपर नजर लगाते हुए अपने ओवर के 34 गेंद लेकर तैयार है। 3 गेंद में 5 रन कर चुके हैं दाऊद संगाड़ी, फिर एक बार फहद मच्छम्बाड़ी के लिए दूर वाली चोट से हिंदुस्तानी स्कूलन से ओवर द विकेट खड़े खड़े जमीन पर टपकाते हैं गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर। ये तो खराब गेंद है, निराश हुए हैं विकेट कीपर, क्योंकि बिल्कुल इस ओवर शुरुआत होने में 6 अंक के ज्यादा थे, अब देखिए सिर्फ 3 पर पहुंच चुके हैं, 3 के डिस्टेंस पहुंच चुके हैं। अब अगली गेंद दूर वाली चोट से दाऊद, चौथी बार इस ओवर के 4th टाइम इन दिस ओवर। दाऊद देखिए शैली तो बहुत अच्छे लगते हैं इनके ओवर द विकेट। उल्टा बल्ले में खेलना चाहते थे, चकमा काए और इसी के साथ डॉट बॉल, इसी के इंतजार थे। एक एक डॉट बॉल भी महत्वपूर्ण है यहां पर, एक एक स्कोर भी महत्वपूर्ण है, दोनों टीम के लिए महत्वपूर्ण है यहां पर। अब अगली गेंद हाई फ्लैश के लिए फहद मच्छम्बाड़ी स्ट्राइक पर मौजूद है। और सेकंड पर जाकी अनिक जाकिर, दाऊद संगाड़ी फिर एक बार दूर वाली चोट से ओवर द विकेट। और इस गेंद को भी स्वीप शॉट के लिए है, मिड विकेट पर गेंद गई, तब तक 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 35 ऑन द बोर्ड। 17 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 13 डिलीवरी। आखिरी गेंदे बचे हैं दाऊद संगाड़ी की। 4 के डिस्टेंस यानी कि अंतर स्कोर और बॉल के बीच में आ चुके हैं। अब एक चौके की मदद चाहिए और बड़े शॉट की, वरना 2-3 डबल की जरूरत है। दाऊद संगाड़ी अब अगली गेंद जाकी के लिए गेंद फेंकना चाहते हैं और जाकी भी तैयार है और इस गेंद को ड्राइव की है, गेंद हवा पर, हो फील्डर ने कैच छोड़ दिया गया है, वो भी नंबर 1 फील्डर यहां पर कैच छोड़ दिए। तो कहावत है क्रिकेट के, कैच छोड़ो अन्य की मैच छोड़ो, ये तो क्रिकेट के भाग है, कहावत है। अब देखना होगा अगर जाकी के विकेट यहां पर पतन होते ही तब यहां पर झटका जरूर हो जाती थी, दबाव में गिर जाती थी, क्योंकि दोनों नए बल्लेबाज हो सकती थी, लेकिन जाकी क्यों यहां पर जीवन दान दिए हैं। तो उसी पच्छलंबारा के जैसे फील्डरों से गेंद नीचे गिरना बहुत कम दिखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो सूरज के किरण आंख में टकरा रही हैं, ये तो निराश भी है इससे खिलाड़ी, जो भी हो मामूली है। To go 16 to get। नए गेंदबाज के आगमन हुए हैं। निजाम, अच्छी गेंद थी, यहां पर पहली गेंद पर खेलना चाहते थे तब पैड पर खेले हैं, बल्ले पर नहीं खेले। 1 रन तो निश्चित रूप में मिले हैं। अब फहद मच्छम्बाड़ी स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 11 में 15, 11 to go 15 to get। देखिए निजाम को छुपा कर रखे थे बायर कैकम्बा रोडन से ओवर फेंकने के लिए, गेंद फेंकने के लिए निजाम आए हैं, बहुत बड़े नामदार खिलाड़ी हैं। और इस गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, वाइड के रूप में 1 रन मिले हैं। अब तो 14 रन की समस्या है, 11 गेंदे बचे हैं भैया। अब अगली गेंद दूर वाली चोट से ओवर द विकेट अंपायर को कोच करते हुए निजाम टू फहद तो ड्राइव की है, लॉन्ग ऑन पर गेंद हवा गई है, तब तक फील्डर मौजूद थे, एक ही मात्र 1 रन। और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 39 ऑन द बोर्ड। 39 रन, 13 रन की समस्या है 10 गेंद में। और इस गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले की बारी सा लगे हैं, शॉर्ट लेग पर गेंद गई, तब तक फील्डर मौजूद थे, इन्होंने गेंद को पास दिया, तब तक 40 रन पूरा हो चुके हैं। 12 रन चाहिए, गेंद बचे हैं 9 गेंदे बचे हैं। 9 to go 12 to get। फहद मच्छम्बाड़ी स्ट्राइक पर मौजूद है। अच्छी गेंद थी लेकिन विकेट कीपर ने साथ नहीं दिए, वाइड थे। ये तो अच्छी खबर नहीं सुना रही है निजाम जी, आपने टीम के मालक को डकआउट के लिए अच्छी खुशखबरी तो नहीं सुना रही है, क्योंकि 2 बार आपके हाथ से भूल हुए हैं, गलती हुए हैं। 3 रन तो एक्स्ट्रा के रूप में मिले हैं। अब अगले गेंद, जाकी ट्रैक में आ चुके हैं, ट्रैक में आ चुके हैं। रॉबिट ऑफ एंड क्रिकेट, व्हाट अ रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए हल्के से गलती, छोटे से गलती, बड़े परिणाम, 1 को 2 बना दिया गया है।
एक को 2 बना दिया यहां पर। इनको कहते हैं ये है जाकी रॉबर्ट ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट। अब अगली गेंद और फतेह गेंद निजाम और अच्छी गेंद थी, अंतिम क्षण पर इन्होंने झुके और छोड़ दिए वाइड +1। 5th टाइम इस ओवर में एक्स्ट्रा के रूप में रन मिले हैं। निजाम सबसे बड़े हथियार को छुपा कर रखे थे, 5वें ओवर के इनको लाए गए थे, तब देखिए इस ओवर में महंगी साबित हुए हैं। रनों की संख्या टोटल स्कोर इस 46, 6 रन रिक्वायर्ड। निजाम तैयार है। फाद मच्छमबाड़ी और जकी के बीच में कितनी बड़े साझेदारी दिख रही है, देखिए शानदार साझेदारी है। अब अगली गेंद ओवर द विकेट और गेंद हवा पर है, लेकिन देखिए तौसीफ आगे जाकर खड़े हुए, तब उस तौसीफ के सर के ऊपर शानदार शॉट थे। फाद मच्छमबाड़ी की संभावना इस बार 48, 4 मोर रन रिक्वायर्ड, 1 मोर बॉल टू गो। 7 गेंदे बचे हैं, 4 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। हाई फ्लाइज। अब अगली गेंद हवा पर गेंद, लेकिन 2 खिलाड़ी की बीचों बीच में, तब तक का इस ओवर की समाप्त हुए हैं। 3 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। हाई फ्लायर्स सबसे ऊपर उड़ने वाले हैं चिड़िया, और उसको कहते कि हाई फ्लायर्स, सबसे ऊंचे फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, अच्छी नाम रखे हैं। और इसी तरह रॉयल फ्रेंड्स पचिलंबारा, कहीं साल से सुनने वाली नाम है। मेरे ख्याल में जो बिल्कुल पचिलंबारा के जूनियर्स खिलाड़ी ने पहली बार योगदान दिए थे, रॉयल फ्रेंड्स पचिलंबारा नाम अंडरआर्म क्रिकेट में लाए गए थे, तब उस सीजन में 2-3 बार जो लोकल क्रिकेट में जो विनर्स बन गए थे। अगले मैच के लिए टॉस के लिए आ जाइए भैया कप्तान, लोग इंतजार कर रही थी, उस मैच आ गई है। वही FC कन्नूर, गुड लक पसोर, कैप्टन प्लीज कम। कैप्टन ऑफ गुड लक, कैप्टन ऑफ वही FC कन्नूर नजीर चिरगोली और जाबी मंजेश्वर, वाह भाई वाह। अगले मैच से पूरी तरह दुआदारी, चकाचक दोनों खिलाड़ी के ऊपर नजर लगाइए, कैमरामैन के कैमरा घुमाइए इन 2 खिलाड़ी के ऊपर। देखिए इस बार विनिंग शॉट मेरे ख्याल में यहां पर रोक दिया गया है, लेकिन कोई मौका नहीं चौके के लिए। 2 रन तो मिले हैं, उल्टा बल्ले में खेला गए थे फाद मच्छमबाड़ी ने। मैच इस लेवल, स्कोर इस लेवल। अब आखिरी रन चाहिए, वो भी फाद मच्छमबाड़ी के। ओहो हवा पर गेंद है, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थी, और इसी के साथ हाई फ्लायर्स दुबई विन द मैच। धन्यवाद देना चाहता हूं, कंग्रेचुलेशन जीतने वाली टीम हाई फ्लायर्स। थैंक यू रॉयल फ्रेंड्स। और भी मैचें बचे हैं, निराश मत हो जाइए, निराश और बिल्कुल संतुष्टि के साथ खेलना चाहिए। जो भी हो टीम, निराश से दूर रखना चाहिए और गुस्से को दूर रखना चाहिए, और बिल्कुल एंटरटेनमेंट, क्रिकेट तो एंटरटेनमेंट गेम है, और इसी के साथ चलना चाहिए। निराश के लिए कोई जगह नहीं है क्रिकेट में। आने वाली मैचों में अपनी होशियारी दिखाना चाहिए। अब देखिए नजीर चिरगोली की टीम YFC कन्नूर और जाबी की टीम गुड लक फ्रेंड्स क्लब, अंडरआर्म क्रिकेट के 2 सबसे पुराने क्लबों के बीच में लड़ाई जा रही है। काफी खुश है अजहर बिच्चू बॉयज। जाकी के लिए 1,500 रुपया, फायद के लिए कैश अवार्ड 500 रुपीज मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के उसी जगह में दिया जाएंगे। मैन ऑफ द मैच कोशिश करूं कौन देने वाले हैं। मैन ऑफ द मैच पुरस्कार വേദിയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രപരമായ ടൂർണമെന്റിന്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തിൽ ഇതാ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം, രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി YFC കണ്ണൂരിന്റെ ഉടമസ്ഥനും ടീം ഉടമസ്ഥനും അതേപോലെ അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ സന്തത സഹചാരി
YFC കണ്ണൂർ എന്ന സംഘടനയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വർഷങ്ങളോളമായി അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പണിപ്പുലയിരുന്നു കൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഹാരിസ് കണ്ണൂർ, അദ്ദേഹം നൽകുന്ന മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ റോബർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജാക്കി, അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതാണ് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച്. മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിനുള്ള 1500 രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡ്, അതേപോലെ ഫാദ് മച്ചമ്പാടിക്കുള്ള 500 രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകുന്നു. अगले मैच के लिए यहाँ पर स्वागत करना चाहता हूँ. जो आवाज़ में बदलावन लाना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है बदलावन लाना. यहाँ पर आ जाएंगे हमारे साथ मेरी मनपसंद आवाज़, प्यारी आवाज़ है. जो कासरगोड जिला के अंडराम क्रिकेट हो, केरला स्टेट के ओवरआर्म, केरला स्टेट में कहीं भी हो, कई बार उनकी आवाज़ सुनते हैं त्रिवेंद्रम से, कई बार कोटेम से, कई बार कैलिकट से, इडुक्की से, जो मल्लपुरम से कई बार उनकी आवाज़ सुने. जो भी हो, बेस्ट ऑफ लक सर. आपको मौका देना चाहता हूं इस हिस्टोरिकल टूर्नामेंट ऑफ मन्नमकुझी अंडराम क्रिकेट. मन्नमकुझी नहीं, अंडराम क्रिकेट का हिस्टोरिकल टूर्नामेंट है. अजमल जोकटे हमारे साथ आज मौजूद है. कभी भी मुस्कुराते रहते हैं, चिरिचुകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ. അതേപോലെ ഹരീഷ് പടിൽ, മോഹൻ അയ്യാടി, അതേപോലെ സൈഫുദ്ദീൻ പടിൽ നമ്മോടൊപ്പം പ്രധാന അമ്പയർമാരായി ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇവർക്കും സ്വാഗതം. വീണ്ടും ഓവർ ടു ഡാർവിൻ മൈക്കൽ. Thank you very much, Abdurrahman Bekur, for your kind words, and it means a lot. Very good evening, cricket lovers. Warm welcome to the match number 3 of the day number 2 of MPL 10, Mannamkuzhi Premier League Season 10. YFC Kannur versus Good Luck Friends Club. Both clubs, as Abdurrahman Bekur mentioned about the oldest club, lot of memories, a lot of legacies in Andaram cricket by these two clubs, YFC Kannur and Good Luck Friends. Such a wonderful established names in Andaram cricket. And this YFC Kannur have on the toes and elected to bowl first for this match number 3. All set on the ground by the openers and the fielders. Time to start the actions. We have seen 2 matches in this day. First one was tight between CSC and Falcon, and second one, High Flyers Dubai chased the target comfortably in front of Royal Friends. Saif Padil, Harish Padil, the umpires are in the middle to start the actions, and we have the scorers as usual energetic. Shiva Mali, the bowler, is getting ready to start the bowling operation for the team. YFC Kannur, the finalists, they are back into the next season. Season 9, that was a memorable tournament makes by YFC Kannur. They were coming from the western part of Kasaragod and hits on the right of Mannamkuzhi and register a new history. Good Luck Pasod have a very good legacy in Andaram cricket. Takes it that one through the onside and straight away finds a run.
Basit and Sadish, both openers from the team. Good luck, and straight away Basit, the icon player, having a lot of experience in Antram cricket as a all-rounder cricketer by Basit. And Satish Muchengao just directed nicely, and quick response on the other side by the fielder, but easy single between the wicket by the batters. Both openers off the mark from the very first ball. They were directed. Shiamali is a trump card bowler, always searching for wickets in the front line, who loves to share the feelings in the front line with some extra bit of excellent delivery. Look at the pace, a little bit controlled, that one by Shiamali right on the track. Just reduce the pace level and nicely manage it by Basit Ali and gets another single. 3 consecutive singles by the batters of Good Luck. Here is Satish rotating the strike really well. They were planning it really well and targeting a decent score. On the way they were working with some singles in the front line. Steadying on the track, and this time goes far away. That's the advantage when the team gets while moving between with some singles. They will watchfully gives the treatment. This time the bowler having a plan B, but goes way outside from the gate line. Lovely way back into the track by Shiamali, but directed nicely. Sadish Mujengao, how cool way the man just producing singles. Just effortless, 0 calorie burns behind that stroke. Absolute effortless. Takes another single, 5 on cart. Here comes again Shiamali comes, and this time up on the blade through the onset region. Wonderful way the man directed, a little bit fumbles over there that allowed an easy travels. Such an excellent running between the wicket by these two batters, and having all the control, just generating some shot with the quality that you are witnessing here in Mannamkuzhi. Super batters, they were making the noise. 7 runs in 5 balls and moving to the last ball of the over number 1. Shot through the onside region into the vacant face of the ground and grabs a single on this occasion by Basit, and he keeps strike. That's the end of the over number 1. First over completed in decent way by the batting side, I can say. Both openers, they were managed it to into the gaps and find some runs. 8 without loss. The over അവസാനിക്കുമ്പോൾ 8 റൺസിന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ ഗുഡ് ലക്ക് പൊസോഡ് YFC കണ്ണൂരിനെതിരെ മൂന്നാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ബാറ്റിംഗ് തുടരുകയാണ്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബാറ്റിംഗിന് അയക്കപ്പെട്ട ടീം. 2 ഓപ്പണേഴ്സും കൃത്യമായി കണക്ഷൻസുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ ഇന്നിംഗ്സിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഓവർ. ഇറ്റ് വാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി പാസ്ഡ്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മണ്ണൻകുഴിയുടെ മൈതാനത്ത് അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ ഏടുകളെ തിരുത്തി എഴുതുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റ്. അത് കായിക കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനമായി 15 ലക്ഷം രൂപ വിന്നേഴ്സിന് പ്രൈസ് മണി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടിത്തരിച്ചത് കായിക കേരളത്തിന്റെ വമ്പൻ ടൂർണമെന്റുകളുടെ ഹിസ്റ്ററിയാണെങ്കിൽ അത് അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന് ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിലൂടെ സ്വന്തമാവുകയാണ് മറ്റൊരു പുതുചരിത്രം. അതാണ് MPL. ആവേശ ക്രിക്കറ്റാണ് MPL എങ്കിൽ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത്ഭുത ക്രിക്കറ്റായി, ആഡംബര ക്രിക്കറ്റായി മാറുന്നു മണ്ണൻകുഴിയിൽ. Here comes Arshad Bajal is coming into the attack with the over number 2. Star all-rounder cricketer. A very huge base of fan base cricketer who can play underarm and overarm really well as an all-rounder. Arshad Bajal. With the over number 2 on the other side, Basit Ali. Lovely little delivery from Arshad Bajal, and just gives onto the onside region by Basit Ali. Just takes a single and finds a first run on this occasion. Not gets the right connection from the right part.
Just showcasing that disappointment after played that shot by Basit. Here comes another pacey from the left hand. What a beauty of the delivery from Arshad Bajal. Grabs a wicket of Sadish Mujanga. It's an absolute scud missile right on the track. A rolling rocket that grabs a wicket. Wicket number 1 down from the side of Good Luck Pasod. It is 9 for the loss of 1. A big gun that going back into the pavilion. Here comes the captain. Jabir Manjeshwar coming in at number 3 and joins along with Basit Ali. Captain and the icon player are in the middle for the team. Good Luck Pasod right now. What a way the man Arshad Bajal is announcing his arrival with that wicket of Sadish Mujanga, who was in a full control. We have seen his quality in the previous over. Nicely ticking the scorecard with some singles. But this time, absolute pacey delivery that grabs Sadish. Now making a little bit changes in the field. We are in the power play over. 4 balls to go from this over. Jabir, the new man, known for hard hitting in tennis ball and ram cricket. The man from Manjeshwar comes and joins there. Just directed nicely. Fabulous piece of a delivery. That implement right on the track by Arshad Bajal once again. A beautiful delivery is that not gives any kind of chance. Just a clicks with the wrist by Jabir and gets a single. Need some singles in the middle. That's a strategy by the team. Good Luck Pasod while approaching in the first innings. Here comes again Arshad Bajal. Trying to loft that one, and there will be a field perfectly placed over there. There is Neetu in the deep and having all the control, and that big wicket in this starting session of this game, my G. Absolutely a double dhamaka in this over by Arshad Bajal, bringing out from the spot by Satish and bringing the wicket of Basitulal. Such a serious way Arshad Bajal start his over for YFC Kannur. 10 for the loss of 2. Successful 2 attempts by Arshad Bajal at producing back-to-back breakthrough, that's sitting YFC Kannur in the front line. Absolutely they were in the front line with that 2 top class of wickets. Pressure they're maintaining in the camp of Good Luck Pasod for sure. What a surgical strikes by Arshad Bajal. The man have tons of experience in Kerala as a under-arm cricketer. Rahim, the new man, joins. Try to open the face of the bat and just gets a connection over there. Off the mark straight away, gives a strike back to the captain, Jabir Manjeshwar. A big duty and responsibility upon the shoulders of these 2 batters to carry a big innings, and this time the majestic job that is continues by Arshad Bajal with his traditional fast and furious delivery. Absolutely a smoked off over comes to an end while just allowing 3 runs by Arshad Bajal, and he grabs 2 important wickets. End of 2, 11 for 2. 11 റൺസിന് 2 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആദ്യ 2 overs of power play had completed in a very good manner by the team YFC Kannur. Here comes the captain on the other side for YFC Kannur, always the front face of YFC in GCC and Kerala as well. The man Nazir Chiragoli coming into the attack.
On the other side, taking some time by the batters to settle on the track. Trying to put a decent target on the board. That's a lofted shot, and what a way to welcome. That's a typical down the ground for 6 runs by the batter Rahim. Majestic connection from the seed part of the bat, and how well he just welcoming Nazir Cheragoli to this action. Says a big hi and hello, good evening to the crowd of Mannamkuzhi by Rahim, the man for the team. Good luck, Posot. Outstanding it. Just picks up the length, that is very important. And treated straight down the ground is the safest position. No fielders there. Long on and long off was way wide from the straight. It was easier to connect and dispatched out of the ground with a super duper sixer. And completely the man breaking the shackles with that shot. Here comes the ball number 2. Shot again. This time finds a fielder. Rauf Nechal there. And having a ball right in the circle, just stops it, that one with a single. Rotate the strike after played a huge shot. The man who just changes the intention on this occasion. Straight away shifting the gears up for grabbing some runs for the team. Good luck, Pasot. Watchfully played by Jabir Manjesha. This is clever cricket on the other side by captain. On the other side, Rahim have free license to swing the bat. Captain just keeping the things on the other side. This is a very, very good plan by Good Luck Pasot when they lost 2 wickets in power play. Excellent way carrying the thing and building the innings. That's very important. And Nazir coming once again. Drives it, that one straight to the field. Back-to-back singles in an easy way by the batters. First ball they gets a maximum. Now singles are enough to manage this over in very well way. That realizing by the batters of Good Luck Pasot, and they were making it fruitfully and producing some singles. Well, find some gaps. Jabir Manjesha on strike. Nicely keeps it. Even Kukawana need a bit of attacking field over there. Nazir was rushed towards the field, but it's all easy way. The working in favor of the team. Good luck, Pasot. How well the things are managing and controlling. The traffic is really well controlling by these 2 batters right in the middle. This is how you can make the innings in the trouble time. Crisis managers, they were managing the things. Wonderful to see. Here comes the last ball. Lovely delivery. That's a dot ball, and beautiful way the man finishes the over. But it's a decent over. Productive one for the batting side of Good Luck Pasot. 10 came from the over. 21 for 2 after 3 overs. 21 റൺസുകളുമായി 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ Good Luck Pasot. Perfectly start by these 2 batters, having some authority of stroke, especially Rahim. You have witnessed his quality to clear the distance in this big Mannamkuzhi ground, and the man just showcased the perfect attack of intention in front of the new bowler. Here is Jabir Manjesha on strike. Arshad Bajal is back in the business with his second over. Is a most astonishing all-rounder cricketer in this present and drum cricket. And what a way the man started with a fabulous first over. Arshad brought back for Team YFC. Right on the money. That is a terrific delivery to start the proceedings. Trying to cut the legs of the batter with exclusive pace by Arshad. Always generating love to generate some pace when as his bowler, and love to hit some sixes as he come as a batter. A true all-rounder cricketer. This time
A swing little bit quickly from the bat of Rahim, but not easy to connect the ball. It was kept away from the batter's arc, and Arshad is the architect on the time. Lovely way. Oh, it's a beauty. Oh, stunner. That is the brilliance of Arshad Bajal. You are tasting and witnessing. This man is making a delicious evening here for YFC Kannur, taking the game away from the opposite side single-handedly by Arshad Bajal. 22 runs for the loss of 3 by Good Luck Pasod. 22 റൺസുകളുമായി ഗുഡ് ലക്ക് പസോഡിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അതിന് പ്രതിസന്ധി തീർക്കുന്ന പ്രതിരോധാത്മകമായ ബോളിംഗ് പ്രകടനവുമായി വിക്കറ്റുകൾ കൊയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർഷദ് ബജാൽ തന്റെ അരങ്ങേറ്റം എൻട്രി MPL-ലേക്ക് ഗ്രാൻഡായി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു. What a 3 wicket he grabbed in the front line. Complete collapse and complete control by Arshad Bajal. 22 for 3. Good luck Pasod. മണ്ണംകുഴി പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ ആവേശം നുകരാനെത്തിയ കായിക പ്രേമികളെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. MPL-ന്റെ 10ാം എഡിഷനിലേക്ക്, ബി ഗ്രൂപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ ആവേശത്തിലേക്ക്. Shaul Hamid joins as a new batter. Little bit played towards the onside region. An ease way the man gets a single between the wickets. The young man off the mark. Jabi is a key player, especially in this type of crisis stage. Jabi loves to deal some pressure. Trying to loft the ball. It's into the onside region. First run completed. Jabi calling for second, but no, there is no chance to coming back. Good piece of fielding presentation in the outfield of YFC Kannur that restrict the batters very well between the wicket for a single time. Moving to an outstanding spell of Arshad Bajal, moving to the last ball of the over. Lofted shot. Is it another wicket? Is loading. It is comfortably loaded in the hands of Rauf Nirchal, who is just taken comfortably. Outstanding spell of Arshad Bajal comes to an end. He grabs 4 wickets in the top order. 2 overs of spell. 5 runs മാത്രം വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് 4 വിക്കറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അർഷാദ് ബജാൽ തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ നിന്ന്. What a 2 overs of spell by the staggering genius of all-rounder from Karnataka, and setting the stage on fire with 4 wickets. End of over number 4. 24 for the loss of 4. ഒരറിയിപ്പ്, V5004 കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. Nasirullah is coming into the attack. On the other side, Jabi New Boys and Rahim Jirpala. The batters are in the middle. It is Rahim Kumbala joins. Oh, he's done well. That's a beauty. Lovely piece of adelery from Nasirullah. Right on the target. And completely beats a chance of Jabir Banjeshwar. First 4 overs successfully passed by the bowling side. But we can say some runs on the card. 26, not a bad at this stage. But 4 wickets that giving lot of confidence to the upcoming bowlers of YFC Kannur to make this hunt of the innings number 1 in front of Good Luck Pasod. Here comes
Nasirullah once again, who has started superbly. You have seen it, 2 runs between the wicket in the first ball. That successfully grabbed by Jabir Manjeshwar. But after that, a dot ball to back in the process by Nasirullah. Seriously taking time and setting the fielders right in the middle by YFC Kannur. Trying for a reverse attempt, and that is really good from the bat and beats infield and looking for second. This is clever cricket by Jabir, the captain. Oh, just clutching the accelerator and accelerating the scorecard in single-handedly at the end for the team. Good luck Pasot. Having lot of burden, lot of worries. The man cooling and cooking it very nicely right in the middle and making the runs. Shot down the ground through the offside region. It will be a quick attempt by the fielder, but batters are really quick and perspective between the wicket while completing a second. Outstanding understanding between the wicket by these two batters. A tons of experienced cricketer in Andram, Jabir Manjeshwar and Rahim Kumbala, and both are very energetic and scenes looks comfortable for the team. Good luck. Here comes the ball. Wow, what a beautiful way the man just directing the balls. But this time Neetu gets an easy connection over there, just allowing a single travel on this occasion. And first strike rotation between these two partners. Rahim Kumbala on strike. Rahim Kumbala sings, and it will be looking for second. This is interesting, and 3 fielders merged there, but 2 of them very close to the ball, but little bit fumbles that allowed an easy travel for the second time for the batters between the wicket. That's the end of the over number 5. 33 for 4. Good luck Pasot. 33-4 എന്ന നിലയിൽ 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. റഹീം കുംബളയും ജാബിർ മഞ്ചേശ്വറും ക്രീസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ റഹീം കുംബളയുടെ കടുത്ത ആരാധകൻ കൂടിയായ സിദി ആരിക്കാടി റഹീം കുംബള അടിക്കുന്ന ഓരോ ബൗണ്ടറിക്കും 500 രൂപ വീതം ക്യാഷ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. $33 for the loss of 4. And moving to the last over from the innings number 1. Eccentric vibe of evening with lot of excitement of Andram cricket. Stars from Kasaragod and all other superstars from Karnataka as the icons. 14 teams, more than 140 players. 6 days of day and night cricket festival here in Mannamkuzhi. MPL 2026. Vignesh, the young man, comes and started in a nice way. What a beauty. That is misjudged by the batter right in the middle. Absolutely good execution just in front of the tram line by Vignesh. Ace looks to be the similar kind of execution, but this time it's just outside from the guideline. Very well left by Jabi. Wide runs brings 34. It's again, that's a beauty of Adelry. Gets some connection, but no chance to move between the wicket. Absolute fantastic scenes. The young man just showcasing his caliber and talent in front of the experienced Jabi new boys. For good luck Pasot.
Here is again bowled him. That's another rolling rocket from this man, grabbing the big wicket. Astonishing delivery right on the track that cracks the wicket of Jabir Manjeshwar. What a beauty. Have a look at that delivery coming from over the wicket from the man Vignesh, the young and energetic star from YFC. Have a look at the seam presentation right on the carpet. Absolutely nothing chance. Unplayable delivery from Vignesh that brings up the wicket number 5. And he joins in the party of wicket taking along with Arshad Bajal. 5 down from the side of Good Luck Prasad. It's 34 for the loss of 5. Shabbi joins as a new batter. Straight away to the striker end. Complete domination we can see from YFC Kannur. The defending runners of MPL. Oh, it's done well. That's a beauty. Another good delivery from Vignesh. Absolutely well controlling the things by the man from YFC Kannur. For outstanding delivery so far from Vignesh. Now Rahim Kumbala on strike. That is in the air. It was landed safely and looking for second. It easy way the bat is crossed between the wicket for a couple of times. Wonderful piece of a bowling display with a superb quality of bowling presentation that's showcasing by Vignesh Sodambail. Here comes the last ball of the innings. Lofted shot and there is a fielder there but no chance, and that is done and dust in style by Rahim Kumbala. Absolutely a marvelous finish out of the park for 6 runs. And he received the cash prize offered by Siti. What a way to close the encounter of the innings number 1 by Rahim Kumbala. Picks up that one and have a look at the ball. Roaring into the 6 line for 6 runs. End of the innings. 43 for the loss of 5. 44 to chase. 43 റൺസുമായി Good Luck Prasadiന്റെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ YFC Kannur need 4 to chase in 6 overs of innings. Once again, welcoming back Abdurrahman Bekur to the combox. താങ്ക് യു ഡാർവിൻ മൈക്കിൾ. മത്സരം ക്രമ നമ്പർ 3 പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്കുള്ള സൈനപ്പിന്റെ പുസ്തകം ഇതാ തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് കടമ്പാർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ്. ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ മത്സരം മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് കടമ്പാർ ഒരു തിരിച്ചുവരവിനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ്. കാരണം കളിച്ച ആദ്യ മത്സരം സമനിലയിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിർണായക മത്സരം കൂടി തന്നെയാണ്.
व्हाट ए डिलीवरी। अपील तो जबरदस्त है, आत्मविश्वास भरी हुई अपील थे। अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं है और इस वजह से अपनी अपनी जगह पर जाना ही होगा। नजीर चिरगोली और अरशद बजाल आरंभिक बल्लेबाज दोनों सुरक्षित हैं मैदान पर। गुड लक के सारे खिलाड़ियों, बातचीत जा रही है लेकिन अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं आए, अपने जगह से जरा भी नहीं हिले। जो भी हो अगली गेंद के लिए जाना ही होगा। अरशद बजाल और नजीर 4 गेंदें फेंक चुके हैं स्कोर कार्ड पर। 3 रन बहुत बड़े ऑफ से आए हैं जाबिर ने। देखिए 1+1 वाइड और +1 मिले थे, फिर भी यहां पर 4 गेंद में सिर्फ 3 रन है। पावर प्ले को अगर इस्तेमाल सही तरह करेंगे तब तो यहां पर आसान है लक्ष्य। और इससे पहले कि कहीं मैचों में हमने देख चुके हैं, कल के दिन 9 मैच हुए हैं, आज के दिन तीसरी मैच है, कुल मिलाकर 12वां मैच यहां पर खेला जा रही है। आरिफ एचन आज के दिन भी हमारे साथ मौजूद है। अपनी कारोबार सब छोड़कर एमपीएल सीजन 10वीं को चमत्कारी बनाने के लिए एचन फ्रेंड्स हिदायत नगर कल के दिन टीम थे लेकिन आज टीम भी नहीं है, लेकिन आरिफ यहां पर मौजूद है। अब अगली गेंद लेकर तैयार है लंबे कदमों का इस्तेमाल करते हुए। पिछले सीजन 9 में हमारे साथ मौजूद थे मशकूर नाम के मक्कू एचन, इस साल में मौजूद नहीं है हमारे साथ, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ मौजूद नहीं है, उन्होंने बेंगलुरु में है। और इसी तरह नौशाद बुराक भी नहीं है जो दुबई में है। और इस गेंद अपील और इसी के साथ आउट। विकेट पतन हुए हैं, कप्तान निराश किए हैं। 3 लगातार डॉट के बाद उनके विकेट गंवा। कम बैक देखिए कितनी शानदार ऑप्सी आए। 5 गेंद में सिर्फ 3 रन 1 विकेट, लाजवाब। कप्तान की जवाबदारी बिल्कुल अच्छी तरह मालक के विश्वास के ऊपर खड़े होकर इन्होंने गेंदबाजी कर रही है। आखिरी गेंद लेकर तैयार है और बदे विकेट लंबे कदमों के साथ। लेग स्टंप पर भी हुई, 1 रन के लिए दौड़ा जा रही है। ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं थी भैया। पहली विकेट नजीर चर हुए तब सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज को भेजा गया है नौफल जोड़कल। बड़े बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता में कभी भी उनके नाम दर्जा करते हैं। मिडिल ऑर्डर में सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज है। बहुत बड़े क्रिकेटर यानी कि बहुत अच्छे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, बैट्समैन कम विकेट कीपर कम बैट्समैन, उनके आगमन दिख रही है। अब तो स्ट्राइक पर अरशद बजाल है, नए गेंदबाज के आगमन दिख रही है। रहीम कुंबला, उनके आगमन दिख रही है। रहीम कुंबला के आगमन दिख रही है गेंदबाजी में। नए बल्लेबाज के रूप में यहां पर नौफल
जोड़कल नौस्टेकन पर खड़े हुए हैं। पहली ओवर 3 रन लाजवाब ओवर, 1 ओवर 9 मेड एंड 3 रन 1 विकेट। नजीर के विकेट चटकाए थे, कुल मिलाकर 2 विकेट पतन हुए, एक तो रनआउट के रूप में। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज अरशाद बजाल के लिए रहीम कुंबला दूर वाली चोट से ओवर द विकेट और इस गेंद को कट कर दिया गया है। थर्ड मैन पर गेंद को बिल्कुल 2 खिलाड़ी के बीच 24 में गेंद गई है, तब तक दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है। 2 रन भी पूरा कर चुके हैं। ऐसे खेलते खेलते जाएंगे 44 तो यहां पर 44 तक दरखार तक पहुंच पाएंगे। यहां पर विकेट तो पतन हुए हैं। पहली ओवर में 2 विकेट, वो भी 2 बड़े मछली यहां पर, एक नजीर चिरगोली, दूसरे हैं जो शिवम अली, एक ही मात्र एक गेंद सामना किए थे, रनआउट हुए हैं। अब अगली गेंद रहीम टू अरशद बजाल दूर वाली चोट से ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद थी, हल्के आवाज से अपील किए थे, लेकिन जिस अपील को इनकार किए हैं बल्ले के बारिश सा लगे हैं मेरे ख्याल में, इस वजह से कोई इशारा नहीं थी। 1 रन के 7 रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 6 ऑन द बोर्ड, 38 मोर रन रिक्वायर्ड आउट ऑफ 28 डिलीवरी, यानी कि 28 गेंदे बचे हैं। 28 गेंद में 38 यानी कि 38 रन चाहिए। रहीम पावर प्ले में गेंदबाजी कर रही है, सिर्फ 2 खिलाड़ी, मात्र 2 खिलाड़ी हैं, मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ में 2 खिलाड़ी खड़े हुए हैं बाउंड्री के करीब, बाकी सभी खिलाड़ी 30 धारे के अंदर। अब अगली गेंद ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, ब्यूटीफुल डिलीवरी, वाह के बॉलिंग रहीम कुंबला। देखिए दिखने में बिल्कुल छोटे लड़के दिख रहे हैं, लेकिन अबो 40 के खिलाड़ी हैं, अबो 40 में शामिल हुए हैं पिछले साल में। शानदार खिलाड़ी भी है, केएफसी कुंबला की योगदान है अंडरआर्म क्रिकेट के लिए। अब अगली गेंद दुर्बाली चोट से ओवर द विकेट, अंपायर को कोशिश करते हुए अपनी शैली में हल्के टपकाने के बाद व्हाट अ डिलीवरी। देखिए कितनी शानदार गेंदबाजी कर रही हैं। गुड लक पुसोट वही एफसी कन्नूर। यहां पर लक्ष्य 44, कोई बड़े लक्ष्य तो नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए आरंभिक बल्लेबाज नजीर चिरगोली की विकेट पतन हुए, शिवम अली की विकेट पतन हुए, यहां पर बिल्कुल दबाव स्थिति को सामना कर रही है वही एफसी कन्नूर। लेकिन एक बात पक्का है कि अरशद बजाल मौजूद है मैदान पर, अंतिम क्षण तक उन्होंने ठीक रहेंगे मैदान पर, ये तो लक्ष्य तो आसान हो जाएंगे। अब अगली गेंद दूरबाली चोट से तैयार है। रहीम हिंदुस्तानी स्कूल एंड ज्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, देखिए अंपायर के सामने खड़े होते हैं, टपकाते हैं। अब अगली गेंद, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, फील्डर की तरफ गेंद गई है, सतीश थे वहां पर मुझगांव, उन्होंने फील्ड किए तो रोकिए, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 7 रन। आखिरी गेंदे बचे हैं रहीम के, कितने जवाबदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। देखिए रहीम फिर एक बार धुर वाली चोट से ओवर द विकेट। अरशाद बजाल के लिए गेंद फेंकना चाहते हैं, अरशाद बजाल तैयार है। ओहो अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, और इसी के साथ बहुत सुंदर ओवर की समाप्ति। 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 4 रन और कोई विकेट नहीं, बहुत खूबसूरत ओवर। 2 ओवर के समाप्ति पर 7 रन, बिल्कुल अच्छी नजारा दिख रही है। गुडलक पुसोट के डेकआउट से हल्के हल्के आवाज सुनने लगे हैं। पहली इनिंग्स खेल रही थी बिल्कुल सुमसाम थे, क्योंकि बल्लेबाजों ने खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए। अंतिम गेंद पर छक्के लगाकर रहीम ने 37 से 43 रन तक पहुंचा दिया गया। बिल्कुल अच्छी शॉट खेले थे, आखिरी गेंद में छक्के लगाए थे विघ्नेश को सामना करते हुए। अब तैयार है, तीसरी ओवर फेंकने के लिए नए गेंदबाज के आगमन हुए हैं जाबिर। फिर एक बार खूटे की दूसरी ओवर, मात्र 1 खिलाड़ी को दूसरी ओवर फेंकने के लिए मौका दिया जाती है, जो एमपीएल सीजन 10वीं में 6 ओवर के मैचों में। अब पावर प्ले हटा दिया गया है, 5 खिलाड़ी 30 धारे के बाहर गए हैं। एक तो नौफल कली है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट, वाइडिश मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ है, और एक तो शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर मौजूद है। अब देखना होगा कि जाबिर अपने खोटे की दूसरी ओवर में पहली ओवर की फॉर्म पर गेंदबाजी करेंगे, ये देखना बाकी है। पहली गेंद लंबे कदमों के इस्तेमाल कर रही है बायर के कमर उड़न से, 4, 5, 6 बार जमीन पर टपकाने के बाद देखिए शानदार शैली है पहली गेंद।
अच्छी गेंद उठा कर खेलना चाहा और एक रन तो तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया, तो अंपायर कह रहे कि लग बाय है। और किसी भी हालत में नौफल ने, और इस ओवर तक मेरे ख्याल में जो अरशद बजाल तो खामोश रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़े हथियार है जाबिर। मात्र एक खिलाड़ी को 2 ओवर फेंकने के लिए मौका मिलते हैं। जाबिर काफी 100% भी फॉर्म पर बल्लेबाजी की है, गेंदबाजी भी कर रही है। जानते हैं अरशद बजाल जो अच्छी गेंदबाज के सामने खामोशी के साथ रहना है, आक्रमणकारी बन जाएंगे बाद में। अब अगली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, ए देखिए, ओहो, लॉटरी लग गई है। क्रिसमस लॉटरी खत्म नहीं हुए, क्रिसमस लॉटरी जा रही है केरला स्टेट में। अब देखिए वाईएफसी कन्नौर को बिना किसी पैसे में लॉटरी टिकट मिले, उसमें लॉटरी लग गई है करोड़ों की। 5 रन फ्री में, रनों की संख्या बढ़ते हुए 13 रन। देखिए रेस की घोड़े के जैसे दौड़े हैं, 7 से सीधा 13 में जाकर खड़े हो गए हैं। वाह भाई वाह। जाबिर फिर एक बार तैयार है, दूर वाली चोट से विकेट, लंबे कदमों के साथ जाबिर मंजेश्वर। अरशाद के लिए, अरशाद खेला है मिड विकेट पर, फील्ड मौजूद है, के साथ उस रन के लिए दौड़ा जा रही है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 15 ऑन द बोर्ड। 15 रन, 7 से 15 तक पहुंच चुके हैं, सिर्फ मात्र एक गेंद फेंके हैं। अब अगली गेंद जाबिर, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ अपने बल्ले को झाड़ू बनाए कुछ क्षण तक, और झाड़ू शॉट खेले हैं। 2 रन तो निश्चित रूप में। जानते हैं जो अरशद बजाल, क्योंकि सबसे बड़े हथियार को सामना कर रही है, उस हथियार से फ्री में 5 रन मिले, अब संकोच की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि हर गेंद में बॉल टू बॉल, नेट टू नेट रन बनते जाना है, तब आसान हो जाएंगे। इस ओवर की समाप्ति पर अब सिर्फ 3 गेंदे सामना किए, 3 गेंदे बचे हैं, अगर 3 में 3 भी मिल जाए बढ़िया है। अब अगली गेंद ओवर द विकेट, अराउंड द विकेट, अच्छी गेंद उठा कर खेला है, गेंद तो जा रही है मिड विकेट पर, एक रन के साथ दूसरी रन के लिए दौड़ा जा रही है। ओहो, व्हाट अ रनिंग बिटवीन द विकेट। नौफल जोड़कर सफल हो चुके हैं अब तक, क्योंकि रनिंग बिटवीन द विकेट अरशद बजाल के साथ दौड़ने वाले चाहिए, यहां पर सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने वाले चाहिए, सफल हो चुके हैं नौफल जोड़कर। रनों की संख्या बढ़ते हुए 19, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब अगली गेंद जाबिर, दूर वाली चोट से ओवर द विकेट, लंबे कदमों के साथ गेंदबाजी कर रही हैं, तब अरशद बजाल भी मौजूद है। अरशद बजाल कब तक मौजूद होंगे, तब तक वाईएफसी कन्नौर के साथ होंगे। यहां पर लॉन्ग ऑफ की इलाके पर जगह बनाए, तब तक फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाई, 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 20 ऑन द बोर्ड। आखिरी गेंदे बचे हैं, 1 मोर बॉल टू गो। देखिए 7 से 20 तक पहुंच चुके हैं, 7 to 20, सिर्फ 5 गेंद में। ബാരിക്കേഡിൽ ചാരി നിൽക്കുന്നവർ ദയവ് ചെയ്ത് അത് മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും, അത് ടൂർണമെന്റിനെയും ബാധിക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാരി നിൽക്കരുത്। आखिरी गेंद, अच्छी, देखिए कितनी शानदार स्वीप की है, 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 21 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 overs 7 रन। 7 रन के प्रतिशत यहां पर रन बन गई है। 2 ओवर की समाप्ति पर 3.5, 3.50 यहां पर देखिए 7 पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि बस एक वाइट +4 दुनिया बदल चुके हैं। बिल्कुल वाइट +4 इस स्कोर कार्ड की पूरी तरह हाल बदल चुके हैं। रनों की संख्या 21 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर लेफ्ट, रिक्वायर्ड 23 रन आउट ऑफ 18 डिलीवरी।
वाइड के इशारा किए हैं और इस वाइड की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 22 ऑन द बोर्ड. 22 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 18 डिलीवरी. 18 गेंदों पर 22 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए. सिर्फ 4 के अंतर है, डिस्टेंस सिर्फ 4 रन के. अब अगली गेंद लंबे कदमों के इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तानी स्कूलन से नौफल जोड़कल के लिए गेंदबाजी करना चाहते हैं बॉलर शरद. और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेलना चाहा, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच में कोई संपर्क तो नहीं हुए. अच्छी गेंद, ऑप्सी तो बहुत अच्छी गेंद. जिया पैबली का हमारे साथ आ चुके हैं, स्वागत करना चाहता हूं जिया पैबली का, धन्यवाद. कभी भी अंडरआर्म क्रिकेट में कंधे मिलाकर रहते हैं, बड़े व्यक्ति हैं. अब अगली गेंद शरद और इस गेंद को रचनात्मक तरीके के साथ खेला है. सेंसिबल क्रिकेट, व्हाट है शॉट, क्लासिकल टच. नौफल जोड़कल यही चाहता है इन्होंने, अरशद बजाल को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर लाना. और अरशद बजाल के जैसे बल्लेबाज के सामने कोई भी खिलाड़ी की, बिल्कुल स्पेशली जो नौजवान खिलाड़ियों के जो धड़कन बढ़ते जाएंगे दिल के, क्योंकि नामदार खिलाड़ी है. यंग फ्रेंड शुरुआत के सबसे बड़े खिलाड़ी है, अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे बड़े गब्बर जाना जाती है, गब्बर ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट. शमीर बोंड हमारे साथ मौजूद है, स्वागत करना चाहता हूं. ओवरआर्म हो अंडरआर्म हो कभी भी साथ देते हैं. और इस बार उल्टा बल्ले में खेला गया है, कुछ क्षण के लिए अपने बल्ले को झाड़ू बनाए. 1 रन आसानी के साथ और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर 24 ऑन द बोर्ड. लॉस ऑफ 2 विकेट. शिवम अली की विकेट पतन होने के बाद नौफल जोड़कल शामिल हुए थे, मैदान पर आए थे. उसके बाद कोई खतरा नहीं है जो एएफसी कन्नौर के लिए. बगली के नौपते विकेट शरद. अच्छी गेंद, देर हुए भैया, वरना यहां पर बजाल, अरशद बजाल देर क्यों की है, निराश है बजाल. कल के दिन से यहां पर मौजूद है जूनियर बपचा भी है, रियाज बपचा. आपू वेलकम. आपू आपू पछलंबारा भी हमारे साथ मौजूद है. जब भी हो यहां पर तीसरी अंपायर के इंतजार कर रही है.
14 to go, 20 to get। नए बल्लेबाज के आगमन हुए हैं अच्छू पच्चलंबारा। शेख मलाली हमारे साथ ऑनलाइन में मौजूद हैं। शेख मलाली जी दुबई में हैं। 13 to go, 19 to get। नौफल जोड़कल मौजूद हैं। दोनों खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं। अच्छू पच्चलंबारा रॉयल फ्रेंड्स पच्चलंबारा के खिलाड़ी हैं। क्षमा कीजिए, फ्रेंड्स पच्चलंबारा की। ओवर द विकेट फिर एक बार शराद, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है। विकेट कीपर तो गेंद के पीछे गए, तब तक एक रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 26, 18 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 12 डिलीवरी। 12 വേണം। चार ओवर समाप्त हुए हैं। तो नए गेंदबाज के आगमन हुए। सुनील वसंगड़ी सबसे अनुभवी खिलाड़ी को लाए गए हैं गेंदबाजी के मोर्चा संभालने के लिए। 12 गेंदों में 18 रन चाहिए। तब नौफल सेटल डाउन बल्लेबाज है। अच्छू अभी अभी आए हैं, सिर्फ मात्र एक गेंद सामना किए। मौजूद हैं अभी भी सुनील वसंगड़ी। ब्रदर्स वसंगड़ी के योगदान है अंडरआर्म क्रिकेट में प्रमुख क्लबों से एक है ब्रदर्स वसंगड़ी। पहली गेंद लेकर तैयार है सुनील। 12 में 18, बिल्कुल संघर्ष भरी हुई स्थिति पर है दोनों टीम के लिए। यहां पर देखिए मिस फील्ड, वो भी कप्तान के हाथ से बॉल हुए हैं। कप्तान के हाथ से बॉल हुए हैं, मिस फील्ड हुए। एक के जगह पर 2 रन। 16 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 11 डिलीवरी। 11 गेंद में 16 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। शानदार मैच, बिल्कुल शानदार मैच है। सुनील वसंगड़ी गेंदबाज है। नौफल जोड़कल स्ट्राइक पर मौजूद है। अरशद बजाल पिछले ओवर में आउट हुए थे, वो तो बहुत बड़े नुकसान है। यहां पर देखिए ड्राइव की है, कैच, और इसी के साथ नौफल जोड़कल ने इस गलती तो नहीं करना चाहिए तो वही एफसी कन्नूर के लिए बहुत बड़े झटका है, क्योंकि जो उछाल कर खेले थे इन्होंने, जो उछाल पर खेलने की कोई जरूरत ही नहीं थी, अपनी विकेट को गवा दिया गया। 10 में 16 रन चाहिए। सबसे लंबे खिलाड़ी हैं। खड़े होने की शैली, बल्ला पकड़ने की शैली जो पुराने बदरुद्दीन पसोट की शैली है, नीतू कासरगोड की। लंबे खिलाड़ी सुनील वसंगड़ी को सामना करने के लिए तैयार है। 10 to go, 16 to get। पहली तीसरी गेंद, और इस गेंद को उठाकर खेला है, हवा पर गेंद, नीतू कासरगोड, व्हाट अ शॉट। देखिए सामना किए पहली गेंद पर जबरदस्त छक्का, वो भी स्ट्राइक ड्राइव। डैरेन समी ऑफ वेस्ट इंडीज, शैली देखिए, डैरेन समी ऑफ वेस्ट इंडीज, उन्हीं की शैली पर शॉट को खेला गया है। वाह, सुनील टू नीतू, फिर एक बार दूर वाली चोट से ऊपर विकेट अंपायर को घोषित करते हुए नीतू के लिए, और इस बार उठाकर खेला है। मिड विकेट पर गेंद जाते हैं, फील्डर तो यार है, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाए। मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द विकेट, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द विकेट। अच्छू, क्या जरूरत थी इस विकेट छटकाने की, क्या जरूरत थी? यहां पर नए बल्लेबाज आएंगे, प्रेशर के साथ
खेलना चाहिए। यहां पर कुछ देर पहले आप आए थे, सिंगल के लिए आप काफी थे, क्योंकि नीतू जैसे बल्लेबाज को स्ट्राइक रोटेट करना आपके काम थे। यहां पर नीतू को स्ट्राइक पर लाने की लालच में आउट हुए हैं। यह तो जबरदस्त झटका है। अब नए बल्लेबाज के आगमन है। न्यूमैन स्लोली वॉकिंग टू द क्रीज। साजन पे जगाला खतरनाक खिलाड़ी है दोनों मैदान पर। दोनों छक्के तो आसानी के साथ लगाने वाले खिलाड़ी है, लेकिन इस समय पर छक्के चौके की जरूरत नहीं पड़ते हैं, क्योंकि गेंद बच्चे हैं 8 में 9। अब अगली गेंद, गेंद तो बिल्कुल तेजी के साथ यहां पर देखिए रनों के लिए खतरा, और बिल्कुल विकेट कीपर पहली घुमे थे, दूसरी बार स्टंप को गिराए थे। उस वजह से अंपायर को संकेत हुए हैं, यहां पर तीसरी अंपायर की तरफ मदद मांगे हैं। वाह हो। दूसरी बार घूमने में यहां पर देखना चाहिए, चांचना चाहिए, बिल्कुल करीबी मामला है। ये देखिए बिल्कुल हाथ पर गेंद आसानी के साथ आए थे, और इसी के साथ यहां पर निश्चित रूप में अजमल, क्योंकि क्रूशियल मोमेंट ऑफ द मैच जांचना चाहिए, समझना चाहिए। यहां पर देखिए बिल्कुल करीबी मामला है, बिल्कुल करीबी मामला है। दूसरे रन के लिए दौड़ रही थी। दैट्स आउट। नए बल्लेबाज तो आ चुके हैं, नए बल्लेबाज तो मैदान में आ चुके हैं। न्यूमैन 14 विघ्नेश के आगमन हुए हैं। नीतू जाकर कहा कि यही कहा होगा कि भैया मुझे एक सिंगल लाके दे दे, मुझे स्ट्राइक पर लाने दे, मुझे स्ट्राइक पर आने दे, जीत तो मैं दिलवा देंगे। लेकिन सुनील खतरनाक अनुभवी खिलाड़ी है, छक्के तो जरूर लगाएं, ये तो मामूली है क्रिकेट में, बड़े बड़े गेंदबाजों को छक्के लगाते हैं ओवर द विकेट। और इस बार भी स्वीप के सहारा लिए, 1 रन तो दौड़कर पूरा किए, और इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्त हुए। देखिए स्कोर कार्ड 37, 7 रिक्वायर्ड 6 डिलीवरी। व्हाट अ मैच। आज के दिन तो कल के जैसे ही है, एक से बढ़कर एक मैच है, बिल्कुल संघर्ष भरी हुई स्थिति पर है। दर्शक बढ़ते जा रहे हैं यहां पर, क्योंकि ऐसे मौके नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्रिकेट में अंतरराष्ट्रीय शैली के जो बाउंड्री लेन बनाए, फ्लडलाइट बनाए, बंदोबस्त किए, 15 लाख के नगद पुरस्कार के पहली टूर्नामेंट है। अगर इस टूर्नामेंट मिस होंगे तब ऐसे टूर्नामेंट कोई भरोसा नहीं है, ऐसे टूर्नामेंट और भी मिल जाएंगे। इसलिए दर्शक तो दूर दूर इलाके से आते हैं, दक्षिण कन्नड़ जिला से कई लोग आए हैं, और यूट्यूब के जरिए मैच को देखने वाले कई लोग हैं। नौशाद तो मैच देख रही है, नौशाद बुराक दुबई में बैठकर, क्योंकि हर सीजन में रहते हैं और इस गेंद को खेलना चाहा, यही चाहते थे, क्योंकि चूहे को पकड़ना चाहिए। बिल्ली लकड़े के हो मट्टी के हो, यहां पर 1 रन, यहां पर 1 रन मिले हैं, 1 रन मिले हैं। विकेट कीपर के गलती से मिले हैं, ये तो साफ कहना चाहता हूं, क्योंकि
4 में 5 चाहिए मैच को जीतने के लिए। नेट टू नेट फाइट। ओहो, गुड लक के और वाईएफसी के डकआउट में खामोश है, क्योंकि कुछ भी हो सकते हैं इस मैच। अब अगली गेंद, अच्छी शॉट यहां पर वाइड मिड विकेट फेंकेंगे, तब तक एक रन तेजी के साथ तोड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है, दौड़ा जा रही है, आउट। वीकनेस शॉट, लॉस द सेवंथ विकेट, लॉस द सेवंथ विकेट यहां पर। तीन गेंदे बचे हैं, 3 में 4। बहुत खूबसूरत ड्राइव यहां पर फील्डर मौजूद थे, एक रन तो निश्चित रूप में दौड़कर पूरा किया, तब तक नीतू स्ट्राइक पर आ चुके हैं। नए बल्लेबाज के आगमन हुए हैं शरद कुंबला, उन्होंने जो स्ट्राइक रोटेट किया, 8 रन बनाकर नीतू सेटल हो चुके हैं। अब तो 3 रन चाहिए, 2 गेंदों पर 3 रन, बिल्कुल संघर्ष भरी हुई मैच। चबी अपील तो जा रही है और अपनी जगह में सुरक्षित है नीतू, इसलिए कहा कि अंपायर ने कोई मौका नहीं है, क्योंकि अपनी जगह से जरा भी नहीं लेते। तीसरे अंपायर की मदद तो मांग चुके हैं, क्योंकि डिजिटल संविधान मौजूद है। टाइम आउट का इशारा किए, नॉट आउट का इशारा भी किए, कोई मौका नहीं यहां पर। नीतू आखिरी गेंदे बचे हैं, 3 रन चाहिए, डबल हासिल करेंगे तब और एक मैच टाई आज के दिन। अब तक सिर्फ 4 रन कर चुके हैं इन्होंने 5 गेंदों पे। अब अगली गेंद छिपी जो नीतू दूर वाली जो से लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट, अंपायर को कोशिश करते हुए हिंदुस्तानी स्कूल एंड से तैयारी कर रही है, लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट, और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया है, एक रन तो तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए यहां पर तैयारी तो नहीं की है, तैयारी करना चाहते थे यहां पर। ओ हो बिल्कुल, और इसी के साथ गुड लक पोस्ट। एक चकमा मन कंड हार्ट बीट ಏರ್ದೆ ತಗುಮ
അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ആദരവോടുകൂടി തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി OCM ജില്ലാ സമിതിയുടെ ട്രഷറർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ജലീൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ജലീൽ ഇത് എബോവ് 40ക്ക് അഭിമാനം after a short while we are moving towards match number 4. That is champion sports sticks Falcon Fighters Karambar here. Falcon on the toss and elected to field first. We have seen the last previous match between YFC Kannura versus Good Luck Friends Club. What a fabulous match comes to an end over here in this particular tournament of season 10. On the second day of MPL season 10, we have really enjoying. We have completed 3 matches over here of running towards our 4th one in this particular occasion of this particular tournament. The last man of the match award winner, that is Rahim Kumbala, for his valuable performance. He have lofted one maximum at the last ball of last over and have been very good bowled in the bowling mark over here in this last previous match against team like team YFC Kannur. Yes, beautiful match over here we are witnessing in this particular dark light. Session was started in around 3 in the PM and we are moving towards a beautiful dark light. We have enjoying red lights, crackers, music and everything is just perfect from the side of MPL season 10. That is not only a cricket game, it is a festival for the people of Kasaragod and definitely we are enjoying in this particular situation, particular tournament of 2026. That is MPL season 10 over here. Yes, the match between match number 4, champion sports takes Falcon Fighters Kadambara. Yes, we have the openers Giri Mujangavu as well as Hakima from the side of Falcon Fighters. Giri the captain itself, Hakima as a opener to strike the bowler from Namfalgori here. Nicely driven towards the covers. Main ball feet fix. There is answer from after. Main ball very good running between the wicket. We can see from both the batters. That is Mugri Mutangav as well as Hakim Surinj, the icon player from the side of Falcon Fighters Kadambaru here. First over is in the champions sports. No fall. Second time for Hakima. Nicely flick the delivery towards the short mid-wicket, reaching and taking comfortable single. Fielders are working perfectly in the dark night over here. Very good to see particular
beautiful strokes as well as a comfortable collection by the fielders in this particular over number 1. Here now Falgori once again for Girish, the captain of Champion Sports. This time away from the leg stump region. Have a look at the wide collection from the bowlers, and here now Falgori's little bit of confusion with the line and lunch towards the stick was not good enough in this last particular delivery over here. Once again taking the guard of right and over the stamps for the Giri Kambale. Nicely delivered. They played a fix, and this time the first wicket have been fallen from the side of Champion Sports. The young man Giri Mutsingawa from the side of Champion Sports. The captain walks back to the dugout. What a celebration we can see from the side of Falcon Fight in Skalambar in this first initial over from Naufal Gori. What a brilliant delivery have been placed for Giri Mutsingawa, lifted nicely. Meanwhile, the fielder who is settled inside the 30-yard circle completely caught it, that delivery, and the first blow, it is a huge wicket from the side of Champion Sports. The captain itself walking back to the dugout here. What a start, that is what now fall the trump card from the side of Karambar is doing very perfect job in this first initial over number 1 here. We have completed 3 deliveries, 3 more delivery in the left in this particular first over. Definitely 3 runs on the board, a loss of 1 wicket. What a good start from the side of Falcon Fighters Karambar. Once again no fall to the new man. Nicely flick. There is no chance at all to move from the strike here. What a tackle from the bowler against a batter is doing perfect here. Abhi joined has a new batter from the side of Champions Sports over here on this particular occasion of number 1. Nicely delivered, have a look at the aggressive delivery towards the six, was placing perfectly. That is what Naufal Gori is doing in this particular over number 1. A very good start from the side of Naufal Gori. There is no rooms for the batter to go for singles and couple of runs. Nicely flicked this time, driven towards the deep onside region and taken comfortable single. Very good running, failing in the deep region from Vishwa Kambali. And meanwhile we are finishing over number 1. Scorecard is 4 on the board, loss of 1 wicket. Very good start from the side of Naufal Gori, the icon man from the side of Falcon Fighters Karambar here. Finished perfectly, giving 4 runs and taking 1 wicket from the side of Champion Sports. That is Girish Mutsingawa walks back to the dugout, and the disappointment we can see from the fans of Champion Sports. The initial over itself have been taken 1 valuable wicket from the side of Champion Sports here. That is what very disappointment moment for them. And the captain brings Shravan into the attacking bowling mark here. Captain definitely having that confidence with the bowler, that is Shravan, the young man, as we mentioned in the previous match, have been bowled very perfectly in his over. This time he comes to spell second over of first innings here, taking the guard of right over the stamps for Abhi here. Very good delivery. This time slightly away from the leg stump region. 1 more addition in the form of extra here. And it's not quite good start from the hands of Shravan. Meanwhile the scorecard slightly moving towards the 5 on the board. The second over is in progress. Shravan to Abhi this time. Looking for the extra, the edge to the bat, and meanwhile ball rushing towards the third man region. Fielder fits it perfectly there. The captain of Falcon Fighter, Timmy, a period call. There is no mistake at all in the fine third man region. Meanwhile, couple single run adding to the scorecard in the form of single over there by the batters here. Yes, we have the icon Hakim Surinje from the side of Champion Sports here, facing 5 delivery of Shravan here, sweeping the delivery. There is no connection. At all. Meanwhile, yes, it is not fair delivery. Umpire is giving us a wide call, and we have to wait. Yes, definitely we have to wait for upstays, going for upstays here. Wide is called from umpire's end, and we have to wait for the decision from the third umpire here. Definitely umpire Mr. Harish Paril as well as Asmal Chokate is doing perfect job in the middle. Definitely we have to sell it for
their decision, their hard work in the middle. They are doing perfect job in this particular MPL season 10 2026. And especially we have introduced these kind of officials all the way from Dikshin Kannada. They have been doing a very good job as a umpiring throughout this tournament of MPL season 10, and definitely we have to hats off to Mr. Harish Padilla, Mr. Saifullah Padilla, and Mr. Asmallah Jokate. Yes, the call is wide. We are going for the upstays and waiting for the decision over here. Definitely we have to wait for the decision. A live telecast, Shine Sports is doing very good job in the off the field, and definitely this live session is we are enjoying. Those who are sitting at their workplace, sitting at their home, and enjoying by seeing this live telecasting throughout YouTube channel, and hats off to once again for Shine Sports Puttur here. Yes, it is a no wide call from third umpire. There's very good decision that which makes advantages for the bowling mark here. Shravan has that confident. The ball was fair, but slight bit of confusion with the ball delivery which have been placed towards the sticks here. Never mind, the third umpire have been taken right decision over here. Slightly flicked towards the third man region and taken comfortable single here. Just flicking the deliveries and rotating the strikes in the initial second over number over here. That is what batsmen are rotating the strike each other because they are not going for the aggressive stroke. Still, there is no wind power to cross the boundary line for bowler easily. Meanwhile, it's just satisfying with the single run here. Once again, very good delivery, very good delivery straight away to the pad of the batsman and straight away into the hands of bowler. Shravan is doing very good comeback in the second over. Just 7 on the board over here after completion of 4 deliveries. 2 more deliveries left in this particular second over. Shravan is doing perfect work in the bowling mark here for a team like team Falcon Fighters Karambara, taking the guard up right over the wicket for Abhi Nichala. This time a very good delivery, and this time a call for appeal there and a finger rising. One more wicket have been fallen in the form of a wicket here. Abhi walks back to the dugout here. Very disappointment in the initial stage of second over because as we know that Greece, the captain, walks back to the dugout in the initial first over. Meanwhile, another 1 wicket have been lost from the side of Champion Sports. That which makes very big damage for the side. And definitely the bowlers and working perfectly for team like team Falcon Fighters here in this particular over number second. That is what I have been mentioned in the beginning of second over. The captain having that confidence with the bowler, that is Shravan, brings back to the attack, and that's what he's doing over here in this particular over number second. Last delivery of over number second, 7 on the board, loss of 2 wickets. A very good start from the bowler. Just left 2 runs and taken 1 wicket so far here. Last delivery of second over, Shravan once again to the no man, Mr. Yes, this time nicely flicked the ball and meanwhile taken a comfortable single in the form of leg by here. After completion of over number second, the scorecard is 8 on the board, loss of 2 wickets here. Just left 2 runs and 3 runs in this 4 runs in this particular over number second. That is what the bowlers have been did perfect job in the 2 overs. First over 4 runs, second over 4 runs. After completion of second over, the scorecard is 8 on the board, loss of 1 wicket. Yes, 1 wicket we have got in the first over also, and another 1 wicket we have got in the second over also. Same thing happened in the first and second over. The bowlers are making perfect job, perfect role in this particular match between those teams. First over spelled by Naufal Gori, the icon from the side of
Kadambar, and the second over spelled by Mr. Shravan from the side of Kadambar. That is what very good talent they have performing in this bowling mark over here. Definitely the captains having that confidence with the bowlers. Once again, what in a match we are witnessing in this particular match between those teams. This is what not an Haltu tournament. It is a big cash award tournament. That is the MPL season 10 2026. The winners will get 15 lakh cash award with champions trophy. The runners will get 7 lakh rupees with runners trophy, and many more attractive prizes like 2 villa bikes and gold coins, home theaters, and many more. This is a festival. This is a festival of Andram cricket over here. That is what we are witnessing in this particular match over here. The scorecard is 8 on the board after completion of 2 overs. Loss of 2 wickets. We have Ashwit Kasagura and Hakima Surinja, the icon man from the side of Champion Sports. Definitely both the batsmen having their very good capacity in the batting mark here. Both are the all-rounders. Have a look at the collection by wicket keeper. The short guy Karthik Kumble is doing very good job in the behind the stumps, working perfectly there, not letting the batsman to go for the singles and couple of runs, tackling batsmen completely. That is what Karthik is doing. They're not missing any deliveries behind the stumps. That is what the quick collection between wickets he is doing over here. The young man, young talent, all the way from Kumble, playing for a team like Team Falcon Fighters Kadambar here. We have seen the previous match. He have played nicely in the batting as well as wicket keeping mark over here, and that is what he is continuing in the same thing in this particular match even. Once again, the bowler Tausi 2 Ashwit Kasargoda right now this time nicely delivered, and meanwhile just slightly edged to the bat and ball rushing towards the deep region and taking comfortable single here. One more addition to the scorecard. Definitely the batsmen are struggling in the middle. Just 9 on the board after completion of 2.2 deliveries. 2 wickets have been lost already. That is what's quite difficulty they are facing in the middle in this particular third over. Once again the Tausi to the batter here. Nicely one Hakim Surinja in the deep region. There is a very good collection. The icon man from the side of Champion Sports walking back to the dugout. His innings cancelled and one hit it was, but meanwhile the deep onside region fielder fixed perfectly, and there is no mischance at all from the hands of fielder. Another one wicket, another one blow from the side of Champion Sports. That is Hakim Surinja walks back to the dugout. A very good bowling performance from the hands of the bowlers of Falcon Fighters Kadambar. Have a look at the celebration. Have a look at the unity between the people of this particular team. That is what Falcon Fighters are doing in this particular match between those teams. That is we are definitely going to enjoy in this first initial over number 3 here. The scorecard is just 9 on the board. Loss of 3 wickets. 2.3 deliveries have been completed. 3 more delivery left in this particular over number 3. There is no aggressiveness. The match is going to be complete neutral line, and some big hits, some maximum, some boundaries have to be get to reach a good total target for against team like Team Kadambar here. Once again, the man Tawsif taking the guard of right and round the wicket for the batter here. Nicely driven towards this short mid wicket region. Call for a couple of runs. Satisfied with single here. Very good running collection from Shiva Kumble here. Doing very good job in the fielding mark. We have seen is a very good fielding performance in the deep region as well. That is what Vishwa Kumble is doing perfect job in the fielding mark over here. Once again Tausi to Ashwit Kasargoda. Yes, there is announcement for Ashwit Kasargoda. For every 6, 500 rupees will be awarded from Santu Talipad. Yes,
500 which is awarded for Ashwit Kasargod from Santu Taripadpu for every 6 year. Definitely that is what the encouragement we are getting from the outside the tournament. Definitely that which encourages the batter, that which encourages the players to go for maximums in this particular situation, because we know that just 11 on the board, 2.5 deliveries have been completed, one more addition slightly away from the leg stump region, and one more addition in the form of extra here. The scores are slightly moving, there is no the faster move of scores we can't see in this particular situation of over number 3 here. Last delivery to the batter here, nicely driven, there is no chance at all. Have a look at the keeping by Mr. Karthik Gumbale after completion of over number 3. The scorecard is 12 on the board, loss of 3 wicket. A very good bowling mark, very good start from the hands of bowlers of Falcon Fighters. Karambar not letting the batsman to go for big shot. We haven't seen any boundaries, any maximum so far here after completion of 3 overs. That is what very tight match between those teams. The completely tackling the bowlers for batsmen. Definitely this is a bad call for champions. Sports here, a bad sign for this champions sports in the initial stage itself. We have completed 3 overs. The scorecard just 12 on the board, loss of 3 wickets here. We are moving towards the 4th over number 4 here. Mohammad Ijaz comes into attack. Captain brings Ijaz into the bowling mark to bowler Ashwit Kasargod here. Definitely both the batsman, that is Santosh Bala as well as Ashwit Kasargod, have to go for maximums as well as boundaries to get a good total target for the against team. But singles and couple of runs are definitely not going to do any much difference in this particular situation. Yes, the new man introduced as a bowler, Ijaz in the bowling mark here. Slightly changes in the fielding. We can see the fielders are fixed in the short third man, deep third man, fine leg, square leg, mid off, mid on, and mid wicket reach and a field fix perfectly. There is a run out and this time, yes, being realized. Wonderful we can see from Naufal Gori, who is fixing the mid-wicket reach and taken right collection and given right throw to the bowlers, and what a quick action, lightning action we can see in the fielding marker. Everything is perfectly works in the department of fielding over here. Bowling is perfect, fielding is perfect. That is what Falcon Fighters Karambar is doing over here in this particular match between those teams. Have a look at the performance we can see from bowlers, fielders, and the fielding was perfectly done by Naufal Gori here. What a fraction of seconds. Everything is lightning over here. This is what we are watching, the high voltage match of this tournament between those teams. The bowlers, the fielders completely tackling, completely restricting the batsmen to go for singles, couples, boundaries, maximums. Totally in the hands of Falcon Fighters. That is what a beautiful game we are witnessing over here in this particular match between those teams. 12 on the board, loss of 4 wickets. We are in the 4th over. 5 more deliveries left in this particular over number 4 here. Ijaz, new man, the captain brings Ijaz this time to spell over number 4 here, taking the guard off right and over the wicket for Santosh Bela here. Yes, have a look at the nice delivery, nice strokes towards the covers region and taking comfortable single here. Have a look at the cool stroke we can see from Santosh Bala, not going for aggressiveness. That is what classical touch we can see from the batter here. Just flicking the deliveries to the deep region, covers region, and taking comfortable singles and adding the scope slightly here. That is not at all required in such situation. 13 is on the board, loss of 4 wicket. They have to go for big shot here to get a good total target for the against team here. He just once again nicely flick the deliveries to the short cover region and taken comfortable single here. There is overthrow and yes, a very good backup from the fielder here. Slightly just rotating the strikes over here each other, and there is no big difference in the scorecard here right now. Sali Adika, very experienced campaigner from the side of Champion Sports. We have seen
season 9. How he played a fabulous game in this particular MPL, and this time he's playing for Champions Force once again. Very good work in the fielding. Mark just left one run and collected a very good score here by the batters, just rotating the strikes themselves, and Ijaz not letting the batsman to go for big shot here. Nice one. Meanwhile, what in a backup from keeper Karthik Kumble, not letting the batsman to go for singles and couple of runs. That is what keeping performance we can see from the small guy. Chota packet Badamaka. What in a man, you are working behind the stumps. Beautiful man, you were. Definitely nice stroke towards his legs of reach and taking comfortable couple of runs. Yes, there is a mischance and chance for third run, but they are satisfied with the couple of runs here. After completion of over number 4, the scorecard is 17 on the board, loss of 4 wickets. Very good bowling. Mark, we can see this is the lowest score after completion of 4 deliveries so far. We have completed 3 matches of second day. This is the 4th match against those teams, and after completion of 4 overs, the scorecard still on 17 on the board. Just 12 more deliveries are left in front of batsmen, that is Sali Adka as well as Santosh Bela. Sali Adka definitely having that experience, and he's having that caliber. Definitely he have to do something for his team to get a good total target for the against team. Definitely Sali might go for big shot in this region. Definitely Sali have to find some gap strokes over here in this particular over number 5. Yes, captain brings the confidence player, the icon man of Falcon Fighters, that is Naufal Gori, playing for young French Gori all the way from Mangalore, and today he's playing for the Falcon Fighters Kadamba here, taking the guard of right and over the stamps. Naufal Gori to Santu Bela here. Nicely delivered, just edge to the bat. Meanwhile, ball rushing toward the fine third man region, but Karthik Kumble not allowing the batsman to go for a couple of runs, just letting the batsman to go for single more run here. Definitely we couldn't able to find any force and maximums so far here in this particular first innings. As I told, the match is going completely in neutral line. Have to go for big shots, have to go for boundaries, and definitely these 18 runs not at all enough for the against team. We have, when we are going for the batting lineup from the side of Falcon Fighters, we have Karthik Kumble, Naufal Gori, Vishwa Kumble, and many more players have been settled in the batting mark over here. Once again for Sali Adka, very good delivery. What a consistency with the tap delivery towards the stick was perfectly placed. Meanwhile, directly into the hands of wicket keeper, into the pouch of wicket keeper. He doesn't make any damage, he doesn't make any mistake over there by behind the stumps here. Once again, nicely flicked delivery towards the third man region and taken a comfortable single here. We can see only singles and couple of runs in this first innings from the side of Champion Sports here. It is a completely neutral game over here. We can witness in this particular match between those teams. Yes, as I told, Naufal, the trump card, the key man, the talented bowler from the side of Fighters Karambar here. Nicely delivered directly into the pads of the batter here, and big appeal from Naufal here. Umpire is not confidential. Stamp ball directly hit to the pad. Meanwhile, one more addition in the form of lag by, I guess, 24 on the board, loss of 4 wickets. We have completed 4 deliveries, 4.4 deliveries have been completed. 2 more delivery left in this particular over number 5 here. Once again, Naufal Gori to Sali Adka. What a fancy stroke we can see from Sali Adka there, flicking the deliveries and taking the single. One more leg by scored in the form of leg by. One more addition to the scorecard here. That is what Sali is doing, some fancy stroke we can see. That is what we can enjoy in this particular game. We haven't seen any boundaries maximums so far in this particular over number 5. Nicely driven towards the straight region and taken a comfortable single, call for couple. Meanwhile, satisfied with single more run here.
A very good completion of over number 5. After completion of over number 5, the scorecard is 22 on the board, loss of 4 wickets. Just 22 runs on the board right now after completion of 5 overs. Very low scoring game it was after completion of 5 overs. Definitely they have just 6 more deliveries to face in this wind up in this particular innings number 1. They have to go for maximum big shots to take their team into the higher stage of scorecard here. Till now we just seen singles and couple of runs from the side of Champion Sports. Sali Adka and Santosha Bella is on crease right now. The captain brings Sahad into the attack. Yes, Sahad, young man. We have seen the last match how he spelled the deliveries were perfection, and this is what the captain brings back him again in this particular match between those teams. Sahad, the young man, young talent, young blood into the action right now. Sahad spelling the last over of first innings here, the fourth match of this particular tournament, which is we are watching in this beautiful fed light and a beautiful fed light over here. Sahad taking the guard off right and over the stumps for Santosh Bella. First time facing Sahad here by Santosha. Yes, looking for a front foot, and this time never mistake. He doesn't mistake in the behind the stumps. That is what Karthik Kumble is doing over here. Have a look at that. Have a look at the stamping fraction of seconds. Lightning fraction of seconds stamping by Karthik Kumble. Doesn't miss any chance in this particular occasion. One more blow from the side of Champion Sports. Definitely they are struggling in the middle between those teams. Yeah, definitely the bowling side working perfectly for their team. What a good stamping we can see from the hands of Karthik Kumble. Have a look at the collection. Have a look at the stamping. Junior MS Dhoni we can see in this particular underarm cricket. All the way from Kumble, Karthik Kumble, the player of KFC Kumble. At the moment for the happiness, yes, the call of timeout indication of it says comes from the center. Timeout indication from the center here. One now fielder has to come inside the 30-yard circle, that which makes a very good chance for the batting side here. Nizam Muttam came as a middle order player. 5 wickets have been lost in this innings number 1 here. Sahada to Nizam Muttam taking the guard of right and over the wicket for Nizam Muttam here, facing first delivery this time yes, nicely delivered, but couldn't able to stop by behind the stumps keeper. Meanwhile one more addition in the form of leg by here. The scorecard is 23 on the board after completion of 2 deliveries. Last 4 more delivery left in this particular final over. Yes, umpire is going for abstrees here. The wide is a call from the on-field umpire, and definitely there is a review for the bowling side, and we have to wait for the decision of third umpire here. Yes, the crowd is gathering to witness this particular match between those teams. So this is not a small game. This is a big high voltage tournament which is presented by selected Mannamkuzhi Arts and Sports Club. Mannamkuzhi, and with the leadership of Ms. Rani for Umanga, and we have the backbone of this particular tournament, that is Shamim Zaman Kalpara as well as Siraj Dubai, the big sponsors of this particular MPL season 10, and definitely we are enjoying this particular moment, a particular evening of this session. Lights, crowd, gatherings, cricket, and the entertainment. Everything is just perfectly going over here in this particular evening of day number 2 here. We are waiting for the decision from the side of a third umpire. The third umpire working over here, Mr. Saiful Padilla, the experienced official, joining with Harish Padilla as well as Asmal Chokati. And this is definitely live telecast
helps a lot to take a very good decision in the crucial moment of tournament, and we have to wait and we have to respect each and every decision which is taken by the officials, those who are controlling the match, those who are controlling tournament throughout 6 days over here. Yes, third umpire call is no wide is a call from third umpire. Yes, very good decision have been taken from the third umpire side. No wide call, that which makes of advantage for the bowling mark here. So this is putting very good line and lands towards sticks. Two balls have been completed. Four more delivery left in this scope. Four more deliveries are left in this particular over. Number 623 on the board. Loss of 5 wickets here. Very good stroke. And this time have a look at the running collection from Karthik Kumbali. Very good collection by Karthik Kumbali. There is dance of couple of runs, and this time misunderstanding between the fielders here. Karthik given throw over there in the bowlers, and meanwhile they couldn't able to collect the ball, and they have been thrown towards the keeper's end. Karthik was not presented behind the stump, that which taken advantage by the batter and taken comfortable couple of runs here. Two more addition to the scorecard, never mind, just 25 on the board, loss of 5 wicket. Final over is in progress. Just 3 more deliveries are left in this particular final over. Once again Sahal to Sali Adka going for big shot. This time there is no connection at all. Meanwhile crossing single more run here in the form of leg buys. Yes, we have seen a lot of leg buys in the particular Mahir എവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ കമന്ററി ബോക്സിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന മാഹിർ എന്ന കുട്ടി എവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ കമന്ററി ബോക്സിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. Yes, this time very good delivery from the hands of the young man Sahad is doing perfect job in the bowling mark here. What in a good delivery have been placing by the bowler from the side of Falcon Fighters Kadambara. Last one more delivery left in this particular over number 6. So far 27 on the board, just 27 up for completion of 5 overs, 5 deliveries here. Last delivery taking the guard of right over the stumps for Sali Adka. Yes, looking for the big shot, nicely Divana, abs in the air, one a brilliant catch over there in the deep region. Onside fielder in the deep, corrected perfectly. This time Sali walks back to the dugout. Last delivery, last wicket. What in a bowling, what in a fielding. Everything is under control of Falcon Fighters over here in this particular over number 6. Innings number 1 we have closing with the scorecard of 28 is a victory target for a team like team Falcon Fighters in 6 overs. Very low scoring game we have seen. We haven't seen any boundaries, we haven't seen any maximum so far in the first innings. That's what the neutral line of match between those teams. Definitely that which makes a very sad for the audience crowd, those who are waiting for maximums and boundaries over here. Yes, 28 is a victory target for team like team Falcon Fighters Kadambara. Yes, sir. The match number 5, CSC Paivaliki takes Royal Friends Pachalampara. I would like to call all the players of those teams, please join with signing up for next upcoming match. The next match between CSC Paivaliki takes Royal Friends Pachalampara. The match number 5, day number 2. Yes, 28 is a victory target over here for team like team Falcon Fighters Kadambar. Now change the scene microphone. I would like to call Mr. Darwin Michael to analyze second innings of those teams. Thank you.
Thank you very much, Preetham Kumbala. We have witnessed a low score of the first innings so far in this MPL Season 10. Champion Sports Bandiod restricted in 27 runs in 6 overs. That showcasing and that presenting the quality of Falcon fighters. The bowlers, they shown the discipline and they have grabbed the victory. Outstanding bowling presentation we have seen in the previous innings. 28 runs of chasing target for Falcon fighters Kadambar. And players, please note, CSC Paivaliga, Royal Friends Pachilambara, your sign up time is starts. CSC Paivaliga, Royal Friends Pachilambara. രണ്ടായിരത്തിൽ സംഘാടന മികവോടുകൂടി അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റ് രംഗത്തേക്ക് ഒരു സംഘാടകനായി പതിയെ ചുവട് വെച്ച ഹനീഫ് ഉമ്മങ്ങ 26 വർഷങ്ങളുടെ സംഘാടന മികവുമായി ക്രിക്കറ്റ് രംഗത്തൊരു ലെഗസി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സെലക്ടഡ് മണ്ണൻകുഴിയുടെ ബാനറിൽ മണ്ണൻകുഴി പ്രീമിയർ ലീഗ് അതിന്റെ 10ാമത് എഡിഷൻ 28 runs of chasing target for the team Falcon Fighters Kadambar. Looks to be an easy one. Chemmi Periyadika, Naufal Gori, the opening bat is right in the middle. And on the other side, the best in the business, Ashwit Kasargod coming into the attack. 2 overs of power play will be a crucial for the bowling side of Champion Sports. Nicely played that one through the onside. Fielder comes from the deep square. Grabs it that one nicely. Easy 2 runs between the wicket by the batters of Falcon Fighters. Opens the scorecard in style by the captain of Falcon Fighters Kadambar. Chemmi finds his first run. Irfan KK, Royal Friends Pachilambara. Irfan KK, please report for sign. Scorecard open in style, 35 balls, 26 runs. Batters looks very cool. Right on the middle of the ground, we have seen an unbelievable finishing touch in the last match by Chemmi Periyadika, who has lifted up the stadium superbly for the team Falcon Fighters Kadambar. Here comes Ashwit Kasargod. That's a beautiful cover stroke. Lift up that one over the infield and lovely way the man places that one. Absolutely a strong offside player. He just loved to play that kind of stroke. And also using the wrist work superbly when he's playing through the offside. A masterful stroke maker, Ashwat. And in front of Ashwat, Chemmi Periyadika, a little bit trouble, but no. Fumbles that makes easy travel for the batters between the wickets. Gets a single in an easy way. Good start by the batting side. Runs on the board in the first 3 balls. Here is Naufal Gori. Watchfully left. It was way outside from the guideline. Easy way the batters moving between the wicket. That was away from the zone of the wicket keeper. It was fast and furious from Ashwat, but not perfection in the line and length on this occasion. Conceding an extra runs, a costly extra runs on this stage. Nicely driven through the offside region, through the long off. Absolutely a classical presentation of the off of the blade of the bat. Takes an easy double by the batter. How well the man controlling this rhythm in the front line. Chemmi Periyadika watchfully giving the treatment through the line. Nicely delivered. Nice piece of action on this occasion by Ashwat. That not gives any kind of chance. But there is productive 9 runs that came from the first 5 balls of this over.
And moving to the last ball of the over, number 1. Oh, lift up that one high in the sky. Absolutely hard and high out of the ground for 6 runs by Chemmy. What an excellent way. He just closed the over. Have a look at the shot by Chemmy. Absolutely in the slot of the batter, slotted out of the ground for a cracker jacker. 6er. That's the end of the over. 1 over done. 15 without loss. 15 റൺസുകളുമായി ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. Falcon is ready to fly in the sky. And Chemmy is fighting for Falcon fighters. Just 13 required. 30 balls of luxury that remaining. And the dugout is sitting in the relaxing luxury cushions of sofa. No trouble, no worries. Bat is just like a cool as a cucumber. And Chemmy the man just making it hot for the team. A typical tremendous strike. Just 13 required. Need some mercurial magic on the other side for the team. Champions Sports to coming back into the action. Hakeem is coming, the icon player. Naufal Gori on the other side, the icon player from the team. Falcon fighters trying for a reverse action. Nicely gets a connection over there, but not timed it nicely. It gets a single. Off the mark with that single by Naufal Gori. Just 12 required. Already the man Chemmy Periodica sitting in the driving seat. Trying it over there, but that is looks to be perfect in the line. Perfect execution from Hakeem, the icon player. But need a bundles of dot ball to back in the process for the team. Champion Sports. Match is completely sitting right in the hands. How well, look at the placement by Chemmy looking for second, but no need to take a risk at this moment. That's a message on the other side from experienced Naufal Gori. How well the man opened the face of the blade and grabbing some runs. That showcasing his strong offside hitting ability. Nicely gives it on to the onside region by Naufal Gori. Takes a single. Interesting way the openers are controlling the things. A one-way traffic, we can see that in the second innings. And the man here for the team Falcon trying for a reverse action. Finds a fielder, just takes a single. Just 5 runs came from the over, but it will be useful for the batting side. 20 runs after 2. Just 8 required from 24. 24 പന്തുകൾ 8 റൺസിന്റെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ്. Openers, they will set the tune and set the front stage. Just 8 runs away to the victory. And I request the captains of CSC Paivalige and Royal Friends Pachilambara for the toss. CSC Paivalige, Royal Friends Pachilambara. 8 റൺസ് മാത്രമാണ് വിജയത്തിന് ആവശ്യമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനായി ക്യാപ്റ്റൻസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. You have seen a wonderful bowling performance in the previous innings. The cricket, the biggest prize money ever. Oh, it's beautifully started. Oh, that produced the wicket. Madhu BFC, who just grabs the wicket of Naufal Gori, comes with a slower delivery and execute that one nicely on the track. Have a look at that one. The man Naufal Gori going back easily picks up the wicket. മത്സരത്തിന്റെ കൺട്രോൾ കൃത്യമായി ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ കൈകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നൗഫൽ ഗോരിയുടെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. വിക്കറ്റ് നമ്പർ 1 down, 20 for the loss of 1. But 23 balls remaining, just 8 required. New batter Karthik Kumbala, the wicket keeper batter, joins in the middle.
Have a look at the wicket again. Naufal moves far away from the stumps. Oh, it was a super perfection right on the leg stump. Excellent execution that provide the wicket. Brilliant from Madhu. But they need more wicket. They need some magic. Well, there will be the batters moving between the wickets. ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ പതിവ് പോലെ ദേർലക്കട്ടയിൽ നിന്നും കടല സിദ്ദീഖ് നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കടല വിൽപ്പനയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ഈ ടൂർണമെന്റിനോടനുബന്ധിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 100 രൂപ വിലയുള്ള ലക്കിടിപ്പ് കൂപ്പണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. കടല വാങ്ങുമ്പോൾ കൂപ്പൺ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്കൂട്ടർ, 2 സ്മാർട്ട് ഫോൺ, ഒരു ടാബ്, അങ്ങനെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ വിജയിക്കാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുകയാണ്. Karthik clips it through the onside region with a crispy sound of a bat. And how well the bat is completed. Doubles between the wickets without any trouble. Just 3 required from 20 balls. That's a lofted shot and load of authority behind that stroke by Karthik Kumbala. He finishes the game in style for the team. Falcon Fighters, they were flying in the sky, and the man Karthik Kumbala finishes off in style with a super 6. I welcome Riaz Pachilambara to the presentation desk to give away the Player of the Match award. I kindly request Riaz Pachilambara to the stage to give away the Player of the Match award. And the Player of the Match award in the post-match goes to, with a wonderful bowling performance by Sahad Kadambar. He bowls 1 over, just given away 1 run, and he grabs 2 wickets. Outstanding spell of Sahad. Sahad, please welcome and receive the Player of the Match award. And it will be giving by Riaz Pachilambara. I kindly request to Riaz Pachilambara. സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് റിയാസ് പച്ചിലമ്പാറയെ പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക്. പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് ഗോസ് ടു സഹദ് കടമ്പാർ. കാണാം നമുക്ക് സ്ക്രീനിലൂടെ ഷൈൻ സ്പോർട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ MPLന്റെ വർണ്ണങ്ങൾ വാരി വിതറി അലങ്കരിച്ച ഒരു കാർ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ മൈതാനത്തെ വലയം വയ്ക്കുകയാണ്. MPL എന്ന ക്രിക്കറ്റ് ഉത്സവം, MPLന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ആരവം. ക്രിക്കറ്റ് ഒരാവേശമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് MPL.
ക്രിക്കറ്റ് ഒരു അതിശയമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് MPL. ക്രിക്കറ്റ് ഒരു ആർഭാടമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് MPL. ക്രിക്കറ്റ് ഒരു അലങ്കാരമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേര് കൂടിയാണ് MPL സീസൺ 10. ആവേശ ക്രിക്കറ്റ് നിന്റെ പേര് MPL. അത്ഭുത ക്രിക്കറ്റ് നിന്റെ പേര് MPL. അതിശയ ക്രിക്കറ്റ് നിന്റെ പേര് MPL. ആഡംബര ക്രിക്കറ്റ് നിന്റെ പേര് MPL. As we can see, Sahad Kadambar is receiving the player of the match award. It will be giving away by Riyaz Mannamkuzhi. Yes, thank you, Mr. Michael Darwin. After a short while of the batch number of 5 CSC, Pai Valiki takes Royal Friends Paslampara. Royal Friends won the toss and elected to field first here. Yes, we have the openers from the side of CSC. Riyaz Yenam nicely driven towards the covers, reach and taking comfortable single here. Have a look at the start, have a look at the drive from the hands of Riyaz Yenam. We have seen yesterday Atif Yenam's performance in the bowling as well as batting mark here. Today the same team's player Riyaz is came into the attack with the batting mark over here. Riyaz as well as Timmu Arimala with the side from the side of the CSC Pai Valiki. And we have bowling mark Mr. Nizam, the egg corner man from the side of nicely flicked the deliveries towards the deeper onshore range and taking a comfortable single here. A very good start from the hands of both the batters, Timmu Arimala as well as Riyaz
Yanam. That is what they have started very perfect batting performance in this first initial over. Number 1 here. Once again, Nizam taking the guard of right and over this time for Riaza. This time slightly away from the leg stump region here. One more addition in the form of extra. Definitely Riaz is watching each and every deliveries and focusing that and making perfect hits in throughout the ground over here. Nicely flick the deliveries to the deep region and taking comfortable single. Have a look at the collection by the fielder who is fixed in the offside region and taking comfortable collection over there. Meanwhile, right throw towards the ends of bowler here. One more addition. The over number 4 is in progress after completion of 3 deliveries. 4 on the but looks up on the air, and this time there it's a call for catch. Meanwhile, very good effort in the deep region fielder, and couple of runs have been gathered over here in this particular delivery. The scorecard slightly moving towards the 6 on the board of the completion of 4 deliveries. That just was a call for catch from the hands of Jemo Arimala is doing very good job here in the sports initial over number 1 once again on his arm to Jemo. This time reverse sweep connected perfectly towards the square of return. This time goes for boundary line. What a hit from Jemo Arimala. The dangerous in the form of boundary. Scorecard slightly jumping towards 10 on the board after completion of 5 deliveries. Have a look at the reverse sweep connection with the bat and ball from the hands of Jemo Harimala. As we mentioned in the previous game, the Jemo is one of the talented batter from the side of CSC Paivalike. Goes for a big shot, They'll bumble with the bat here. Meanwhile, one more addition over there in the scorecard in the form of black guy. I guess there's some discussion is going in between the main as well as square leg umpire. We have to wait for the decision what they are going to be take in this last delivery of first over. Definitely they are doing right work over here, going for upstays for the decision. Yes, call from official going for upstays for third umpire for the reason. Okay, done. Yes, we'll work on that decision, and definitely it is not at all easy to judge in the bare eyes in the dark moment of lights over here in this particular situation. So definitely they have taken right decision to go upstairs to take a right decision over here in this particular match between those teams. Yes, it's a fair delivery and it's a score. Yes, a very good decision we can foresee from a third umpire here. We have Mr. Harish Padilla, who is judging as a third umpire in the off the field. Definitely the live telecast help in such a situation like this particular condition in the middle of this particular match. That is what the Shine Sports is doing for us in this occasion. We have to grateful for them. Completion of first over. The scorecard is 11 on the board, and there is no damage at all from the side of CSC Paivalike. Yes, both the batsmen are well settled in this particular crease. Jemo once again facing the new man of the Vicky Mujingawa.
as a bowler looking for the big shot. Nicely driven towards it. Short. Third man reads and fielder fixed perfectly. There is no chance at all for the batter to go for a single over here. Very good collection from the third man reads and fielder here. Very perfection was there. Meanwhile, there is no chance for the batter, not letting the batter to go singles and couple of runs restricted completely over here in this particular over number second. Vicky once again a very good spell. We can see from the young man. Vicky is doing perfect job in the second over. Have a look at the delivery. Have a look at the consistency with the line and length towards the stick was perfectly placing over here in this particular second over. Captain brings Vicky Mujingawa to spell over number second over here. That is what his responsibility he is doing in this particular over number second. What a start from the side of CSC Paivelke as well as from the side of friends Pachalampara here. Chemmu Arimala one side, another one side we have Riaz Ennam, the informed player from the side of Bangalore. Nicely driven towards the deep region and there is a bumble with the fielder. This time a couple of runs adding to the scorecard. Have a look at the running between the wicket. A slightly bumble in the deeper offside region and taken a couple of runs here. Two more addition to the scorecard. Nicely played by Chemmu Arimala. Chemmu well settled over here in this crease. That is what till Chemmu as well as Riaz NM is presented in the batting mark. Definitely it is a danger for the fielding side like the team friends Pachalampara. As of now 13 on the board after completion of 3 deliveries. We are in the second over is in progress now. Vicky Mujingawa to Chemmu Harimalai here once again taking the guard of right now with the stamp for Chemmu this time looking for the big shot. This time slightly edge for the bat. Meanwhile there is good collection and right towards the wicket keeper's hand. Meanwhile completed one single run here. What a quick run between the wicket we can see from Riaz Ennam as well as Chemmu Arimala. Both the batters having that same kind of caliber, experience, capacity, power to hit maximums as well as boundaries here. Yes, slightly changing in the fielding mark by the captain of friends Pachalampara here, getting the fielder into the 30-yard circle, placing over there for changing the fielding setup for batter Riaz Ennam, because the captain perfectly knows that Riaz can play any cricketing stroke throughout the ground. So that is the reason the captain bringing back the long region fielder into the 30-yard circle to restrict the singles and couple of runs over here in this particular situation. Nicely driven to the offside region and taken comfortable single here and this time satisfied with single. Very good fielding setup, very good fielding setup and sending the 30-yard region fielder toward the long deep onside region. That is what captain is doing. Perfect fielding position and this mark over here. Yes, this time rotated strike and given strike to Chemmu Arimala facing Vicky. This time looking for a big shot, ups in the air, fielder rushing towards the catch. So this time the first blow from the side of CSC Paivelke. Chemmu Arimala what's back to the dugout. Number second, the scorecard is 15 on the board. Loss of one valuable wicket from the side of CSC Paivelke. Have a look at the disappointment, sadness in the face of Chemmu Arimala. Have been played nicely in the beginning of first over and he went aggressively, but there was a bad luck for him. Slightly in the middle of the bat goes directly to the hands of the fielder. Meanwhile walks back to the dugout over here. First wicket have been fallen in the middle over here after completion of over number second. The scorecard is 15 on the board. Loss of one wicket. Yes, as I told, definitely captain is changing fielding position, doing some strategy, working with that strategy, planning and making fielders to
be in the perfect position of a fielding mark over here. That is what captain did perfectly. Captain placed the fielder and the fielder takes a comfortable catch of Chemo Arimala here. Third over, Dawood Sangari comes into the attack with the bowling mark, taking the guard off right and over the stump for Riazi NM here. Nicely flicked, nicely defended that delivery by Riaz NM and taken comfortable single here. One more addition in the form of single. 16 on the board after completion of 2 overs, 1 delivery, 2.1 over we have completed. The scorecard is 16 on the board. Riaz NM as well as Akshay joined with the senior partner over here along with Riaz NM. Yes, once again changing here fielding mark for Akshay. That's what have been mentioning, getting the fielders into the point cover region and fixing the position in the fielding mark here. Going for reverse sweep this time. There is no connection at all by the batter. Akshay completely beaten this delivery from Dawood Sangari. Very good start of this particular over number 3. What a brilliant start by Dawood Sangari, doing perfect job for team like Team Friends Pachalampara here in this particular third over. Nicely flicked the delivery to the shot the third man region and taken comfortable single here. Very good stroke, a very good shot, nicely played by the batter Akshay and taken a comfortable single and gave a strike to Riaz NM because Akshay knows very well that Riaz can go for maximums boundaries that which help for the good total for their team. That is what Akshay's mentality works over here in this particular situation, particular over number 3. 2.3 deliveries have been completed. 3 deliveries have been remaining in this particular over number 3 second. This time once again Dawood Sangari to Riaz NM taking the guard of right and over the stamps for Riaz. This time nicely have a look at the stroke from the hands of Riaz. This time completed a single and very perfection with a couple of runs. Clearly completed couple of runs. Have a look at the running batting style from Riaz NM. Have a look at the stroke too, just flicking the deliveries towards the cover point region where there is no fielder fixed very perfectly and taking couple of runs. That is what intelligent cricket we can see from Riaz NM, the trump card, the icon man from the side of CSC Paivalika here. Once again the Dawood to Riaz NM looking for each and every part of the corner of ground and this time might be going for fancy short strokes here. This time nicely flick the delivery towards the fine leg region and taken comfortable single. There is a slightly bit of a pumble with the wicket keeper as well as a fielder. Meanwhile they just satisfied with single more run here. Last one more delivery left in this particular over number 3. 20 is on the board right now. Still Akshay and Riaz is on crease. Definitely they can go for any big shots in the any moment of this such situation like in this particular match. Yes, once again Dawood Sangari for Akshay. This time taking the guard off right and over the stamps. Have a look at the fielding setup who is did by captain. Fielders have been set up nicely. This time there was a nice drive towards the rape. Third man region and taken comfortable Gauri over here. That is what Akshay is. As well as Friends Pachalampara going equally. 3 over completed. 1 wicket have been taken by Friends Pachalampara. 24 on the board right now after completion of 3 overs. 3 more overs are remaining in this to wind up this first innings over here in between those teams. Very good match we are witnessing in this particular day number 2 MPL season 10 as the biggest match in the history of Andram cricket that what we are witnessing in this particular under floodlight. Yes, definitely the water boys are working for their team. It is not at all easy to take singles and couple of runs and running between the wickets
definitely players will get tired of running between the wickets. They must need water in between such a situation. So definitely water boys are working very hard for their team here. We can see in this particular match between those teams. Yes, a new man, the captain once again bring back Vicky into the attack. Yes, captain knows that Vicky having that ability, Vicky having that good consistency with line and length towards Dick was perfect this time. Surfing, I think the big man, the big wicket, Riaz, and then walks back to the dugout. What a quickness with the bowling delivery towards direct towards the wooden stick. Paul, and have a look at the beautiful, the young man Vicky Mutsingao captain brings back into the attack, and that's the confidence Ward had on Vicky. He did perfectly over here in this particular over number 4. What a magnificent, terrifying delivery towards the sticks was perfectly placed by Vicky Mutsingao, young man in action. Definitely young man in action. The captain is doing very perfect job in this such conditions, such situation, getting right bowlers into the attack and bringing them when which batsman is on crease. That is what helped for the fielding side to tackle each and every player in the each and every moment of this occasion. And definitely one big fish on the net right now. That is Riaz and walks back to the dugout here. The match number 6, that is YFC Kano takes High Flyers Dubai. I would like to call all the players of those teams. Please report and the signing up. Yes, this time nicely flicked the delivery towards the fine leg region and taken comfortable single here. Very good bowling we can see from the side of Vicky Mutsingao. Have taken the valuable wicket of Riaz NM and collected the valuable wicket from the side of CSC Paivalike. Once again taking the guard of right and over the stamps for Akshay. Here goes for big shot. This time there is no connection at all. Meanwhile, cross single here. There is a chance of run out, but it was not perfect to the wicket. Meanwhile, one more addition in the form of leg by. Definitely very good start of 4th over. 3 ball have been completed, 2 runs left and 1 wicket have been taken. That also the valuable icon man of CSC Paivalike, that is Riaz NM's wicket have been collected by Vicky Mutsingao. The young man, chota packet, bada dhamaka, we can see from the hands of Vicky Mutsingao over here in this particular over number 4 here. Once again taking the guard of right and over the wicket for the new man Riaz here. Once again looked nicely, driven nicely to the deep onside reach and taken comfortable single, go for a couple of runs and satisfied with the couple of runs. Very quick running between the wicket, we can see from the both the batsmen Akshay as well as Riaz Kanchatura. Yes sir, Riaz, one of the experienced campaigner of under-arm cricket. He is having that ability, strategy, plan, quickness, everything. He's packed up with under-arm cricket over here. That is what he is showing over here. He knows that Vicky, the young talent man, his deliveries are very difficult to face, so he's defeating the deliveries himself, and he's doing a very good job in the batting mark over here for a team like Team CSC Paivalike. The captain itself came into the attack with the batting markers. Nicely delivered towards the deep onside reach and taken comfortable single here. Yes, no ball indication from main umpire. Definitely the umpires are doing very perfect job in the bare eyes. It is not at all easiest thing to judge bare eyes, and definitely goes for upstage for the 3rd umpire. Yes, the call is no ball, and we have to wait for the 3rd umpire decision.
Yes, no ball is the call. Right decision taken by the main umpire, Mr. Asmal Jokat. Very good decision. We have to appreciate the main umpire, Mr. Asmal Jokat, as well as Mr. Saifullah Padilla, Mr. Harish Padilla. They are doing very good job in this particular tournament. Have a look at the judgment by the officials. It is a overstep each and every delivery, each and every moment of that cricket. They are watching perfectly and taking right decision in the right moment over here. Once again for Akshay, this time away from the off stump region. One more extra adding to the scorecard. Free hit still remaining here for Akshay. Definitely it is quite extra over. We can see in this particular over number 4 we have completed 5 deliveries. Last one more delivery in this particular over number 4. Last delivery taking up the guard of right now with the stamps for Akshay here. Nicely delivered, looking for a big shot. Nicely driven towards the onside region and taken comfortable single here. There was a chance for the free hit, but Vicky Mujangavo did perfect delivery to Akshay, and they have just flicked the deliveries towards the deep region and taken comfortable single. After completion of over number 4, the scorecard is 32 on the board, loss of 2 wickets. A very good cricket we can see from the both teams equalizing each other. There is one side we have Friends Pachalampar, another one side we have CSC Pivot. Bowling mark to attacker. The bowling department here, Pyrosa to Akshay over number 5 over here in the hands of Pyrosa, taking the guard of right now with the stamp for Akshay. This time first delivery, nicely driven through towards the covers region and taken single. There is a very good collection by Vicky Mujanga. Have a look at the running fielding by young man of Vicky Mujanga, not letting the batsman to go for a couple of runs, running together with the ball and giving right throw towards the bowler over here. That is what the fielding department goes perfectly for Royal Friends Pachalampara here. Fifth over is in progress. Pyro Stama once again for Riaz, the senior. Nicely driven. There is a one in a collection, and the point to region. A perfect catch it was. What an placement which is settled in the cover point region by the captain. That is what the captaincy of this particular match, the captain of Friends Pachalampara, nicely placed the fielder in the cover. CSC 5IK. One of the good
Yes, thank you, DJ, for your very good music. We are enjoying a lot in this particular session here. A very good catch that was. What a catch from the cover point region field fixed perfectly. That is what feeling set up by the captain of Royal French Patlampara here. Once again, very good delivery from Paidu Patlampara. What a delivery! What a quickness towards the stick was perfectly placed by the bowler here. There is no chance at all for the batter Jaffa McCallum, the senior man from the side of CSC Paivaliki, is striking in the middle for Fido's delivery here. Paidu Patlampara doing perfect job in the 5th over here. We have 3 deliveries left in this particular. Just flick the deliveries toward the point cover region and taken comfortable single here. That is what batsman is doing here, because each and deliveries are not at all easy to judge for the batter in such condition. Each and every deliveries are very difficult to manage, and that's what the batsmen are just doing, rotating the strike and giving right strike for the right batter in the right situation. Fidos once again to Akshay here. Very good delivery, nicely played toward the point region. One more suicidal here. One more suicidal from the side of CSC. Jaffer walks back to the dugout here. One more wicket have been fallen from the side of CSC Paivalike. That is what the point region fielder is doing perfect job in the middle over there. 2 wickets in a row. It's a big damage for CSC Paivalike so far here. Four on the board, loss of 4 wickets. Last delivery left in this particular over. Number 5, Fidos Patlampara so far did very perfect job in the bowling mark here. Last delivery to Akshay here. As Tom sweeping the shot towards the fine right region and taken a comfortable single here. And a strike once again to Akshay, holding last over. After completion of over number 5, the scorecard is 35 on the board. Loss of 4 wicket. So far, very good bowling department works perfectly for team like team French Patlampara. 35 on the board. Loss of 4 wickets. Last 1 over is remaining to wind up first innings against CSC Paivalike here. Just 34 they have been collected in 5 overs. It is not at all easiest thing. Over is in progress. Moinu Patlampara with the bowling mark here, taking the guard of right over the stamps for Akshay. This time going for a big shot, nicely demanded. There is a bumble with the fielder. Main ball, that bumble goes so boring here. What a stroke we can see from Akshay CSC Paivalike. The fielder was not able to collect that ball perfectly. Meanwhile, that goes to boundary line. 4 more additions. The final over is in progress. 39 on the board. Nicely bowled this time. There is a big appeal and
No decision from the official there. That is dotted one. Yes, right, dotted delivery over here. And this particular over number 6 is going over here in this last time. And the batters have to go for big shots to lead their team in the high position of the table. Akshay is on strike. Moina Pachalampara to Akshay. Nicely flick the delivery to the onside region, taken comfortable single there. Field of play presented and just left single more run here. 40 on the board. 40 on the board. Loss of 4 wickets. Have a look at that. Yes, once again indication from the center. Timeout call, very perfection with the timings by the officials. Each and every seconds which is countable in the mindset of official. Again timeout call from the official in the middle. One fielder has to come inside 30-yard circle here. Once again, very good delivery straight away into the hands of wicket keeper. There is a bumble, and this time one more wicket. Yes, goes for the upstrees. Slightly misunderstanding with the batters over there. The umpire goes directly for the third umpire to check run out over here. Yes, definitely we have to check each and every occasion of this particular match between those teams. The tail and over is coming to an end over here in this particular situation. Definitely the right decision have been taken by the onside fielder, that is Mr. Asmal Jokate. Yes, he's in. Its call is not out. Very good umpiring from Ajmal Jokate here. Straight away goes to the third umpire to take decision for the right time. That is what Ajmal Jokate is doing as a main umpiring over there in the middle. Yes, this time fifth delivery to Akshay here. Akshay has to go for big shot to create a good total target for the against team like team French Pachalampar here. Fifth delivery right over the stamps for Akshay. This time going for big shot and front foot, but that was not enough. A good line and lands towards the ticker. Meanwhile, away from the off stump region, one more addition in the form of extra here. Last two more delivery left in this particular over number 6. Once again, Moinu Pachalampare to Akshay here. Nicely Warmups in the air, fair reaction to the ball, and this time collection was perfect. One more blow from the side of CSC by Akshay walks back to the pavilion. Nicely developed towards the deep long off region, but fielder tall guy fixed perfectly by the captain. As delivery of final over to wind up innings number 1. Very good so far. Just love 6 run in this particular 5 deliveries. Nicely delivered this time. Nice stroke towards deep along off region and taking single goal for a couple of runs. It's also for run out, and this time a missed collection by the bowler that least for the couple of runs. Addition to the scorecard. The scorecard is 44 on the board. 45 is the victory target for team like team Friends Pachalampara here. 44 is the total scorecard, and 45 is the victory target for team like team Friends Pachalampara to get the victory against CSC Paivalike here. A very good match, a very controlled match we have witnessed between the both, that is Friends Pachalampara
पब्लिका की मैच में मैच जा रही है और मैच नंबर 6 के लिए स्वागत करना चाहता हूं। हस्ताक्षर की पुस्तक खुला रखे हैं YFC कन्नौर हाई फ्लाइज दुबई के बीच में अगले मैच खेला जाएंगे। हस्ताक्षर के लिए सभी सदस्यों ने आ जाइए और इस मैच के विश्लेषता है कि पहली पारी खेल चुके हैं CSC पब्लिका ने 6 ओवर की पहली इनिंग्स में 44 रन बनाए, 45 रन के लक्ष्य को यहां पर खड़े किए। CSC पब्लिका रॉयल फंड्स पचलंबारा के बीच में जोरदार मुकाबला जा रही है। आप देख रही हैं सीजन 10वीं MPL की यानी मन्नगुजी प्रीमियर लीग सेलेक्टेड मन्नगुजी की ओर से इस प्रतियोगिता खड़े की है। जी हाँ, हम तैयार हैं सर। और ग्राउंड अंपायर में सैफुद्दीन और हरीश पटेल दो महत्व व्यक्तियों ने इस मैच को संभाल रही हैं। 45 रन को पीछा करने के लिए आरंभिक बल्लेबाज दो आए हैं, निजाम और मोइनू पचलंबारा। दो महत्व जोड़ी को भेजा गया है। पहली ओवर के रूप में गेंदबाज है रियाज एनम। अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाजों से एक है रियाज एनम। बायर कई कंबरोडन से शुरुआती करना चाहते हैं इन्होंने, जमीन पर हल्के टपकाने के बाद अपनी शैली में पहली गेंद। व्हाट ए डिलीवरी! देखिए कितनी शानदार गेंद थे और इस एक रन तो लेग बाई में मिले हैं, पैड पर खेले हैं, तब तक अपने खाता खोल चुके हैं और इस एक रन के मदद से रनों की संख्या एक। जाकिर जाकी कहीं भी हो हस्ताक्षर के लिए आ जाइए। जाकी कहीं भी हो आवाज सुनते हैं तो यहां पर आ जाइए। हस्ताक्षर की पुस्तक खुले रखे हैं। आपके मैच अगले मैच है। अब अगली गेंद रियाज एनम दूर वाली चोट से वध गेंद अंपायर को क्रूज करते हुए तैयार है। अपनी शैली पर देखिए, जमीन पर टपकाने की शैली देखिए, झुककर खड़े हैं और शैली बहुत सुंदर शैली है इनके बायर के कंपरोडन से वध गेंद और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है। इसी के साथ तो बची विकेट नंबर 1 डिपार्ट्स। पहली विकेट मोइनू पचलंबारा बैक टू द पवेलियन। बड़े विकेट मोइनू पचलंबारे की विकेट चटकाए। पावर प्ले जारी है। सिर्फ दो खिलाड़ी तिरसारे के बाहर रहते हैं। हद्दनाथ के बल्लेबाज के लिए वाइडिश मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है और लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है बॉर्डर लाइन के करीब। बाकी सभी जो तिरसारे के अंदर है, शॉर्ट फाइन लेग पर तिरसारे के अंदर है, मिड विकेट है, पॉइंट है और स्लिप मिड ऑफ है, थर्ड मैन है और स्लिप में है फील्डर, शॉर्ट लेग में भी है और गेंदबाज तैयार हो चुके हैं। रियाज दूर वाली चोट से बद विकेट। व्हाट ए डिलीवरी! एक रन के लिए दौड़ा जा रही है। जरूर एक रन हासिल किए, पैड पर खेले हैं, तब तक रनों की संख्या दो भी लेग बाई के रूप में रन मिले हैं। दो भी लेग बाई हैं। अब तक कोई बल्लेबाज ने खाता नहीं खोल चुके हैं। निजाम अब आए हैं स्ट्राइक पर। तीसरी गेंद पर यहां पर अच्छी गेंद थे। फैरूज पचलंबारा थे बल्लेबाज, नए बल्लेबाज के रूप में आए थे। पहली विकेट पतन होते ही अब रियाज एनम दूर वाली चोट से अवध विकेट। लंबे कदमों का इस्तेमाल कर रही है। शैली देखिए कितनी सुंदर शैली के साथ इन्होंने गेंद फेंकते हैं। 1.5 साल तक अंडरआर्म क्रिकेट को छोड़कर सऊदी अरबिया में जाकर बैठे और उसके बाद अपने गांव में वापस आए, अंडरआर्म क्रिकेट की दुनिया में जोड़ दिए। अब अगली गेंद अवध विकेट। अच्छी गेंद उठा रही है, हवा पर गेंद थी लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द विकेट और फैरूज पचलंबारा डिपार्ट्स बैक टू द पवेलियन।
आपके आगमन हुए हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस विकेट पतन हुए, दूसरी विकेट के पतन हुए हैं यहाँ पर, पटाखे फोड़कर एमपीएल को चमत्कारी बना रही है यहाँ पर। फिर एक बार रियाज अन्नम क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, देखिए शानदार गेंदबाजी के मजारा ओवर द विकेट। और इस गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच में गेंद गई है, तब तक फील्डर ने वापस ये एक रन मुश्किल से हासिल कर चुके हैं, निजाम के खाता खोल चुके हैं। रनों की संख्या 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी 3 रन। 2 विकेट के नुकसान हुए, एक तो कैच आउट हुए, एक तो रनआउट के रूप में अभी भी फैरूज ने वापस गई है। निजाम अब तो अपने खाता खोल चुके हैं। रियाज अन्नम अपनी ओवर की आखिरी गेंद, लास्ट बॉल को 3 रन, बहुत खूबसूरत शुरुआत, चकाचक शुरुआत दे रही है रियाज अन्नम ने। पावर प्ले में इतनी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं ओवर द विकेट। और गेंद को स्वीप करना चाहा, गेंद गई है विकेट कीपर के पीछे, तब तक पहली वाइड इस इनिंग्स के, इस ओवर के पहली वाइड है। इस वाइड की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 4 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर रन बनाना है 45 इज द विक्ट्री टारगेट, 45 रन। बिल्कुल आज के दिन लो स्कोरिंग मैच ही जा रही है, ज्यादा से ज्यादा जो 50 के नीचे ज्यादा प्रतिशत यहाँ पर दिख रही है। रियाज फिर एक बार ओवर द विकेट, और इस गेंद को स्वीप किया गया है 2 फील्डर के बीचों बीच में, तेज रफ्तार एक 47 से निकलता हुआ गोली की तरह गेंद दूसरी मारे के बाहर गई, चौका। आईपीएल के सीजन 10वीं को पूरी तरह चमत्कारी बनाते जा रहे हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं डीजे मास्टर। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल जरूरी वाली शॉट थे, इस चौके की बिल्कुल जरूरी थे, क्योंकि पहली 5 गेंद में बिल्कुल दबी हुई स्थिति पर थे। और उसके बाद आखिरी गेंद पर जो कप्तान ने अपने जो जवाबदारी समझकर इस गेंद के गति को पहले समझ लिया ना, तेज रफ्तारी थे, उस रफ्तारी को समझ लिए, पूरी तरह गेंद के गति समझकर इन्होंने हल्के बल्ले से मुंह खोले। आसान नहीं है उस काम, क्योंकि 3 फील्डरों के बीचों बीच में ऐसे शॉट लगाना। चौके मिले हैं, रनों की संख्या टोटल स्कोर इज 8 ऑन द बोर्ड, 37 मोर रन रिक्वायर्ड आउट ऑफ 30 डिलीवरी, यानी कि 30 गेंदों पर 37 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। नए गेंदबाज के आगमन हुए हैं, न्यू बॉलर पर 29 डिलीवरी, 29 गेंदे बचे हैं और 36 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। अब तैयार है लंबे कदमों के इस्तेमाल करते हुए नसाफा चलंबारा, दाऊद संगाड़ी के लिए, कप्तान के लिए गेंदबाजी कर रही है नसाफा पचलंबारा, दुर्बाली चौक से बता विकेट। और गेंद को उल्टा बल्ले में गेला, चाहा जबरदस्त अपील, 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 आत्मविश्वास भरी हुई अपील थी, 1 रन दौड़कर पूरा किया। तब तक अंपायर कह रही कि लगबाई जरूर है, पैड पर जरूर लगे हैं, लेकिन स्टंप के आगे नहीं थी, बिल्कुल हटकर खड़े हुए थे, उस वजह से 1 रन तो लगबाई में मिले हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 10 ऑन द बोर्ड, 10 रन पर पहुंच चुके हैं, 35 अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए, 28 गेंद बचे हैं, 28 टू गो, 35 टू गेट। अब अगली गेंद दुर्बाली चौक से हिंदुस्तानी स्कूल से गेंदबाजी कर रही हैं, पावर प्ले की दूसरी ओवर आप देख रही हैं एमपीएल के सीजन 10 दूसरे डे। और इस गेंद को उठा करके ला है मिड विकेट पर, खाली जगह, बाय बाय, 10 बाउंड्री।
बॉल्स के बाद बाउंड्री के बाहर गए हैं और इसी के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार दूर वाली चौक से लंबे कदमों के साथ नसाफा चलम्बारा अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार और इस गेंद को खेला गया है वाइड स्मिड विकेट पर गेंद गई। तब तक फील्डर मौजूद इनको वंचित किए हैं लेकिन 1 रन पर संतुष्ट हुए और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 15 ऑन द बोर्ड। पावर प्ले को पूरी तरह इस्तेमाल किए हैं। देखिए 7 रन इस ओवर में भी कामयाब हुए हैं। 4 गेंदें फेंक चुके हैं, 7 रन कर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण चौका लगाए थे, बहुत अच्छे चौका थे निजाम के। अब अगली गेंद दूर वाली चौक से मध्य विकेट नसफ चलम्बारा उनके सामने दाऊद संगड़ी दूर वाली चौक से मध्य विकेट। व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए कमबैक, नसाफ किलर ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल जरूरी वाली डॉट बॉल थी क्योंकि चौका लग गई तो 1-2 डॉट बॉल आ जाएंगे तो वापसी आ सकते हैं सीएससी फैमिलिका के लिए अपनी खुद के टीम के सामने खेलने के लिए मौका मिले। देखिए इसको कहते हैं प्रीमियर लीग। भाई भाई अलग टीम में खेलते हैं, बाप बेटे अलग अलग टीम में खेलते हैं, एक ही टीम के सदस्य सामने वाली टीम में खेलते हैं। और इस गेंद बहुत खूबसूरत शॉट, देखिए कितनी शानदार शॉट। इनको कहते हैं जवाबदारी वाली बल्लेबाजी। देखिए यहां पर डबल एक डॉट हुए थे, उसके बाद उनके मन में एक कह रहे थे कि एक बॉल डॉट हुए, अब आने वाली गेंद में कुछ ना कुछ करना ही होगा। 2 रन तो इन्होंने कमा लिया गया है। रनों की संख्या टोटल स्कोर इज 17 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर, 28 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 24 डिलीवरी। 24 गेंद में 28 रन की जरूरत है। यहां पर मैच देख रही है सीएससी पब्लिक का रॉयल फंड्स पचिलंबारा। आज के दिन के 5वें मैच, कुल मिलाकर 14वां मैच। अगली मैच के लिए टॉस के लिए तैयारी हो जाइए, टॉस के लिए तैयारी हो जाइए। मैच नंबर 6 वाईएफसी कन्नूर हाई फ्लैश दुबई। दोस्तों के बीच में लड़ाई जा रही है, दोस्तों की बीच में लड़ाई जा रही है हाई फ्लैश दुबई और वाईएफसी कन्नूर। हाई फ्लैश में भी और वाईएफसी कन्नूर के मालिक हैं हारिस कन्नूर और वाईएफसी के मालिक के लिस्ट में दर्जा भी हुए हैं हारिस के नाम भी मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत लोगों ने मिलकर इस प्रतियोगिता में बहुत बड़े टीम खरीद लिया गया। हाई फ्लैश बिच्छू बॉयज मन्नामकुझी ने खड़े किए थे बीपीएल बिच्छू प्रीमियर लीग, उस क्रिकेट प्रतियोगिता में विनर्स बने थे हाई फ्लैश ने। वाईएफसी कन्नूर ने जो एमपीएल के 9वीं सीजन में रनर्स अप बने थे बहुत बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता में। दोनों टीम बहुत बड़े नामदार टीम है। टॉस के लिए आ जाइए कैप्टन। अब अगली गेंद नए गेंदबाज की योगदान हुए हैं रियाज और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है। लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जा रही है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ। 1 रन तो हासिल किए और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 18 ऑन द बोर्ड। रियाज नो स्टार गेंदबाजी के लिए आए हैं। पावर प्ले हटा दिए तो रियाज आए हैं कप्तान। कप्तान के लिए गेंदबाजी करने के लिए मौका मिले हैं। सीएससी पब्लिका के कप्तान है रियाज कुंजतूर और स्ट्राइक पर दाऊद संगाड़ी। रियाज कुंजतूर तो अबू 40 के खिलाड़ी हैं, 40 वर्ष के ऊपर हैं, 42 साल हो चुके हैं उनके। अब तैयार हैं अगली गेंद लेकर दूर वाली चौक से मध्य विकेट अंपायर को कोस करते हुए दाऊद के लिए। दाऊद क्रॉस खेलना चाहते थे, बल्ला और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं हुए। वाईएफसी कन्नूर कैप्टन और उसी तरह हाई फ्लैश कैप्टन आ जाइए टॉस के लिए। आप देख रही हैं तीसरी ओवर, 5वीं नंबर मैच है आज के दिन के, कुल मिलाकर 14वां मैच। यहां पर रियाज कुंजतूर फिर एक बार ओवर द विकेट दे उल्टा बल्ले पकड़े, जोरदार शॉट लगाने के लिए कोशिश की है, सही संपर्क तो नहीं हुए मेरे ख्याल में, वरना यहां पर बड़े शॉट तो जा सकते थे। रनों की संख्या अभी भी 19 लॉस ऑफ 2 विकेट, 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर के मुकम्मल जा रही है। फील्डिंग में बड़े परिवर्तन लाना चाहते हैं रियाज कुंजतूर ने। फाइन लेग के फील्डर को कुछ आगे पीछे खड़े किए, वाइडिश मिड विकेट के फील्डर को मिड विकेट में भेजा दिए। लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है और डीप में है, पॉइंट में है और थर्ड मैन बिल्कुल खींच कर रखे हैं। व्हाट ए डिलीवरी,
व्हाट ए डिलीवरी। निजाम बड़े शॉट के लिए कोशिश की है लेकिन बल्ला और गेंद के बीच में संपर्क तो नहीं हो रही है। रियाज कुंजतुर तूफानी गेंदबाजी की मजारा करते हुए अंडरआर्म क्रिकेट में कई साल से, पिछले 30 साल से अंडरआर्म क्रिकेट में मौजूद है इस खिलाड़ी, लाजवाब योगदान है। अब अगली गेंद दूर वाली चोट से वध विकेट जमीन पर हल्के हल्के टपकाने के बाद रियाज निजाम उठा कर के ले हैं हवा पर गेंद, लॉन्ग की तरफ गेंद जाती हुई रोकने के लिए कोई मौका नहीं, गेंद तो सीधा गई सीमा रेखे के बाहर, टन टना टन चौका। एक बाउंस के बाद सीधे गेंद गई है सीमा रेखे के बाहर। फिर एक बार रियाज तैयारी होते हुए, चौके की बिल्कुल जरूरी थे उस समय पर चौके लगाए। इस ओवर कुछ दबे हुए थे। 23 आखिरी गेंदे बचे हैं। रियाज तैयार है, 6 रन कर चुके हैं इस ओवर में। पांच गेंदों में 6 रन कर चुके हैं। लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं रियाज। एकमात्र चौका है, मात्र एक चौका है इस ओवर में। फिर एक बार दूर वाली चौक से विकेट रियाज। अपील 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 अपील, लेकिन जिस अपील को इनकार की है नीचे बैठ कर अपील कर रही है रियाज ने। बहुत अच्छी गेंद थे और इसी के साथ विकेट पतन हो चुके हैं। अब देखिए मैदान पर असली जोड़ी आ चुके हैं। मूसा पठान, दाऊद संगाड़ी, ब्रदर्स संगाड़ी की हमेशा की आरंभिक बल्लेबाज दोनों। 23 ऑन द बोर्ड, 22 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 18 डिलीवरी। मूसा पठान की आगमन दिख रही है। निजाम के विकेट पतन हुए तब मूसा पठान के आगमन में गेंदबाज की आगमन हुए हैं रियाज यन्नम, तूफानी गेंदबाज। फिर एक बार इस ओवर मेरे ख्याल में इस मैच के रिजल्ट बदल सकते हैं। अगर इस ओवर में पूरी तरह चकमा खाएं तब यहां पर वापस आने के लिए बहुत बड़े कठिन काम है रॉयल फ्रेंड्स पचिलंबारा को। अगर इस ओवर सफल खेलें, सामना करें सही सलामत, तो यहां पर आसानी के साथ दरखार तक पहुंच सकते हैं। रियाज यन्नम फील्डिंग में बहुत बड़े परिवर्तन ला रही है। गेंद फेंकने के लिए हिंदुस्तानी स्कूल से तैयार है। खोटे की पहली ओवर तो बायर कैकम्बर रोडन से गेंद फेंके थे इन्होंने, अब तो हिंदुस्तानी स्कूल से इनको मौका देते हुए लंबे कदमों के इस्तेमाल कर रही हैं भैया। लंबे कदमों के इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तानी स्कूल से जमीन पर टपकाने के बाद ऑफ विकेट। और इस गेंद को हल्के बल्ले के मुंह खोले हैं, फील्डर पहुंचे हैं तब तक का यहां पर 2 रन भी पूरा किए। देखिए बिल्कुल स्लिप नहीं थी, स्लिप में कोई फील्डर मौजूद नहीं थी, टैडमैन खींच कर रखे थे। उसी जगह पर इन्होंने जगह बनाए। दाऊद ने, कप्तान है, जवाबदारी वाली खिलाड़ी हैं, इन्होंने अच्छी तरह सोच समझ कर खेल रही है क्योंकि कोई मामूली गेंदबाज तो नहीं है। एनम मैंगलोर की सबसे अच्छे ऑलराउंडरों से एक है। अंडरआर्म क्रिकेट में एनम के जैसे फैंस किसी टीम में भी नहीं है मेरे ख्याल में, उतने ज्यादा फैंस हैं एनम मैंगलोर के लिए। रियाज के पीछे भी बहुत बड़े फैंस हैं। दक्षिण कन्नड़ा जिला की प्रमुख टीम एनम मैंगलोर 1.5 साल तक बाहर गांव में थे सऊदी अरेबिया में, फिर आकर अंडरआर्म क्रिकेट में ज्वाइन हुए। आने वाले हफ्ते में इन्होंने वापस जाने वाली है सऊदी अरेबिया में। इरादा है कि एमपीएल में सबसे बड़े हीरो बनकर जाऊं। अब अगली गेंद नौबत विकेट, उल्टा बल्ले में खेलने के लिए प्रयास, अपील और इसी के साथ
ओहो दाऊद वसंगारी की विकेट, बिल्कुल जरूरी वाली विकेट। सेलिब्रेशन जारी है और दोनों अंपायर के बीच में कुछ बातचीत പത്താം പതിപ്പ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വം കൂടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ മഷൂദ് പല്ലക്കാന, പെർള സ്വദേശി, അണ്ടർ ആം ക്രിക്കറ്റ് ചാരിറ്റി അസോസിയേഷന്റെ അനിഷേധ്യനായ ട്രഷറർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി തന്നെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഈ MPL 10ാം പതിപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. कर उस विकेट को छीन कर लेकर गई है। रॉयल्स पछिलंबारा की हार्ट, बिल्कुल हार्ट निकाल कर लेकर गई है रियाज यन्नम ने। वाह भाई वाह, क्या बॉलिंग की मजा रखी है, गेंदबाजी की मजा रखी है।
अब तैयार है अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर। दूर वाली चोट रियाज इन्नम दिखने में बिल्कुल पतले हैं, दिखने में बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन अंडरआर्म क्रिकेट में सबसे बढ़िया, रैंकिंग में सबसे बढ़िया है। सबसे श्रेष्ठ 10 ऑलराउंडरों से एक है जो रियाज इन्नम, आतिफ इन्नम। इन्नम मैंगलोर की सबसे बड़े 2 खिलाड़ी हैं, इस मुकाबला में खेल रही है एमपीएल सीजन 10वीं में। रियाज फिर एक बार, अच्छी गेंद थी, छिपकी है गेंद को मिड विकेट पर फील्ड लेते उनके हाथ पर गई, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 26 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट। अब तैयार है $15 बॉल रिमाइनिंग, 19 रिक्वायर्ड। व्हाट अ मैच, बिल्कुल चकाचक मैच जा रही है। फिर एक बार तैयारी करते हुए दूर वाली चोट से ओवर द विकेट रियाज इन्नम। उनके शैली पर देखिए हिंदुस्तानी स्कोरलाइन से अपनी शैली पे ओवर द विकेट। व्हाट अ डिलीवरी, लेकिन अंपायर ने कहा कि गलत लाइन है। जी नहीं, वाइड के लिए चेक करना चाहते हैं। बल्ले लेकर गई थी गेंद के पीछे, लेकिन अंपायर को जल्द समझ नहीं पाए। सीमा रेखा है जो वाइड के, उसके बिल्कुल करीब गए हैं, बगल में गए हैं, इस वजह से चेक करना चाहते हैं। बिल्कुल जरूरी वाली थी इस 1 रन के, बिल्कुल एक रन भी सोने जैसे हैं रॉयल फ्रेंड्स 25-12 के लिए। अब तैयार है अगली गेंद लेकर। नौ सेकंड पर आप भी खड़े हैं, स्ट्राइक पर मूसा खड़े हैं, और इस गेंद को खेला गया है, खतरा हो सकते हैं। जी नहीं, फील्डर के रडार पर नहीं है, स्टंप बिल्कुल मिस हुए हैं। अगर डायरेक्ट हिट सीधा लगते तो यहां पर मुखाते करीबी मामला हो सकते थे। फिर एक बार तैयारी करते हुए आबिद भी सिरोड़ा है, तब बॉल बचे हैं, 2 गेंद बचे हैं इस ओवर में। शानदार गेंदबाजी के मजारा। अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे बड़े प्रतियोगिता जा रही है एमपीएल सीजन 10वीं, डे नंबर 2, मैच नंबर 5। रियाज, इस गेंद को विकेट कीपर ने छोड़ दिए मेरे ख्याल में। रियाज की गेंद को पकड़ना उतनी आसान काम भी नहीं है, फिर भी सीनियर खिलाड़ी ने शाफी विकेट कीपर के रूप में खड़े होते हैं, यह तो बड़ी बात है। सबसे खतरनाक गेंदबाज है, उनके गेंद वेरिएशन समझ नहीं पाते हैं गेंद के, ये तो बढ़िया है। रियाज के स्ट्राइक बदल चुके हैं। आबिद बीसी रोड नए बल्लेबाज तो 9 सेकंड पर गए, स्ट्राइक पर मूसा पठान आए हैं। ये तो रॉयल फ्रेंड्स 25-12 के लिए ये तो प्लस पॉइंट है, बढ़िया बात है, क्योंकि 1 रन भी मिले हैं, स्ट्राइक रोटेट भी हुए हैं। कभी कभी स्ट्राइक रोटेट तो बहुत बड़े खतरनाक बन जाती है। मूसा पठान जैसे बल्लेबाज को स्ट्राइक लाना उतनी आसान काम नहीं है, स्ट्राइक पर रखकर गेंद फेंकना है, उतनी आसान काम नहीं है। अब अगली गेंद रियाज इन्नम तैयार है, दूर वाली चोट से ओवर द विकेट। अपील की है, लेकिन जिस अपील को इनकार किए तब अंपायर ने कहा कि कोई
पैड पर नहीं लगे हैं, बल्ले की बारी सा लगे हैं, इस वजह से इंकार किए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 29, 15 मोर रन रिक्वायर्ड आउट ऑफ 12 डिलीवरी। 12 गेंदों पर 15 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। नए गेंदबाज के रूप में अजीम दीनार को लाए गए हैं। अच्छी गेंदबाज के रूप में जाना जाती है इनको। पहली मैच में रिपोर्ट नहीं किया गए थे, इस वजह से खेल नहीं पाए। अब तो उनके लिए पहली मैच है सीजन 10वीं में। फील्डिंग में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। चम्मू अरीमला ने कुछ निर्देश दिए हैं कप्तान को और वापस अपनी अपनी जगह पर जाते हुए मिड ऑफ सर्कल के अंदर एक फील्डर को लाए गए हैं। लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है और वाइडिश मिड विकेट है। फाइन लेग डीप में खड़े किए हैं। टैडमैन खींच कर रखे हैं और गली बिल्कुल खाली है। अब तैयार है अजीम और लेग स्टंप के काफी बाहर। खराबी शुरुआत। वाइड +1। ऐसे स्थिति में वाइड और इतने बड़े वाइड फेंकना बिल्कुल अच्छी काम तो नहीं है। CSC पैवलिका के लिए निराश की बात है। पहली गेंद थी और इस गेंद में रक्षात्मक तरीके के साथ खेले हैं। स्ट्राइक रोटेट किए हैं। अब बाबी BC रोड स्ट्राइक पर आए हैं। मूसा फिर एक बार और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है। फील्डर मौजूद है। इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाए। तब तक एकमात्र रन, मात्र 1 रन मिले हैं। रनों की संख्या बढ़ते बिल्कुल खाली जगह थे, उसी जगह पर दखल दिए थे, गेंद को ड्राइव किए थे, हल्के से पुश किए। गेंद तो रफ्तार थे, इसके रफ्तार के साथ गए। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 34। 10 मोर रन रिक्वायर्ड आउट ऑफ 10 टू गो 11 टिकट। 10 टू गो 11 टिकट। 10 गेंदे में 11 रन चाहिए। अजीम फिर एक बार। ओहो बढ़िया गेंद। व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए कमबैक। अभी BC रोड ने झुके और पूरी तरह झाड़ू बनाए अपनी बल्ले को, लेकिन बल्ले पर नहीं लगे हैं। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। विकेट कीपर के रूप में बहुत बड़े प्रतिभाशाली हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की है और फील्डिंग में परिवर्तन ला रही है इन्होंने। अजीम दीनार फिर एक बार दुर्बाली चोट से बदले विकेट। अभी ड्राइव किए हैं, गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जा रही है, मिड विकेट की तरफ। 1 रन। फील्डिंग में कुछ परिवर्तन ला रही है। मिड ऑफ सर्कल के अंदर एक फील्डर को लाए गए हैं। लॉन्ग ऑफ में फील्डर रखे हैं। गली बिल्कुल खाली रखे हैं। थर्डमैन खींच कर रखे हैं, कुछ नहीं, सर्कल के अंदर है। बैकवर्ड में फील्डर है और इस गेंद को ड्राइव किए हैं। फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाया। तब तक देर हुए हैं थ्रो आने में, गेंद तक आने में देर हुए और गेंद उठाने में देर हुए
और थ्रो करने में देर हुए और तीनों हुए तब 2 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किए। मूसा पठान प्लीज हनीफ कुഞ്ഞി സ്വയം വോളണ്ടിയർ ആവുക ദയവ് ചെയ്ത് വലത്തോട്ട് മാറി നിൽക്കുക ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്നും തോന്നരുത്। सेवन टू गो 8 विकेट 7 गेंद में 8 रन की जरूरत है। अजीम तैयार है। अजीम दीनार दूर वाले चोट से 1 विकेट। मूसा गेंद को खेलना चाहते थे। व्हाट ए डिलीवरी व्हाट ए डिलीवरी व्हाट अ कम बैक। अजीम दीनार अपनी योगदान तो बहुत अच्छी तरह निभाए। पहली गेंद फेंकना चाहते तब वाइड +1 गई थे और उसके बाद शानदार अपनी ट्रैक पर वापस आ गए और इसके साथ ओवर की समाप्ति। रनों की संख्या अभी भी टोटल स्कोर इस 37 8 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 6 डिलीवरी। पिछले नहीं और उसके पहले के मैच में चिब्बी ने 7 रन को पकड़ कर रखे थे। चिब्बी पापिला गुड लक एपिसोड को जीत दिलवा दिया गए थे। अब देखना होगा कि कोई चिब्बी के जैसे गेंदबाज है। यहां पर देखना होगा कि किसको यहां पर जवाबदारी दिया गया है। सिक्स टू गो 8 विकेट। कहीं लोग जो यूट्यूब के जरिए मैच देख रही हैं अब हमारे साथ मौजूद हैं जो अब्दुल्ला रेडस्टोन कासरगोड। उनके बड़े प्रतियोगिता आने वाले हैं वो 40 क्रिकेट टूर्नामेंट फरवरी 7-8 को कासरगोड म्यूनिसिपल स्टेडियम पर। अब हमारी इस मैच के आंखों की हाल यूट्यूब के जरिए साइंस स्पोर्ट्स के यूट्यूब के जरिए देख रही हैं अब्दुल्ला रेडस्टोन। शुभकामना दी है। स्वागत करना चाहता हूं अब्दुल्ला जी। हमारे साथ अबू 40 के सारे मेंबर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हसन परला यहाँ पर मैच देख रही है। उसी तरह कहीं लोग खेल रही है। साली अडका यहाँ पर खेल रही है। आने वाले मैच में खेल रही है। अशरफ कुक के मौजूद है। और इस गेंद को खेला चाह इसी के साथ विकेट पतन हुए हैं। पहली गोली पर यहां पर आप भी BC रोड गिर गई। 5 में 8 चाहिए अभी भी। കൂടിയാണ് റെഡ്സ്റ്റോൺ അബ്ദുള്ള. അദ്ദേഹം ഈ മത്സരം നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേണ്ടി സെലക്ടഡ് മണ്ണൻകുഴിയുടെ എല്ലാ മെമ്പർമാരും ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്കൾക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. താങ്കളുടെ ടൂർണമെന്റ് 7-8 ഫെബ്രുവരിയിൽ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ബോ 40 ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് അതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് താങ്കളും താങ്കളുടെ കൂട്ടാളികളും. താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ആ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. 5-8 5 में 8 चाहिए मैच को जीतने के लिए. बॉलर गफूर कोपाला. व्हाट ए डिलीवरी व्हाट ए डिलीवरी. देखिए कितनी शानदार गेंद थी. पड़ने के बाद उछाल के साथ बिल्कुल विकेट कीपर की तरफ गई है. स्ट्राइक पर मौजूद है इरफान मंजेश्वर. एक ही मैदान में शाम के वक्त ही एक ही साथ खेलने वाली 2 खिलाड़ी हैं. टाइम आउट नंबर 1. पहली बार टाइम आउट की घंटी बजे हैं. देखिए कितनी शानदार मैच. 5 में 8 की जरूरत थी तब डॉट बॉल. 4 में 8. अब तो 12 के प्रतिशत रन बनाना है. अशरफ तल की स्वागत करना चाहता हूं. आपके भी बड़े धमाका आने वाले हैं अप्रैल महीना में. आई थिंक 10 लाख 5 लाख बहुत बड़े पुरस्कार है SPL. ओहो देखिए कितनी शानदार गेंद. व्हाट ए डिलीवरी. लेकिन एक बात है कि मूसा
पठान मौजूद है मैदान पर। मूसा पठान इसी स्थिति पर थी एसपीएल की पिछले साल। मूसा पठान के दुआधारी बल्लेबाजी देखे थे, निजाम सजीपा की गेंदबाजी देखे थे, लाजवाब पारी खेले थे मूसा पठान ने मुडिपू के शानदार मैदान पर। यह तो मन्नमकुझी मैदान है, पिछले साल भी हीरो बन गई थी मूसा पठान दाऊद संगडी रॉयल फ्रेंड्स पचलमारा के लिए। यहां पर देखिए 4 गेंद में 8 रन की जरूरत है, मैच को जीत 3 to go 7 to get, क्षमा कीजिए 3 गेंद में 7 की जरूरत है। अब अगली गेंद गफूर कोपला अराउंड द विकेट, व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए डिलीवरी, 2 to go 7 to get। छक्के लगाना ये मैच को जीताने के लिए, छक्के लगाकर टीम के मालिक के मनपसंद बन जाइए मूसा पठान। डॉट बॉल के साथ हनीफ उमंगा, प्लीज सबको लेकर जाइए उस तरफ, सबको लेकर जाइए ദയവചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരൽപ്പം മാറി നിൽക്കുക, ബൗണ്ടറി ലൈൻ കാണത്തക്ക വിധം ഒന്നും തോന്നരുത്, ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻജോയ് ചെയ്തോളൂ। ഹൈ വോൾട്ടേജ് മാച്ചാണ്, ഹൈ വോൾട്ടേജ് മാച്ചാണ്, മത്സരമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്। ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരി മതി, മൊത്തം കത്തിപ്പടരും, അതാണ് ഈ മത്സരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത। ഇവിടെ ഇതാ അവസാന 2 പന്തിലേക്ക് ഈ മത്സരം ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഇനിയും വേണം 7। മൂസ पठान स्ट्राइकिलुंड दोस्तों, मूसा पठान है स्ट्राइक पर। 5वीं गेंद, गफूर कोपला सबसे विश्वसनीय गेंदबाज है, अराउंड द विकेट, वाइड के लिए चेक करना चाहते हैं। सर वाइड चेक करना चाहते हैं, चेक करना चाहिए कि क्योंकि डिजिटल संविधान हमारे पास है, तब यहां पर ऐसे क्रूशियल मैच खरीबी मामला पूरी तरह चेक करना चाहिए। That's a right ball. That's a right ball. What a delivery. गफूर कोपला कितनी शानदार गेंदबाजी की मजारा कर रही है। आज के दिन में दूसरी गेंदबाज है, पहली छब्बी पापी लाते 6 गेंद में 7 रन की जरूरत है, तब जीत दिलवा दिया गए थे अपनी टीम को, गुड लक पसोड को। अब देखिए रॉयल फ्रेंड्स पचलमबारा की बिल्कुल बड़े बल्लेबाज मौजूद हैं, तब पूरी तरह चकमा खा रही है। 1 to go 7 to get, छक्के लगाएंगे तब मैच टाई हो सकते हैं। देख रही है इस मैच को सारी आंखें, दर्शकों की सारी आंखें मैदान के बीचों बीच में, अराउंड द विकेट। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, व्हाट अ बॉलिंग, गफूर कोपला हीरो ऑफ द मैच। 8 रन की जरूरत थी, तब आसानी के साथ इस मैच को जीत दिलवा दिए। धन्यवाद। यहाँ पर तैयारी हो रही है, तब हमारे साथ मौजूद हैं
Okay, sir. MPL പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റായ MPL 10ാം പതിപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ കായിക സ്നേഹികളെയും ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏത് ടൂർണമെൻ്റ് ആവട്ടെ, മണ്ണൻകുഴി മൈതാനിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാർ തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ, ഏത് ടൂർണമെൻറ്റ് വരുമ്പോഴും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒട്ടനവധി നിരാരംഭരായ നിർദ്ധരരായ ഒട്ടനവധി രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി അവരെ സമീപിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്രാവശ്യവും 2 ക്യാൻസർ രോഗികൾ അത്യാസന്ന നിലയിലാണ്. ഒരു വൃക്ക രോഗി അത്യാസന്ന നിലയിലാണ്. മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലെ പ്രധാന അംഗം, ചെറിയ മക്കളാണ്, ഓട്ടോറിക്ഷ ഓട്ടിക്കൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ വലിയ ഒരു അപകടത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവന് വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മംഗലാപുരത്തെ പ്രശസ്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാ ടൂർണമെൻറ്റിലെന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇതാ കാരുണ്യ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ബക്കറ്റുമായി വരികയാണ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് കാര്യമായി നിങ്ങൾ 5 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ മുസ്തഫ, അതേപോലെ റിയാസ് ബപ്പച്ച, ഷിഹാബ് പച്ചിലമ്പാറ, നിസാം മുട്ടം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാരുണ്യ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിരാശപ്പെടുത്തരുത്. ഒരു നേരത്തെ മരുന്ന് വാങ്ങാനെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കീശയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇടുക. റിയാസ് NMന് വേണ്ടി ഇവിടെ ക്യാഷ് അവാർഡ് CSC പൈബളിക്ക നൽകുകയാണ്. 2000 രൂപ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാര വേദിയിൽ. ഇവിടെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ഗോസ് ടു 6th ഗോ 8 ഗെറ്റ്. അവിടെയാണ് തൻ്റെ മാസ്മരികമായ വിരലുകൾ മാന്ത്രികമായി കറങ്ങിയതെങ്കിൽ എതിരാളികളെ തൻ്റെ 5 വിരലുകളിൽ അടക്കിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ആ വിജയം സ്വന്തം പോക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന താരം ഗഫൂർ കൊപ്പളയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി മഷൂദ് പല്ലക്കാനം ഫ്രം പെർല, അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി തന്നെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ഗോസ് ടു ഗഫൂർ കൊപ്പള. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2000 രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡ് വിജയിച്ച ടീമിൻ്റെ CSCയുടെ ഐക്കോൺ താരത്തിന് വേണ്ടി CSC പൈവളിക്ക ടീം നൽകുന്ന 2000 രൂപയും കൂടി ഒപ്പം നൽകുന്നു എന്നറിയിക്കുന്നു. ഓവർ ടു ഡാർവിൻ. ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ബക്കറ്റുമായി വരികയാണ്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് 5 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു നേരത്തെ മരുന്ന് വാങ്ങാനെങ്കിലും ഉപകരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ സംഭാവന. ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് കാര്യമായി നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കളി കാണുമ്പോൾ ഒരു നന്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ബക്കറ്റുമായി വരുമ്പോൾ അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയാൽ അവരല്ല നിരാശപ്പെടുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന 5ഓളം കുടുംബങ്ങളാണ് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് കാര്യമായി സംഭാവന ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഓവർ ടു ഡാർവിൻ. താങ്ക് യു അബ്ദുറഹ്മാൻ ബേക്കൂർ. MPLൻ്റെ ആവേശത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഉപ്പള നിവാസികൾ, അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ചാരിറ്റിയെ കൂടി ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹായ ഹസ്തങ്ങൾ അത് ധാരാളമായി പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. that was in the air. The first ball that gives the first wicket. My goodness. The captain Nazir
Nazir Cheragoli just walking back. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു ഗ്ലാമറസ് ഷോട്ടിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന നസീർ. Was in the air for a long time and ചെറുഗോളിയുടെ വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് റോബർട്ടോ ഫൺറാം ക്രിക്കറ്റ് ജാക്കി ഷാക്കിർ strike with a surgical strike that start the match in a high voltage for the team. High flyers Dubai ready to fly high. YFC Kannur, they were on a trouble. None for one. Tremendous start by high flyers. New batter comes in at number 3. Sajan joins along with Arshad Bajal. Arshad standing on the non-striker's end. And here it is, Jackie coming. Lovely delivery from Jackie. And nicely gives the respond on the other side. Watchfully gives that one through the line. Through the merit of the ball, the man Sargent played and off the mark with that single. That opened the scorecard of the team. One on card for the team YFC Kannur. And that gives a strike rotation. We can see Arshad Bajal, the Gabbar of Andram cricket, who is on strikers end. On the other side, Shakir Jaki, who is coming to top class players, coming front to front. That's a cutter of a delivery. Cuts it the plan of the batter. Very well implement right on the track by Jaki. The complete execution on this occasion. Here is again trying to lob, not gets the right connection behind that stroke. It's another outstanding delivery from Jackie, the man who controls the things in the first session. Grabs the wicket of Nazir Cheragoli. That gives a confidence. Oh, big swing, big intention for a big shot by Arshad Bajal. It's a fearless cricketer in the top of the order. He won so many Man of the Match award in major tournaments in consecutive time for Mangalore. Jackie on the other side is in his pinnacle of form. Shot through the onside, rocketed to the onside and fielder have a long chase. Oh, no chance on this occasion. Ball rises away towards the fence without giving any kind of chance for the fielder for a boundary for 4. Beautifully completed the first over by Shakir Jaki. First over done, 5 for 1. YFC Kannur. And here comes the over number second. Tachi Musodi, the captain, himself coming into the attack. For the over number second for high flyers.
What a flyer of a start by High Flyers Dubai. The first over of Jackie, that was a special cracker jacker of a over by Jackie Mangalore. Sargent on strike. Open the face of the bat nicely when the last moment. That's a very good plan from the batter. It was premeditated for the sweep shot firstly, and in the end just placed that one superbly. A good cricket that showcased by Sargent. Gets a single, easily gives a strike rotation, and that strike rotation is very important from the point of YFC Kannur. The left-hander Gabbar of Anram cricket, Arshad Bajal, who can change the course of the game and who is ready for the big shot. Always love to hit some sixes. Here comes Tachi Musodi is going way outside from the off stump. That is far away and gives a wide. 7 on card by the team YFC Kannur. YFC, they lost the first game. And on the other side, High Flyers, they have started the tournament with a victory. Lovely little delivery, looks to be perfection in the track. That's a beauty of an execution from Tachi Musodi. The young man so energetic. I know he's ready to conquer against the big man. What a beauty of a delivery that was. Here is again, rolling rocket looks to be, but no perfection in the line. It was gone way outside from the target. Second wide of this over. It's a good plan by Tachi Musodi, who kept some fielders through the offside. And the man just trying to execute away from the batter. But it's going way wide in consecutive time. Here comes again. Nicely played through the covers region. What a beautiful way up on the face of the bat. Ball races away towards the fence for a boundary for 4. Arshad Bajal. Here is that one going way outside. Consecutive time, Tachi Musodi is planning to execute away from the arc of Arshad Bajal, but that was going way outside from the gate line that set, but cleverly in on the channel. That was treated superbly in the previous delivery by Arshad Bajal, who is a strong onside offside player. Arshad Bajal, when the ball comes his slot, he will treat for a big six for sure. Such a kind of a player. And here comes Tachi Musodi. Lovely. That's the execution at his level best. Kept it away from the arc. And fast and furious delivery from Tachi on this occasion. Beat with pace. No perfection with a sing. It was absolutely a gem of a delivery from Tachi Musodi. Wonderful way the man executing. Trying for a sweep shot, but no, it will be a wide. Another run in form of extra. We are witnessing an outstanding fight between top class players in the front line for High Flyers and YFC Kannur. Two very well established names in the big stages of Anram cricket. Years of legacy by YFC Kannur, and High Flyers especially charted
for a special events of Underarm cricket. You have seen years back, they were won a crown of Bichu Boys tournament, and this time they were specially comes from the Dubai. No ballന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെക്ക്. കമന്ററി ബോക്സിന്റെ ഇടതുവശത്ത് ബാരിക്കേഡിൽ ചാരി നിൽക്കുന്ന കാണികൾ, ആ ബാരിക്കേഡ് ഓൾറെഡി ചരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഒന്ന് അല്പം പുറകോട്ട് മാറി നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ബലം അതിലേക്ക് കൊടുക്കാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ടൂർണമെൻറ്റ് ഒടുവിൽ വരെ വേണ്ട ഒരു ബാരിക്കേഡാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹകരണം തന്നെയാണ്, കാണികളുടെ സഹകരണവും നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് വിജയം എന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ സവിനയം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ 100 രൂപ വിലയുള്ള ടിക്കറ്റ് കൂപ്പണുമായി MPLന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ നല്ല നടത്തിപ്പിനായി നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ TVS ജൂപ്പിറ്റർ സ്കൂട്ടർ സമ്മാനമായി നേടാനുള്ള ഒരു അവസരവും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. 1ാം സ്ഥാനക്കാരന് TVS ജൂപ്പിറ്റർ സ്കൂട്ടർ, 2ാം സ്ഥാനക്കാരന് ഗാലക്സി സ്മാർട്ട് ഫോൺ, 3ാം സ്ഥാനക്കാരനും ഒരു ഗാലക്സി സ്മാർട്ട് ഫോൺ, 4ാം സ്ഥാനക്കാരന് ബൈജൂസ് ടാബ്. അങ്ങനെ സമ്മാനങ്ങളുടെ നീണ്ട ലിസ്റ്റാണ് 100 രൂപ ടിക്കറ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ അവസരമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. Wide is a call from the third umpire. The confirmation received from the third umpire. It's another wide, back-to-back wides from Tachi Musodi. Looks to be a little bit lengthy process of over. We have seen already 5 wides in this over. 15 on card by YFC Kannur. They were making the innings in such a standard way. Arshad Bajal, who just standing right in front of the ground and through the onside region, picks up that one nicely. What a wonderful piece of fielding on the boundary line by Bala Ichilankot. It was a shot with lot of authority by Arshad Bajal, who just clears the infield first and very well picks up and takes a double and moving to the last ball of the over, number 2. Lovely cover drive from Arshad Bajal with all the authority. Ball soaring into the fence for a boundary to complete the action. Produced by Arshad Bajal. He was controlling the game superbly, especially his offside strokes that was standing stupendous in this ground. Absolutely well managing the things by Arshad Bajal, single-handedly taking the game away from high flyers Dubai. 2 overs, 21 for 1. Here comes the over number 3. Isham YFC. The young gun from YFC Kannur coming into the attack. Desperately, they were searching a wicket. It is a clever start by Isham.
Young man, but lot of confidence, lot of caliber to pick up some wickets. That's a quality of Isham YFC. Captain desperately demands a wicket. They're searching the wicket of Gabbar, but on the other side, Sarjan is giving a very good company while rotating the strikes. That's very important from the point of YFC Kannur. Lovely, nicely plays it through the onside. Job done by Sarjan once again. Very good plan to send him onto the right on the middle by the team camp of YFC. Nizam Muttam on the commentary box in will report cheyuka. Nizam Muttam. Isham is a product from YFC Kannur. He is playing under the banner of High Flyers Dubai. Again is YFC Kannur. This is giving more interesting. Oh, it's done well, beautifully. Did that one by the bowler Isham and just gets some outside edge from Gabbar. And he just moving between the wicket. Arshad Bajal. He is conquering against the bowlers. Picking the length superbly. Picking the lines. Such a fabulous way. And he making the innings. But this time, Isham, what a fabulous start for this over by Isham YFC. Once again, the man who just doing his duty perfectly, giving and rotating the strike, that keeping the opposite side in a fascinating way. 3 singles in a row. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാരുണ്യ പ്രവർത്തകരിത 5 നിർധനരായ നിലാരംഭരായ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ബക്കറ്റുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇതാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. BM മുസ്തഫ, നിസാം, ഷിഹാബ് പച്ചിലമ്പാറ, റിയാസ് പപ്പച്ച എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉപ്പള കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സാരഥികൾ ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ബക്കറ്റുമായി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റൊരു അറിയിപ്പ്, അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി കാലങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയായ ഫസ്റ്റ് അണ്ടറാം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പ്രധാന വേദിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് അണ്ടറാം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവിടെ എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Thank you. And a fantastic piece of bowling performance by Isham YFC we have witnessed, and that was an outstanding over in this contest by the young man. Isham just makes the over fruitfully for the bowling side. Just 6 runs came from the over of Isham. 3 overs done, 27 for 1. YFC Kannur. 27 റൺസുകൾ, 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 3 ഓവറുകൾ പിന്നിടുകയാണ് ടീം YFC കണ്ണൂർ ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സ് ദുബായ്ക്കെതിരെ. ആദ്യ 2 ഓവറുകൾ പവർ പ്ലേ വി ഹാവ് സീൻ ഫ്രം ദ ബ്ലേഡ് ഓഫ് അർഷദ് ബജാൽ, the star player from Mangalore, who has just generated some power inside the power play when the fielders are standing inside the ring. That gives a lot of authority to play some strokes. But what a fabulous 3 boundaries. And the last cover drive was gorgeous. But this over of Isham YFC, that makes complete complexion of the game. Momentum shifting one that bowls by Isham YFC. That restricted the batters in a silent way. 3 overs, 27 for 1, and moving to the over number 4. Rafi the bowler. The man from Ichalangod is coming into the attack with the over number 4 for the team High Flyers Dubai. Sarjan just trying to play the reverse stroke through the onside, but not gets a connection right. But he just makes and manage between the wicket to rotate the strike. And one more time, the very first ball, Sarjan rotates the strike for Arshad Bajal.
And this will be interesting. We have seen a tighty previous over by Isham. This time little bit experience Rafi Nas is doing the over. We are in the second part of the first innings. Oh, there will be a chance and gone. Edge and taken by the wicket keeper. Arshad Bajal is gone and Fahad makes no mistake. Important wicket down. Big lot of pressure in the shoulder of Arshad Bajal. Then he just immediately trying for a big glamorous shot in front of Rafi. That gives a wicket. Absolutely very well planned wicket that taken by Rafi Ichilangod. ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയമുള്ള കായിക പ്രേമികളെ, 5 കുടുംബങ്ങളുടെ ആ ഒരു ചികിത്സാ സഹായാർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ബക്കറ്റുമായി അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റ് സ്നേഹികൾ ചാരിറ്റിയെ ഇതിനോടൊപ്പം കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ചെറിയ വലിയ സംഭാവനകൾ അതെത്രയായാലും പല തുള്ളി പെരുവെള്ളമായിക്കൊണ്ട് പല വലിയ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി മാതൃകയായ നാടാണ് മണ്ണംകുഴി, ഉപ്പള, കാസർഗോഡ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ നിസ്തുല്യമായ സഹകരണം ഞങ്ങൾ ഈ വേളയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. 5 കുടുംബങ്ങൾ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹായ ഹസ്തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു. ഓൺലൈനിലായും നിങ്ങൾക്ക് പണമയക്കാനുള്ള സൗകര്യം ബക്കറ്റ് പിരിവുമായി എത്തുന്ന വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തരുമെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കടല സിദ്ദീഖും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗാർത്ഥം ഓരോ ക്രിക്കറ്റ് വേദിയിലേക്കും കടല സിദ്ദീഖ് എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കണമേ എന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ 100 രൂപ വിലയുള്ള ടിക്കറ്റുമായി കൂടിയാണ് കടല സിദ്ദീഖ് എത്തുന്നത്. നിരവധി ആവശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ. ബട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നിർധനരായ ആ രോഗികളുടെ കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിസ്തുല്യമായ സഹകരണം ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. 31 for 2. We are in the over number 4. Lovely shot through the covers region. There is a protection in deep. Takes a single run. And it will be a beautiful way. The over is progressing by the bowler Rafi Nas, who just controlling the rhythm. Just 5 runs came from the 5 balls of Rafi Nas, who picks up an important wicket of Arshad Bajal. That is changing the momentum of the game completely from YFC to high flyers. Moving to the last ball of the over number 4. 32 for 2 right now. We can see the crowd. It is fully packed, electric crowd here in Mannamkuzhi. That's a lovely shot, but not gets a right elevation behind that action. Just satisfied with a single. 6 runs came from the over. Outstanding over from Rafi comes to an end. He grabs an important wicket while just allowing 6 runs. End of 4. 33 for 2.
ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് റാം ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിനെ സ്റ്റേജിൻ്റെ പരിസരത്തേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് റാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ്, ഈ പരിസരത്തുള്ളവർ എല്ലാവരും സ്റ്റേജ് അരികിലേക്ക്. അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിനെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ഒരു പിടി അംഗമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് അണ്ടർആം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും MPLൻ്റെ പ്രധാന വേദിക്കരികിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വേണ്ടി ഏതൊരു ടൂർണമെൻറ്റ് വരുമ്പോഴും അതിനെ മനോഹരമാക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് അണ്ടർആം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത്തവണ MPLനെയും സജീവമാക്കുന്നു. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പ്രധാന വേദിയിലേക്ക് എല്ലാ ഫസ്റ്റ് അണ്ടർആം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിനെയും സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്, ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Couple of runs taken over there, as that will be brings 36 runs for the team by FC Kannur. Interesting way they were making the innings. Takes another run between the wicket. 37 on card. Slow and steady way. Sarjan is just playing a key role, key anchoring. On the other side, trying for a reverse stroke. It's up in the sky, but very well landed just in front of the field there. Excellent running between the wicket by the batters. They were completed another run in a fabulous way. Twos are coming in a juicy way for the team by FC Kannur. They were working on it to build a set a good target. We are in the over number 5. Already received a decent score on the board by the team. That's a beauty. Nicely works with a fantastic delivery by Shakir Jaki, who was just outstanding in the first over. And this time little bit runs are producing. Timeout also called from the center of the court. One more fielder need to stand. Lovely delivery, lovely execution from Jackie. The expert is just bowling an exquisite pace right on the track. And that's showering by Shaki. End of the over number 5. 41 for the loss of 2. YFC Kannur. ക്രിക്കറ്റിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും മനോഹരമായ ട്രോഫിയാണ് പണിപ്പുരയിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റെഡ് സ്റ്റോൺ അബ്ദുള്ള സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന MPL സീസൺ 10ന്റെ ട്രോഫി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ്. റെഡ് സ്റ്റോൺ അബ്ദുള്ള മത്സരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ആവേശത്തോടുകൂടി ആശംസകൾ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റെഡ് സ്റ്റോൺ അബ്ദുള്ള സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന MPLന്റെ ഗ്ലാമറസ് ട്രോഫി, ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും മനോഹരമായ ആകർഷകമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രോഫി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു റെഡ് സ്റ്റോൺ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക്. അതുപോലെ ഷമീം സമാൻ കൽപ്പാറയ്ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും കടപ്പാടുകളും അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിനെ മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് മാറ്റി പറിച്ചു നട്ട ഷമീം സമാൻ കൽപ്പാറ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമായി കാലങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നതു മുതൽ അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് അണ്ടർആം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ നാട്ടിലുള്ള ഇവിടെ എത്തിയ എല്ലാ മെമ്പർമാരെയും ഈ പ്രധാന വേദിയുടെ അടുത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇന്നിങ്സ് ബ്രേക്കിൽ വെച്ച് ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മെമ്പർമാരും നിർബന്ധമായും വന്നെത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Well, we are in the final over of the innings number 1. Nasir Arimala doing the over. On the other side, a decent score of 42. Surely a fighting score already on the board by the team. It goes way outside from the guideline. One more run in form of extra. Standard way the innings is moving for the team. That's a shot down the ground and there will be a protection in deep. First run completed, searching for second. It will be a
complete control on the other side, but fumbles that allowed an easy travel for the batters in the second time. 2 runs easily grabbed by the batters of YFC Kannur. What a thrilling way they were setting a target. What a thrilling way they were building the innings. Absolutely an outstanding partnership by Shiva and Sajan. Do S combo that making it's all yes. Oh, beauty. 100 kilowatts of energy that radiates right in the middle. When Nasir Arimala, who just generating some pace, giving no chance on this occasion, keeps it tight, keeps it away, and keeps it inside the tram line. Perfect execution from Nasir. 46 on card for the team YFC. 3 balls to go from the innings. Batters are trying for a glamorous shot. Sargent on strike. Oh, that's gone past the wicketkeeper. Throw it to the non-strikers, and that's a very, very presence of mind fry the fielder. Jackie throws it. That's a bullet arms of Jackie, and it goes upstairs. Have a look at that one. Well, it looks tight. Azmal Jokate, third umpire. Please report. Farzad Syria, Khalil New Boys. Idivarum etrayum pettannu stage neduthu report cheyyuka. Farzad Syria, Khalil New Boys. Please report. ചാരിറ്റിയുമായി ഇതാ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദയവായി നിങ്ങൾ അവരെ കൈവിടരുതേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭാവനയായിരിക്കാം, പക്ഷേ പലർ പല വിധത്തിൽ പല രീതിയിൽ പല തുക, ഒരു പക്ഷേ അത് ഒരു ജീവൻ്റെ വിലയായിരിക്കാം, ഒരു രോഗിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓരോ ചെറിയ നാണയത്തുട്ടുകളും ഒടുവിൽ ഒരു വലിയ തുകയാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്നുമുള്ള കളക്ഷനുകൾ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിറയുന്നത് പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അകമഴിഞ്ഞ സംഭാവനകളുമായി ഞങ്ങളോട് കൂടെ നിൽക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. Out the signal came from the third umpire. What an excellent throw that was coming from the hands of Shakir. Jackie gives it into the non-striker's end with a microsecond of a time, who just brings it to the non-striker's end. Rest of the work done and dusted by the bowler himself. That produced a wicket. A well-settled Sargent is going back. Wicket number 3 down from the side of YFC Kannur. Have a look at that one. .46 for the loss of 3. 2 balls of cricket that left from the innings number 1. New batter comes and joins on the middle. It is Achu. But Shiva Mali on strikers end. That is very important for the point of view of YFC Kannur. Shiva is known for big hits. Trying to the onside region, beats infield. That's a very brilliant shot from Shiva. But what a block that provided by Jackie, who win the race against the ball. Absolutely a robotic run we have seen from Jackie. Mind-blowing save. And mind-blowing effort that's saving some runs. Important 2 runs. Have a look at that one on screen. Well stopped by Jackie. Yes, allocated time is over for the second time. Last ball of the innings number 1. 48 numbers on card. You have seen the quality of Mangalore players, especially Jackie, the man who just shone his brilliance in the field. What a way to chase. Lovely. Another beauty from the bowler. No connection on this occasion, and that will be the end of the innings number 1. 49 runs on card by the team YFC Kannur after first innings. 50 runs of chasing target. 50 runs in the chasing target. High flyers Dubai ke nalgikonde YFC Kannurinte ആദ്യ innings അവസാനിക്കുകയാണ്.
രണ്ട് ടീമിനോട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ ഒരു ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് MPL 10ാം പതിപ്പ്. അണ്ടർ-ആം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു വശത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നു 5 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം. ആ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. ഒരുപാട് നിർധരരായ പാവപ്പെട്ട രോഗികളടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ബക്കറ്റുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകരാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അണ്ടർ-ആം ക്രിക്കറ്റിനെ കളിയാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലം, അണ്ടർ-ആം ക്രിക്കറ്റിനെ അധിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ കടന്നു വന്നത്. ഇന്ന് അണ്ടർ-ആം ക്രിക്കറ്റ് ഒരുപാട് നിലാരംബരുടെ നിർധരരുടെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നതിന് വേണ്ടി മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അണ്ടർ-ആം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി കാലങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ സംവിധാനം വന്നതു മുതൽ, വാട്സപ്പ് എന്ന സംവിധാനം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതു മുതൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ചെറിയ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും അത് ഇന്ന് ഒരുപാട് നൂറുകണക്കിന് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയാണ് ഫസ്റ്റ് അണ്ടർ-ആം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ. ആ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ എല്ലാ മെമ്പർമാരെയും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതാ വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മെമ്പർമാരെയും ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് ഏവരെയും ഒട്ടനവധി കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, കായിക മാമാങ്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഓരോരുത്തരുടെയും അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നാം ഇതേ മൈതാനിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് 100 കൂട്ടം മനുഷ്യർക്ക് നമ്മുടെ ഈ അണ്ടർ-ആം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മത്സരം ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നിമിത്തമായി കാണിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അണ്ടർ-ആം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി കളിക്കാരെ അറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന് ഏതൊരു നാട്ടിലെയും കൂട്ടായ്മയെ അറിയാം, ഏതൊരു നാട്ടിലെയും ക്ലബ്ബുകളെ അറിയാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയെ നമ്മളിവിടെ പൊന്നാടയിട്ടുകൊണ്ട് ആദരിക്കുകയാണ്. അത് ആദരിക്കുന്നത് വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയായ ഫസ്റ്റ് അണ്ടർ-ആം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയാണ്. ആ ഫസ്റ്റ് അണ്ടർ-ആം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ എന്നും മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പൊന്നാടയിട്ടുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം എൻ്റെ നാക്കിൽ തുമ്പിൽ നിന്ന് ആ പേര് പുറത്തു വരുന്നതിന് വേണ്ടി. ബാസിത്ത് ഉള്ളാൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേദിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പറഞ്ഞു വന്നത് അണ്ടർ-ആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആ പ്രഗത്ഭ വ്യക്തിത്വം മറ്റാരുമല്ല, കേരള കർണാടക അതിർത്തി പ്രദേശമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വരികയും ഇന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല പ്രവാസ ലോകമായ UAE-യിൽ അണ്ടർ-ആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അണ്ടർ-ആം ക്രിക്കറ്റ് ചാരിറ്റി അസോസിയേഷന്റെ പേരിൽ ലോകമറിയപ്പെടുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിത്വം. ഹീസ് അണ്ടർ-ആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമായ ഹസൻ പെർല. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയാണ് പൊന്നാടയിട്ടുകൊണ്ട്. ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അണ്ടർ-ആം ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ പ്രജാപതി ഉമ്മങ്ങ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആ പൊന്നാടയിട്ടുകൊണ്ട് ആദരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഹസൻ പെർലക്ക എല്ലാവരും നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുത്ത് 100 കൂട്ടം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കായിക ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ലോക ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച അണ്ടർ-ആം ക്രിക്കറ്റിലെ ഈ മനുഷ്യനെ ആദരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ
നല്ലൊരു കയ്യടിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇതാ അനീഫ് ഉമ്മങ്ങ എന്ന അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ പ്രജാപതി അദ്ദേഹത്തിന് ഷാൾ അണിയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സിയ പൈ വിളിക്കാം, പെട്ടെന്ന് വരൂ. അസർ ബിച്ചു ബോയ്സ് പൊന്നാടയിടുന്നത് ഉമ്മങ്ങയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുന്നു. അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ 6 വർഷങ്ങളായി പ്രവാസ ലോകത്തും നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് നിരാരംഭരായ നിർധരരായ പാവപ്പെട്ട അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങളായ ആൾക്കാർക്ക് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റ് ചാരിറ്റി അസോസിയേഷൻ UCCA. അതിന്റെ അനിഷേധ്യനായ അധ്യക്ഷൻ സത്താർ മുസോഡി, മനുഷ്യ സ്നേഹിയുടെ മറ്റൊരു പതിപ്പ്. സത്താർ മുസോഡി നൽകുന്ന പുരസ്കാരം അത് നൽകിക്കൊണ്ട് ഹസൻ പെർലയെ ആദരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് മുമ്പിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ മാറി നിന്ന് ആ ലൈവിന്റെ ക്യാമറമാന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒന്ന് വൈഡായി നിന്ന്. അടുത്ത പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫ്രൂട്ട്സ് നൽകി ആദരിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ ഖലീൽ ന്യൂ ബോയ്സ് ഹസൻ പെർലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മറ്റൊരു പുരസ്കാരം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു പുരസ്കാരം നൽകുകയാണ്. ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത്രയുമായ സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുത്ത് പിരിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ജോയിന്റ് ആയ നിലയ്ക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അണ്ടറാം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് അണ്ടറാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ഹസൻ പെർലയുടെ ചാരിറ്റി മേഖലകളിൽ നിസ്തുല്യമായ സേവനം നടത്തുന്ന ഹസൻ പെർലയെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നിമിഷത്തിന് ധന്യമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. MPL എന്ന ക്രിക്കറ്റ് ആവേശം അത് വാനോളം ഉയർന്ന ആവേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൂർണമെൻ്റായി മാറുമ്പോൾ അതേ വേദിയിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു അംഗീകാരം ഹസൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നത്, ആ ഒരു വേദി തന്നെ അംഗീകാരം നൽകാൻ ഫസ്റ്റ് അണ്ടറാം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സംഭവമായി മാറുകയാണ്. ആഘോഷിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് അണ്ടറാം വാട്സപ്പ് ഈ ഒരു അഭിനിവേശമായ അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹസൻ്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കാസർഗോഡിലും കാസർഗോഡിന് പുറത്തും GCC കൺട്രികളിലടക്കം നിസ്തുല്യമായ സേവനങ്ങൾ ചാരിറ്റി മേഖലകളിൽ നടത്തുന്ന ഹസൻ പെർലയ്ക്ക് ഇനിയും അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് MPL സീസൺ 10 ആശംസകളായി അറിയിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളിതാ നൽകിയ സഹായം 5 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 5 കുടുംബങ്ങൾ 5 ഭാഗത്തായി വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ മരണത്തോട് മല്ലിടിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു നേരത്തെ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വഴിയില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആ സംഘാടകരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ണീരോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് സമീപിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന ഒരു തുക ഒരു സമയത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്, ഒരു സമയത്തെ മരുന്നിനെങ്കിലും ഉപകരിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിർധരരായ കുടുംബങ്ങൾ,
ഈ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അത് പകുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം കിട്ടുമ്പോൾ ആ മനസ്സിൽ കാണിക്കുന്ന, ആ മുഖത്ത് കാണിക്കുന്ന ആ സന്തോഷം, തങ്ങളുടെ തീരാവേദനയിലും ആ വേദനക്കിടയിലും പൊട്ടിവിടരുന്ന ആ പുഞ്ചിരി നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുക നിസ്സഹായതയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു വീണ്ടും ബക്കറ്റുമായി. ഒരു റൗണ്ട് കൂടി വരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനാണ്, ഒരു നേരത്തെ മരുന്നിന് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുവിൻ, സഹായിക്കുവിൻ. മത്സരം ക്രമ നമ്പർ 6 YFC कन्नूर हाई फ्लैश दुबई तमिल पोराटമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. दोस्तों, आप देख रही हैं मैच नंबर 6 YFC कन्नूर हाई फ्लैश दुबई के बीच में. पहली पारी खेल चुके हैं 49, 50 इज द विक्ट्री टारगेट. हाई फ्लैश को बनाना है 50 रन. यहाँ पर 50 रन के पीछे गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है YFC कन्नूर के. आरंभी गेंदबाज, पहली गेंद, व्हाट ए स्टार्टिंग, व्हाट ए स्टार्टिंग. शुरुआत देखी है रॉकेट की जैसे गेंद आए थे. इस गेंद को विकेट कीपर ने तुरंत वापस दी है. नौफल जोड़कर विकेट कीपर के रूप में थे. अब तैयार है अपनी ओवर की दूसरी गेंद. पावर प्ले जारी है और इस गेंद उठाकर खेलने के प्रयास, यहाँ पर खतरा हो सकती है और करीबी मामला. अपील तो जारी है और तीसरी अंपायर के मदद मांग चुके हैं. मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और यहां पर देखना बाकी है कि अजमल जोकेटे जांच रही है. खुद्दूस भाई के आगमन दिख रही है. अबो 40 के बहुत बड़े खिलाड़ी, अबो 50 के खिलाड़ी है. धन्यवाद, आपके आगमन हुए हैं इस प्रतियोगिता में. सीजन 10 इसी मैदान के बगल में रहते हैं खुद्दूस भाई. सुबह के टाइम में यहां पर पोगो फ्रेंड्स में खेलने के लिए हर दिन आते हैं. और इसी के साथ विकेट पतन हो चुके हैं. वाह भाई वाह, व्हाट ए शॉक ट्रीटमेंट. हाई फ्लैश के लिए शॉक ट्रीटमेंट दे चुके हैं. तच्छी के विकेट यहां पर पतन हुए हैं. मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द विकेट. गेंद किस तरफ गई है ये नहीं जानते थे, लेकिन दौड़ने के लिए प्रयास किए हैं. नौफल के उस योगदान देखिए. नौफल जोड़कर कोई गलती नहीं की, सीधे रनआउट किए. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പ് പുസ്തകം തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. മത്സരം ക്രമ നമ്പർ 7 ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ഗുഡ് ലക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ്ബ് പസോട്ട് തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് രണ്ട് ടീമും സൈനപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. दोस्तों, आप देख रही है मैच नंबर 6 MPL सीजन 10 डे नंबर 2 मैच नंबर 15, टोटल मैच नंबर 15. अब हाई फ्लैश को बनाना है 50 रन. अब तक खाता नहीं खोले हैं, विकेट पतन हुए. शिवमाली गेंदबाज के रूप में तैयार है. हिंदुस्तानी स्कूलन से शुरुआत की है शिवमाली. उनके सामने नए बल्लेबाज है नासिर और उल्टा बल्ले में खेला गया है. फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ रोक दिया गया है. तब तक 1 रन निश्चित रूप में दौड़कर पूरा किए. स्ट्राइक पर अभी आए हैं शाकिर नाम के जैकी, अंडर आर्म क्रिकेट के रोबोट. बहुत जबरदस्त बल्लेबाज है. पिछले मैच में देखे हैं शानदार पारी के लिए थे. अब शिवमाली को सामना करने के लिए तैयार है. बल्ले को ज्यादा से ज्यादा झाड़ू बनाने वाले बल्लेबाज है. लंबे कदमों के इस्तेमाल करते हुए शिवमाली 3 गेंदे फेंक चुके हैं. मात्र 1 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर. फिर एक बार तैयार है हिंदुस्तानी स्कूलन से लंबे कदमों का इस्तेमाल करते हुए ओवर द विकेट अंपायर को कोस करते हुए. और इस गेंद देखिए कितनी शानदार शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर फील्डर को सही दिशा पर रख गए थे. जानते हैं सामने वाले टीम में भी गब्बर मौजूद है. जानते हैं जाकी की पूरी इलाका जानते हैं. एक दूसरे से जानने वाले खिलाड़ी हैं. और किसी के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए 2 रन. नासिर स्ट्राइक पर आ चुके हैं. अब अगली गेंद लंबे कदमों के साथ ओवर द विकेट अंपायर को कोस करते हुए तैयार है. और इस गेंद को खेला है मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीचों बीच में. गेंद गई तब तक फील्डर पीछे है और जमीन
फील्डर ने बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रोक दिया गया। तब तक 2 रन के सहारे के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 4 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 डिलीवरी। आखिरी गेंदे बचे हैं, आखिरी गेंदे बचे हैं। अब अगली गेंद दूर वाली चौक से ओवर द विकेट अंपायर को घोषित करते हुए तैयार है। लंबे कदमों के इस्तेमाल करते हुए शिवम माली ओवर द विकेट। बढ़िया गेंद, व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए कमबैक, शिवम माली, व्हाट ए ओवर, 1 ओवर नो मेडन, 4 रन 1 विकेट, व्हाट ए ओवर। बहुत अच्छी शुरुआत दी है। अब देखिए 50 रन को लक्ष्य को पीछा कर रही है, दरकार थे 50 रन के, यहां पर पीछा कर रही है और भी 46 रन की जरूरत है। 30 गेंदे बचे हैं, 30 बॉल टू गो, 44 रन टू गेट। हमारे साथ मौजूद हैं ऑक्शन मास्टर। कहीं भी प्रीमियर लीग होते हैं तब राकेश शेट्टी के जैसे एक व्यक्ति अनिवार्य है, क्योंकि ऑक्शन बनाना कोई छोटे मोटे काम नहीं है। देखिए यहां पर दूसरी दिन है हमारे साथ आकर बैठे हैं, सिर्फ ऑक्शन नहीं खेल देखने के लिए भी आते हैं। हर खिलाड़ी के चेहरा जानने वाले व्यक्ति हैं राकेश शेट्टी, क्योंकि ऑक्शन बनाने में फोटो उनके मांगते हैं। इनके कंप्यूटर के अंदर सारी अंडर आर्म क्रिकेट लोग के फोटो हैं, कोई भी टाइम में देख सकते हैं, किसी को भी याद कर सकते हैं। धन्यवाद, बिग सैल्यूट राकेश शेट्टी। अब तैयार है दूसरी ओवर के रूप में गेंदबाजी में अरशद बजाल। अरशद बजाल के आगमन हुए तब यहां पर स्ट्राइक पर जैकी और अरशद के बीच में लड़ाई जा रही है। कई बार महीने में 10 बार लड़ाई होती है इन दोनों खिलाड़ी के बीच में। अपील तो की है, लेकिन जिस अपील को इंकार किए हरीश पटेल हैं मैन अंपायर के रूप में, और इसी के साथ 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 5 ऑन द बोर्ड। जाकी बड़े शॉट के लिए कोशिश किए थे, लेकिन उतनी बड़े कामयाब नहीं हुए। बल्ले के अंदरूनी किनारे लगे हैं, 1 रन तो निश्चित रूप में यहां पर मिले हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 5 ऑन द बोर्ड। अपील फिर एक बार जारी है, नासिर अरीमला के लिए अपील की है। तब तक अंपायर ने कहा कि लेग बाय है, यानी कि पैड पर जरूर लगे हैं लेकिन स्टंप के आगे नहीं थी बाहर, उस वजह से 1 रन। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 5 ऑन द बोर्ड, 6 ऑन द बोर्ड, क्षमा कीजिए 6 रन। फिर एक बार अरशद बजाल दूर वाली चौक से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। बायर के कम्बरोडेन से 2, 3, 4 बार जमीन पर टपकाने के बाद लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट। बढ़िया बिलोरी के साथ लॉस ऑफ रॉबर्ट ऑफ ड्राम क्रिकेट। जाकी आउट, एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट हुए हैं। सबसे बड़े मछली को अपनी चाल में फंसा दिया गया। व्हाट ए विकेट, व्हाट ए बॉलिंग। यहां पर बिल्कुल निराश की स्थिति दिख रही है, क्योंकि जाकी के ऊपर विश्वास रखे थे, रॉबर्ट के ऊपर बड़े विश्वास रखे थे। यहां पर रॉबर्ट को नुकसान हो चुके हैं। जाकी आउट। फिर एक बार बजाल हल्के बल्ले से मुंह के हैं, शॉर्ट फाइन लग पर गेंद गई। तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 7 ऑन द बोर्ड। 70 बल्ले पदाओं नासिर अरीमला के बीच में साझेदारी जा रही है। आरंभिक 2 खिलाड़ी भी आउट होकर पवेलियन 9 पास लौट चुके हैं। पहली तच्ची मुसोड़ी, दूसरे जाकी। अब अगली गेंद लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट। अच्छी गेंद थी, मिड विकेट पर खेला गया है। फील्डर ने तेजी के साथ आ रही है। नीतू का सरकोट, व्हाट ए फील्डिंग, लेकिन थ्रो अच्छी नहीं कर पाए, इस वजह से 1 रन ज्यादा मिले हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 9 ऑन द बोर्ड, 9 रन। नीतू कासरगोड़ तो तेजी के साथ आए थे गेंद के ऊपर, एक ही हाथ पर गेंद को उठाए, लेकिन थ्रो करने में उतनी निशाने पर नहीं लगे, वाइड थ्रो किए हैं। तब तक 2 रन। अब अगली गेंद दूर वाली चोट से लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट अरशद बजाल गेंदबाजी करते हुए। गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑफ में, बहुत खूबसूरत फील्डिंग है। यहां पर इस
2 रन और रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 11 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर 24 बॉल लेफ्ट 39 मोर रन रिक्वायर्ड 24 गेंद में 39 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। आए हुए सभी दर्शकों को फिर एक बार स्वागत करना चाहता हूं। एमपीएल कुछ चमत्कारी बना रही है आप लोगों ने, और यूट्यूब के जरिए शाइन स्पोर्ट्स पुत्तूर के यूट्यूब के जरिए मैच को देखने वाले सारी प्रेक्षकों को स्वागत करना चाहता हूं। बहुत बड़े मुकाबला जारी है, बहुत बड़े मुकाबला जारी है गांव में, लेकिन यहां के अंडरआर्म क्रिकेट के लोग बहुत लाखों लोग बाहर गांव में बैठकर मैच को देख रही है। सभी को स्वागत करना चाहता हूं। गल्फ कंट्री में, लैटिन अमेरिका में, जो साउथ अफ्रीकन कंट्री में, एशिया में पूरी तरह इस मैच के इस एमपीएल की आनंद उठा रही हैं। सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ് ജോഡുക്കലിന്റെ സാരഥി തേജു ജോഡുക്കൽ തേജണ്ണ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ തേജണ്ണ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ മത്സരം കാണുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി തന്നെ ഈ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു തേജണ്ണ. अब तीसरी ओवर की शुरुआती करना चाहते हैं नासिर उल्लू। इलेक्ट्रिक बॉलर जाना जाती है। गेंद को खेला गया है वाइड स्मिथ विकेट पर। फील्डर तो बहुत अच्छी फील्ड की है, थ्रो की है, तब तक के 2 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 13 ऑन द बोर्ड 13 रन बन गई है। यहां पर नासिर उल्लू अंडरआर्म क्रिकेट के इलेक्ट्रिक बॉलर है, बहुत अच्छे लगते हैं इनके गेंद देखने में, छुपाकर गेंद को लाते हैं। देखिए पूर्व खिलाड़ी सौरव गांगुली की गेंदबाजी देखे हुए लोग को समझ सकता है कि उनके कॉपी है। ये देखिए ओवर द विकेट, और इस गेंद को उठाकर खेला है हवा पर गेंद, लेकिन फील्डर मौजूद नहीं थी, वरना यहां पर दिक्कत हो सकती थी सत्तार बिली पदाव को। रनों की संख्या बढ़ते हुए 15 पर पहुंच चुके हैं, 15 ऑन द बोर्ड। क्षमा कीजिए, 1 शॉट एक कम दौड़े हैं, उस वजह से पनिशमेंट मिले हैं। 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 14 लॉस ऑफ 2 विकेट। इस ओवर मेरे ख्याल में महत्वपूर्ण योगदान है। अजमल झोकटे क्या कर रही हैं? अब नासिर उल्लू फिर एक बार दूर वाली चोट से, हिंदुस्तानी स्कूल से छुप छुप के आते हैं, साइलेंट गेंदबाज है। ओवर द विकेट, और इस गेंद को भी हवा पर खेला गया है, फील्डर मौजूद, और इसी के साथ टेक द विकेट। इलेक्ट्रिक बॉलर, साइलेंट किलर, इन्होंने देखिए सत्तार बल्ली पदाव को आउट किया गया है। कैच आउट के रूप में वापस जा रही है निराश के साथ। इस गेंद ये बिल्कुल रोलिंग डिलीवरी थी, अंतिम क्षण पर उछाल के साथ बल्ले पर आए, सीधे बड़े शॉट खेलने के लिए प्रयास किए हैं, तब तक कैच आउट। तीसरे विकेट के पतन हुए हैं। नए खिलाड़ी की आगमन दिख रही है, फहद मच्छम्बाड़ी की आगमन दिख रही है। बहुत बड़े बल्लेबाज जो है फहद मच्छम्बाड़ी, बड़े बड़े बल्लेबाजों के खाते पर जोड़े हुए बल्लेबाज हैं, और इनको भेजा गया है हाई फ्लैश दुबई ने। पिछले मैच के जो जीतने में बहुत बड़े सहारा दिए हाई फ्लैश दुबई के लिए, इन्होंने अब तैयार हैं नासिर उल्लू को सामना करने के लिए। नासिर उल्लू तैयार हैं, इलेक्ट्रिक बॉलर। फिर एक बार दुर्बाली चोट से हैं, ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है। 3 गेंदें पिक चुके हैं, चौथी गेंद लेकर तैयार है। लंबे कदमों के इस्तेमाल करते हैं, रनअप देखिए ओवरआर्म बॉलर के जैसे लंबे कदमों के जो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गेंद देखिए बिल्कुल जो ऑफ कटर लेग ब्रेक दोनों फेंकते हैं, ये तो समस्या है इनकी। अब अगली गेंद लंबे कदमों के साथ ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए, और उल्टा बल्ले पकड़े, विकेट कीपर छोड़े, तब अंपायर ने कहा कि बाय बाय कहा, तब समझना चाहिए कि विकेट कीपर ने गलती की है। और ऐसे छोटे छोटे गलती तो क्रिकेट में तेजी के साथ उड़ाए, तब तक 2 रन दौड़कर पूरा भी कर चुके हैं।
2 रन के सहारे के 7 रनों की संख्या बढ़ते हुए 17 लॉस ऑफ 3 विकेट। आखिरी गेंदे बचे हैं, 6 रन कर चुकी है इस ओवर में, 5 रन कर चुकी है। देखिए कितनी शानदार गेंदबाजी है, 2 बार डबल मिले हैं फिर भी अच्छी गेंदबाजी के मजा रखिए। नासिर उल्लू अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है, लंबे कदमों के साथ ओवर द विकेट, ऑफ कटर गेंद, हवा पर गेंद, और इसी के साथ दूसरी विकेट पतन हुए हैं। इसी ओवर में दूसरी विकेट, सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज नासिर अरिमला की विकेट, सत्तार बल्लीपदाओं की विकेट नासिर उल्लू की खाते पर। बिल्कुल साइलेंट गेंदबाज है, इलेक्ट्रिक बॉलर को यूज किए और सामने वाली टीम के बिल्कुल बिल्कुल बड़े मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को लेकर गई है। वाह भाई वाह, व्हाट ए बॉलिंग परफॉर्मेंस। 17 लॉस ऑफ 4 विकेट, 33 നീഡഡ് ഫ്രം 18 ഡെലിവറി. ബാരിക്കേഡ് അകത്തേക്ക് ചാഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും പരിക്ക് പറ്റും, അത് 100% ഉറപ്പാണ്. കളി കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക, പക്ഷേ പരിക്ക് പറ്റാതെ, ടൂർണമെന്റിന് പരിക്ക് പറ്റാതെ, നിങ്ങൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റാതെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ആ ബാരിക്കേഡ് വലിയ ഉറപ്പോടുകൂടിയല്ല നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്, അത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തള്ളി അത് മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും അകത്തോട്ട് വീഴും. ഇരുമ്പിൻ്റെ മേലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വീഴുക, അതിൽ കമ്പി കാണും, ആണികൾ കാണും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിക്ക് പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കുക. ഇവിടെ ഇതാ 18 പന്തുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു, 33 റൺസുകൾ വേണം ഇനി സിക്സറുകൾ നേടണം വിജയിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ. ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ബാലായി ചിലങ്കോട്, അതുപോലെ ഫഹദ് മച്ചമ്പാടി. അർഷാദിന്റെ പന്ത് ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു, വിക്കറ്റ് നമ്പർ 5 ഡിപ്പാർട്ട്. YFC കണ്ണൂരിന്റെ ഓരോ പ്രതീക്ഷകളെയും ചിറകരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോളർമാർ. നാസർ ഉല്ലുവിന് മേൽ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്യം അദ്ദേഹം 100% നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്മാറിയെങ്കിലും ഇവിടെ ഇതാ അർഷദ് ബജാൽ കൊടുങ്കാറ്റ് കണക്കെ എതിരാളികളെ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, 5ാം വിക്കറ്റ്. നിരാശനായി ഫഹദ് മച്ചമ്പാടി മടങ്ങുമ്പോൾ പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ സലാം അദ്ദേഹമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സാധാരണയാണ് മൈതാന മധ്യത്തിൽ ചെന്ന് സെൽഫി എടുക്കുക. ഇതാ അർഷദ് ബജാലിൻ്റെ സെൽഫി എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഇവിടെ ഇതാ അർഷദ് ബജാൽ തൻ്റെ ഓവറിലെ 2ാമത്തെ പന്തുമായി लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट. दोस्तों आप देख रही है मैच नंबर 6 डे नंबर 2 MPL सीजन 10 और दूसरी इनिंग्स आप देख रही है YFC कन्नौर और हाई फ्लैश. और इस गेंद धीमी गति के साथ इस गेंद को फेंके हैं. पहली जो तेज रफ्तारी सी गेंद फेंके थे, अब नए बल्लेबाज को बिल्कुल धीमी गति के साथ गेंद को घुमा दिया गया. अच्छी गेंद थी, फिर एक बार तैयार है. लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट और इस गेंद को खेलना चाहा, खतरा, लेकिन गोरी खेले, लेकिन निशाने पर नहीं लगे. बचपन में गोरी खेलना चाहिए थे, लेकिन गोरी नहीं खेले हैं नौफल जुड़कल ने, यहां पर निशाने पर नहीं लगे हैं. तब तक 1 रन, और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 18 लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3.3 ओवर. फिर एक बार लंबे कदमों के साथ अरशद बजाल YFC कन्नौर के आइकॉन खिलाड़ी हैं, दक्षिण कन्नड़ा जिला से आए हुए गब्बार इस मैदान को रंगीन बना रही हैं. लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट अंपायर को कोच करते हुए, और लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट गेंद को खेला गया है. तब तक अंपायर का इशारा है, थर्ड अंपायर के इशारा की है वाइड चेक करने के लिए, जो मदद मांगे हैं तीसरे अंपायर के.
इट्स अ राइट बॉल, लीगल डिलीवरी। इशारा आए हैं तीसरे अंपायर के मदद, तीसरे अंपायर ने कहा कि राइट बॉल है। ₹25,200 ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് വീണത്. പോരാ, ഇനിയും ഒരു വരവ് കൂടി വരേണ്ടി വരും. നാളെ ഇൻഷാ അല്ലാ നാളെ വരും. വീണ്ടും കാണാം. സംഘാടകർക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് ഇതാ മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. സലാം ഔട്ടായി തിരിച്ചു വരുന്നു. നിരാശാജനകമായ അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് ഡക്കൌട്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലയർസിന്റെ. ഇവിടെ ഇതാ പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാന്റെ നാച്ചു സഹാര ബിസി റോഡ്, വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിംഗിൽ പേരുകേട്ട വ്യക്തിത്വം. അദ്ദേഹത്തിനെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലയർസിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഏത് രീതിയിൽ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണാം. സ്കോർ കാർഡിൽ 19, 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 3.5 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വെൽക്കം മിസ്റ്റർ പ്രസാദ് അനി പച്ചു. अपने घर पे बैठकर मैच को देख रही है. धन्यवाद देना चाहता हूं. एबो 40 के जिला समिति की जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं प्रसाद पच्चू. वेलकम सर. देखिए यहां पर फिर एक बार अरशद बजाल लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेल रहे हैं. लोंगोन इलाके पर गेंद गई, तब तक 1 रन और इस 1 रन के दूसरी रन यहां पर ले सी थ्रू. 1 के जगह पर 2 के सहारे के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर 21 ऑन द बोर्ड. ഹൈ ഫ്ലൈസിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരിൽ ഒരാളായ ഹനീഫ് കുഞ്ഞി അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, സിക്സർ അടിച്ചാൽ ₹500 ആ മത്സരാർത്ഥിക്ക് നൽകുമെന്നറിയിക്കുന്നു. അടുത്ത മത്സരത്തിന് ടോസിംഗിന് വേണ്ടി വരിക. മത്സരം ക്രമ നമ്പർ 7. ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ക്യാപ്റ്റൻ, ഗുഡ് ലക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ് ക്യാപ്റ്റൻ അടുത്ത മത്സരത്തിന് ടോസിംഗിന് വേണ്ടി വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇതാ 2 ഓവറുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇനിയും വേണം 29 റൺസ്. 12-ൽ 29 വേണം. ഓവർ എറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നസീർ ചെറുകോളി എന്ന ക്യാപ്റ്റൻ. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ വിക്കറ്റ്. ബാലായി ചില്ലങ്കോടി എന്ന ആ വെടിക്കെട്ടുകാരനെ തിരിച്ചയച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നസീറിന്റെ വരവ്. ക്യാപ്റ്റൻ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുകയാണ്. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ എതിരാളികളിൽപ്പെട്ട വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ സാധിക്കത്തക്ക വിധം ബാറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ബാലായി ചിലങ്കോടിനെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ 7ാമത്തെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. 21-7 വിജയത്തോടുകൂടി തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ ആരിസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള YFC കണ്ണൂർ ഇവിടെ ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. ശ്രമം തുടരുകയാണ്. ക്യാപ്റ്റന്മാർ വരിക. ഗുഡ് ലക്ക് ബസോട്ട് ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ക്യാപ്റ്റൻ. അമ്പയർ തയ്യാറാണ്. ക്യാപ്റ്റന്മാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഗിരീഷ് അതേപോലെ ദാവൂദ് 2 ക്യാപ്റ്റന്മാരാണ് അല്ലേ? ദാവൂദ് അല്ലേ? ജാബി മഞ്ചേശ്വരം, ഗിരി മുജിങ്കാവ്. ഇവിടെ അടുത്ത പന്തുമായി നസീർ. മികച്ച ഡ്രൈവ്. ഫീൽഡറുടെ അടുത്തേക്ക് പന്ത് വരുമ്പോൾ 8 റൺസ് മാത്രം. സ്കോർ ബോർഡ് പതിയെ ചലിക്കുന്നു. 22-ൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 5ാമത്തെ ഓവർ പുരോഗമിക്കുന്നു. അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്, ക്രിക്കറ്റ് കാർണിവൽ, ക്രിക്കറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇവിടെ ഇന്നലത്തെ ദിവസം തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ 6 ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കത്തിന് ഇനിയും 4 ദിനരാത്രങ്ങൾ അവശേഷിക്കുകയാണ്. എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ കാണികളെയും ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ സൗഹാർദ്ദത്തോടുകൂടി ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തട്ടിൽ നിന്ന് 1000 സ്വാഗതങ്ങൾ ആശംസിക്കുകയാണ്. അടുത്ത പന്തുമായി നസീർ.
ലെഗ് സ്റ്റമ്പിന്റെ പുറത്തു പോയ പന്തിനെ വിട്ടുകളയുന്നു. സെവൻസ് ശൈലിയിലാണ് അദ്ദേഹം വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കയ്യിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തതെങ്കിൽ അപകടമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും മറ്റൊരു പന്തിലേക്ക് നസീർ ചെറുഗോളി കിടക്കുകയാണ്. അടുത്ത പന്തുമായി ഓവർ ദ വിക്കറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. ലോങ് ഓഫ് ഭാഗത്തേക്ക് ഫീൽഡർ ശരവേഗതയിൽ വരുന്നു. ചെറിയ തോതിലുള്ള പിഴവ് അവിടെ 1-2 മാറ്റുന്നു. നസീർ നിരാശനാണ്. 25 എത്തുന്നു. അവസാന പന്ത് അവശേഷിക്കുന്നു നസീർ ചെറുഗോളിയുടെ. നാച്ചു സഹാറ ബിസിറൂഡ്, റാഫി നാസ് 2 താരങ്ങളാണ് ഐഫ്ലേസിന് വേണ്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ റാഫിയാണ് സ്ട്രൈക്കിൽ. നോ സ്ട്രൈക്ക് എൻഡിൽ നാച്ചു ബിസിറൂഡ്, റാഫി ചിലങ്കൂഡ്. ബോളിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ നസീർ എന്ന കപ്പിത്താൻ. ഓവർ ദ വിക്കറ്റ്. മികച്ച പന്ത്. ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 25 മാത്രം 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. ഇനിയും 25 വേണം. എത്ര നേടിയോ അത്ര തന്നെ വേണം ഇനി വിജയിക്കണമെങ്കിൽ. പ്രവചനാതീതമാണ് ക്രിക്കറ്റ്. 3-4 വലിയ ഷോട്ടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ മാറിമറിയും. വിജയ പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിക്കും. നിരാശർ ഉത്സവലഹരിയിലാവും. അതാണ് ക്രിക്കറ്റ്. ഇവിടെ ഇതാ അവസാന ഓവർ എറിയുന്നതിന് വേണ്ടി വിഘ്നേഷിൻ്റെ കയ്യിലാണ് പന്തേൽപ്പിച്ചത്. വിഘ്നേഷ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ 100% നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യുവ പ്രതിഭാശാലി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ പന്തേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ പന്തെറിയുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാണ്. സ്ട്രൈക്കിൽ നാച്ചു, നോ സ്ട്രൈക്കിൽ റാഫി. ടൈം ഔട്ട്. ഒരാൾ അകത്തേക്ക് കയറി വരേണ്ടി വരും. 30 വാരക്കകത്തേക്ക് 4 ഫീൽഡർ മാത്രം അവശേഷിക്കും. 30 വാരക്ക് പുറത്ത്. ഇനി ആദ്യ പന്തിലേക്ക് ബയർ കൈക്കമ്പ റോഡണ്ടിൽ നിന്ന് വിഘ്നേഷ് തൻ്റെ ആയുധപ്പുരിയിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ അസ്ത്രമെടുത്തുകൊണ്ട് എതിരാളിക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ വലങ്കയ്യൻ അവധ വിക്കറ്റ് ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഫീൽഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. കാവൽ ഭടന്മാരെ നിരത്തി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിറയൊഴിച്ചത്. ഇവിടെ ഇതാ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. 8th വിക്കറ്റ്. നാച്ചു എന്ന വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നു. 8ാമത്തെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നിരാശയോടുകൂടി തന്നെയാണ് മടക്കം നാച്ചുവിൻ്റെ. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വിജയത്തോടെ തുടക്കം കുറിച്ച ഹൈഫ്ലൈറ്റ്സ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നിരാശരായി മടങ്ങേണ്ടി വന്ന YFC കണ്ണൂർ. ഇവിടെ ഇതാ വിജയത്തിൻ്റെ വെന്നിക്കൊടി പാറിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഡെക്കൗട്ടിൽ ഒരു കൂട്ടം അവരുടെ സപ്പോർട്ടർമാർ. മികച്ച ഒരു ടൂർണമെന്റിനെ വരവേറ്റുകൊണ്ട് 14 ഓണർമാർ തന്നെയാണ് MPL 10ാം പതിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തത് അവർ തന്നെയാണ്. എത്ര പുകഴ്ത്തിയാലും മതി വരില്ല. കാരണം 14 ടീം ഓണേഴ്സ് അവരില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂർണമെന്റുമില്ല. അതാണ് പ്രീമിയർ ലീഗിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ ഇതാ വിഘ്നേഷ് തൻ്റെ ആയുധപ്പുരയിൽ നിന്ന് 2ാമത്തെ അസ്ത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് മികച്ച പന്ത്, മികച്ച ഡ്രൈവ്. ലോങ് ഓഫിലേക്കാണ് കളിച്ചത്. റൺസ് നേടുന്നു. 26 എത്തുന്നു. ഇനിയും വേണം 24. വലങ്കയ്യൻ ബോളർ വലങ്കയ്യൻ റാഫിക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ 3ാമത്തെ പന്ത്. സ്റ്റൈലിഷ് ഷോട്ട്. റാഫി ബാറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത പന്തുമായി രണ്ട് പന്തുകൾ മാത്രം ചടങ്ങിന് അവശേഷിക്കെ. മികച്ച സ്ട്രോക്ക്. ഇവിടെ മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് ഇല്ല.
അവസരം പാഴാക്കുകയാണ് വിഘ്നേഷ്. ഔട്ടായോ? ഒരൊറ്റ പന്തിലേക്ക് തേർഡ് അമ്പയറിലേക്ക് വിധി കൽപ്പിക്കുവാൻ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗ്രൗണ്ട് അമ്പയർ. MPL 10-ാം പതിപ്പിന് പകിട്ടേറിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇതാ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. HN ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ക്ലബിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സത്താർ KS അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ആരിഫ് HN അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അദ്ദേഹത്തെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ഔട്ട് എന്നാണ് വിധിച്ചത്. ഇവിടെ 9-ാമത്തെ വിക്കറ്റ്, 9-ാമത്തെ വിക്കറ്റാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. രണ്ട് പന്തുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് വന്നത് പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇഷാം YFC തൻ്റെ സ്വന്തം ക്ലബിനെതിരെ കളിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഫ്ലേസ് ഒതുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് YFC സ്വന്തമാക്കിയതെങ്കിൽ നെറ്റ് റൺ റേറ്റിൽ കുതിച്ചുയരാൻ അവസരം നൽകിയ മത്സരം കൂടിയാണ് ഇവിടെ. ബാത്തി HN എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്ത മത്സരത്തിലേക്ക് ശബ്ദത്തിൽ മാറ്റം. അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ യുവശബ്ദം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ 6-7 വർഷത്തോളമായി അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഉദയം കൊള്ളുകയും പ്രവാസ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രകരമായ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ കാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്തെ വമ്പന്മാരിൽ ഒരു സംഘടനയാണ് അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റ് ചാരിറ്റി അസോസിയേഷൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതിനോടകം തന്നെ നൂറുകണക്കിന് പാവപ്പെട്ട നിർധനരായ ഒരുപാട് രോഗികൾക്ക്, ഒരുപാട് അപകടം നേരിട്ടവർക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി സമീപിച്ചിട്ടുള്ള സംഘടനയാണ് UCCA. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ ഇതാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി കുറേ ദിവസങ്ങളായി നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളായി നവമാധ്യമങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. ഒരുപാട് നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, നന്മ മരങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹായമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇതാ അവിടെയും UCCA അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റ് ചാരിറ്റി അസോസിയേഷൻ സമാഹരിച്ച 25,000 രൂപ ആ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചാരിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകർ, മെമ്പർമാർ സ്വരൂപിച്ച 2,000 ചേർത്തുകൊണ്ട് 27,000 രൂപ കൈമാറുന്ന ഒരു ചടങ്ങിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമല്ല, ക്രിക്കറ്റിനോടൊപ്പം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് എത്ര വലിയ മുൻഗണന നൽകുന്നു എന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പ്രധാന വേദിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ ക്യാഷ് കൈമാറുന്ന ചടങ്ങിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. UCCAയുടെ
അംഗങ്ങൾ, നാട്ടിലുള്ളവർ എല്ലാവരും പ്രധാന വേദിക്കടുത്തേക്ക് എത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അനിശ്ചിതനായ അധ്യക്ഷൻ സത്താർ മുസോടി, അതേപോലെ മഷൂദ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഹനീഫ് കുഞ്ഞി, സത്താർ, അതേപോലെ ആരിഫ് യച്ചൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഹസൻ പെർലയെ പോലുള്ള ഒരുപാട്, മുസ്തഫ ബി എം പോലുള്ള, അഫ്സൽ പോലുള്ള വലിയ വലിയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അസർ ബിച്ചു ബോയ്സ് നമുക്കറിയാം, നാട്ടിലുണ്ടായാലും എവിടെയുണ്ടായാലും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. ആ പാവപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് അഫ്സൽ എച്ചൻ ആണ്. എച്ചൻ ക്ലബിൻ്റെ ഒരു മെമ്പറുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി കൂടിയാണ്. കുറേ ദിവസങ്ങളായി മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ ആ അസുഖത്തെ ഭേദമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ ഫണ്ട് കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി UCCAയുടെ അധ്യക്ഷൻ സത്താർ മൂസോടി അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാന വേദിയിലേക്ക് ആദരവോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. അഫ്സലിന്, ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അഫ്സൽ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. ഒരുപാട് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തകർ, അപ്പൂപ്പ ചിലമ്പാറ, അതേപോലെ ഹസൻ പെർല, അനീഫ്, കലീൽ ന്യൂ ബോയ്സ്, അസർ ബിച്ചു ബോയ്സ്, ആരിഫ് എച്ചൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ഒട്ടനവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഈ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാട്ടിലായാലും പ്രവാസ ലോകത്തായാലും എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുകയാണ്. ഓവർ ടു പ്രീതം കുമ്പല. Yes, last man of the match award goes to Mr. Ashad Bajala. I'd like to call Mr. Ashad Bajala. Please come toward for the presentation box to receive his man of the match award. Yes, I would like to call Mr. P.K. Anif, the ex-Block Panchayat, the Vice President. I would like to call him to hand over the man of the match award for Ashad Bajal for his valuable performance in this last previous match against High Flyers Dubai. And this is the moment for handovering the man of the match award for Ashad Bajal. Yes, here we go with the match number 7. Champions Sports takes good luck for friends pursued here. We have already started a good luck pursuit on the mark of batting here. The openers from the side of a good luck pursuit. That is Mr. Basit as well as Satish Mujungawa, the icon player who is taking strike over here. Nicely delivered by the bowler here, Ashwit Kasagur, the trump card, the key player from the side of yes, very good delivery from the hands of Ashwit Kasargod. We can see in this particular first over, nicely bowled for Basit Dulal, all the way from Mangalore, playing for the team. Good luck pursuit here in this first over. What an delivery from the hands of Ashwit. This time, a completely dotted delivery. 2 consecutive deliveries have been placed by Ashwit here. This time away from the off-stump region, wide given as the umpire here. Extra addition to the scorecard here. Scorecard is 2 on the board after completion of 4 deliveries. We are in the first over. First over is in progress right now. Ashwit once again taking the guard right and over this time. So for Basit here this time. There is a chance of run after. Meanwhile, cross single run here. Very good running between the wicket. We can see from the both batsman. There is Satish Mujingav as well as Basit. All the way from good luck pursuit, playing fabulous over here in this particular over number 1. Very good start from the side of Ashwit Kasargod for Champion Sports here. On this particular occasion, we have completed 5 deliveries and last 1 more delivery left in this particular over number 1.
Once again, taking the guard off right and over the stamps for Satish Mujangav. This time, have a look at the full loaded crowd in the pavilion. We can see there is a chance of catch, and this time a bit of bumble over there. Meanwhile, satisfied with the single over here. After completion of over number 1, the scorecard is a 4 on the board. There is no damage at all from the side of batting over here. Yes, I beg your pardon. Yes, 5 deliveries. Last one more delivery has to bowl in the first over here. Ashwit Kasargod once again to Basit here. The last time of first over. Nicely slipped towards the final reach, and there is no fielder fixed very well and brushing towards the ball. Meanwhile, what a drive from the hands of Basit here in this last delivery of first over. Nicely placed towards the deep final region and taken comfortable 4 runs over here. And scorecard gently moving towards the 8 on the board after completion of first over here. A very good start from the hands of a batsman here, Basit, as well as the opener Satish Mujangav came from the side of good luck pursuit and 8 I beg your pardon, 9 on the board here after completion of over number 1. Yes, a very good start. The balancing start from the both our teams. So that is a good luck pursuit as well as our team. The champion sports here playing this match of 7th day number 2. We are witnessing in this particular ground of Mannamkuzhi mini stadium. Have a look at the crowd who is gathered here to watch this particular match between those teams. Definitely we have to appreciate the crowd. Definitely their support is much required to run this successful match over here in this particular tournament of 2026 season 10. That there is a bit of changes in our fielding mark. Yes, Captain Girish Mujangav is doing slightly changes in the fielding department for a batter like Satish Mujangav. Another one side we have Basitullah, very good batter from the side of good luck pursuit. They have that ability to drive any point of the ground over here in this particular time and particular situation of this match here. Yes, have a look at the bowler guiding the fielders to take their position over here and this particular over number 2nd, changing the fielders here and there, putting the players, putting the fielders in the perfect destination to take and collect the bowls here. Once again, very good delivery, this time slightly away from the leg stump region here. Started with the wide over here from the side of Mr. Champion Sports. Slightly going for the wide signal here. Hakim with the bowling mark, taking the guard off right and round the wicket. This time nicely sweep delivery towards the point covers region and taking comfortable single here. Very good rotating the strikes we can see from both the batsmen, that is Satish Mujangav as well as Basitullah. Definitely Basit is one of the dangerous man from the side of good luck pursuit. The opener, the star hitter, key player. Definitely he has that ability to go for a big shot in the any time of the seconds over here. There is a chance of running between the wicket. Completed a single run in the form of wide. 1+1, 2 more addition to the scorecard. Definitely extras will damage for the side of fielding here. Champion Sports, they have to restrict the extras. They have to put weight deliveries. The line and length should be perfectly placed towards the sticks here in this particular over number 2nd. We have completed just 1 delivery so far in the 2nd over. Nicely delivered towards the sticks. Meanwhile, once again, 1 single run in the form of leg by here. 1 more addition to the scorecard. Scorecard moves on 14 on the board. 2nd over is in progress. And 4 more deliveries are left in this particular over number 2nd. Yes, pitching the delivery, taking the guard off right and round the stamps for Basit here. Nicely driven towards the straight region, and there is a chance of run out. Yes, meanwhile, a very quick running between the wicket we can see from both the batsmen.
Have a look at that speed of that running between the wicket. Completed a single more run to the scorecard here. That is what a very good understanding between each other. Satish Mujanga on one side, another side we have Basit Ulal. That is what they are using talent. They are using the leg steps to running between the wickets here. Nicely delivered this time. Very good shot. One bounce, two bounce boundary into the over the boundary line. Four more addition to the scorecard. Scorecard is 419 on the board. One hit from the hands of Satish Mujanga. Have a look at the pickup of that delivery. Nicely placed towards the square like region and taken boundary over there. That is what Satish have mentioned in the beginning of this particular over number second. Satish as well as Basit Ulal having that capability, having that caliber to go for any big shot in the fraction of minutes over here in this particular second over. Yes, 4 more delivery left, 4 more delivery completed, 2 more delivery left in this particular over number second. Nicely took that delivery, and there is no chance of running between the wicket here. So far, a very good start from the side of a good luck pursuit. We can see from both the batters, Satish as well as Basit here for this time reverse sweep ups in the air and Fielder rushing towards the ball. Meanwhile, what a good shot from the hands of Satish Mujanga. This time, reverse sweep towards the deep covers region and taken one more boundary for his account. Have a look at the stroke. Have a look at the stroke. That is what I have been mentioning. Both the batsmen having that ability to hit anywhere of the particular ground of this Mannamkuzhi. That is what Satish is doing over here. What a good stroke. What a good stroke from the hands of Satish. One more boundary addition to the scorecard. There is a deliberated delivery. Yes, deliberated delivery. Very good. A very good decision from the umpire in the middle. Yes, we have been fallen. That which is going to be deliberated one we hear in this particular over number second. Excuse me, once again. Second over completed, I guess. Yes, second over have been completed after completion of over number second. The scorecard is 23 on the board. There is no damage from the side of a batting mark here. Good luck pursuit is doing very good job in this batting mark. They have completed second 2 overs and collected 23 runs so far here. Very good start from the side of good luck pursuit. The openers Satish Mujanga. Another one side we have Basit Ulal. Very understanding between the batter here. Just taking singles, couple of runs, and that's for a good delivery. They are hitting boundaries like anything towards the square leg region, towards the covers region. That is what the tactics behind the very good batter over here in this particular match over here. A fabulous crowd we can witness in this particular tournament of MPL season 10. That is what the impression, that is what the sportsman spirit. The time is going to be 10 hours 54 minutes over here. Still have a look at the gathering, have a look at the crowd who is gathered to watch, to witness this particular match between those teams. And this is what entertainment for the people of Kasaragod district. This is not only a small game, this is a festival of Underarm cricket. That is what presented by selected Mannamkuzhi MPL 10 2026 over here. Yes, moving towards the third over here. Ashwit Kasaragod once again, captain brings Ashwit Kasaragod into the attacking bowling mark over here. Yes, taking the guard of right hand over the wicket for Basit Ulal. This time nicely delivered. What a delivery! Have a look at the dust is in the air right now. Dust is in the air. That is what lightning delivery towards the sticks was placing perfectly by Ashwit Kasaragod. What a good start in the initial third over. We are in the third over. The first delivery have been completed in a fraction of a second. What a delivery. What a mighty delivery from the hands of Ashwit Kasaragod have been placing for the batter here. There is no chance at all for the batter to go for a good shot over there. And once again, the second time for
Basit here nicely flicked the delivery towards the third man, reached and taken a comfortable single here. Very good, very start from the hands of Ashwit Kasagod. So far 24 on the board after completion of 2.2 deliveries. The balancing one we can see from the both the team, that is Champion Sports as well as Good Luck Post. So this time once again a sweep shot towards the fine leg region and taken comfortable single. That is what here Satish Mujangava is showcasing his performance in the batting mark. We have seen 2 boundaries, one have been lofted towards the deep covers region and one more boundary have been lofted to a deep square leg region. That is what Satish is doing for his team in this particular over number 3 here. Once again for Basitullah from Ashwit Kasaragod. Nicely delivered directly into the pad of a batter. There is no chance for the batter to go for runs, and that was the brilliant delivery from the hand of extra 2 runs added to the scorecard. 27 on the board so far. 4 deliveries completed, 2 deliveries left in this particular over number 3. That is what a very good running between the wicket we can see from both the batsmen. Once again very good line and length towards the tick was perfectly placed by Ashwit Kasaragod here. There is no chance, there is no row for the batter to go for short here. That is what Ashwit is doing for his team. That is Champion Sports. The captain brings back into the attack in the second time. That is Ashwit Kasaragod here. Nicely swept towards this Quavas region and taken a comfortable single here. Fielder fixed perfectly. Meanwhile, there is no chance for the going for a couple of runs here. Satisfied with single. After completion of over number 3, the scorecard is 28 on the board. There is no damage from the side of batting mark here. Ashwit just left 5 runs in this particular over number 3. Very good comeback from the side of Champion Sports. That is what intention from the captains and captains bought second time Ashwit to ball over here in this particular third over. What a good strategy, what a good tactic which is used by Girish Mujangava for his team. Definitely here bowlers have to tackle batsmen because both the batsmen having that much experience in under-arm cricket. One from Dakshin Kannada, one from Kerala. That is what here both the batsmen works perfectly for their team in this particular occasion. Yes, slightly changing the fielding mark by captain, getting Ashwita into the deep square leg region because Satish can drive anywhere off the ground. Once again, very good delivery from Hari Niroli. Did perfect delivery in this first beginning of first delivery of 4th over here. Have a look at the position of fielders here. We can see deep square leg region fixed and the fielder fixed in short mid wicket. Fielder fixed in fine cover point and fielder fixed in long on, long off, deep third man region, deep fine leg region. Have a look at the placement of captain over here in this particular for that particular batsman. That is what here works for Champion Sports in this particular occasion. Once again, second delivery. Looking for the big shot this time. Ups in the air. Wheeler rushing towards the ball and catches the ball. Meanwhile, safely landed over there and completed couple of runs. There was a chance for catch. The big wicket for Basit. Call is a catch but landed safely, and meanwhile batsman completed couple of runs for that addition to the scorecard. 29 on the board after completion of a very good running between the wicket. We can see from batters a very good stroke, lofted nice. 31 on the board. 31 on the board here. Yes, slightly making change in the fielding mark for Basitullah. Definitely they knows that Basit the danger is
a man of Andram cricket, looking for the river sweep. This time there is no connection at all. What a delivery have been placing by the bowler Harish Nidoli, not letting the batsman to go for big shot. Have a look at the changes in action by Basit Ulal. They are changing the action and going for real C, but this time there is no connection. This time just add for the bat. Meanwhile, only one single run will be considered in this particular shot. 32 on the board after completion of 3.5 deliveries. Last one more delivery left in this particular over number 4. This time for Satish Hari to right and round the stamps for this time nicely swept towards the final region, and meanwhile fixed field fixed very well. There is a chance of run out, and this time misunderstanding between each other. A very good breakthrough for those players. That is, they have collected 32 runs of partnership over here in this particular match between those teams. That was unnecessary running between each other, because they already built 32 runs in 4 overs. But that was very 33 runs. That was a very good run out by the fielder, and we are watching beautiful match between champion Spurs as well as good luck pursuit here in this occasion. Have a look at the dugout. Clapping for Satish Mujangav this time for his valuable performance in the batting mark he have shown in this particular innings over here. Yes, after completion of over number 4, the scorecard is 33 on the board. Loss of 1 wicket. Satish Mujangav walks back to the dugout here in this particular occasion. And just 2 more overs are remaining to wind up this first innings. What a match, what a tournament we are witnessing in this particular ground of Mannamkuzhi. Have a look at the crowd who is gathering to witness this particular match of those teams. This is the 7th match of this particular day, number 2 here. Nicely driven towards the single region and taken comfortable. One more addition to the scorecard. 34 on the board. Loss of 1 wicket here. So far, very good bowling as well as very good batting from both the teams we can see in this particular match number 7, day number 2. Yes, we have to wait for the big strokes from the batters Basit and Jabir Manjeshwar, the captain of good luck pursuit. Both batsmen having that capability, having that caliber to go for maximums as well as boundaries to get the team in the higher position of our table over here. Definitely they have to go for big shots in this particular over number 5 here. 5th over is in progress. Once again taking the guard of right and over. This time very good delivery. This time far away from the off stump region, and one more addition in the form of extra here. Definitely extras makes damage for the fielding team here. They have to minimize each and every extras in this particular situation, because the scorecard is already 35 on the board after completion of 4.1 delivery over here. And once again for Jabir Manjeshwar, nicely bowled by the bowler here, Mother BFC. Meanwhile, one more addition to the scorecard in the form of leg byes. 36 on the board right now. Yes, the scores are just moving slowly over here. Big strokes has to come in this particular over number 5. Definitely Basit is in one side. Another side we have Jabir Manjeshwar. Any time they can blast in any seconds of this cricket. Once again Madhu to Basit. This time taking the guard of right and over the stamps. Nicely developed over the 3rd man region and taking a comfortable single here. Just rotating the strike. That is what Madhu is doing. Perfect work in the bowling mark. Not letting the batsman to go for big shot. Just tackling the batsmen and to get singles and couple of runs over here.
A very good bowling performance we can see from Madhu so far. Once again for Jabir Manjeshwar goes for a big shot. Meanwhile, there is a fielder fixed in the cover point, reads and collects perfectly and give a right throw to the bowlers, and one more addition for the scorecard. Just moving, just slowly moving like anything in the scorecard. 38 on the board. Fifth over is in progress. 4 ball we have completed. 2 more deliveries left in this particular over number 5. This time nicely driven towards the cover stage. Fielder fixed there. A bit of humble. Meanwhile, there is no chance for the couple of runs. Satisfied with single. One more addition over here. Very good bowling. Very good performance. What a consistency with the line and length towards the tick was perfectly placed by Madhu here so far. Fifth over is nicely blown. Left just 5 runs over here in this particular over number 5. Once again, Madhu, the last delivery of fifth over, looking for the big shot. This time completely dotted by the batter here, Jabir Manjeshwar. There is no connection at all from the batter. Dotted one. What an incredible delivery have been placed by Madhu here in this last delivery of fifth over. Fifth over comes to and scorecard is 39 on the board. Loss of 1 wicket. Very good delivery. Very good bowling performance we can see from the side of Champions Force. Just 39 on the board after completion of 5 overs. Last 1 more over is remaining here to conclude this first innings against Good Luck Pasota. Yes, the last over, Captain Girish has to do some magic over here in this particular last over. Yes, definitely Girish Mujingav comes to bowling attack over here in the over number 6. He have taken responsibility to take a lead his team in this particular over number 6. That is what the intention of a captain, to take his team in the higher position of table. So he himself taken initiative to lead his team once again. This time looking for the big shot. Nicely one towards the deep, long of region and taken comfortable single. There is a chance of run out, and there is a call. Yes, umpire goes for upstage for run out. Definitely what an striking fielding in the deep, long of region, and give a right throw towards the bowlers, and there was a chance for the run out, and meanwhile umpire goes for upstage here. We have to wait for the decision right now. 6th over. We are in the 6th over. Captain itself taken responsibility. Captain itself for taking board to initiate over number 6 here. Nicely played towards deeper, long off region, and a fielder fixed perfectly over there. Meanwhile, taken right throw towards bowlers, and directly fixed to the wicket over here. Yes, the third umpire call is the batter is safe now. Not out is the call from the third umpire. Very good decision. Yes, once again. Timeout indication in the center. One fielder has to come inside the 30-yard circle. That which will be helpful for the batting department over here. Just 4 fielders in the outside the 30-yard circle. Definitely that makes a very good change in the batting mark. They can blow, they can blast deliveries in a long region. Because just 4 players outside the circle here. Nicely driven towards the straight reach, and meanwhile taking comfortable single here. Very good fielding from the side of Champions Force. We can see in this last final over. 4 more delivery left in this last over number 6 here. 42 on the board. Just lost 1 wicket over here. Yes, slightly changing. Have a look at the captain is doing a slight changing in the department of field for Jabir Manjeshwar, because captain knows that Jabir, the dangerous, the ultimate cricketer from the side of Good Luck Pasota. So that is the why the captain brings the fielder to cover to mid-wicket region from the deep region, and takes a fielder into the straight region. That is what here slightly changed it by the captain for Jabir Manjeshwar. Once again
Girish Mujangav taking the guard of right hand over the stamps for Jabir Manjeshwar. This time final over is in progress. Two deliveries already we have completed. 42 on the board. Loss of 1 wicket. This time going for big shot and nicely Divan. There is a catch, is a call and this time Pumble. The try was good but it is unfortunately over the fence for the maximum. Mistake, definitely a mistake from the fielder's hand. That is what here Girish Mujangav placed the fielder over there in the deep region, but he couldn't able to control that catch. Meanwhile, it directly goes to this maximum. 6 more addition, the much needed one in this such a situation like over number 6. Once again for the Jabir Manjeshwar looking for the big shot. Nicely driven toward the deep region. What a collection! There is one more boundary. A poor piece of fielding we can see from the bowler fielders, and that is what very bad for the team like Champion Sports here. Lost maximum. Now there is a miscollection in the deep region. One more boundary there. 10 more runs added to the scorecard within 2 deliveries. The scorecard is jumping towards 52 on the board. Expensive over in the occasion of last over number 6 here. 2 more delivery left in this particular over number 6. Once again for Jabir Manjeshwar is on fire. This time behind the stamps works perfectly. Here Jabir's innings comes to an end. Very good breakthrough from the hands of Girish Mujangav. Have a look at the striking lightning stamping over there from behind the stamps, because never mind Jabir Manjeshwar, the captain of Good Luck Pursuit, have did his work. One maximum, one boundary in the much needed time in this last situation that took the scorecard into 52 runs. Last one more delivery left in this particular over number 6 here. 52 on the board. Interesting match over here in this particular match between those teams, that is Good Luck Pursuit versus Champion Sports. 52 for the completion of 5.5 deliveries. Last one more delivery left in this particular over number 6 here. Rahim Kumbale, the trump card of Good Luck Pursuit. Yes, last time facing, this time a direct towards a wooden sticks here. One more wicket and for the last delivery for Girish Mujangav. One more wicket have been fallen from the side of Good Luck Pursuit. Straight away to the wooden sticks here. The scorecard is 52 and 53 is a victory target for team like Team Champions Sports. What a good innings comes to an end as the terrifying batting from the side of Jabir Manjeshwar. One maximum, one boundary into the deep region. Now what a connection between ball and bat by Jabir Manjeshwar did in the last over. That was much needed score and that which took that their team into 53 runs of total target here. Yes, we have completed innings number 1, and now with the change in microphone, I'd like to call Mr. Darwin Michael to analyze the upcoming innings number 2. Once again, I'd like to call Mr. Michael Darwin. Thank you. Highest first innings score of the day. 52 runs on board by the team. What a complete visual treat of a batting we have tasted. Thank you very much, Preetham Kumbala. And once again, warm welcome, cricket lovers, to the exciting encounter of a second innings. A perfect batting display that showcased by the batters.
അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പിന് വേണ്ടി CSE പൈവളിക ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സ് ദുബായ് CSE പൈവളിക ഇരു ടീമിന്റെയും കളിക്കാർ സൈനപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കുക. What an outstanding first innings we have tasted from the batters of Good Luck Passport. Highest first innings score of the day. Previous highest was scored by the team Royal Friends Pachilambara. That was 51. And chased down by the team High Flyers in Style. And this time 52 runs on board and 53 of a target for the team Champion Sports Bandiot. They have openers Hakim and Giri Mujengao. Hakim, the man icon player from Karnataka. Giri, the explosive batting performer in Kasaragod, is standing and straight away off the mark. On the other side, the captain Jabir Manjeshwar. Oh, that's a beauty of a delivery from Jabir Manjeshwar, right on the money. Absolutely bang bang. The man targeting straight away onto the block hole. Well, that escape, the batter just moves between the wicket in form of leg by. How well the man executing in the front line. Jabir is a warrior for sure in this battlefield, who is ready to give his 100% of commitment. Here comes again. What a big lofted shot towards the covers region. Excellent way, just a clear infield and nicely coming back for second. This is good cricket by Giri Mujengao. He's an absolute fearless cricketer in the top of the order. Fantastic way, the man loves to create some pressure to the bowling mark for bringing some exquisite timing. 4 on card from the first stage. Very well directing by Giri. Oh, fast and furious one from Jabir Manjeshwar. That is tightly right in the line, that not giving any kind of chance to freeze the arm. Absolutely well controlled delivery by Jabir Manjeshwar. Who just planning, who just bringing, who just executing superbly on this occasion. Here comes. There will be another beauty of a delivery from Jabir. Tightening all the screws in the front line. We have seen some good connection from the seat part of the bat by Giri. He's from Mujengao and take some runs, but Jabir is back in the process. What a way to the man, bringing the rhythm back to the team. Good luck Passport. Here comes the last ball of the over. Another brilliant, tactical brilliant from Jabir Manjeshwar. An execution at his level best we can see. End of the over number 1. Just 5 runs came from the first over of the captain. Captain did the tricks in a very good manner for the team. Good luck Passport in style. 5 without loss on the other side by Champions, the team from Bandiot. Decent first over completed by Jabir. Now 48 runs required from 30 balls. You can see in consecutive time chasing was a little bit difficult. But these two batters are the explosives of underarm cricket. One have a lot of experience in major tournaments in Karnataka. Hakim, the man, is a big hope and asset of the team Champion Sports. On the other side, when Giri coming into the right touch, is unstoppable. Everybody knows the talent and power of Giri Mujengao. Rahim is coming into the attack with the over number 2. The little master from Kumbala, using some brain, and all the times Rahim coming into the attack. What a way the man planning it, keeps it way outside from the arc of Giri. Absolutely well controlled delivery, that bringing nothing for the batter. The batter asking for review or what? Yes, it is going for upstairs.
It's ups to third umpire. And we have the experienced Saif Patil as a third umpire in the box. On-field umpire's call was a fair delivery, but we need to check its review taken by the batting team. Giri Mujengao, he was left that one while thinking about to go, it was outside. But what a cracker of a shot. Fabulous, fantastic, electrifying atmosphere, eccentric vibe here in Mannamkuzhi. Completely packed crowd. Fabulous matches that giving lot of entertainment. On-field decision stands. That's a fair delivery called by the TV umpire as well. Very well done by the on-field umpire Harish Patil. And here comes the ball number 2. It's in the air, cuts it that one perfectly, slices through the offside region. Jabir Manjeshwar comes and gathered that one nicely, allowing a 2 runs travels, cuts it some runs by Jabir Manjeshwar with a quick response in the outfield. That was a perfect cut shot by the man Giri Mujengao, playing to the merit of the game. It was a width that allowed by the bowler and used it really well. Nicely tricks it through the onside region, looking to find a gap. First run in an immediate way. A diving dolphin in the pool. And that's saving some things for the bowling side of good luck Posot. Ease way the batters are managing to convert into double in consecutive time. This is looking so good for the team Champion Sports Bandiot. Very good intention. Lovely stroke straight to the field. Oh, it was absolutely a golden opportunity to restrict the fearless blade of Girish Mujengao. That is, drops it completely, puts it down. My word. Giri Mujengao, the big gun. He gets a lifeline in this important chasing game for the team champions Bandiot. 10 on card. 2 more balls to go from the over. There is Hakim back to the strikers and after a while later. That's a clever cricket looking to place the gap. Beautiful work by the fielder over there, and chance for second. It will be completely done and dust by the batters superbly between the wicket. A very good coordination, very good control, and good call and response by the batters. That is more important when you going between the wickets. The batters are finding the gap. Giri with a fearless blade. He having a lot of license to go for a glamorous shot in the front of the top. And on the other side, Hakim just playing and controlling himself in the end. Moving to the last ball of the over. Nicely bowled by Rahim. Beauty of a rolling delivery, rightly executed over there. And that will be the end of an over. Decent over comes to an end. 8 runs came from the second over. It's 13 on card after 2 overs without losing any wicket. The innings in a Samanamai and our innings wicketable keep cheydukonde batters munnerennengilum it was a decent power play, we can say, from the bowling team. They were completely restricted by the top order of Champion Sports Bandiot while just allowing 13 in 2 overs. That means 40 more required. 40 runs കൂടി മത്സര വിജയത്തിന്. From 24 balls, it is 40 the target. Exactly 10 runs per over. That's the asking run rate for the team champions Bandiot in this scenario. After the power play, fielders are spreading into the different parts of the ground.
to start a different type of attack. Good luck, Posot. Just planning the things. Here is Jabi. The captain looks to continue. First over was outstanding from Jabir Manjeshwar. Only 4 runs conceded to start the action of this innings. And the man who just in his prolific form. Lovely delivery, absolutely a golden run from the hands of Jabir Manjeshwar. It's in the form of leg by. The bat is moving between the wickets. How well the man keeping the rhythm, composing a music in the front stage for the team. Good luck, Posot. Captain leading from front for the team in bowling action. A run in form of a leg by to start the proceedings of this over. 39 required from 23. It is a time to change the acceleration. Time to shift the gears for the team champion Sports Bandiot. Giri Mujengao trying for a scoop shot. Not gets the right connection. Just moving between the wicket for a single on this occasion. It's another tactical brilliance from Jabir Manjeshwar. Reduce the pace a little bit when the batter attempting for a sweep shot. That's a master brain of Jabir Manjeshwar that is working on this track in front of Giri Mujengao. Here is Hakim on strike. The icon player from the team champion Sports. Big swing, and that is a scud missile from Jabir Manjeshwar. What a delivery and what a wicket it is. Absolute pacey one that ankles on. Gone 15 for the loss of 1. Muscle man from Manjeshwar. He grabs a wicket number 1 for the team. Good luck, Posot. In at number 3, Ashwit Kasargod joins. Nicely driven through the onside region to off the mark by Ashwit Kasargod. A very well known all-rounder cricketer in this arena. And the man just off the mark with a single. Runnable 10 on the other side by Giri Mujengao, who just controlling the things in the front line, but bowlers are tightening the screws. Absolutely they were tightening, and Jabir grabs a wicket, an important wicket of Hakim in this crucial stage, that giving a lot of confidence for sure for the upcoming bowlers. Lovely, that is a huge appeal. Have a look at the delivery from Jabir Manjeshwar, who just working for wickets, searching for wicket. Look at that one again in replay. Oh, that is gone a little bit away from the off stump for sure. Good decision by the umpire. Leg by signal received, 17 on card. Moving to the last ball of a spectacular spell. This is turning out to be from Jabir Manjeshwar. Drive shot. Oh, no power over there. Oh, man. Oh, man. It was a close opportunity. Jabir was tossed to the stumps, but it was gone little bit far away from the stumps. A stupendous spell of Jabir Manjeshwar comes to an end. What an outstanding spell of 2 overs. 3 overs done. 18 for 1. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഇന്നിംഗ്സിന്റെ. ഇനി മറ്റൊരു 3 ഓവറുകൾ കൂടി ശേഷിക്കുമ്പോൾ 35 runs required from the upcoming 18 balls.
Team captains, please note it's the time for the toss as well. CSC Paivaliga, High Flyers Dubai. Captains, please join for the toss. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിങ്ങിനായി CSC പൈവളിക ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സ് ദുബായ്. Three perfect over in the front line by the bowlers of Good Luck Resort. And all the way it was works in favor of the bowling side so far so well. Here is Sharath Ichilangod is coming into the attack. 35 required in 18 balls. Need some sixes or boundary. That is the ask. That is a demand from the dugout. Ashwath is went for a shot towards the onside region. He's a very good cricketer. Just nicely directed over there and gets a single straight away. Waiting for the loose type of deliveries to treat by the batters. And a good delivery is that responding with some singles and doubles. And it is working fabulous way for the batting side as well. Lovely stroke into the gap, and there is a man in the deep, and he comes and oh, no chance over there. It beats a fielder and going away for a boundary for 4. Much needed one. .30 required from 16 balls. Oh, now it's working, and there will be a tight things and throw to the right end. And the batter is escaped. Just ease way the batter complete a single. Working fabulously. And this over is started beautifully by the chasing side of Champion Sports Bandiot. Having some control. The partnership is building by these two batters, Giri Mujagao and Ashwit Kasargod. Trying for a lofted shot through the onside region. Ashwit plays and he wants second, but there is no chance. It was absolutely a fabulous piece of fielding. Not giving any kind of chance to coming back. Two singles in a row. Giri Mujagao on strike. Here is Sharath Ichilangod is coming. Very well kept that one away from the arc from the batter. It was outstanding delivery from Sharath Ichilangod. Fabulous piece of execution at this important time for the team. Good luck, Resort. Here comes the last ball of the over. Lofted shot. It will be a trouble or what? No, it was landed. And looking for second. Looks to be an easy run between the wicket by the batters. Ashwit and Giri Mujagao. Both are very quick between the wicket. There is a 9 runs came from this over. End of 4. 27 for 1. 27 റൺസുകളുമായി 4 ഓവറുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 26 റിക്വയർഡ് ഫ്രം ദി നെക്സ്റ്റ് 2 ഓവേഴ്സ്. അവസാന 2 ഓവറുകൾ 26 റൺസിന്റെ ദൂരം ഈ മത്സരത്തിൽ ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സിന് ഓടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So far it's brilliant from the bowling side. They were keeping the hopes and dreams alive with some fabulous line and length in front of different right-hander batters. Managing the things really well. But 2 overs, 1 over that enough to change the course, entire rhythm of the cricket. Sunil is coming.
as a new bowler for the team, Champion Sports. They were looking for the target of 26. Ashwin run a ball for Giri Mujengao. It was very well settled right in the middle. Comes as a opener. Faced 15 deliveries and scored 17 runs. Oh, he's done well. That's a cracker jacker of a delivery from the new bowler Sunil. Oh, gets a wicket. Oh, that's a celebration. Ashwin Kasaragod need to go back. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിനായി CSE പൈവളിക ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സ് ദുബായ് ഇരു ടീമിന്റെയും ക്യാപ്റ്റൻസ് പ്ലീസ് റിപ്പോർട്ട്. What a start for this over by Sunil. We have seen an electrifying stumping by Basitulal in the first ball of this over. Just a fraction of second he received to react. And what a reaction for that action by Basitulal. Standard of stumping that removed the dangerous customer. And here is Habib. The man from Kasaragod joins as a new batter along with Giri Mujengao. 10 balls of cricket, 25 required. Rolling delivery with all the perfection, keeping everything right on the carpet, focusing superbly by the bowler and implementing his action such a brilliant way in front of the dangerous customer. The weapon of Giri Mujengao so far silent and the bowlers are violent. Miss it on this occasion by Abi. He was tried onto the onside region but not gets the right connection over there. Thick outside edge and takes a single by the batter between the wicket. Consecutive singles. Singles won mind by the bowling team camp of Goodluck Pasot. They were ready to stop some boundaries. Wow, what a pickup shot, but there is a field. Flyer of a catch taken. Absolutely an awesome way. The man grabs that one. Have a look at that one. What a beauty of a catch. You need to see that. From that catch, we have seen the real tiger of fielding placement, Sadish Mujengao. It is pro version. We have witnessed a super duper catch in this crucial time. Santosh joins as a new batter. Oh, that one goes just outside from the gate line of the leg stump. 31 on cart. 22 required. Need a big shot. That is down the ground for 6 runs for sure. What a majestic pickup shot that played into the heart of the opposition.
What a way to conclude the over with a tremendous shot. For the loss of 3 after 5 overs. What a quality of a stroke that played in an important time by the new batter Santosh Bela with a first ball maximum. Oh, timeout is the call from the centre. That means one more fielder need to stand inside. 16 runs required in 6 balls of cricket. That 6 gives a goosebumps in the camps of champion sports. Shahul is coming. Shahul Hamid comes with a very, very good delivery. The bat is, there were moves between the wicket in form of a single. Abhi just crossed between the wicket. Santosh Bela. We have seen a tremendous stroke from Santosh in the previous last ball, who has just clears the longest part of the ground with an ease way into the cow corner. A towering 6. Need to repeat that one. Lovely delivery. That's a perfect execution. Making the variation such a nice way by the bowler Shahul Hamid. Not a prominent face in all the tournament, but this man have lot of caliber and quality to defend such a serious scorecard. 14 from 4. Not an easy one, but not a difficult one when these two are standing. Need some sixes. Abhi went for a shot, and there will be the fielder in deep, and it will be a wonderful work over there. Coming back for second, completed an easy doubles without any trouble for the batters of Champion Sports Bandiod, but they need 12 runs from 3 balls. This is the crucial ball of this game. 12 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം 3 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ. That's another majestic piece of execution. Just takes a single in form of leg by. ബാരിക്കേഡിൽ ചാരി നിന്ന് കളി കാണുന്ന കാണികൾ ദയവായി ഒന്ന് പിന്നോട്ട് വലിയുക. മറിച്ചിടരുത് പ്ലീസ്. ആവേശമല തല്ലുന്നൊരു മത്സരം. 2 balls of cricket, 11 required. Can Santosh, can he repeat that shot once again? Everybody off in the dugout of Champion Sports, they were on the edge of the seat, and someone is standing. They were waiting for a cracker of a shot from Santosh. On the other side, good luck, having a very good luck so far. Lovely, that is a quality delivery that executed perfectly onto the block hole. Such a fiery faster of a delivery from Shahul Hamid, that bringing all the hopes and dreams come into alive for the team. Good luck Posort. 1 ball of a delivery. As that is a shot, Abhi just played but straight to the field in long on. Takes it comfortably. That's the end of the game. What a victory for the team. Good luck Posort. They comfortably defended. Brings a big score in the first innings and very well defended it with a quality bowling lineup. Congratulations, good luck Posort. Won the game.
For the presentation of post-match, it was a wonderful victory by the team. Good luck for Sword. And the player of the match award goes to ബാറ്റിങ്ങിലും ബോളിങ്ങിലും മികച്ച പെർഫോമൻസുമായി 2 ഓവറുകൾ എറിഞ്ഞ് 7 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് ഫ്രണ്ട് ലൈനിൽ നിർണായകമായ ഒരു വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി ബാറ്റിംഗിൽ നിർണായകമായ 12 റൺസും സ്വന്തമാക്കിയ ജാബി ന്യൂ ബോയ്സ്, the captain of Good Luck for Sword. Please come and receive the player of the match award. And I kindly welcome Munna Bapaitoti to the stage, the president of On Club Members Association. Munna Bapaitoti is ready to give away the player of the match award, and it goes to Jabir Manjeshwar, the captain of Good Luck for Sword. What a stunning all-round performance. Come on, Jabir Manjeshwar, and receive the player of the match award. ഓക്കെ, അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ കളിച്ച ടീമുകളുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഡഗ്ഔട്ടിൽ നിന്ന് മാറി. അതുപോലെ കാണികൾ ഡഗ്ഔട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അത് പ്ലേയേഴ്സിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുക. ഡഗ്ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി പ്ലേയേഴ്സിന് മാത്രമായി സ്പെഷ്യലായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് കാണികൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി സഹകരിക്കണമെന്ന് സവിനയം ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. As we can see on screen, Jabir Manjeshwar receives खूबसूरत योगदान है एमपीएल सीजन 10 डे नंबर 2 मैच नंबर 17। आज के मैच नंबर 8 हाई फ्लैश दुबई और उसी तरह सामना कर रही है सीएससी पैवाले का। बहुत खूबसूरत योगदान है सीएससी पैवालिका के मालिकों से एक है जिया पैवालिका, और हाई फ्लैश के पिछले ज़माने में जो हाई फ्लैश में अभी भी हाई फ्लैश के मालिकों से एक है जिया पैवालिका। दोस्तों के बीच में लड़ाई है फिर एक बार। हाई फ्लैश और वाईएफसी लड़ाई हुए थे दोस्तों के बीच में, अब तो और एक बार सीएससी पैवालिका और हाई फ्लैश के बीच में दोस्तों के बीच में लड़ाई जा रही है। और हाई फ्लैश के लिए यहां पर आरंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं। ओपनर शाकिरानी झाकी, नॉट सेकंड पर फहद मछमारी है, गेंदबाज के रूप में रियाज न्यू स्टार।
रियाज एनम, दोनों खिलाड़ी एक ही टीम के लिए खेल रही है। न्यू स्टार रियाज और एनम रियाज दक्षिण कन्नड़ा जिला के प्रतिभाशाली हैं और केरला की कासरगोड जिला की रियाज न्यू स्टार है कप्तान। और जाकिर नाम के जाकी आरंभिक बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं। उनके सामना करने के लिए रियाज एनम अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे तेज गेंदबाज है। बायर के कमरोडन से झुककर खड़े हैं, अपनी शैली पर शुरुआत की है, जमीन पर टपका रही है। तीसरी मैच दोनों टीम के लिए। पहली गेंद आरंभिक गेंदबाज है रियाज, ओवर द विकेट। और एक ही हाथ पर अपने बल्ले को कुछ क्षण के लिए झाड़ू बनाए, देखिए कितनी शानदारी के साथ इस गेंद को सामना किया। एक दूसरे की कमजोरी जानते हैं क्योंकि दक्षिण कन्नड़ा जिला में एक हफ्ता में 2-3 बार आमने सामने मिलती है इन दो खिलाड़ियों ने। 14 टीम के लिए 14 आइकॉन खिलाड़ी आए हैं। दक्षिण कन्नड़ा जिला के प्रमुख खिलाड़ी हैं 14 टीम में भी आइकॉन खिलाड़ी के रूप में। अब रियाज फाद मछम्बाड़ी के लिए गेंदबाजी करना चाहते हैं, गेंद फेंकना चाहते हैं। दूसरी गेंद अपनी शैली में जमीन पर टपकाने के बाद बाहर के कंबर उड़न से दूर वाली चूज से ऊपर विकेट फाद के लिए। फहाद पहले ही झुके और बैठे, अपने बल्ले को झाड़ू बनाए। यहां पर देखिए कितनी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। ये तो बहुत बढ़िया सोच है क्योंकि शॉट के लिए यहां पर तीसरी अंपायर के मदद मांगे हैं। वन शॉट चेक करना चाहते हैं, कोई शॉट अंपायर कहे कहां गए, आ जाइए। स्ट्राइकन नो स्ट्राइकन सर, नो स्ट्राइकन, स्ट्राइकर नो स्ट्राइकन पे चेक करना चाहते हैं। बॉलिंग एंड पर चेक करना चाहते हैं। राजू प्लीज कम, तीसरी अंपायर हमारे साथ मौजूद हैं राजा। रन कंप्लीटेड, स्कोर कंप्लीटेड। अपने योगदान तो पूरे किए हैं फाद मच्छमारी ने। अब तैयार है रियाज, अपने कदमों के इस्तेमाल रन अप के कुछ कमी की है मेरे ख्याल में, 1-2 कदम कम किए हैं इन्होंने फाद मच्छमारी के लिए। दूर वाली चोट से बता विकेट अंपायर को घुस करते हुए फिर एक बार, और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया है। गेंद तो वही चकमा का है, 1 रन के लिए दौड़ा जा रही है और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 4 ऑन द बोर्ड, 0 पर, यानी कि 0 विकेट, कोई विकेट तो पतन नहीं हुए हैं। जाकी और फहद मच्छम्बाड़ी के बीच में अच्छी साझेदारी जा रही है। और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेलने की कोशिश गेंद के वेरिएशन बिल्कुल समझ नहीं पाए। अच्छी गेंद थे, पड़ने के बाद बिल्कुल धीमी गति के साथ घूमे हैं गेंद। शानदार गेंदबाजी के मजारा, वापस आई हैं, मुस्कुरा रहे हैं जाके भी। 4 रन 4 गेंदों पर। अब अगली गेंद दूर वाली चोट से ओवर द विकेट रियाज बायर के कंबर उड़न से जमीन पर टपकाने के बाद फिर एक बार तैयारी करते हुए और ऑफ स्टंप के बाहर थे गेंद, सामने आए लेकिन अपील तो जबरदस्ती। अंपायर कह रहे कि लग भाई जरूर है लेकिन बिल्कुल स्टंप के आगे नहीं थी पैड, उस वजह से 1 रन तो लग भाई के रूप में रनों की संख्या बढ़ते हुए 5 रन 5 ऑन द बोर्ड। 5 गेंदों पर 5 रन, बहुत अच्छी ऑफ से किए हैं रियाज ने। शानदार गेंदबाजी के मजारा CSC पैबलिका के लिए आइकॉन खिलाड़ी के रूप में खेलते हुए फाद मच्छम्बाड़ी के लिए अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार है। दूर वाले चौक से ओवर द विकेट जमीन पर टपकाने के बाद ध्यान हाथ पर बीन फिर गिरी। यहां पर देखिए कितनी शानदार फील्डिंग। 1 रन तो निश्चित रूप में दौड़कर पूरा किए। 6 अपने कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, बिना किसी नुकसान के साथ 6 रन 1 ओवर की समाप्ति पर।
एमपीएल सीजन 10वीं दूसरी दिन मैच नंबर 8 तैयार हैं जो अगली टीम तैयारी हो जाइए। मैच नंबर 9 वाईएफसी कन्नूर फाल्कन फाइटर्स कदमबार अगली मैच के लिए तैयारी हो जाइए। इस इनिंग्स के बाद हस्ताक्षर की पुस्तक खुले रखेंगे, तब अपने सदस्यों को भेजिए हस्ताक्षर करवाने के लिए। हमारे पहली ओवर संपन्न हो चुके हैं 6 रन खाते पर। शानदार मुकाबला जारी है। मैच 8वीं मैच देख रही हैं आज के दिन के, तब तैयार है नसाफ पचलंबारा किलर ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट। नसाब पचलंबारा तैयार है, तब स्ट्राइक पर फाद मचबानी है। पहली गेंद फेंकने के लिए हिंदुस्तानी स्कूलन से अपनी शैली पर जमीन पर टपकाने के बाद ओवर द विकेट और इस गेंद को उठा करके ले हैं। गेंद तो जा रही है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच में। फील्डर मौजूद, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए, तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 7 रन बिना किसी नुकसान के साथ। फिर एक बार तैयार है नसाब पचलंबारा। उनके सामने जाकी जाकिर नाम के जाकी तैयार हैं। बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में जाना जाती है इनको। हाई फ्लैश दुबई के लिए खेलते हुए जाकी यहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ जगह बनाए, फील्डर मौजूद हैं, लेकिन निश्चित रूप में 2 रन के लिए अवसर तो काफी हैं। बहुत बड़े अवसर मिले हैं, 2 रन तो आसानी के साथ दौड़कर पूरा किए। बहुत खूबसूरत नज़ारा है इस मैच के। देखिए सीएससी पेबली का और हाई फ्लैश दुबई के बीच में मैच आप देख रही हैं। यूट्यूब के जरिए मैच देखने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस गेंद को उछाल कर खेला है। गेंद तो जमीन बॉलर के करीब रोकना चाहते थे, लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद तो सीधा गई सीमा, चौका। फिर एक बार तैयारी करते हुए नसाब पचलंबारा, उनको सामना करने के लिए जाके फिर एक बार तैयारी है लंबे कदमों के इस्तेमाल के साथ। और इस गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर छोड़ते हुए 1 रन तो दौड़कर पूरा किया। तब अंपायर ने कहा कि भाई विकेट कीपर के गलती से रन मिले हैं, ऐसे दिखा दिए इन्होंने। तब तक रनों की संख्या बढ़ते हुए 14 पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल अच्छी उछाल दिख रही है इस ओवर में, रणनीति में बहुत बड़े उछाल दिख रही है। नसा फिर एक बार लंबे कदमों के साथ फिर एक बार फातिमा चंबाड़े के लिए गेंद फेंकना चाहते हैं अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर हिंदुस्तानी स्कूलन से। और इस गेंद को अपने बल्ले को झाड़ू बनाए, सिर्फ शॉट के लिए हैं। तब तक 1 रन, दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है। 2 रन भी पूरा कर चुके हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट, देखिए कितनी शानदार रनिंग है। फातिमा चंबाड़ी और जाकी जम गई हैं दोनों खिलाड़ी। आखिरी गेंद अभी भी बचे हैं नसाब पचलंबारा की।
रनों की संख्या 16, 16 रन। पावर प्ले चालू है। अब अगली गेंद, बिल्कुल बड़े मैच है, हाई वोल्टेज मैच आप देख रही हैं। ओवर द विकेट, ओ बढ़िया गेंद, व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए कमबैक। नसा पछलंबारा, ओवर कंप्लीटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर, 16 बिना किसी नुकसान के साथ। അജു അലി വിസ്റ്റാർ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും വേദിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. तीसरी ओवर की शुरुआत ही कर रहे हैं। तब गेंदबाज तैयार हैं, स्ट्राइक पर जाकी भी तैयार है। रियाज अन्नम कंटिन्यू जारी रखने के लिए इनको मौका दिए कप्तान ने। अक्षय पैबलिका कप्तान है सीएससी पैबलिका की, और इसी तरह क्षमा कीजिए रियाज कुंजतूर कप्तान है सीएससी पैबलिका की, और इसी तरह एनएम के जाने माने खिलाड़ी रियाज सेन्नम। ओवर द विकेट, और इस गेंद को इंतजार किए अपने पास आने तक। देखिए कितनी शानदार स्वीप, 1 रन 2 रन पूरा किए। गेंद आने तक बिल्कुल झुककर खड़े हैं, अपने बल्ले को झाड़ू बनाए, स्वीप शॉट के लिए हैं। तब तक कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थी। 2 रन तो आसानी के साथ मिल गए हैं, और इस 2 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 18 ऑन द बोर्ड, 18 पर पहुंच चुके हैं। 18 तीसरी ओवर जा रही है। 13 गेंद को सामना किया, 18 रन बनाए सीएससी पैबलिका के सामने। अब अगली गेंद, और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया है। फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाया है, डायरेक्ट हिट के लिए कोशिश की है लेकिन नाकामयाब। 1 रन तो निश्चित रूप में दौड़कर पूरा किए, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 19 रन, 19 बिना किसी नुकसान के साथ। फाद मचम्बाड़ी सुरक्षित है, और उसी तरह जाकी सुरक्षित है मैदान पर। बिल्कुल अच्छी मैच है सीएससी पैबलिका वर्सेस हाई फ्लैश दुबई। अब अगली गेंद, ओवर द विकेट, उल्टा बल्ले में खेलना चाहा, अपील के आवाज तो हल्के सुने हैं, लेकिन 1 रन दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है, दौड़ा जा रही है, दौड़ा जा रही है। तब तक यहां पर डाइव के साथ स्ट्राइक पर गिर पड़े, लेकिन अब देखना होगा कि तीसरी अंपायर की फैसला सुनाने के लिए तीसरी अंपायर की मदद मांगे हैं। और इसी के साथ आउट, फाद मच्छम्बाड़ी बैक टू द पवेलियन। दो जोड़ी को तोड़ने के लिए इतने बड़े कोशिश की है, देखिए ओ हो। भारत की पूर्व खिलाड़ी याद होगा रोबिन सिंह, एक मैच में कम से कम 10-12 बार गिरते थे, जो ऐसे रनिंग बिटवीन द विकेट। 1 रन पूरे किए थे, दूसरे रन के लिए दौड़े थे, बहुत अच्छी विकेट मिले हैं अब नए खिलाड़ी के रूप में।
नासिर की आगमन दिख रही है। अब तैयार है रियाज। सेकंड इनिंग्स के 3 ओवर के अंदर पहली ओवर से जो हस्ताक्षर पूरा करना है। नासिर अरीमला स्ट्राइक पर मौजूद है, तब गेंदबाज के रूप में रियाज एनम कामयाब गेंदबाज है। और बढ़िया गेंद यहाँ पर गेंद तो पीछे की तरफ गई, तब तक 1 रन पूरा किए थे। दूसरे रन के लिए यहाँ पर कोई मौका नहीं, मात्र 1 रन। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 21 ऑन द बोर्ड। 1 विकेट के नुकसान पर फाद मच्छम्बाड़ी ने और जाकी ने मिलकर 20 रन के साझेदारी बनाए थे। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच में 1 रन की साझेदारी बन गई है। अब तैयार है अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर दूर वाले चौसे वध विकेट। रियाज एनम बायर के कंबरोडन से गेंदबाजी कर रही है अपने कोटे की दूसरी ओवर। उनके सामने जाकी मौजूद है और वध विकेट। अच्छी गेंद ड्राइव की है, मिड विकेट की तरफ गेंद गई है, तब तक फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद कुखेदार किए, तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से 22 लॉस ऑफ 1 विकेट। आखिरी गेंदे बचे हैं, 17 गेंद पर 22 रन बनाए। अब अगली गेंद दूर वाले चौसौ वध विकेट। बायां हाथ पर जमीन पर टपका रही है। देखिए शैली तो बहुत सुंदर शैली है इनके जो रियाज के। अगले गेंद देखिए अलग शैली के गेंद पे के हैं, पड़ने के बाद बिल्कुल हल्के उछाल के साथ आए थे, तो अपील की आवाज तो सुने हैं लेकिन कोई मौका नहीं है, कोई खतरा नहीं है। 1 रन तो दौड़कर पूरा किए, तब तक ओवर की समाप्त हुए हैं। 23 लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। अब तक पतन हुए हैं, नुकसान हुए बल्लेबाज फाद मच्छम्बाड़ी के आउट होने पर नए बल्लेबाज नासिर अरीमला आए हैं। ബാരിക്കേഡ് മറിഞ്ഞ് വീഴാൻ പോകുന്നു. അതിന് ചാരി നിൽക്കുന്നവർ ഒന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. (23 loss of 1 wicket after completion of the total score is 24 loss of 1 wicket. फिर एक बार तैयारी करते हुए गफूर कोपला, उनके सामने जाकिर नाम के जाकी अराउंड द विकेट। गफूर और इस गेंद को खेलना चाहते थे और इसी के साथ लेग ब्रेक गेंद के बिल्कुल गति को समझ नहीं पाए। एक ही हाथ पर बल्ले पकड़कर बल्ले
जाती है, कंजूसी गेंदबाजी करते हैं, तब स्कोर कार्ड में पूरी तरह बदलाव लाते हैं। 23 से 3 ओवर की समाप्ति पर 4 ओवर की समाप्ति पर 26 रन और एक महत्वपूर्ण बड़े विकेट, जाकिर के विकेट यहां पर हासिल किए। अब 5 ओवर की शुरुआत करना चाहते हैं, नए गेंदबाज के आगमन हुए हैं। रियाज कुंजतुर अभी भी खेल रही है तो बहुत बड़े बात है, माशाल्लाह। बहुत साल से अंडरआर्म क्रिकेट में मौजूद है, अब कप्तान के रूप में अभी भी। और लेग स्टंप पर बैट हुई, विकेट कीपर पहरों में इस गेंद को रोकना चाहते थे, बाई के इशारा किए, हाथ लेकर नहीं गए, पहरों पर इस गेंद को रोकना चाहते थे, तब बाई रूप में 1 रन। अतिरिक्त की संख्या बढ़ते जा रही है, स्कोर कार्ड भी बढ़ते जा रही है, 27 पर पहुंच चुके हैं। अब अगली गेंद रियाज कुंजतुर उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद हैं। तच्ची मुसोडी सबसे स्फोटक खिलाड़ी हैं, इस प्रतियोगिता में सफल नहीं हुए हैं, अब देखना होगा। द विकेट और छात्र तरीके के साथ खेला है, लॉन्गों पर गेंद गई, तब तक 1 रन दौड़कर पूरा किए, दूसरे के लिए कोई मौका नहीं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत अच्छी फील्डिंग भी की है, तब तक रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 28, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब तैयार है दूर वाली चोट से रियाज कुंजतुर, नासर के लिए। नासर इस गेंद को खेला गया है, फाइन लग पर तेज रफ्तारी से, ओहो व्हाट ए फीलिंग, व्हाट ए फीलिंग, खतरा हो सकते हैं, करीबी मामला। और इसी के साथ विकेट नंबर 3 डिपार्ट, नासर अरीमला वापस जा चुके हैं। गफर कुपला की फील्डिंग देखिए।
एक गेंदे फेंक चुके हैं, आखिरी ओवर की चलती पर है मैच। पहली इनिंग्स आप देख रही है, मैच नंबर 8 डे नंबर 3 एमपीएल के सीजन 10वीं आप देख रही हैं। 8वें मैच यानी कि कुल मिलाकर 70वां मैच, 17th मैच इन दिस टूर्नामेंट। अब अगली गेंद अजीम ओवर द विकेट, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ झुके और सिप शॉट के लिए मिस फील्ड के वजह से एक के जगह पर 2 रन तो दौड़कर पूरा किए। नाखुश है विकेट कीपर यानी कि आइकॉन खिलाड़ी रियाज नाखुश है फील्डर से, क्योंकि कुछ देर पहले इसी खिलाड़ी ने शानदार फील्ड किए थे, थ्रो किए थे, रनआउट के रूप में बहुत बड़े मछली जाल में फंसा दिया गए थे नासिर को। अब तो इसी खिलाड़ी से भूल भी हुए हैं, ये तो क्रिकेट के भाग है। अब अगले गेंद लेकर तैयार है दूर वाले चोट से अजीम दीनार ओवर द विकेट, अंपायर को घोष करते हुए तैयार है। 35 ऑन द बोर्ड, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है। एक रन तो तेजी के साथ दौड़कर पूरा किए, दूसरे के लिए कोई मौका नहीं। अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो, और इससे के साथ रनआउट भी हुए हैं। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे, तब अपने आप को गवा दिया गया है। बालाई चिलंगोड के विकेट पतन हुए। 5th विकेट डिपार्ट। तरीके के साथ खेला है, वाइड स्मिथ विकेट पर गेंद के तब तक 1 रन, और नहीं यहां पर कैच आउट हुए हैं। बिल्कुल अच्छी नजारा है, देखिए शानदार फ्लिक किए थे, हल्के से कोई ताकत नहीं लगाए शॉट पर, हल्के से पुश किए हैं, फ्लिक किए हैं, गेंद तो गई है लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर। तब तक अच्छी कैच ताजू मुसोडी ने कैच हासिल किए थे, लाजवाब कैच। विकेट पतन हुए हैं। विघ्नेश आउट हुए, उनके जगह पर नए खिलाड़ी अजीज कयार, सबसे पुराने खिलाड़ियों से एक है जो सुल्तान कयार के योगदान है अंडरआर्म क्रिकेट के लिए। बिल्कुल सुमसाम खिलाड़ी है, साइलेंट अंडरआर्म क्रिकेटर सुल्तान कयार की योगदान है। उनके लिए आजिम दीनार तैयार है ओवर द विकेट, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेले हैं। तब तक थर्ड मैन पर गेंद गई, जफर मैकलम, तीनों ने गेंद को तेजी के साथ उठाए। तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 37। आखिरी गेंदे बचे हैं। बहुत अच्छी जो गेंदबाजों के सहारे के साथ देखिए कितनी शानदार कम बैक किए हैं, बहुत अच्छी योगदान दी है गेंदबाजों ने, फील्डरों ने। अब तैयार है, आखिरी गेंद बचे हैं। नाचू स्ट्राइक पर मौजूद है, स्पोर्टक खिलाड़ी है। हेलीकॉप्टर शॉट, गेंद तो जा रही है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच में। 1 रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है, और इसी के साथ आउट। रनआउट से बचना चाहते थे अजीज, यहां पर सीधे जाकर गिरे हैं, कुछ चोट तो लगे हैं मेरे ख्याल में, आउट तो जरूर हुए हैं। अंपायर ने कुछ चोट लगे हैं अजीज को। മത്സരമാണ്. ആ മത്സരത്തിലേക്ക് സൈനപ്പിന് വേണ്ടി 2 ടീമിന്റെ ഈ മത്സരാർത്ഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
And second innings, we are moving towards 39 as the victory target for CSC Paivelike. We have enjoyed a lot by hearing voice of Abdul Rahmanji Baker in this first innings. Nice and completed with the target of 39 runs. Have a look at the crowd. Still, we are moving towards the third day of MPL Season 10. Still, the crowd audience are gathered here to witness this particular tournament over here in this particular time of around it is 12 o'clock 33 minutes. Already have moved for third day of this particular tournament, and definitely we are enjoying a lot in this particular day. Definitely enjoying with the music over here in this particular tournament of 2026, that is MPL 10. 39 is a victory target for the team like Team CSC Paivaliki here. Yes, I would like to call Nazir Churigali. Please report in the sign up box over there. The team members are waiting for Mr. Nazir Churigali. Yes, we go with the first over. Shakira, Jackie with the bowling marker for the side of High Flyers Dubai here. Spelling over number 1. Taking the guard of right hand over the wicket from the umpire's end for Riaz and the trump card from the side of CSC Paivalika. This time very good delivery, straight to the ends of the wicket keeper. There is no chance for the batter to connect that delivery perfectly. Meanwhile, just a dotted one in the beginning of first over from the side of Shaki Jackie here. Very good spell we can see from the hands of Shaki. Nicely driven towards the deep along mid of region and taken comfortable single here. Fielder fixed perfectly in the mid of region. A very good start from the side of Jackie. Doing perfect delivery for the batters here, not letting the batsman to go for big shots in the initial over number 1 here. Completed 2 deliveries. Scorecard is 1 on the board. The openers like Akshay as well as Riaz Annama in the crease right now. Is striking the first delivery from the side of CSC Paivalika Jackie here. Once again, a nicely flicked delivery towards this point of mid-wicket region and taken one more addition to this scorecard here. A very good rotation of strike we can see in the first over because they need just 39 as a victory target for the team like Team CSC Paivilke here. Very good delivery this time, very good delivery, slightly away from the leg stump region and 1+1 2-run addition to this scorecard and one more third umpire request from the main on-field umpire went for the abstays to confirm whether it is wide or not. Definitely we have to wait for the decision from the third umpire in this first initial over. Jackie spelled nicely 3 deliveries and given just 4 runs for the batting mark over here. Akshay as well as Riaz and Emma.
the openers from the side of CSC Paivaliki waiting for the decision from the side of third umpire. Definitely the call is wide. Yes, wide is the call from third umpire here. One more addition to the scorecard. 1+1, 2 runs added to the scorecard right now on this first over. Nicely the deliveries to the fine leg region. Fielder fixed perfectly in the department. Vera in the fine leg. Meanwhile, only one single added to the scorecard. Last shifting the rotating the strikes in the regular intervals. Meanwhile, now same stroke to the body of region. Fielder fixed perfectly. One more addition in the form of single, just rotating the strikes we can see in the particular over number 1, because they knows that Jackie Shakir is doing perfect line and length towards sticks. So batsman is not at all going for the big shot in the initial stage of over number 1 here. Completed over number 1. The scorecard is 7 on the board. Loss of no wickets here. A very good start from high flyers Dubai. Shaki Jackie perfectly bowled line and length towards stick was perfect. The batter just went for singles and have been taken total of 7 runs after completion of first over, because they knows very well about Shaki Jackie. He doesn't miss his line and length towards sticks. That is what they have did perfection of 7 runs by taking singles over there in the particular over number first. Yes, 39 is the victory target. 5 more overs has to come in this particular innings numbers 2. Never mind, just 13. 2 more runs required for the victory target for the side of CSC Paivalike. And Riaz Ennam, the trump card, the icon player from the side of CSC, still is in strike here. Definitely we can see very good stroke from the hands of Riaz in this particular match between those teams. Definitely, absolutely, he having that tremendous strokes, tremendous power to hit the maximums as well as boundaries from his bat. Definitely here some bit of changing in this fielding mark doing from the captain here. Captain brings Rafi into the attack over number 2 here. Yes, Rafi pitching the delivery towards the earth and rushing towards the bowlers and just flick the deliveries towards the fine leg. Meanwhile, taking comfortable single. That is what the tactics which is used by the batter here. Just rotating the strikes in the initial over. When there is a easy ball getting hit, that time hitting the deliveries over the fans for the maximums. That is what might be the intention. That is what might be the strategy, what they are deciding in this first initial over number 2 here. A very good start from the side of Dubai High Flyers Dubai here. Once again, second delivery of a second over. The scorecard is 8 on the board. Rafi once again taking the guard off right and round the wicket for Riaz. This time directly hit towards the pad. Meanwhile, one more addition in the form of leg by. What in a delivery, we can see from the bowlers, and Rafi doing very good job for the batter like Riaz, and is not a small batter. He is one of the greatest man in the batting mark, one of the very good, well-known all-rounder of Anjam cricket. That is one and only Riaz, and he is in crease right now for the team like Team CSC Paivalike. Once again, Rafi taking the guard of right and round the stamps for this time Akshay. Nicely delivered this time. Nice connection with the bat. Akshay slightly go towards the fine leg, deep fine leg region, and meanwhile very good collection by the fielder. What an effort by Shaki Jackie. Have a look at the running towards the ball and tackling that ball delivery and saving the runs. What a good effort have been placing by the fielder over there. Shaki Jackie is tremendous in the fielding mark. 12 on the board after completion of 1.3 deliveries. Yes, some discussion is going over there in the deep. Yes, a very good effort we can see from Shaki Jackie for that particular delivery. The tall legs which is used for tackle the delivery over here. Yes, umpires goes for upstairs to check for whether it is 4 or not.
as definitely umpire have been taking right decision to go for upstays for third umpire's decision. We have to wait for third umpire decision in the crucial moment of this game. We are on the second over. Second over is in progress. Yes, some discussion have been came from out of the field. Off field, definitely umpire went for the upstays to check whether it is 4 or not. Yes, it is a boundary. What a good decision from the umpire. Definitely, what an view they are watching here in this particular live telecast. Definitely, the technology which is used over here in this particular tournament, which is used in such a condition, such a situation, definitely that makes the tournament much better, much standard one. Yes, here. For more addition to the scorecard right now. Yes, a very good stroke we can seen from the batter here, Riaz and as well as Akshay, the openers from the side of CSC. Paivaliki nicely placed towards the fine leg region and taken one more boundary for the hands of Akshay. Over here once again Rafi to Akshay, this time nicely delivered, a very good delivery from the hands of Rafi here, and slightly flicked towards the point region and taken comfortable single. One more addition to the scorecard, 14 on the board here after completion of 4 deliveries. We are in the second over is in progress right now. Rafi so far did a very perfect bowling work over here in this particular over number second. This time once again for Riaz NM. Rafi to Riaz. This time perfect delivery. Meanwhile, there is a chance of run off there, and this is the time. Very good collection by the cover point region fielder. Perfectly played right throw towards the bowlers, and meanwhile the batter is safe. Very quick running between the wicket we can see from the batters, and Riaz and Amma rushing towards the stakes. What a brilliant running between the wicket from both the batters in this particular over number second here. Last delivery of second over. Akshay this time goes for a big start, nicely driven towards the covers region, and there was one more chance for the run out. What an effort from the side of batsmen rushing towards the singles and couple of runs, adding the scorecard after completion of this over number second. The scorecard is 16 on the board right now. A very good start from the side of CSC Paivalike by the openers. Riaz as well as Akshay is playing perfect job in the batting mark to get the victory score of 39 runs. Definitely, it is a good start from the side of CSC Paivalike so far in this after completion of second over.
A slightly bit a pumble in the deep region. Shakir Jackie did and left 4 runs for against team like CSC Paivalike, that which made this total scorecard of 16 on the board. Now 20 to 24 to go, 23 to get. That is the equation in front of CSC Paivalike here. Just a ball to ball runs are much required in this victory against team like Team High Flyers Dubai here. 24 to go, 23 to get. That is the equation over here in this particular match between those teams. Slightly changing the situation, changing the fielders in the middle over here. Once again, captain brings back Shakir Jackie in the bowling mark over here, because he knows that, the captain knows that Shakir, the trump card bowler, the informed player from the side of High Flyers Dubai, he can minimize the runs over here in this particular third over. Once again, Shakir to Akshay. Have a look at the defending shot from the hands of Akshay, because that is what I have been mentioned. First over, they have started nicely, safer side, just taking singles and couple of runs, and have collected 7 runs in the initial over by saving themselves. This time there is nice stroke, nice collection, nice caught over there in the point to cover point region, and no chance running between the wicket over here from the side of batter here. That is what Shakir Jackie doing in the third over. Nicely delivered. What in a delivery it was from the hands of Shakir Jackie here to Rayaz Annam. Completely dotted one in the third over. 3 deliveries have been completed. Very good comeback from the side of High Flyers Dubai in this particular over number 3. As I mentioned in the beginning of third over, captain bring back Shakir Jackie over here. They given responsibility, he's doing that responsibility over here in this particular over number 3 here. Light freak towards the mid-wicket region and taken comfortable single. That is what they have did. Same thing in the first over also. That is because of Shakir Jackie. They have to defend each and every delivery, and taking singles and couple of runs not at all easiest thing in this such kind of big tournament over here. Have a look at that. Just chipping the delivery and taking singles, rotating the strikes, adding the scorecard gently over here. 19 on the board after completion of 2.5 deliveries here. Last one more delivery left in this particular over number 3 here. Shakir did very good comeback in this particular over number 3. Last delivery of Shakir here to Riyaz Annam. This time nicely covered drive. A very good stroke from the hands of Riyaz. Here over number 3 completed. The scorecard is 20 on the border, and there is no loss of wickets over here till now. Have a look at the partnership. 20 runs of partnership after completion of 3 overs by Akshay as well as Riyaz Annam. That is a good start. Start from the side of CSC Paivalike so far. 39 is the victory target. Now 18 to go, 19 to get. This is the equation. 3 more overs are remaining over here in front of CSC Paivalike. So next match between YFC Kannura takes Falcon Fighters Kadambar. I would like to call both the captains of those teams. That is captain of YFC Kannur as well as the captain of Falcon Fighters Kadambar. Please report for the tossing of upcoming match. The match number 9 between YFC Kannur versus of Falcon Fighters Kadambar. Very good delivery from the young man Isham of YFC here.
in the beginning of fourth over. Very perfection with the ball towards Riaz Enam here. Dotted one. First delivery itself. A dotted one here from the hands of Isham. What a good start by young man taking the guard off right and round the wicket for Riaz Enam. This time second chance. Nicely slip the field of X in the reach and taken a very good collection over there. There is a chance of run out. Meanwhile, batters are safe. What a quick running between the wicket we can see from the batters. That is what understanding between each other and very good understanding we can see from the both the batters here. A very good start of a fourth over by Isham, nicely flicking the deliveries to the cover point region and taking comfortable singles. They knows that just 17 runs are required in 15 deliveries. Ball to ball runs are much enough to get the victory target of 39 runs over here in this particular match. So batsmen are not rushing for a big shot, just protecting themselves and taking singles and couple of runs over here because they knows that they are well settled right now. There is deliberate delivery here once again. Both the bowlers as well as batsmen are rushing over here in this particular match between those teams. Yes, once again Isham taking the guard of right and round the wicket for Riaz Enam. This time front footwork, this time straight away, finger rising from the main umpire. Riaz Enam, unwanted thing in the middle. How did came in front foot, but ball directly went direct hit towards the wicket over here. The first blow. For your music and 22 on the board, loss of 1 wicket, the valuable wicket, the icon player from the side of CSC Pai Valiki. A very good breakthrough we have seen in this last delivery. Riaz went for front foot and meanwhile ball fails the batsman and hit wicket over there. Nicely first wicket have been fallen from the side of CSC Pai Velika. This is a big damage for the side over here. Very good partnership they have built off 22 runs and meanwhile wicket had gone in the form of direct towards the wooden sticks here. The young man Isham doing very perfect job in the fourth over. Four deliveries have been completed. 2 deliveries left in this particular over number 4. Isham this time once again for Chemo Arima looking for a big shot. There is a big appeal and this time that was not confidential one and one more addition in the form of leg by the ball directly hit to the pad of the batsman. Meanwhile cross single run there. One more addition in the form of leg by. Very good appeal we can see from the keeper as well as bowlers end, but the umpire is in unmode right now. Yes, definitely very good decision made by Saiful. Mr. Saiful all the way from Pajila doing very good decision in the middle over there. Yes, fourth over is in progress. Last one more delivered left in this fourth over. 23 on the board, loss of 1 wicket. Last delivery taking the guard of right and around the wicket. Rafi to Akshay here. Nicely swept in the region and taken comfortable single over there after finishes off over number 4. The scorecard is 24 on the board, loss of 1 wicket here.
24 on the board, 12 to go, 15 to get. This is the equation in front of the batter of CSC Pai Valike. One side we have the opener Akshay CSC, and we have Chemu Arimala, the trump card, the strongest player from the side of CSC Pai Valike. Definitely still Chemu and Akshay is increase. Definitely that is a fear for a team like Team High Flyers Dubai. They have to ball very perfectly in this coming 2 overs to restrict the batsman to take singles, couple of runs, boundaries, maximums. So it will be the advantages for the fielding side when we restrict the batsman completely. When the dotted deliveries have been placing, definitely there will be a pressure upon the side of batting mark that would have to be done by the bowlers of High Flyers Dubai in this particular 2 overs. Yes, completed 4 over. The scorecard is 24 on the board. Loss of 1 wicket. The major wicket have been fallen from the side of CSC Pai Valike. That is Riaz Annam sitting in the dugout right now. And we are moving towards the over number 5. Nasir Arimala. This time captain brings Nasir Arimala into the attack. Bowling number 5. Taking the guard of right hander over the stamps for Akshay. First time Nasir Arimala. Yes, Nasir Arimala first delivery. Nicely driven towards the cover region. Deep region field fixed. Meanwhile, going for a couple of runs. There is a chance of run out, but Chemo is in unmoored. Yes, Chemo played safer zone cricket over there because Chemu knows that ball is with the hands of fielder. That is quite difficult to go for a couple of runs. That the mentality, that the strategy, idea, what came from Chemu's mind is brilliant in this particular condition, because if whether they might go for a couple of runs, there is a chance of run out. Definitely that was saved by Chemu Arimala here for denying a couple of runs over here. Yes, once again Chemu looking for the reverse shot. A nicely connection towards deep region and taken a completed single run. A very good stroke we can see from the hands of Chemu Arimala. Now 10 to go, 13 to get. That is the equation. Yes, definitely target is coming near for the team like CSC Pai Valike. 26 on the board after completion of 4.2 deliveries and 4 more delivery left in this particular over number 5. Pitching the ball towards the ground and facing for Akshay here. Nicely driven. Very good effort from the bowlers, and what an delivery, what an effort, what a magnificent show was showing by the bowler here, Nasir Arimala. What a kind of fielding, what a kind of bowling in the initial over number 5. That is what tactics, that is what strategy behind bowler here. The bowler has to tackle the batsman in such a situation like 9 to go, 13 to get. This is what here CSC Pai Valike need to get the victory target of 39 runs. Once again Nasir this time nicely one toward the deep region, ups in the air, of extra, and one more blow. What a fabulous catch in the deep region. Who is fielder fixed in the long off region. Perfect caught. The Akshay. CSC Pai Valike lost 2 wickets here. 26 on the board. We are in the 5th over. 2 more deliveries left in this particular 5th over.
കാണികൾ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ബാരിക്കേഡിൽ ആര് ചാരി നിൽക്കരുതെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കാണികൾ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ബാരിക്കേഡിൽ ആര് ചാരി നിൽക്കരുതെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. യെസ്, മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് match here. 4 deliveries have been completed. 2 deliveries left in this over number 5. Once again, Nasir this time looking for the big shot. Straight away toward the keeper's pouch. What a comeback. What a comeback in this last time over here in this particular over number 5. Magnificent delivery from the hands of Nasir Arimala, completing checking the delivery in this particular over number 5. That is what wanted by High Flyers Dubai here to stack the batsman in the crease right now. What a magnificent effort by putting by the bowler here. Nasir spelling last delivery of 5th over here. Once again for Jafar, make up direct towards the one stick here. One more blow. This time Jafar walks back to the dugout. What in a 5th over comes in, and this is what mind-blowing performance from Nasir Arimala. A brilliant Yeah, 6 to go, 13 to get. That is the equation here. When we started over number 5, which is spelled by Nasir Arimala, the equation was 12 to go, 15 to get. Now the equation is 6 to go, 13 to get. The Nasir just given 2 runs and have been taken 2 valuable wicket in this 5th over. That is what magnificent over have been placed by Nasir Alimara. That is what turning point for High Flyers. That is what much needed for High Flyers Dubai here. What a match, what a neck-to-neck match between those teams. We are getting definitely goosebumps over here by sitting in the commentary box, and definitely the crowds are enjoying in this particular match between those teams. That is CSC Paivalike one side, another one side we have High Flyers Dubai. 6 to go, 13 to get. 6 to go, 13 to get. This is the equation here. We should see right now who will come to attack in the bowling mark and the final over number 6. 6 to go, 13 to get. Once again, Chemo Arimala with the strike here facing Bala. It's Langori. Yes, Bala, the tram player from the side of High Flyers Dubai. 6 to go, 13 to get. The pressure upon the captain, pressure upon the fielder, pressure upon the bowler, pressure upon the batsman. That is what we are watching in this particular match between those teams. This is what high voltage match of MPL season 10-20-26. Once again, first delivery. Chammo Arimala goes for a big shot. This time there is no connection at all. Meanwhile, crossing the stamps over here. Yes, one in the form of leg by 27 on the board. Now 5 to go, 12 to get. Yes, a timeout indication now from the middle. Umpires are definitely working on time here. They are not missing any single minutes over here. And this time the advantage is for the batting team. One side we have Riaz Kunchatur. Another one side we have Chemu Arimala. Both are having that efficient batting lineup. Both are they having that experience, and once again they are getting advantages. One fielder has to come inside the 30-yard circle because the indication timeout indication which came from the main umpire here. Slightly discussion is going in between by the fielders, captain of High Flyers Dubai, to tackle the batting team of CSC Paivalike here. One side CSC, one side High Flyers Dubai. Another one side 5 deliveries, another one side 12 runs. 5 to go, 12 to get. Heartbeats are getting faster than faster. Definitely high voltage. Some tactics using
taking decisions in the fielding mark, changing fielders here and there, getting the fielders inside the 30-yard circle. That is what he are doing. Bala Islangodo taking the guard of right and over the stamps for Riaz here. Nicely driven towards the mid-wicket region and taken comfortable single. What a running fielding we can see from the side of High Flyers Dubai. Definitely High Flyers flying in the air right now. Just 4 deliveries left and 11 more runs required for the victory target of 39 runs. 4 to go, 11 to get right now. 4 to go, 11 to get. Yes, definitely pressure is on the batting mark. That is Riaz, the experienced campaigner of Andram cricket. He is guiding Chemu Arimala. Chemu Arimala is not at all a small player. He is having very good experience in the Andram cricket. Definitely, we can't predict anything cricket. We can't predict any fraction of second. Anything will be possible in the Andram cricket. This time looking for a big shot. Ups in the air. Wheeler rushing towards the ball. And this time caught perfectly. Chemu Arimala walks back to the dugout. Chemu's innings comes to an end. Chemu departure here from the side of CSC Paiwarike. What a comeback. What a comeback from the side of High Flyers Dubai. Yes, Dubai. The 5th over spelled by Nasir Arimala. Just left 2 runs and taken 2 wickets over there. That is what very good comeback. That is what turning point for team High Flyers Dubai. Right now 3 to go, 11 to get. 1 maximum can change the scenario of this particular match between those teams. Yes, Bala Ichilangodo, one of the well-known bowler from the side of High Flyers Dubai, facing for the first time here. Nicely driven toward the mid-wicket region and taken a comfortable single there. Fielders are positioned perfectly in the regions like mid-on, mid-off, mid-wicket, third man, short third man, deep third man, long on, long off, square leg. Yes, that is what the capacity of the captain to place each and every fielders in the right position at the right time. Now 2 to go, 10 to get. 2 to go, 10 to get. Have a look at the heartbeat of batsman here. Heartbeat of bowler. 1 maximum can change the scenario of this particular match between those teams. So once again, Bala taking the guard of right and over the stamps for Riaz. Sam nicely placed toward the deep mid-wicket region, and this time welcome Bowery from the side of Riaz and Riaz Kunjatur. This time 4 more addition to the scorecard. Here 33 on the board. Neck to neck match. Now 1 to go, 6 to get. 1 to go, 6 to get. Yes, sir. One side we have Bala Islangodu. Another one side we have Riaz Kunjatur. Yes, the young man, the experienced man, the young campaigner, the experienced campaigner of Andram cricket. We have to wait. We have to watch who will win this battle between those teams. CSC Paiwarike, High Flyers Dubai, Bala Islangodu, Riaz Kunjatur. 1 to go, 6 to get. This is the equation. What in a match. Definitely crowd is watching this particular match, enjoying this particular match between those teams. MPL Season 2, Season 10, 1-6 will be awarded 2,000 rupees for Riaz Kunjatur. Yes, sir. 1-6 will awarded 2,000 for Riaz Kunjatur. 1 to go, 6 to get. Have a look at the condition over here. Full of jam-packed ground of Mannamkuzhi Stadium here. Taking the guard of right and over the wicket for Riaz Kunjatur. Last delivery. A very good delivery. Very good stroke. Meanwhile, 1 more wicket have been fallen. What an innings comes and brilliant work from both the teams. That is CSC Paiwarike versus High Flyers Dubai, and congratulations for the valuable performance from the
So that is none other than Nasir Arimala. What a brilliant performance with the ball. 2 wickets, 2 runs have been given in the 5th over. That is the turning point for the team like High Flyers Dubai, and the man deserve man of the match of last match. That is Nasir Arimala. I'd like to call Mr. Ilyas Kunjaturo, the Panchayat Manjeshwar Panchayat member. Please come forward towards our presentation box to hand over the man of the match award to Nasir Arimala for his valuable performance in the previous match we have seen between CSC Paivalike versus High Flyers Dubai. Yes, well deserved man of the match, the turning point, the hero of last match, that is Nasir Arimala. And now the changes in microphone. I would like to call Mr. Darwin Michael. Once again, welcome Darwin Michael for the upcoming match between YFC Kannur versus Falcon Fighters Kadambara. Thank you. Puraskara Vedil Player of the Match Award receiving by the Nasir Arimala receiving the Player of the Match Award. 2 വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ കിടിലൻ പെർഫോമൻസുമായി Nasir receiving the Player of the Match Award. And also High Flyers Dubaiയുടെ team management offer പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. Cash award for the icon player Jackie. Please come to the stage to collect the prize money that offered by High Flyer management. And Nasir Arimala, please stay there. Nasir, you have a cash prize that offered by High Flyers Dubai management. And also I welcome the young gun Isham. Please join in the presentation desk to receive the cash prize from the team management of High Flyers Dubai. Yes, we have Nasir and Jackie and Isham YFC. What a performance by all the players who just changes the course of the game with their tremendous over. What a fighting victory they got. And here we can see Zia is giving away the cash prize. And Isham YFC is receiving the cash prize. Shakir Jackie, welcome you. What a performance as an icon player. All the way സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ക്യാഷ് പ്രൈസുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സ് ദുബായ് മറ്റൊരു വിജയം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. And we are all set, and thank you Preetham. All set to start the next game. YFC have won the toss and elected to bowl first on the other side. Falcon Fighters Kadambar, they are going to bat first in the innings. Straight away Shiamali coming into the attack with the over number 1 of the operation. Chemi Periadika and Naufal Gori, the opening batters. Once again the same combo that using by the team Falcon Fighters Kadambar. You have seen a wonderful fight to start this game and the day by the team Falcon Fighters. Big swing, big intention from Chemi. That's showcasing straight away in front of the strike bowler Shiva Mali. 2 dot balls in a row to start the action.
by the bowling side of YFC Kannur. Another big and exciting encounter. Shyamali coming. Nicely keeping it was tight and way outside from the arc of the batter. What a beauty of execution in consecutive 3 times, that not giving any kind of chance to freeze the arm. Absolute phenomenal start by the strike bowler. Golden 3 dot balls. Now played it through the onside region, and there is a fielder in deep. Little bit fumbles, and that taking the advantage and coming back for second. Easy way the bat is crossed between the wickets. And that opened the scorecard of Falcon Fighters Kadambar. In the 4th delivery, they get the first runs. 2 between the wickets. Here is again Shyamali. The experienced all-rounder is just working wonderfully. Oh, there will be a little bit long chase. Oh, what a way the man Neetu comes and grabs it, that one. Right in front of the boundary rope. And just saving some runs. Bring a couple of runs once again for on guard. Moving to the last ball of the over, number 1. Fabulous way, start by Shiva. And this time a slip shot, and there will be a chance. Half a chance, just landed in front of the fielder. Excellent over comes to an end. It is 5 runs produced from the first over of Shiva Mali. 5 റൺസുകളുമായി ശിവയുടെ ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ Falcon Fighters 5 without loss. And all 5 grabs by Chammi. He faced all 6 deliveries. And in the first over, Naufal Gori, who was there in the non-strikers end as a standby, who just watched all the actions. But Chammi gives a little bit momentum to the scorecard of Falcon Fighters. We have witnessed an unbelievable 2 innings by Chammi Periodika as a captain. He was played a gem of an innings in 2 times. That gives some points. That gives some movement for the team Falcon Fighters Kadambar in this MPL Season 10. Here comes Harshad Bajal, star all-rounder from YFC Kannur, the icon player who emerged. Couple of wonderful performance, and he grabs a player of the match award in the last encounter of YFC. On the other side, Chammi Periodika also received a player of the match award with an outstanding batting performance. What a delivery, what a beauty. Looks to be a fiery faster one from Arshad Bajal. Beats with pace. No chance for Chammi. Straight away tightening the screws by the frontline bowlers who just fighting for the team. YFC Kannur takes it through the onside region by Chammi. Works it for single on this occasion. And they were searching this chance for coming back, but no chance on this occasion. You have seen a little bit fumbles, but in the end they were managed to collect and receive and throws it through the non-strikers end without any trouble. Just a single. And now it brings Naufal Gori on strike for the first time of this inning. Trying and beats a fielder. There will be the ball. Rises away towards the fence without giving any chance for the fielder. Absolutely massive way. Naufal Gori announcing his arrival in the striker end. Nine deliveries, but Naufal Gori was stayed there in the non-strikers end, but when he comes to the striker end, the complete rhythm was changed. Magnificent piece of bowling we are witnessing from YFC Kannur, but what a way, the response, the counter-attack that begins on the other side by Naufal Gori.
11 on card. Chemmi Periodica. Oh, it's another beauty. Absolutely a wonderful delivery that once again executed on this track by Harshad Bajal. What a fantastic all-rounder cricketer. Harshad Bajal is ready to close the over. Here comes again. Nicely up on the face of the bat by Chemmi Periodica. Just gets a single. And there will be, they were settled with that single. That's the end of the over number 2. 2 overs of power play completed. It's a balancing one, looks to be for the teams. 12 runs came from 2. 12 without loss. Falcon Fighters Kadambar. ആവേശകരമായ ക്രിക്കറ്റ് കാർണിവലുമായി മണ്ണങ്കുഴി പ്രീമിയർ ലീഗ് അതിൻ്റെ 10ാമത് എഡിഷൻ ആഘോഷമാക്കുമ്പോൾ മണ്ണങ്കുഴി മൈതാനം ആവേശത്താൽ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ആനന്ദത്താൽ മുഖരിതമാകുന്ന അന്തരീക്ഷത്താൽ രണ്ടാം ദിനത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അവസാന മത്സരത്തിലേക്ക് YFC കണ്ണൂർ വേഴ്സസ് ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് കടമ്പാർ that you are watching. Shine Sports YouTube channel is telecasting this 6 days of cricket event, a mega cricket festival, MPL 10. Nasir Ulu is coming. The bowler who always coming with silent way. Slowly taking the runner up, and this time it was taken or what? Oh, Chemmi Periodica who just going back. That's a wicket. Well, what a way to start by Nasir Ulu. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ചെമ്മി എന്ന നായകനെ മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് ആക്രമണോത്സുക ബൗളിംഗുമായി നാസിർ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നെന്ന വിവരം കിട്ടുന്നു. ആ കാറിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം പ്ലീസ്. 12 for 1. First wicket down. Nasir Ulu strikes. And here comes Karthik Kumbala. A lot of experience. A little master from Kumbala. Having tons of experience in Mannamkuzhi ground in different major tournaments. And Karthik who can anchor the innings in the top order. A very good quality batter in the middle, but this time swept it towards the onside. Gets its first run straight away off the mark with a single by Karthik. And gives a strike rotation straight away to the settled batter Naufal Gori on the other side for the team. Falcon Fight is 13 runs on card. Naufal is an exceptional all-rounder cricketer in Karnataka. You have seen his wonderful performance in couple of matches as an all-rounder cricketer. Nasir bowls in the channel, just gives it that one through the offside region. And through the line, the man gives a treatment. Perfectly controlling the rhythm. 2 singles in a row by the batters, Karthik and Naufal Gori. After the first ball wicket, the batters are looking to steady the innings, working in the middle order. Just 14 so far. Nicely placed, and there is a space to cover between the wicket. Ease way, the batters are calling, and they will respond really well and takes a single once again. 3 singles in a row. This is a good start by Nasir Ulu, looks to be. Only considered 3 runs in first 4 balls. Nasir Ulu once again.
Going for a reverse action. He was premeditated for that one, but not gets a connection on this occasion. A leg by signal received over there. Fabulous piece of way the man creating the variation. Nasir Ullu is making it superbly for YFC Kannur. Moving to the last ball of the over. This is turning out to be another outstanding over for the bowling side. Steps it down the ground. Karthik Kumbala is a specialist sister, and how well the man makes it over there. But what a way the fielder was worked and stopped it. A stunning effort by the fielder that saved some runs. Outstanding athleticism we have seen in the boundary line. That saved couple of runs. End of the over number 3. 18 for the loss of 1. 3 overs done, 18 for 1. YFC Kannur versus Falcon Fighters, the match you are witnessing. Falcon Fighters scored 18. Naufal Gori and Karthik Kumbala, they were standing in the middle. And Harshad Bajal brought back into the attack. With his second over, we have seen a decent first over by Arshad on that occasion. He given away 7 runs. And this is exactly, we can say, YFC looking for a wicket. They're bringing a wicket-taking machine, Harshad Bajal, who is grabbed 4 wickets in the first 10 counter of YFC. Lovely delivery. That's a beauty from Harshad Bajal. Furiously fast on the carpet. That not gives any kind of response stance for the batter. 2 batters. They were very experienced cricketers. But Harshad Bajal, the man who just generating pace. Naufal Gori is a well-known all-rounder cricketer. Arshad Bajal as well on the other side. Icon versus icon is a competition. Right in the middle of Mannamkuzhi for this game. Start with dot ball by Arshad Bajal. Every dot ball that giving a little bit confident for the bowling side. Just like a dot ball, the dot ball just like a gold. Grabbing some gold with exceptional line and length that implement on the track by the bowlers of YFC. So far, so good. Oh, that's a beauty of a delivery. A cutter of a delivery from Arshad Bajal. And who was waited, Naufal Gori was waited in the back foot in long time, but this time it was not giving any kind of clue. Only Arshad knows the way of bowl. Oh, it's done well. That is rocketed onto the track by Arshad Bajal on this occasion. How well the man changing the variation and pace. It was just unbelievable way the man showering the pace. That is treating with some exceptional 2 dot balls after a single. Karthik Kumbala on strike. Trying to open the face of the bat, gets a thick edge, and there is a protection inside the ring. Just takes a single by Karthik Kumbala. Controls right in the hands of Arshad Bajal. Looks to be what a prolific all-rounder cricketer. He just showcasing and entertaining the cricket fans of Kasaragod with his exceptional all-round performance. As a batter, he is genius. As a bowler, he is just phenomenal. This is clever cricket that showcased by Naufal Gori. He just going with the merit of the ball and treated while up on the face of the bat. Played in front of the square and gets a single in a beautiful way. 21 on card and moving to the last ball of the over, number 4. Another over is turning out to be in favor of the bowling side. But after this ball, there will be a lot of opportunity and guided that one into the straight region. 2 was the call when the batter starting the action, but it was restricted with a single in between the wicket. That's the end of the over. A special over from a special bowler comes to an end.
What a spell from Arshad Bajal. That's the end of 4. 22 runs on card for the loss of 1 wicket. 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 22 റൺസുകളുമായി Falcon Fighters Kadambar in the first innings and 2 more overs to go in this innings. And surely the batters are very well settled. It is the right time to shift the gears for grabbing some boundaries or runs for the team Falcons to fly high. We can say a decent way the batters approach. That gives a respect to the very good deliveries of the frontline bowlers of YFC. Here is Nazir Cheragoli, another master. Masterful all-rounder cricketer. The captain coming into the attack. Oh, just a fancy type of action from Karthik Kumbala. But anyway, he just managed to cover between the wickets and gives a single straight away. That is very important. Naufal Gori need to play more balls that will gives a lot of hopes and dreams for the team. Who is the man anchoring the innings so far? And it is a time to step into the next level. Oh, beauty, absolute cracker-jacker that gets a wicket. Nazir Cheragoli, who just tracks with an unbelievable pacey delivery, brings the off-stump. Have a look at that delivery from Nazir in replay. Oh, Naufal Gori switches his place for a reverse action. But have a look at the celebration. Important wicket at the important junction of the innings. 23 for 2, Falcon Fighters Kadambar. Vishwa Kumbala joins in at number 4 for the team Falcon Fighters Kadambar. Nazir Cheragoli, he grabs a big wicket in an important, crucial time. Trying to play it towards covers region by the man, but not gets the right control over there. Just takes a single straight away off the mark. 2 players from Kumbala region there on the middle of the ground for Falcon Fighters to keep their hopes and dreams. 2 batters, they were capable to hits and makes a decent way the scorecard. And Nazir Cheragoli on the other side was looking outstanding. And Karthik went for a reverse action. And he gets a connection a little bit. A single and Karthik searching for second, but there is no possible chance. Ball in the hands of the fielder. And good way negotiated by Vishwa Kumbala for the second time. 25, a quarter of a century on board. But need to go a long way to set a brig. Here comes Nazir Cheragoli, make suring the right fielders are in the right position to start and finish the over in a right way. A fabulous all-rounder cricketer. Batting in the front line, bowling in the middle over. That is another beauty of an execution. Absolutely fantastic line that giving in front of Vishwa Kumbala. What a way the man keeping everything right in his shoulder. Here comes the last ball of the over. Another beauty. Such a star, he just works with his stellar quality
at bringing a brilliant over for the team YFC Kannur. Captain concludes it. Just 4 came from the over. 26 for the loss of 2 after 5 overs. Outstanding over from an outstanding player, Nazir Cheragoli. 26 റൺസിൽ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് കടമ്പാർ. They need to bring a fight in a different proversion to reach a safe and secure total. That's what aiming by Karthik and Vishwa. But the bowlers are phenomenal so far. And now moving to the final 6 balls of the first innings. Vignesh Surambile was outstanding in death overs of YFC Kannur. Coming to close the innings in a sublime way. Rolling delivery, gone way outside, looks to be from the leg stump. The bat is across between the wicket. It will be a chance for a coming back. Very well maintained by the batters of Falcon. Oh, wide is a signal as well. 3 gifted runs that received by the batters in the tail end of the innings. Adding more colours to the scorecard of Falcon Fighters with that extra costing important 3 runs in the starting session of the last over by Vignesh Surambile. This will be count for sure. 1 over still left. 29 runs on card by Falcon Fighters. Bowled in, beauty of a delivery from Vignesh Surambile. Cracks the wicket of the tall man Vishwa, who just walking back his own way to the dugout. What a comeback after bowls of Here comes Razi Kayar, the powerful hitter. Joins in the right time that believes by the camp of Falcon Fighters Kadambar. A big saying, but not a connection in proper way. Leg by the signal received from the center. Razi Kayar just moves between the wickets. Karthik Kumbala, the settled batter on strike. 30 runs on card by Falcon Fighters. They have 4 balls to go from this innings number 1. Disciplined bowling performance by YFC Kannur that not gives any boundary. So far everything is restricted by the weapons of YFC Kannur. Here comes Vignesh Surambile, who is also starting in a sublime way. Oh, that's inside the ring. And here is the ball. Karthik Kumbala comes down the track but not gets a connection on this occasion. Another signal of leg by. It was fantastic way tightening everything by Vignesh Surambile with his special deliveries. At not giving any kind of chance to freeze the arm in a proper way for the batters of Falcon Fighters Kadambar. Outstanding first half of this over by Vignesh Surambile so far. Oh, Rasik Singhs, and no chance over there. It will be a close, but no. In the end, safe and secure run between the wicket. Oh, well.
Number 4 down from Falcon Fighters Kadamba. 31 for 4. 2 balls of cricket remaining from this innings. New batter Azru joins straight away to the striker end. What a way the over is progressing. The young gun from Sudambail is shooting with a sharp piece of accuracy. Another beauty. Oh, what a way. The man executing the plans and just allowed a single for the new man. Azru off the mark and moving to the last ball of the innings, number 1. Another over turning out to be in favor of the bowling side. Just 4 came from the 5 balls of Vignesh Sudambail. So good so far. And moving to the last ball. In a reverse action, not gets the right connection over there. Just happy with a single by the batters. A bye signal received there. Let's conclude the innings number 1 with 33 runs by Falcon Fighters Kadambar. 34 to chase for the team YFC Kannur. ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് 33-ൽ അവസാനിക്കുന്നു. 34 റൺസിന്റെ ചേസിംഗ് ടാർഗറ്റ്. ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ ഇന്നിങ്സിലേക്ക് രണ്ടാം ദിനമായ MPL സീസൺ 10ന്റെ അവസാന ഇന്നിങ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. YFC കണ്ണൂരിന് 34 റൺസ് എന്ന ടാർഗറ്റോടുകൂടി. ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വോയിസ്. വെൽക്കമിംഗ് ബാക്ക് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബേക്കൂർ ടു ദ കോംബോക്സ്. गाना मनोरंजन के साथ बहुत बड़े रंगीन बनाई है, MPL को बहुत खूबसूरती बनाते जा रही है। तब देखिए आखिरी मैच आज के दिन के, जो आज के शेड्यूल के प्रकार जो बी पूल के आखिरी मैच है, कल के दिन शुरुआत हुए हैं, आज के दिन जो समाप्ति हो रही है। फिर कुछ ही देर के बाद 3 बजे वापस आना होगा जो ए पूल के बचे हुए मैच, 11 मैच बचे। यहाँ पर देखिए 34 इज द विक्ट्री टारगेट, 34 इज द विक्ट्री टारगेट। बिल्कुल लो स्कोरिंग मैच है, सबसे छोटे स्कोर को यहाँ पर पीछा करना है। लेकिन क्रिकेट में ऐसी बात है कि कभी कभी जो लटकाते हैं छोटे स्कोर के सामने कोई भी टीम, यहाँ पर अरशाद बजाल और आरंभिक खिलाड़ी नज़ीर चिरगोली कप्तान और आइकॉन खिलाड़ी 2 आए हैं। ये तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं दोनों। अरशाद बजाल दक्षिण कन्नड़ जिला के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, महंगी खिलाड़ी, और इसी तरह जो कासरगोड जिला के सबसे बड़े खिलाड़ियों से एक है नज़ीर चिरगोली। हमेशा कोई भी बड़े बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता होते हैं उनके पीछे लोग पड़ते हैं, कप्तान के रूप में उनको लाया जाती है। अब तो हारिस मालक हैं टीम के, जो हारिस कन्नौन, बहुत बड़े व्यक्ति भी हैं, अंडरआर्म क्रिकेट के लिए बहुत बड़े मोहब्बत रखने वाले व्यक्ति हैं।
उनके मालक के टीम में, उन्होंने मालक हैं इस टीम के YFC कन्नौर के। सामने वाली टीम है फाल्कन फाइटर्स कदम्बार। फाल्कन फाइटर्स कदम्बार भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से भरी हुई टीम है और बड़े बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता में उनके नाम दर्जा करते हैं। अब तो आरंभिक गेंदबाज के रूप में बॉलर श्रवण के आगमन हुए हैं पहली ओवर और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया है। सामना किया पहली गेंद पर, देखिए जबरदस्त शॉट, गेंद तो तेज रफ्तार से गए हैं, बाउंड्री के करीब गेंद को यहां पर रोक दिया गया है। तब तक तीसरी रन पूरा किए। व्हाट ए रनिंग बिटवीन द विकेट, देखिए पहली गेंद पर 3 रन। नजीर ने पहली गेंद को सामना किए थे, अब तो स्ट्राइक पर आ चुके हैं। टाइम नाउ 150। इस समय पर गब्बर आ चुके हैं, देखिए गब्बर स्ट्राइक पर आ चुके हैं, यानी कि अरशद बजाल। मुश्ताक मैक्सिको, ओ हो, उनके आगमन वो हैं, बड़े धन्य व्यक्ति हैं, स्वागत करना चाहता हूं। और इस गेंद को खेलना चाहा लेकिन कदमों के इस्तेमाल किए हैं, अक्रॉस खेलना चाहते थे। हमेशा उनके शैली ऐसी है, बड़े शॉट खेलते हैं, अक्रॉस अगर बल्ले के बीचों बीच लग गई तो लंबे चले जाती हैं। यहाँ पर अरशद बजाल चकमा का है, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, 3 रन 2 गेंदों पर। मुश्ताक के आगमन हुए हैं, मुश्ताक मैक्सिको यहाँ पर आए हैं MPL सीजन 10वीं को यहाँ पर रंगीन बनाने के लिए। धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। और एक बार लट गई यहाँ पर, चकमा का है, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। 3 गेंदे सामना किए, 3 रन है स्कोर कार्ड पर। स्कोर रणनीति तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि 6 से भी नीचे हैं जो रणनीति बनाना है। फिर एक बार लंबे कदमों के साथ श्रवण बहुत अच्छी चालाकी गेंदबाज के रूप में जाना चाहती हैं। फिर एक बार ओवर द विकेट, अराउंड द विकेट, और इस गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले के अंदरूनी किनारे लगे हैं, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद गई, तब तक 1 रन। और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 4 ऑन द बोर्ड। 3 गेंदे सामना किए, 1 रन बनाकर खेल रही है अरशद बजाल। और मात्र एक गेंद सामना किए, 3 रन बनाकर नजीर चिरगोली अपनी फॉर्म पर वापस लौटने के लिए काफ़ी कठिन प्रयत्न कर रही है। यहाँ पर मौका है क्योंकि लो स्कोरिंग मैच है, 34 इज द विक्ट्री टारगेट है। तब अंतिम क्षण तक हल्के हल्के बल्ले घुमाते जाएंगे, टच होते जाएंगे, तब अपनी फॉर्म पर भी लौटेंगे, दरकार के पास भी पहुंच सकते हैं। अब अगली गेंद लंबे कदमों के साथ ओवर द विकेट अंपायर को घोष करते हुए, और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया है, बिल्कुल खाली जगह थे, लेकिन इन्होंने निशाना बनाए स्क्वायर लेग पर, लेकिन गेंद गई है जो मिड ऑफ सर्कल के अंदर फील्डर मौजूद थे उनके हाथ पर गए, तब तक 1 रन। और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 5 ऑन द बोर्ड। 5 गेंदों पर 5 रन बिना किसी नुकसान के साथ अरशद बजाल स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं। अब अगली गेंद ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है अरशद बजाल। इस गेंद को जाने दिए, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर थे, वाइड के खिला दिया गया और इस वाइड चेक करना चाहते थे, क्षमा कीजिए, वाइड चेक करना चाहते हैं, तीसरी अंपायर के मदद मांगे हैं, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर थे और वाइड चेक करना चाहते हैं। अच्छी गेंदबाजी की मजारा किया, अब तो बहुत कितने शानदार किए। और श्रवण ने देखिए पहली गेंद पर ट्रिपल के साथ शुरुआती किए थे, नजीर ने खाता खोले थे 3 रन बनाकर, और उसके बाद देखिए शानदार ऑफ से आए, 3 गेंद सामना किया, अरशद बजाल ने सिर्फ मात्र 1 रन बनाए, और उसके बाद नजीर चिरगोली ने सिंगल हासिल किए, 2 गेंदे सामना किए, 4 रन बनाकर खेलते हुए नजीर चिरगोली ने स्कोर कार्ड पर अभी भी 5 रन। आखिरी गेंद के यहाँ पर फैसला सुनाना बाकी है। तीसरी अंपायर जांच रही है, देख रही है, टीवी अंपायर के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं सैफुद्दीन पटेल, उन्होंने हमारे साथ मौजूद है, और डिजिटल संविधान पर स्कोरिंग पर यहाँ पर महरूफ और सनू। वाइड डिलीवरी निकी ऑप्शन के काफी बाहर गए थे, उतनी उम्मीद थे अरशद बजाल को, क्योंकि उतनी अंतिम क्षण तक नजर लगने के बाद इन्होंने छोड़ दिए विकेट कीपर की तरफ। 1 रन तो फ्री में मिले हैं, रनों की संख्या बढ़ते हुए 6 रन 5 गेंदे सामना कर चुके हैं। फिर एक बार तैयारी करते हैं बाहर के कमर उड़न से श्रवण, अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रही है। देखिए शानदार गेंदबाज है, शानदार ऑप्सी आए थे
अब तैयार है दूर वाली चौसर ऑन द विकेट अंपायर को घोष करते हुए। और अच्छी गेंद, अपील 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 और इसी के साथ हो बढ़िया विकेट, जबरदस्त विकेट। श्रवण बड़े मछली को अपनी जाल में फंसा दिया गया है। देखिए गब्बर के विकेट अपनी पॉकेट पर श्रवण की। पहली ओवर संपन्न हुए हैं 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। श्रवण के ओवर की विश्लेषता है कि 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 6 रन और 1 विकेट। शानदार शुरुआती दिया गया है। 28 रिकॉर्ड आउट ऑफ 30 डिलीवरी, 30 गेंदे बचे हैं, 28 रन की जरूरत है। शिवम अली को भेजा गया है 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर मौजूद है नजीर चरगोली। नजीर चरगोली अपनी फॉर्म पर वापस लौटने के लिए कठिन प्रयास कर रही हैं। इस मैच में गेंद बल्ले पर आ जाती हैं, आ रही हैं आसानी के साथ। इस निराश तो हट गई हैं नजीर चरगोली के चेहरे से, क्योंकि इस मैच में सेट हो चुके हैं इन्होंने। अब अगली गेंद नौफल गोरी और रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है। हवा पर गेंद बिल्कुल खाली जगह थे, जानबूझकर इस शॉट को खेला गया है और इससे 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 7 ऑन द बोर्ड, 7 रन शिवम अली के लिए पहली मौका मिलते हुए। कोई जल्दबाज तो दोनों तरफ से नहीं कर रही हैं। सुमसाम मैच, छक्के चौके तो इस मैच में बहुत कम देखे हैं। छक्के नहीं तो क्या मजा है, कॉलेज में लड़की नहीं तो पढ़ने को क्या मजा है। क्रिकेट में छक्के चौके नहीं तो देखने को क्या मजा है। शिवा मली डिपार्ट बैक टू द पवेलियन। हाथ के बल्लेबाज को भेजा गया है, जो प्रमोट किए हैं 4 नंबर पर नए बल्लेबाज के आगमन हुए हैं अच्छू पच्चलम 12। नौफल गोरी, गोरी यंग बॉयज पांडेश्वर में जमाने से खेलते हुए खिलाड़ी हैं। नौफल अभी भी उसी टीम में खेल रही है। लाजवाब खिलाड़ी, आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर दक्षिण कन्नड़ा जिला के। अब तैयार है दूर वाली चोट से लंबे कदमों के साथ ओवर द विकेट अच्छू के लिए। और बढ़िया गेंद यहां पर विकेट कीपर छोड़ते हुए, लेकिन नो स्ट्राइक एंड से तैयार नहीं थी नजीर ने। 2 टन डिलीवरी, फिर एक बार सीधा बल्ले में खेलना चाहते थे। अभी भी 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदे फेंक चुके हैं, 9 गेंदे सामना किए। फिर एक बार दूर वाली चोट से ओवर द विकेट। नौफल गोरी अच्छू पच्चलम 12 के लिए गेंद फेंकना चाहते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जो फील्डर रखे हैं, देखिए मिड विकेट है और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ स्वीप किए हैं। तब तक फील्डर मौजूद थे, उनके हाथ पर गिन गए। तब तक 1 रन अपने खाता खोल चुके हैं अच्छू और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 8 रन। 34 इज द विकेट टारगेट, 26 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 26 डिलीवरी, यानी कि 26 गेंद में 26 रन बनाना ही है, 6 के प्रतिशत। शुरुआत में 5.25 के करीब रन रेट की जरूरत थी। अब देखिए ओवर द विकेट और इस गेंद को घुमाना चाहते थे, झाड़ू बनाए बल्ले को, लेकिन बल्ले पर गेंद नहीं आए
ऑफ कटर गेंद, कभी लेग कटर फेंकते हैं, समझ नहीं पाते हैं कोई बल्लेबाज ने जल्दी। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की मजारा किए हैं नौफल। अभी भी 8 रन आखिरी गेंद के लिए जा रही हैं। पहली ओवर में 6 रन थे, इस ओवर में सिर्फ 2 रन 1 विकेट। अगली गेंद, बढ़िया गेंद, स्वीप करना चाहते थे तब पैर पर टकराए। 1 रन स्ट्राइक अपने पास रखते हुए 1 रन के सहारे के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 9 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब चाहिए मैच जीतने के लिए 25 रन चाहिए, 24 गेंदे बचे हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लो स्कोरिंग मैच कभी लटकते हैं कोई टीम। यहाँ पर देखिए बिल्कुल शुरुआती बल्लेबाज काफ़ी निराश किए हैं, अरशद बजाल और उसके बाद शिवम अली, दोनों बल्लेबाज जल्द आउट हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल खेले हैं। यहाँ पर देखना होगा कि आने वाली गेंदबाज ने क्या कर पाते हैं। नए गेंदबाज के आगमन हुए हैं, तौसीफ बाकरबैल, काफी महंगी खिलाड़ी है, अच्छी खिलाड़ी है। कोई भी बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता में अपनी नाम दर्जा करते हैं। तौसीफ बाकरबैल, सिराज पातुर, इजाज, वासिम बाकरबैल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने इस मैदान में बहुत बड़े नाम कमाए हैं और उसी तरह मदर इंडिया कडम्बार के मैदान में भी। अब पर तौसीफ आए हैं मैदान पर, तब नज़ीर चिरगोली कब तक मैदान पर मौजूद हो तब तक YFC कन्नूर को उम्मीद बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कप्तान मौजूद है, बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं। अगर अपनी फॉर्म पर वापस लौट जाएं तो आसानी के साथ इनके बल्ले पर गेंद आ जाती है। जो कोई ज्यादा ताकत नहीं लगाते हैं, हल्के बल्ले घुमाते हैं इन्होंने। रन मशीन जाना जाती है अंडरआर्म क्रिकेट के नज़ीर चिरगोली को। तौसीफ बाकरबैल बहुत अच्छे खिलाड़ी, गेंदबाज करते हैं, लाजवाब गेंदबाज है। अराउंड विकेट बाहर के कमर ओडन से, और इस गेंद को खेलना चाहा विकेट कीपर गेंद की तरफ जाते हुए लेग बाई फिर एक बार। अब तो YFC कन्नूर के लिए यही इरादा है कि रन बनना है किसी नमूने में भी। बिल्ली होना चाहिए, ना लकड़े की है ना मट्टी के, चूहे को पकड़ना चाहिए। जैसे ही YFC कन्नौर को एक एक रन, एक एक स्कोर बिल्कुल महत्वपूर्ण है। यहां पर सोने जैसे, आजकल के सोने के मार्केट जानते हैं, सोने जैसे हैं YFC कन्नौर को, एक एक स्कोर भी। अब अचू इनको भेजा गया है स्ट्राइक रोटेट करने के लिए, अपनी योगदान तो बहुत अच्छी तरह निभाए, खाता खोल चुके हैं। अब अगली गेंद, और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया है, खाली जगह थे, एक रन तेजी के साथ दूसरे के लिए कोई मौका नहीं। अपनी योगदान तो अच्छी निभा रही है लड़का ने, नौजवान खिलाड़ी, फ्रेंड्स पच्छिलंबारा की योगदान है। रॉयल फ्रेंड्स पच्छिलंबारा नाम के टीम में इन्होंने शुरुआत ही की अपनी कैरियर। बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने आक्रमणकारी बन गई थी एक जमाने में इन्होंने, एक सीजन में। उसके बाद दुनिया के जान पहचानी हुए हैं अच्छू पच्छिलंबारा की। अब तैयार है तौसीफ के सामने नज़ीर चिरगोली, दूर वाली चौसा राउंड विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए, और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया है। गेंद तो जा रही है बाउंड्री लाइन के करीब, एक रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है। 2 रन भी पूरा कर चुके हैं। ये तो YFC कन्नौर के डकआउट में हल्के हल्के जो तालियां बजने की आवाज सुनने लगे हैं, क्योंकि पहली बार एक डबल मिले हैं। ट्रिपल तो मिले थे, मात्र एक ट्रिपल, मात्र एक डबल, कोई चौके छक्के नहीं लगाए, बल्ले की आवाज नहीं सुने अब तक, क्योंकि हर खिलाड़ी ने स्वीप शॉट के लिए कोशिश की। शिवमाली 0 पर आउट हुए और हर्षद बजाल स्वीप शॉट के लिए कोशिश किए, ज्यादा गेंद खेले हैं। अब अगली गेंद, और इस गेंद हो व्हाट अ शॉट, नाजीर 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 रिटर्न टू द फॉर्म। आत्मविश्वास बढ़ गई है इनकी, देखिए कितनी शानदार शॉट।
शानदार चौके लगाए। इसी शॉट के इंतजार कर रही थी, कुछ ही देर से आक्रमणकारी बनना चाहते थे, अब तो सफल हुए हैं चौके के मदद से। अब तौसी के सामने नजीर चिरगोली। खेलना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि कप्तान है टीम की। अब अगली गेंद अराउंड द विकेट अंपायर को कोच करते हुए लंबे कदमों के साथ, छोटे कदमों के साथ क्षमा कीजिए, तौसी बाहर के कमर उड़न से, और इस गेंद को सिप किया गया है। गेंद तो जा रही है फील्डर की तरफ, एक रन तेजी के साथ इस रन के लिए दौड़ा जा रही है। हो! इसकी क्या जरूरत थी नजीर भैया, क्योंकि यहां पर स्कोर के उछाल आपने देखे थे, फिर भी के लिए इनको भेजा गए थे। 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर 16 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। अभी भी 19 गेंदें बचे हैं, 19 टू गो, 16 टू गेट। उस चौके में पूरी तरह बदल दिया गया है स्कोर कार्ड। फिर एक बार तौसी अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार है, उनके सामने नजीर राउंड द विकेट, और इस गेंद को खेला गया है। शॉर्ट फाइनल पर फील्डर मौजूद थे, उनके तरफ गेंद को खेला गया है, तब तक 1 रन, और इससे 1 रन के मदद से ओवर की संपन्न हो चुके हैं। 19 लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विकेटों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, लेकिन रणनीति को इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे, तब यहां पर आसानी के साथ लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। एक बात पक्का है कि नजीर चिरगोली रहना बिल्कुल जरूरी है मैदान पर। नजीर चिरगोली इस मैच के पहले की 2 मैच खेले हैं, बिल्कुल फॉर्म आउट दिख रही थी, क्योंकि अभी अभी बाहर गांव से आए, सीधे एमपीएल खेल रही है, कोई मैदान के टच नहीं हुए अब तक का। तीसरी मैच में हल्के हल्के अपनी फॉर्म पर वापस लौटने की सूचना देते जा रही हैं। अब नए गेंदबाज के आगमन हुए हैं, नौफल गोरी। पिछले ओवर में पूरी तरह दबाव में डाले थे, 2 रन 1 विकेट अपनी खोटे की पहली ओवर में। यहां पर इस ओवर बिल्कुल मेरे ख्याल में टर्निंग ओवर है, क्योंकि मिडिल ओवर, चौथी ओवर, यहां पर बिल्कुल टर्निंग ओवर है। देखना है कि इस ओवर में अगर सही सलामत बिना झटके के साथ खेलते जाएंगे, तब यहां पर वाईएफसी कन्नौर के लिए बहुत बड़े हो जाएंगे, वरना यहां पर सफल हो जाएंगे नौफल, तब यहां पर कदमबार के लिए बहुत बड़े हो जाएंगे। रक्षात्मक तरीके के साथ खेलने के प्रयास किए हैं। देखिए कितनी शानदार गेंद के वेरिएशन जल्दी नहीं जानते हैं कोई भी बल्लेबाज, पढ़ने के बाद किस तरफ घूम जाती है ये नहीं जानते हैं, जल्दी पता नहीं चलते हैं। ये तो इनके खासियत है नौफल गोरी की, काफ़ी साल से गेंदबाजी कर रही हैं, बल्लेबाजी कर रही हैं, लेकिन इस मैदान में बल्लेबाजी में कुछ इन्होंने निराश है। मन्नमकुझी मैदान में कोई भी खिलाड़ी जल्दी नहीं जमते हैं। संतू बंटवाल कल के दिन शोभित हुए हैं। अब अगली गेंद, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, हवा पर गेंद। ये तो क्या किए भैया, इसकी क्या जरूरत थी। गेंद पड़ने के बाद उछाल के साथ आपके सामने आए थे, यहां पर सीधे फील्डर की तरफ आपने दिए। आपके ऊपर आपके मालक ने विश्वास रखे थे।
अब देखिए 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर महत्वपूर्ण 2 गेंदें फेंक चुके हैं, 1 विकेट। वाह भाई वाह, व्हाट ए बॉलिंग, व्हाट ए डिलीवरी। आखिरी गेंद देखे थे, उस गेंद के बारे में बहुत कुछ कहना होगा। अब अगले गेंद बाएं हाथ पर गेंद पकड़ते हैं, दायां हाथ पर गेंदबाजी करते हैं। अच्छी गेंद ड्राइव की है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच में गेंद तो फील्डर की तरफ गई है, एकमात्र रन। और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 20। 14 मोर रन रिकॉर्ड आउट ऑफ 15 डिलीवरी। 15 गेंदों पर 14 रन चाहिए। मैदान पर मौजूद है साजन, स्ट्राइक पर मौजूद है, नॉन स्ट्राइक पर शरद कुंबला, विश्वसनीय बल्लेबाज है मिडिल ऑर्डर की। अब अगली गेंद नौफल, साजन इस गेंद को झाड़ू बनाए बल्ले को, 1 रन निश्चित रूप में, दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है। ये तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन निश्चित रूप में मिले हैं। हो नो बॉल के इशारा भी किए, सोने पे सुहाग। देखिए सोने पे सुहाग है यहां पर, बिल्कुल फ्री में 3 रन मिले। 23 लॉस ऑफ 4 विकेट। देखिए आवाज सुनने लगे हैं डकआउट से YFC कन्नौर की, तालियां की आवाज वापस आ चुके हैं। खामोश थे दोनों डकआउट, बिल्कुल खामोश थे। यहां पर 2 रन दौड़े हैं और नो बॉल की इशारा भी की है। अपनी गलती समझ गई नौफल ने, वहीं बैठ गई, अपने हाथ अपनी सर पर रखे हैं इन्होंने। अब अगली गेंद नौफल द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है नौफल गोरी साजन के लिए। और साजन इस गेंद को खेलना चाहते थे, फ्री हिट डिलीवरी थे, ऐसे खेलने की क्या जरूरत थी। बड़े शॉट के लिए कोशिश तो कर सकते थे भैया, लेकिन ऐसे नहीं किए इन्होंने, जो हल्के पुश करना चाहते थे। लेकिन कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। 4 गेंदे फेंक चुके हैं, 14 गेंदे बचे हैं, सिर्फ 11 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। नौफल फिर एक बार नौफल विकेट। ओह व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट अ कमबैक इन दिस मैन, नौफल गोरी। देखिए अभी भी 13 गेंदे बचे हैं, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ 11 रन की जरूरत है। यहां पर 2 बजने लगे हैं, तब स्कोर कार्ड आज के दिन बिल्कुल धीमी है, जो मैदान बिल्कुल गेंदबाजों के लिए मदद देते जा रही है। ओ बढ़िया गेंद यहां पर, फील्डर बाजू रन के लिए खतरा, लेकिन नहीं, कार्तिक कुंबला के हाथ से फिसल गई गेंद, वरना यहां पर बड़े मछली को जाल में फंसा सकते थे। विकेटों की संख्या में नहीं, एक रन यहां पर, 1 रन तो बचा सकते थे, तब दबाव में डाल सकते थे। यहां पर देखिए सिर्फ 12 गेंद में 10 रन की जरूरत है। 12 to go 10 to get। अगर सही सलामत क्या जो थ्रो को कलेक्ट कर पाते, तब 1 रन यहां पर माइनस करने के लिए मौका थे। अब तो 10 की जरूरत है। जो भी हो, क्रिकेट के बाग है, गलती तो हो जाती है। जल्दबाजी में अपने हाथ से गेंद तो नीचे गिरे हैं कार्तिक कुंबला के। अब बारवा खिलाड़ी ने कुछ निर्देश देकर गई हैं और बस मैदान से बाहर जा रही है। लाजवाब मैच, 12 to go 10 to get। एक बात है कि नौफल गोरी की खोटे खत्म हुए हैं, अब नए चेहरे आना ही पड़ेंगे गेंदबाजी में। मात्र एक खिलाड़ी को 2 ओवर फेंकने के लिए मौका मिलते हैं। अब नए खिलाड़ी की योगदान दिख रही है ईजा पातुर, उनके आगमन दिख रही है। To go 10 to get। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। मिडिल ओवर में बहुत अच्छे बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज भी हैं ईजा। उनके सामने बल्लेबाज मौजूद हैं साजन और शरद, विश्वसनीय बल्लेबाज है। दोनों अच्छी बल्लेबाज के रूप में जाना जाती है। मिडिल ओवरों में बहुत अच्छे खेलने वाली खिलाड़ी है दोनों। अब ज्यादा बड़े शॉट की जरूरत भी नहीं है, यहां पर 1-1 2-2 रन काफी है। पहले गेंद, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेले हैं। गेंद आने से पहले बैठ गई, झुक गई और गेंद के पास आ गई।
आसानी के साथ खेले हैं तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 25 क्वार्टर सेंचुरी पर पहुंच चुके हैं। देखिए 34 आसान दिख रही थी, बिल्कुल सिंपल दिख रही थी, अब तो प्रयास कर रही है, कठिन काम कर रही है बल्लेबाजों ने। अब अगली गेंद इजाज दूर वाली चोट से ओवर द विकेट शरद के लिए। शरात इस गेंद को खेला गया है वाइड मिड विकेट पर फील्डर तिराजिक उनके तरफ गेंद गई, तब तक 1 रन, और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 26, लॉस ऑफ 4 विकेट। 8 मोर रन रिक्वायर्ड, मात्र 8 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। गेंद बचे हैं 10। अगले गेंद, ओहो, ये तो दोनों खिलाड़ियों ने एक ही इरादा की, मैं तो स्ट्राइक से सेफ हो जाऊं क्योंकि 1-1 रन भी मिलते हैं। टाइम आउट, यहां पर खतरा हो सकती थी लेकिन नहीं, 1 रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 28। 6 मोर रन रिक्वायर्ड आउट ऑफ 8 डिलीवरी। 8 गेंद में 4 रन चाहिए, 6 रन चाहिए, क्षमा कीजिए बोलती में गलती हुई है, 8 में 6 चाहिए। अब अगली गेंद इजाज ओवर द विकेट। ओहो यार देखिए, ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल संघर्ष भरी हुई स्थिति। तीसरी अंपायर की मदद मांगे रन आउट के लिए, डिजिटल संविधान के साथ, टीवी अंपायर के साथ हेल्प मांगे हैं ग्राउंड अंपायर ने। और इसी के साथ आउट, महत्वपूर्ण विकेट, बड़े विकेट यहां पर 5-6 मिनट तक यहां पर जांचे और बिल्कुल डिजिटल संविधान का उपयोग किए हैं। शरत आउट। कार्तिक कुंबला के इस योगदान देखिए कितनी शानदार। नए खिलाड़ी विघ्नेश, नौजवान खिलाड़ी, और एक बार शरद आए और एक नौजवान खिलाड़ी को भेजा गया है। विक्की के ब्रदर विघ्नेश एक ही घर के 2 जबरदस्त गेंदबाज हैं। अंडरआर्म क्रिकेट के लिए जो संभावना की है, एक ही घर के 2 खिलाड़ी को, विघ्नेश और विक्की, एक ही घर के 2 खिलाड़ी, दोनों अच्छी गेंदबाज हैं, ये तो बड़े खासियत है। अब तैयार है ईजा, अपसी लाने के लिए कोशिश कर रही है, तैयार है दूर वाली चुस्ती बाहर के कमरोडन से ऊपर विकेट अंपायर को घोषित करते हुए विघ्नेश के लिए। विघ्नेश, इन्होंने भी यही इरादा है कि जो स्वीप करने के लिए प्रयास किए, लेकिन नहीं, बाई का इशारा किया अंपायर ने, विकेट कीपर के गलती से इसे रन मिले हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 29 रन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। 4 रन रिक्वायर्ड, 5 रन रिक्वायर्ड आउट ऑफ 6 डिलीवरी। 6 गेंदों पर 5 रन, बस एक डॉट बॉल, यहां पर संघर्ष में गिर जाएंगे बल्लेबाज, बस एक डबल, बिल्कुल यहां पर निराश हो जाएंगे कदमबार। देखना होगा, सभी वक्त ही बता सकते हैं। सहद कदमबार सबसे विश्वसनीय गेंदबाज को, अपने गांव के लड़के को लाए हैं गेंदबाजी करने के लिए।
शानिद के छोटे भाई, एक ही घर के दो खिलाड़ी हैं वो भी। शानिद तो बहुत अच्छे बल्लेबाज है, गेंदबाज है। शानिद कडम्बार, मदर इंडिया कडम्बार की योगदान है। फाल्कन फाइटर्स के लिए, अपनी गांव के टीम के लिए खेलने के लिए मौका मिले। 5 रन को पकड़कर रखने के लिए उनको जवाबदारी दी है। विघ्नेश स्ट्राइक पर मौजूद है। 5 रन बनाने की पूरी तरह जवाबदारी 2 खिलाड़ी की है। एक साजन है, दूसरे विघ्नेश है। व्हाट ए मैच! कोई छक्के नहीं, कोई चौके नहीं, कोई आवाज नहीं है, कोई आक्रमणकारी नहीं है। बिल्कुल सावधान के साथ, धीमी गति के साथ खेल रही है। फील्डिंग में पूरी तरह संघर्ष भरी हुए हैं। अब तैयार है, लंबे कदमों का इस्तेमाल कर रही है सात कडम्बार। लंबे कदमों के साथ हिंदुस्तान स्कूल से देखिए, शैली देखिए, खूबसूरत है। विकेट, अच्छी गेंद उठा करके ले लोगों पर गेंद गई, तब तक 1 रन। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहती थी लेकिन मना किए। विघ्नेश हिम्मत वाली खिलाड़ी है, कोई दबाव नहीं दिखाया इन्होंने। 1 रन, अब 5 गेंदे बचे हैं, 4 रन चाहिए। फाइट गो फॉर टू गेट। व्हाट ए मैच, व्हाट ए मैच! पूरी तरह दर्शकों के धड़कन बढ़ाते हुए मैच है। अब अगली गेंद दूर वाली चोट से सादम पर को कोच करते हुए हिंदुस्तानी स्कूल से जमीन पर टपका रही है जोर जोर से। और उसके बाद और इस गेंद को स्विप किया गया है, फील्डर मौजूद, 1 रन और। ओहो, काफी टाइम से देख रहा हूं नो स्ट्राइक का, स्ट्राइक कैन से नो स्ट्राइक कैन से तक दौड़ते हुए 1-1 रन के लिए इरादा कर रही है। बड़े शॉट के लिए कोई भी। विघ्नेश और एक टाइम आउट। इस टाइम आउट तो मेरे ख्याल में बिल्कुल कडम्बार को फेवर हो जाएंगे, क्योंकि खाली ऐसे ऑटोमेटिकली सभी खिलाड़ी को अंदर नहीं ला जाएंगे। कोई भी कप्तान इस समय पर ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री लाइन के आधी ग्राउंड पर खड़े करते हैं। अब देखिए, कोई भी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के करीब तो नहीं है, बिल्कुल खाली है। उठाकर खेलने के लिए प्रयास करेंगे तब यहां पर कैचआउट भी मिल सकते हैं, ऐसी सोच में है। ये देखिए, उठा रही है, गेंद जा रही है सीमा रेखे के बाहर, टन टन टनाटन चौका। और इसी के साथ वाईएफसी कन्नूर जीत के साथ आज बी पूल के पूल शुरुआत हुए, समाप्ति भी बहुत खूबसूरती के साथ की है। धन्यवाद देना चाहता हूं। कंग्रेचुलेशन वाईएफसी, थैंक यू फाल्कन फाइटर्स कडम्बार। अब तो पारी है मैन ऑफ द मैच की। मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के लिए यहां पर स्वागत करना चाहता हूं मंशू भाई, मंसूर नाम के मंशू भाई को स्वागत करना चाहता हूं अतिथि के रूप में। मैन ऑफ द मैच Man of the match goes to Nazir Chergoli, captain of YFC कन्नौर। मंसूर से मैन ऑफ द मैच पुरस्कार हासिल करने के लिए स्वागत करना चाहता हूं। धन्यवाद, गुड बाय, थैंक यू।
Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates.